बट गाइस बहुत मुश्किल से उठ पाया हूँ बढ़िया welcome the match is about to begin. We are into the map vetoes and hopefully this is going to be a cracker of a match because I mean if you look at the two teams APH and ONIC, we didn't expect ONIC to be here and I'm just pumped. I'm just excited to see how, like, this is a very good chance for ONIC to qualify because if ONIC let's say fall back into the into the decider and face full sins, things might go dicey because full sins are not going to play the same way twice. Hopefully. But yeah. Um, Let me just quickly turn everything on. Um, GE please open your take on GE match, bro. Yeah, it's just an off day for them. I think they'll bounce back today. It's just an off day, guys. होता है. You traveled, you went there, and they didn't play like the G we know. They made a lot of mistakes, overextension, not playing the buddy system well, basic fundamental mistakes. And I think today will be much better. Against Fancy United Esports, you'll get to see a much more prominent G, and we can build from there. Right. You could see it. Hello, chat. Hello, everyone. Hello, Percy. Hello, Dev. जी का करो पहले प्लीज. क्या करें यार अभी जी का बताओ. अभी मैच चालू होने वाला है ये वाला मॉर्निंग यार. कैसे तैसे तो सुबह उठा हूँ मैं सुबह 6 बजे सोया हूँ गाइस. So I slept at 6 o'clock in the morning, 6 or 6:10 in the morning. Hi Shaurya, hi Adraj. Uh, so I slept at 6:10 in the morning and woke up at 8:45. उसके बाद फ्रेश हुआ हूँ. फ्रेश होकर अभी जस्ट आया हूँ. And I've got Italy for breakfast now beside me, which is good. Hello Shashwat, what do you think? Who will win, NN or GFN? NN, definitely. Adiraj, so the thing is, I said it before as well, Griffin is only like good enough to surprise people on Icebox. Okay. And it's barely like why they're good enough to surprise people on Icebox is because they play very basic Icebox. Like fundamentally correct Icebox to I thought yesterday's analysis. No. Yesterday's analysis are here. So watch party, but we'll do analysis in the break. We'll go towards G's match once this match ends. ऐसे मैंने परमिशन है ज्वाइन मारते हुए लोग भैया मैंने परमिशन लिया है इसलिए ये जो पूरा फॉर्मेट है वो सब कुछ अगर तुम देखोगे पूरा परमिशन ली गई है. What went wrong with G yesterday? They never played this bad. Not even when yeah, so it was an off day. See, you have to understand. Okay, this might sound like an excuse, and it is sort of a cope up. But you have to understand they traveled. They didn't even have a day of rest. What travel after travel, and they didn't have much practice due to travel and everything. And especially after getting there, uh, they maybe didn't have proper rest and things like they looked very off to be honest. uh, Especially on Icebox in the beginning they looked so off, and even in heaven you could see things that like skills was playing very well. And I guess since I'm like without practice sponsor where I suppose क्या बात है. So the thing is skills played out of his mind. If you remember the 1v2 on Haven, that was just not it.
on Icebox as well. The plays that skills was pulling off, it was purely out of, I think, confidence. It was their choice to travel a day before the game. Mazin players who traveled on the last day performed the best. Hey, Godspeed just came now. Straight question: what went wrong yesterday? They fucked up. Basically, they fucked up in the sense that I don't think they underestimated Griffin, but I think they thought they could get away with the number of mistakes that they were doing. ऐसे नीचे लिखा है वेरा स्पोर्ट्स हाँ है skills is the most yeah dude and everyone is doubting VLT. I'm not going to, so I'll tell you. So Playins obviously G like took a gamble because they were in Playins. For VLT it made more sense, but I think VLT again VLT prioritized practice. So this way they get almost a full week, if not more, of practice VLT, whereas G got like 3 days of practice, I think, in maybe. So yeah, that there is a big difference there, but I don't think it's like maybe we're just overanalyzing. Things happen. Full Sense also lost. Like yeah, they played bad, they lost, and today the I can guarantee they'll be much better and will win. They already got 10 days. Yeah, just so off-putting that our own people in chat were happy that G lost. See, Gandhar, that will always happen. You cannot remove that in the community because there will always be some immature people in the community. Okay, you have to understand that how this, like, where it stems from. It's all about like some people don't understand that to support one team, you don't have to badger another team. Like, you can support the entire team. Like, I'm supporting both the teams. Like, after all, they're representing India, they're representing South Asia. Why won't you support both the teams? And I would be happy to see any like both if both go through, it's good. If one of them goes through, it's still good. Um, as far as you ask for my opinion, I'll give you my opinion. But in terms of support, I'll obviously support both. ब्रो आपने फिर से कर्ज कर दिया अरे नहीं भाई कोई कर्ज नहीं किया मैंने कल बोला था भाई कि ग्रिफिन का आइसबॉक्स देखने में मजा आएगा मेरे को बिकॉज फ्रॉम व्हाट आई सॉ उसका फंडामेंटली करेक्ट था एंड जस्ट लाइक विथ एनीथिंग फंडामेंटली थोड़ा करेक्ट they rely on others making mistakes or not being fundamentally correct to, in order to capitalize on it and win. And even the little things, if you remember the 2v1, Griffin played very well. The 2v1 on Icebox on the attack side for Griffin. I think they played really, they played the new, especially the new areas of the map, they played it very well. Why double control in Icebox? I think it works. I think double control in Icebox now really works. And Omen is not just a controller; he has more individual playmaking ability. He has his own flash, so he can anchor in an aggressive manner as well. He can support better in terms of rotation, and it just adds so much buffer. Like it made sense. To be honest, the comp made sense. Uh, Maybe what they tried to do, you couldn't see it back then, but yeah, the comp made sense. कल फनाटिक का क्लासिक कोड आइसबॉक ड्राफ्ट के लिए नॉन स्मूथ में ना फनाटिक का जस्ट सेज के सो अगेन अभी है स्मूथ गेम प्ले, इसका मतलब ये नहीं कि आगे रहेगा. पीपल विल स्टार्ट फाइंडिंग न्यू वेज टू काउंट टू इंटरैक्ट विद द एस्थेटिक्स ऑफ आइसबॉक्स. I know I have gone through a lot of things, and I think even Indian teams, they will surprise you, like Velocity and all. They will surprise you with their composition, with their style of play. I believe. I still believe G will fight through. This year is rough for G. They're fighting through low brackets to finals. Hey man, winner brackets are for losers, right? You remember? True side. Winner brackets are for losers. So don't mind me, guys. I'm just going to eat some idli. स्टार्ट करने वाली है क्योंकि अगर एक्शन पीएच अटैकिंग साइड पे शुरू कर रही है तो पहले हाफ में गेम शुरू डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि वो ये जो सेज कॉम्पोजिशन है स्पेशली एक्शन पीएच की टीम के साथ अटैकिंग साइड पे पूरा बर्स्ट कर सकते हो आप. एंड यूजुअली वो बर्स्ट रोकने के लिए एस्ट्रा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बट अब एस्ट्रा के बिना No, Fnatic was playing an old patch. So again, you know, Week 5, it should be new. Godfrey, what do you think? How much impact the CA will have on velocity? I mean, impact? I think a lot.
through a changing phase. लेकिन 15 सेकंड बाद I think a lot. हमारे सामने मैप स्टार्ट होने I वाला know C has been working very hard, स्टार्ट कर दी on the defender side and I've been helping him whenever I could, side it like individually, whenever he goes to custom server or something. But he's been working very hard, and he's obviously very talented. He posted the latest clip on Twitter. Yeah, I saw the icebox counter striking. Okay, interesting from ONIC. I like APH's. I like APH's comp a bit more. I think Sage provides balance to this comp. जैसे मैं बता रहा हूँ दे रहे हैं मिड बट ले रहे हैं एमेन उनके पास एमेन कंट्रोल है डबल एंकर खेल रहे हैं Okay, you have to listen to CS Hindi यार बेचारा he's trying. उनको मिड दे दो हम साइड की तरफ खेलेंगे क्योंकि हमें एमेन Then Viper was very good on old bomb and that draft also suited. Now Viper nerf main. इसीलिए कंटीन्यूअसली उनका अकेले कंट्रोलर नहीं होगा. Yeah. एनसी स्लैशर जिगल करे जा रहे हैं बस मेक श्योर कर रहे हैं कि अंदर नहीं आ गए ए शॉट के ए शॉट भी उनको मिल गया तो उनको फर्क नहीं पड़ता कल भी यही चीज फुल सेंस के अगेंस्ट कर रही थी ऑनिक्स ये बिकॉज़ जितना Okay, so they've planted their jet there. So he'll cut off rotation, try to cut off. Nice from a Batman. शॉट लगाते हुए बैटमैन स्लैशर का एक काफी अच्छा पैरानोय का इस्तेमाल टेक्स डाउन वन लेकिन बैटमैन जस्ट गोना टेक It's an advantage APH for now. I think Jet will try to cut off. Yeah, so it's done. This round is over. This round is over. और के अगेंस्ट डुअल भी जीत जाएंगे नाउ इन Very patient play from Georgie here. Do you think G can make full screen करो ना? Full screen ही तो है. Full screen नहीं है क्या? हैं? बना चुके हैं अभी भी क्या बोल रहे हो guys? उनका ड्राइव आ जाएगा तो अच्छा ऐसा है. टोटल डिनाई कर पाते बट इट इज जस्ट अ 1 for 1 इंस्टेड करारा Full screen मतलब पूरा full screen चाहिए. एंड अगेन इसीलिए मैं ये प्लेयर पे मेरी आंख FS versus ONIC was so satisfying. Hello, Abhijit. Yeah, FS versus ONIC. Lots to talk about in that game. देखना पड़ेगा कि क्या वो ये फॉर्म मेंटेन कर सकते हैं और अभी के लिए एक्शन पीएच बस वही मिड कंट्रोल लेके I think FS really underestimated ONIC. छोड़ा दैट वाज द क्रूशियल They thought they could just go through with brute force. Hi Rohan. कोई इंफॉर्मेशन अरे hello Mimosa. Yeah, now perfect. के चक्कर में जॉर्जी की तरफ डिस्ट्रैक्ट Okay, they are building towards another mid control. So the thing with Sage is very good for taking mid control. You can wall off. Should I? I think so. I should turn on desktop capture here, right? को लगती भी हुई पॉकेट की तरफ शॉट कार्ड इस्तेमाल करते हुए Yeah. वहां पर डिनाई करते हुए कि कोई भी प्लेयर ना होगा डिफेंडर आली की तरफ अब जाता हुआ डार्क कवर तीन शॉट ही है ऑनिक के पास ये देखिए तीन शॉट इधर वेट करते हुए एक शॉट ही ने एक टू डाई शेरिफ ने एक और बट इज जस्ट साइड तो अभी तक So नहीं it'll be interesting to see how they bring out Flasher. Oh, that is unlucky. Hello Dash. Hello Mimosa. Hello Rohan. Yeah, this is more this is better. I believe Sage gives you more options for mid control here on Ascent. रिसेंटली V1 को करते हुए नजर आया है इको राउंड्स पे असेंट पे दोनों बैठ जाते हैं बोट हाउस एक दूसरे के आगे पीछे बस शॉटी के साथ क्योंकि मार देंगे क्योंकि देख लेंगे अगेन यू नो द पेलेट्स का जो डैमेज होता है वो क्लोज रेंज में मैसिव हो जाता है और इनफैक्ट राउंड्स जहां पर यू नो ओपोनेंट से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बाय जरूर रहेगा Straight up B rush जा रहे हैं. They're going for a straight up B rush APH. इसके ऊपर कोशिश अच्छी थी And I think they can really catch them off guard here. लेकिन अगर हम बात करें इस समय Straight flash. अग्रेसिव जाते हुए बाय राउंड जरूर है 14 KJ ult. लॉकडाउन लुक एट दैट कितनी जल्दी यहां पर Stairs पे जा रहा है वो मॉली. ओहो ये तो डिस्ट्रॉय कर दिया. एब्सोल्युटली की बोट हाउस से दोनों शॉक डार्ट इस्तेमाल करके शीरो ने उन्हें शट डाउन They've gained a lot. पीएच का एक ही अल्टीमेट डाउन अब याद रखिए ऑफ कोर्स ये उनका बोनस है तो इधर Nice, they've gained a lot and it's good from. ये राउंड जीतना जरूरी है कि उनके Yeah, I didn't understand that. The Sova went back, but their KO प्लान जरूर कर went aggressive. वॉल के साथ पोस्ट प्लान खेलने की कोशिश पर शायद वॉल पे चढ़ना जरूरी नहीं था ऑफ गार्ड पकड़े गए और यू नाउ It's a decent. Can't see ONIC agent pick. करा जाएगा मात्र दो बॉडीज लूज आउट Wait, I'll करेंगे स्पाइक भी remove. प्लांट नहीं करने दिया टीम ऑनिक ने व्हिच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग फॉर देम और इसका मतलब अपना बोनस ओपोनेंट के बोनस पे उनको हराते हुए और अपने बाय के ऊपर यहां पर जीत हासिल करती हुई ऑनिक कहीं ना कहीं अब यहां से कमबैक कर सकते हैं गोल की दाद देनी पड़ेगी यू नो इधर काफी अच्छे तरीके से इधर अच्छा रहेगा ना. सेब्रीन आए उन्होंने Right. सिर्फ डेथ को वहां पर शट डाउन करा बिकॉज़ उनका एक शॉट था Third round पे lockdown. Yeah, they used it. It's a bonus round.
They thought they could utilize it they could surprise them with a quick B rush. And to be honest, it was a good thought, but again they revert to mid control, which is very good. A shot इधर किया, close recon किया, अब यहाँ से drone करेगा, हो सकता है. Drone नहीं किया, they've taken it raw. Jet जल्दी जल्दी आ रहा है, but Sage को spike लेके नहीं घुसना चाहिए तो. डिनाई करा. अब आप देख सकते हैं ONIC के शीरो और सेवरीन के पास यूटिल खरीदने की of course You see they pushed them out with the smoke, and now Sage can like this is standard stuff with Sage. Wall break करो, sorry door break करो, and this is how you utilize. No, it's perfect. Thank you. Top left कर दो. Top left में फिर रडार छुप जाएगा. बीच में यहाँ पे ठीक है I think. या टॉप राइट इधर ठीक है. को यहाँ पर सक्सेसफुली दोनों प्लेयर्स को टेक डाउन करना पड़ेगा. काफी अच्छा सेपरेशन है जिसमें एक प्लेयर दिखते हुए मोनी टेक्स आउट बैटमैन. या दिस इज बेटर. आउट और कहीं ना कहीं जो कंट्रोल यहाँ पर मैप का था ए मेन की तरफ से वो डिनायल मिलता हुआ. अभी भी देखिए टीम की तरफ से आगे. Now they're falling backwards. लेकिन स्पाइक रोटेशन में आता हुआ अटैक स्पॉन की तरफ से आगे बढ़ते हुए पूरी की पूरी टीम नहीं, that aim in kill actually derailed the plans. नहीं तो अच्छा होता. Now they're ready. So and KJ are ready at B. It can really get ugly with just 10 seconds left. They'll just fall back to back of side. Yeah, there's no way they're getting in. Yeah, there's no way. What's with this player so in action PH players known as Tesseract, the idol of this team, and he talked back almost every match. Yeah, so there's nothing like. See, Valorant is more of a 5 people with brains kind of game. You need an IGL obviously, but the amount of utilities that you have to use makes it more imperative for you to have 5 players who can think on their own and who have critical thinking. तो उधर IGL का उतना नहीं रहता है but micromanagement should be very less compared to how we used to play in other FPS games. Yeah, I think so. I think the Shiro is playing very well for this earlier stage. I think he's reading them very well, and his use of utilities is very optimized. Good morning, Bajaj bhai. Hello, morning. IGSL, are you by the way? Guy has 1 frag on controller, but team is winning. Yeah, it doesn't matter. Why bol raha hu? And are you like? If you have to see anyone here, I would say watch Eman. Yeah, as I said. And is taraf, if you have to see anyone watch like Monier or Elvimo. Like, but I'll tell you something. This Severin guy is very underrated. You know, he has a good gaming IQ. Not wait, that cam lower border just above agent order to the perfect place. Cam lower border just above. I think so. अभी भी perfect है ना? Is very good. The Aussians literally landed off like means straight to bootcamp. No wonder. But they were the best. They were the 2 best performers. So. Yeah, I think. Yeah, you could say Aryu is underrated. Aryu could be underrated just because people don't really value players who don't frag that much. Sorry, I'm still in awe of that flick. But Eman, dude, starting having best performance in Valorant scene. I don't think so. I think Cloud9 are up there. In terms of comps, definitely Cloud9. फनाटिक के एक प्लेयर है ब्रेव एफ जो नए प्लेयर है वो ऐसे ही पोजीशन में बैठते हैं बट वो कभी सोते नहीं है. बहुत इनसेन डिसिप्लिन है उस प्लेयर का. कभी सोते नहीं है. एक ही जगह पे खड़े रहते मारते भी हैं. Is making my day. Man is an AT exactly. Godspeed, do you think global can make it through? Yeah, definitely. It's just I'm sort of disappointed that they didn't top the group because I was expecting them to top the group. And say they're still playing an old patch. Yeah. No, he said comms, not comps. Like communication, not composition.
के साथ, बट इस बार स्लाइट सेटअप चेंज so, हुआ है। कैसी है मेजन? हाय प्रियांशु, टेस्ट करने की कोशिश दर्शन तो करेंगे। दर्शन भी देंगे अगर मौका मिला तो. Okay, so now again, see, mid control is very good. Taking mid control with in a Sage comp is very imperative, very important for you. Although they're not utilizing Sage उस तरीके से बहुत हद तक. Like if you see the Turkish teams, how they used to utilize, they used to wall off. Okay, they can still retake very early. Yeah, this is good from Monier. Oh, Batman. I feel they didn't need enough time to prep for new comps. Maybe comps मत लिखो guys. COMPS लिखो. Compositions लिखो. Comps is communication, guys. Okay. Making a petition to make sure that C is the permanent Hindi caster. Why? Art है art. This is art. What do you think? Booster is a player in Niger. One of the best understanding of them. Yeah, definitely. His understanding is very good. Gaming सिखा दे please. दिखा दूंगा भाई. Do you agree with what Vanity had to say about selfish any players? And the match is not good. True. Like he isn't saying anything wrong. If you're watching how NA is playing Valorant, just see the current state of affairs. You see how Booster controls every player of his team. Yeah, but that is bad in the long term. And I feel that is why maybe like not a lot of coaches stay there. Booster likes having more control. I think it's just like Hellranger in here. He micromanages every player. I know, like you could see, and he's done that from eternity. Yesterday, just Golu was having a bad day. It's not one player having a bad day. If one player has a bad day, the team will never lose to Griffin. Okay. Yeah. कभी-कभी हम मिड कंट्रोल लेंगे, कभी-कभी एक्सट्रीम कंट्रोल लेंगे, एंड वो मिड कंट्रोल के कारण आप देखिए अब ये अलार्म बॉट सेटअप जो है ओनिक का स्ट्रीम लिंक तो भेज दे और वर्ड को गूगल ड्राइव अपलोड करके डिस्कॉर्ड पे भेज देना. यही मतलब बन जाता है कि अब ओनिक एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में. Okay. I think this could be very dangerous for APH because bar like their KJ ka ulti usage has to be much better. No. I think one great thing that I've seen on it is they happily give you control of places like mid. They're like, it's okay, we'll retreat to B or retreat to A. After all, you have to come here, which is like absolutely basic. The same thing that they were doing yesterday against Full Sense. They were just giving them control of mid on split, and they were falling back to guard side, which was working in the favor. Today also they are trying the same thing and it's working. It's just that APH have pulled out rounds due to the individual brilliance of Eman and everyone. I only seen and not even optic plays how Valorant needs to be played. See, Valorant is never needed to be played a certain way. That is the beauty of Valorant. You can play it several ways. But I think what worries people about NA is the lack of creativity, the lack of innovation, the lack of impetus even. देन आपका साइट एंट्री काफी इजी हो जाएगा. और रिव्यू कर दो भाई. इवॉक की तरफ एक टाइम आउट आई गेस ओनिक के कोच इवॉक ऑफ कोर्स देखते हैं वो क्या इधर चेंज कर पाते हैं. I think ONIC is underestimating the power of mid control on Ascent. They can't pull off the same shit they were pulling off on Split, which is like just fall back, retreat to sides. They need this control, at least some control. They need to push APH somewhat back. So what I would recommend is you play your KO here, okay? And you play your KJ or something here. Sova ko idhar khila lo, stairs pe. And as soon as the alarm bot goes off, you knife and you recon and you can take a fight.
I think there's a very good cop right now at least ओ for एक्चुअली नहीं, denying the mid एनालिस्ट control. डायरेक्ट मिड के लिए लगा रहे हैं You बट can't स्विच play on site सो like इट्स this जस्ट against Reach now. Exactly, पॉइंट बन exactly. चुका है कि केओ Is it okay to सिर्फ visit the स्विच Hidden खेलने Gen वाला है GM, one of the डिफेंडर से best स्पॉट से सॉरी micro एंड उधर ही region SS circuit कोशिश and रहेगी Milton कि authors देखो of the मिड best वो लोग लेने ही to वाले हैं तो threats. दे ही दो, अब हम डायरेक्ट पूरा Maybe, साइड के लिए खेलते हैं बट री maybe. इधर री एग्रेशन Hey, करने की Godspid, hey कोशिश Jayesh, करेगी hey और Tanish. केओ खड़ा है उधर से एक You बहुत ही अच्छा wedded G प्लान Lack है, yesterday? वो पॉप फ्लैश के साथ आप जा सकते I हैं। think they're देखिए वो just having an कोशिश off day. कर They're सकते not थे आवाज prepared पॉप enough, फ्लैश की बट and मुझे ये they नहीं समझ went में आ with रहा a है new कि comp, पॉप फ्लैश and they सिर्फ maybe didn't have फ्लैश as यूज much करने practice के on लिए it था, as कोई much अग्रेसिव नहीं as they करा, would have कोई liked. फाइट नहीं लिया, Maybe some of the things they prepared रिटेक की didn't कोशिश की actually, लेकिन they बेसिकली didn't manage to execute it as well. Best bind and split comp for you. बट अगेन For me, Chambers, Sage, डिले है Raze, उसके Sky, फेवर में, Viper, बट Brim. I don't think Viper has any बट viability now. I'd say you go double initiator instead now, which is if you want to go like Sky, you go Sky, but I believe Bind is more of a breach hero, breach thing now. You go Sova breach, you go Raze, you go Brim, and then you go Chamber or Sage. Both are good. Fights भी हार रहे थे तो और बीटी हुआ होगा. फाइट्स हार रहे थे उनकी गलती, लाइक बहुत ज्यादा ओवर एक्सटेंड कर रहे थे. जो फाइट्स अननेसेसरी फाइट्स लेनी थी वो ले रहे थे. एग्जैक्टली मार्केट कंट्रोल नहीं है ओनिक के पास, वो लोग की सोच शायद रहेगी मार्केट कंट्रोल सी के अगेन साथ हम ऑनिक स्विच मिड कंट्रोल कंट्रोल लेकर नहीं देंगे देखते रह सकती बार बार. दिस इज नाइस, दिस वाज अ नाइस और वो पॉकेट स्विच लेना टू बहुत क्लियर मुश्किल है, मार्केट. एक पैरानोया के साथ जरूर पुशबैक कर देते हैं अब ये लॉकडाउन लगाते हुए हम्म. डिफेंडर साइज पॉइंट एंट्री से अब घुसने की कोशिश लिमोर ने एक जरूर निकाला पर अभी भी वो लेट मार्केट ओ कंट्रोल लेना उनके लिए काफी हानिकारक हो रहा है कि ये देखिए इतने एनमी सारे मोर फ्लैंक फूल से बंद कर दिया इसके दरवाजा पास उसके बैक प्लेस के बस लिए. बीमेन सीए की तरफ चिल करते हुए बोलने वाला था पर थोड़ा जायद चिल हो गया शायद, ये भूल ही गए उन्हें पीक नहीं करना था, बैटमैन को डूड पीक पे आना था। सीए 4 चांद लगा दे रहा है हिंदी कास्ट में. ओह नहीं 0.04 ओ माय, ही डिफ्यूज्ड. सोचिए अगर बैटमैन एक They सेकंड was में right या new them 10 and the meta सेकंड change and give them में enough 1/10 time. of a second भी To be honest, Abhijit, they could have still gone with the old comp. So I'm not making like you could chalk that down as excuse because there are many teams who are playing the new meta or playing the new patch with the old comp and they're successful at it. Okay. करा गया अपने आप को ऑनिक, वाओ दैट वाज लिटरली अ क्लोज कॉल्स ये, एंड अगेन ये चीज तो एक्सपेक्ट कर ही रहे थे हम इन दोनों टीम्स के द्वारा, लेकिन अगेन नाउ थिंग्स विल गेट इंटरेस्टिंग हियर बिकॉज़ एक 4-4 कभी नॉर्मली भी आ जाओ ऑनलाइन. सॉरी यार तने. जरूर है, Micro plays and 1-to-1 plays टीम बन नहीं रहे थे कल. वही ना, मतलब they were trying to force the issue somewhat बहुत जगह पे. यू नो एक इकोनॉमिकल बाय देखने को मिल सकता है या फिर अपग्रेड पिस्टल्स के साथ खेलेंगे, मगर अभी के लिए थोड़ा स्लो प्लेस है इस बार। अगर आप Okay, that was a very crucial round for ONIC. And I'm glad they understood. See, now they've adapted. और मिड की तरफ दो Now they've adapted to take more, to play more towards mid and gear towards not giving them mid control. ऑपरेटर लगा रखे हैं, I think APH recognizes that, which is good. तोड़ दिया जाएगा यहां पर इस्तेमाल करते हुए डार्क कवर टूवर्ड्स वॉल, और यहां पर स्टेप अप करना इज इंपॉर्टेंट बट टैंकर इज आउट। यहाँ पर उनके कांटेक्ट पे ये देखिए सेवरिन शीरो Such a good contact play. कल फुल एम डेप्थ था. एम डेप्थ नहीं बोलूंगा मैं. 0 पॉइंट के साथ ओमेन जरूर स्पॉट आउट हो चुके हैं, उनकी तरफ एक फ्लैंक आने वाला है बट सेवरिन जब तक पूरा साइड ले चुके हैं मोनिए की जरूरत ही नहीं थी, वो आर्यू Very good contact reaction at B. पूरा साइड लेके ऑडिक का ये कमबैक आता हुआ एक टाइम आउट के बदौलत KJ के contact पे ऑनिक जीत चुकी है, Sova and उनकी अप्रोच KO just burst out, and I think it helps them a lot. You don't give the other team time to react to how you are re-entering the side, and which is good. You in contact with Sappy? हाँ बिल्कुल बताओ. यही चीज यू नो स्ट्रेटजी बहुत अच्छी तरीके से वर्क करती है टीम ऑनिक के लिए, एंड साथ देनी पड़ेगी यहां पर, यू नो उस रीटेक में, यू नो देखिए Yeah, you could say that about Heaven, but I think और उसमें सफलता Heaven it was more desperation for G than anything else. एक्शन पीए जैसी टीम जो कि बहुत ज्यादा हाइपर एग्रेसिव प्लेस कभी कभार दिखाती है, इस बार एक अपग्रेड पिस्टल है जैसे कि पिछली बार भी मेंशन करा गया था, रिकॉन वाज सक्सेसफुल। Okay, now they've gone to the passive mid. एंड वो जो बीविंग की तरफ टारगेट लगा के रखा है वो शॉट That's a good one way. कोई पीक कर रहा है या फिर पिज्जा की उसको यहां पर तोड़ दिया जाएगा। Oh my God, Bhatt साहब, hello Sharky.
बस सर ओपी बोलते हैं क्या हाल है किलो काफी तो कोचिंग में चले गए अच्छे हाँ दिस इज बैड ऑनिक्स डिफेंस इज वेरी टाइट ग्रेट जॉब बाय इवॉक बिकॉज ऑनिक पहले इतना टाइट नहीं खेलती थी ऑप्शंस रियली वो कुछ नहीं कर पा रहे they're playing they're bouncing off of each other very well this is a sentence I use often but they're bouncing off their buddy system is very good फ्लैशेस है कि ओके उनके मदद के साथ या फिर दे के बाद क्या में मस्त real किया था race वो करेंगे। स्किल्स का real वो race फेक के time हाँ पे ONIC हेवन में ना 1v2 really कुछ नहीं कर पा कल रहे जी थे। गंदा खेली हाँ यार हो सकता है कभी कभी performance बहुत ही नो स्किल्स ज्यादा ओमेन ऑल्ट pop क्लच off होने लगा तो है। परफेक्ट यस 6-4 डेफिनेटली 6-4 ONIC गॉड ने भाई क्या हाल बस चल रहा है देवांश मे बी आई एम रॉन्ग बट as soon as जी लैंडेड इन सिंगापुर they had only 5 yeah so two of the players had just 5 hours or 6 hours अगर ये राउंड plus PC भी I think so the monitor and everything didn't arrive लास्ट राउंड उनका ई को until the last 3 to 4 hours है अगर ये हार गए तो बाई भी टूट evoke buff है ऑनिक पे आराम से yeah आठ so this is that they took yeah क्योंकि लॉस बोनस I mean they knew the risk of it hell on KO would have get another one and just change that Viability.com maybe see again I think this comp isn't bad either just they just need to execute it properly मुझको skills का तो play अभी तक समझ नहीं आया please explain what the heaven वाला 3 elimination है ना 3 elimination डबल एलिम से ट्रिपल एलिम सुना नहीं मैंने आई विल जी नॉट हैविंग मच वर्ड्स और ग्रिफिन ग्रिफिन डिडंट प्ले एनीथिंग एक्स्ट्रा दे प्लेड बेसिक एवरी 5 स्ट्रीम्स थे इट्स नॉट लाइक ये सब फिर वही है ब्यूटीफुल लाइन ऑफ ए शॉट से आई थिंक मेरे को खुद एक बार इस मैच के बाद कस्टम में जाके बैठ के वो लाइनअप ढूंढना पड़ेगा वो बहुत ही अच्छा लाइनअप ए मेन से मेरे को लाइनअप पता था ए शॉट से भी अब एक ये लाइनअप देख लूंगा थैंक यू सेवरी मैं सीए बोल रहा सेवरीन तुम मेरे को दिखाते जा मैं ये सारे यूज करूंगा आई नो शायद मैं वर्ड यूज कर रहा हूं बिकॉज़ यूजुअली जब आप और मैं खेलते हैं या फिर जब भी जोनी वगैरह के साथ खेलते तो जोनी का एक ही कॉल रहता है शिवान यू आर थिंकिंग या इतना ज्यादा मतलब दिमाग वही तो Today's spreads. वही कॉल इधर एक्शन पेज करते हुए जब तक हम अप्रिशिएट कर रहे थे फ्रैगमेंट एक्शन पेज बोलती है तुम लोग फ्रैगमेंट को देखते जो हम लोग बस सारे इधर उतार रहे घुस के मारो भाई एंड वही सिंपलिसिटी एक्शन पेज की बोल रहे हैं, ठीक है अब I think here Action PH wins. Full sense here. No namers here and global here. तो यू नो व्हाट 5 मैन No sleepy ने jinx कर दिया. Believe comeback will happen. Yeah, definitely. So he altered the brim could never get so. Because हिंदी कुछ weird लग रहा भाई मजा आ रहा है भाई. 6-6 का इधर स्कोर लाइन होता है The please brim with breach. कंटेंट रहेगी अगेन यू नो जैसे कि वो जरूर कर सकता है लेकिन पॉप लीक डाउन क्यों लेकिन बैटमैन उनके जो काउंटर पार्ट है ये प्लेयर भी रुक Jinx मत कर please. Jinx कोई नहीं कर रहा भाई. I'm telling you. आज तो कोई jinx कर ही नहीं सकता. एनसी स्लैशर लेफ्ट अभी के लिए डिफेंडर्स हॉल की तरफ लेकिन तब तक पीछे से देखिए मोने आ रहे हैं टुवर्ड्स बी मेन विद Okay. अब यहां पर यू नो इन दोनों Suddenly see this is what I like about APH. APH 8-4 हो सकता है उसके ऊपर they still know how to gather rounds despite them being heavily diffed. अगर इधर बोला जाए तो ONIC have been superior this half. When does RG hide in GE and Iceworks yesterday? They have consecutively lost in Iceworks against Enigma and VLT plus it's Griffin's best map. स्लैश पुश करे पर टाइम नहीं आ रही हूं ब्यूटीफुली ये पोस्ट प्लांट खेलते हुए दोनों I don't know why they didn't ban. I said पहले भी मेरे पुराने मतलब जो स्ट्रीम में हमने प्रेडिक्शंस करे तो उसमें ही मैंने बोला ग्रिफिन का आइसबॉक्स ही है अलाउड सीए टू गो फॉर नॉर्दर्न टैलेंट अर्लियर सो दैट ये पहले आपके साथ भाग जाएगी सही है अभिजीत ये सही है एमएसके को मत बुलाना जिंक्स कर देगा एमएसके को बुलाऊंगा वो उठा नहीं है अभी आई प्रेफर्ड जी's old icebox KO com the new human com it works but it has very niche ways of working MMO the KO provides much more impact I think DM is better than SK aggressive play style ही relative choice है सबका अपना अपना किस मोमेंट पे एग्रेशन कर रहे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइक फॉर एग्जांपल आप ये लास्ट राउंड पे भी देखो तो उन्होंने पहले 10 सेकंड इंतजार किए फिर डब्ल्यू किया वो 10 सेकंड I think they both work in different systems right now. अगर SK रॉसी भी DM के सिस्टम में काम करे या DM SK रॉसी के then we'll get to see like objectively who's better. के कारण वो एक एक्स्ट्रा Structure ban करना important था. I don't think so. को बहुत ही ज्यादा I think Griffin के साथ
तुम आइसबॉक्स बैन करते हो वो और कोई भी मैप में नहीं हरा सकते, टू बी ऑनेस्ट। बहुत ज्यादा बढ़िया इस समय Aji gets me, they get to play APAC. सीएजी का सही बस है easy और है, NODWIN का खेलो। कंपोजिशन था बहुत ज्यादा फेवर करता हुआ ऑन द डिफेंसिव साइड, ये जो 6 राउंड्स उन्होंने मेंटेन करके रखे हुए हैं। बट आई वुड लव टू सी कि यहाँ पर क्या सेटअप रहेगा। फॉर श्योर इट सीम्स लाइक ईमांस आने वाले मिड की तरफ, बैटमैन यहाँ पर अपना सेटअप लगाएंगे। जी का आइसबॉक्स फोर्ट्रेस होता था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट but everyone has read it. लेकिन अभी के लिए And they've changed it as well, वाइबिंग ना? की बात करें, जैसा कि आपने मेंशन करा 4 राउंड्स बैक टू बैक जीते गए थे टीम ओनिक द्वारा, लेकिन उसके बाद जो सही समय पर 11वें और 12वें राउंड में विक्ट्री हासिल करी एक्शन पीएस ने, तो वो उनको काफी ज्यादा Every king finds a worthy challenger, आपको याद हो and 11th राउंड में sometimes पिक निकल गया था the worthy challenger is just time. वहां पर मोने का It's just time itself. कर रहे थे यहाँ पर टॉप मिड की तरफ से, जिसके बावजूद से बहुत तरह It erodes your throne up to a point where your throne no longer is safe. बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा अब एक्शन पीएच के लिए। एंड क्योंकि आप देख सकते हैं उनका बहुत सिंपल सेटअप रहने वाला है, दोनों सेंटिनल एक एक साइड को लॉकडाउन कर देंगे एंड बस वही उधर के लिए खेलने वाले हैं। वो बोले मिड कंट्रोल लेना है ले लो, हमें फर्क नहीं पड़ता है। एक I feel like the only thing he was missing discipline in the peaks. कभी-कभी आपको देखिए ए शॉट वॉल करते हुए या एमेन वॉल। I think YB is just the performance coach, which is what Anti said during the interview during the aftermath interview. And if that is the case, then I don't think he has a hand. Outfit क्या line बोले हो? करा जाएगा, लेकिन तब तक देखिए Hi Kavish. टीम की तरफ हरकत दिखाती हुई टीम Damn. Just that people need to know. Valor is too early to call. क्या हाल है Kavish? Good morning, man. जिसमें वो नहीं पकड़े जाएंगे, लेकिन Well said. Thank you, Yash. It's just that people need to know Valor is too early to call any player better than other. Every player is better than. No, बस है. तो prediction क्या है? Fancy, I think 2-0. Maybe Ascent थोड़ा सा देख के खेलना पड़ेगा. I don't think Fancy stand a chance. I think Split खेले तो थोड़ा कुछ हो सकता है गड़बड़, but ना. काफी लेट आने वाले, मतलब सेवरीन अकेले पड़े हुए, बट एक सिंपल सा राइट क्लिक बस, उन्हें बस टाइम बाय करना है। 3 सेकंड में उनका 0 पॉइंट भी आ जाएगा और शीरो Good भी, morning, man. पर जॉर्जी शीरो को ढूंढने की कोशिश पे पुश जरूर कर रहे हैं। और इसी के साथ सेवरीन का वो 0 पॉइंट आते हुए एक सिंपल सा 1v1 बैटल अब सिमिलर हेल्थ बार्स के साथ। बाकी लोग ज्ञान ले लो सर. नहीं चलेगा. On a broader view, even if G loses today, this is not the end. के साथ खेलते हुए इस बार पीक जरूर कर लेंगे। Yeah, Varun, obviously. I don't think they lose, dude. सेवरीन ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेला, बट आई डोंट थिंक एक्शन पीएच को उधर रोकना था, बस सेवरीन के मुंह पे सीधा घुस के। So C is correct here. I think APS just lost their tempo of retake. If they had better tempo, they would have won that round. People are believing that just Rossi would show up every time. But DM is a good competition. That's what team grow. कल हेवन पे प्रेशर आ गया था बाद में. हाँ, you could see that desperation in SK Rossi's play. There were some miscoms as well. We were discussing that. Like me and C were on a Discord call. We were discussing that. And Malav will recognize that straight away, dude. मास्टर्स है, 2 मास्टर्स है, yes. 3 नहीं है. I remember Ace once telling on stream that whenever some new map comes up, they practically work to make it a stronger run on. They started slow with Icebox, and the lesson comes from that. That is what every team should do. I don't think it's something different. Maybe for Indian teams it is different, but that is what everyone should do. Because there is at least soft preparation तो होना चाहिए. This is good. This was a good wraparound from ONIC. And again, APH का setup is very different from ONIC का setup. So I think ये वाला round में, bonus round में, ONIC if they go for a straight execute, they win this round straight away. They don't need to play default here. G's fracture is way better than G's Icebox, and they can make help play duelist from Rossi and Chamber. Kappa beat skills prim. कुछ भी खेल सकते हैं यार. It's up to them, their comfort. इंडियन LCQ के लिए क्वालिफाई होगी नहीं यार. LCQ नहीं, मतलब वो मास्टर्स के लिए तो नहीं होगी. We lost way too simple round yesterday. Okay, Icebox yeah. Fancy won against BAAM. They may have won against BAAM. इसका मतलब ये नहीं कि they win. Yeah, so this is good. This is a good. But Zero with a quick Batman का position is very good. They'll lose. Yeah. See, look at the buddy system. कल का टूर्नी खेल के मजा आया. नाइस सर.
I don't think so. LCQ will be based on circuit points for which you need to be top tilted. I asked Malav why they permanent fracture. He said they don't find it comfortable. Yeah, it's a matter of comfort. Exact. मेरा मैसेज मिस तनेस साले मैं स्क्रिप्ट बताता हूँ जी वालों ने नया लाइनअप ट्राई किया और हारे और पुराना कॉम खेलेंगे आई डोंट थिंक पुराना कॉम खेलेंगे आई थिंक दे स्टिक विद द न्यू कॉम दे जस्ट प्ले इट बेटर आई डोंट थिंक आइसबॉक्स तक जाएगा एनीवे ग्रिफिन ने आइसबॉक्स पिक किया होगा बिकॉज ग्रिफिन का बेस्ट मैप इज आइसबॉक्स आई थिंक ऑनिक का और एक बोल रहा हूँ फैंसी नाइट का बेस्ट मैप should be somewhere around split. They should pick either split or ascent if G let it through. पता है मास्टर है बदमान में LCQ होगा ना चैंपियंस के लिए होगा ना वो अलग है yesterday I think G wasn't lacking a bit just a bad day for them again वही तो बात कर रहे हैं just the mindset I feel okay that's the last line yes it doesn't mean yeah G has very good defense on ascent you could say that but I'm just saying अब मैं भी ना आइसबॉक्स वाला भी ऐसे ही बोला था कि potential है to hurt G now it depends on G because normally I'll say कि G should win these matches anyway oh that's unfortunate see ONIC का buddy system is what I'm loving I think Evoc has done it very well 2v2 2v3 3v2 exercises I think इसने कराए हैं I think he's focused a lot on those exercises oh Shiro nice one this was a crucial round 8 all हो जाता और इकोनॉमी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती थी अब now APH very troublesome for APH they'll have to give this round away or they're forcing no I think they should give this round away play like in the hopes that they pull off a thrifty thoda close or they're playing sheriff so I think so you should take some fights to some early fights at least because अगर early peaks कुछ मिल गए so they can build some early pressure कल रोसी की ऑप चली नहीं इट्स ओके लास्ट राउंड आई सॉ द whiff इट्स ओके आजकल मैं क्लच बिल्कुल नहीं कर पा रहा क्या करूं खेलना छोड़ दे so again I said early fights so APH are good with all this income prediction going back to old com no I think they still play the sky wala comp why do they go with the old comp the new comp is clearly good अरे watch party बंद नहीं है सब ना glad they bring Omen back in the meta so much better to see outplay yeah I mean Omen will be back in the meta sleepy ने predict किया था APH फर्स्ट सीट क्वालिफाई होगी कर दिया जिंक्स भाई मैंने भी वही predict किया था छोड़ने के पहले क्या करूं छोड़ने के पहले तो उतना ध्यान मत दे नहीं हो रहे क्लचेस नहीं हो रहे अगर तेरे को ये ऐसा है तो जस्ट एलिमिनेट ऑल पॉसिबिलिटीज क्लच में बेसी दिमाग मत लगा जहां पे जा रहा है वहीं पे जा प्लान करो या अगर तो अटैक में अगर डिफेंस में तो एक जन लाइक साउंड देके जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है क्लचेस में अगर खेलना है तो फिर उसको एकदम स्ट्रीमलाइन कर दो जस्ट प्ले इट बेस्ड ऑन कॉन्फिडेंस मंदिर जाकर आरयू को रिवील भी कर देंगे उन्हें पता रहेगा कि ये प्लेयर अंडर हेवन स्पेशली ये बेंच एंगल This is good. They cleared it angle by angle on it and now like on it really looking dangerous. I agree with Rishi. Although I still feel Full Sense shouldn't have lost to this Onic. I think Full Sense are better than this Onic. Good morning, Maya. इसमें खुद को एग्नोस्टिक बोलता हूँ बट क्लचेस के लिए जा सकता हूँ सही बात है भाई पूजा आर्ट करो गाइस मतलब इज हियर ओके ब्रेकफास्ट में क्या है आज इडली था और अभी इट्स जस्ट टी एंड बिस्किट्स ये कार्टून गेम में कुछ भी वॉल बैंग लगते हैं सही बात है ऑल द बेस्ट मतलब सर यस बस यू नो जैसे अंडरटेकर जब आए थे पूरा लाइक उनका लुक बदल के इधर फीनिक्स आ गए पूरा लुक बदल के एक नए आउटफिट में नए कॉस्ट्यूम में नए मास्क के साथ बट है तो वही
वॉल नहीं बना सकते बाकी डेली हो, डेली हेड डोज लेने आया हूँ. ठीक है भाई, बॉल बोर हो गया भाई अब चिक्कू के साथ। This is so fucking true. नहीं कर Omen opened up other agents to come in Yeah. meta like Cypher. And again, you know what? I personally like you because again, जैसे कि नाम है मैं Phoenix भी खेला Hello, good morning, Anuj. Chamber where Killjoy is just dominant sentinel on most teams. I think Killjoy is no more the dominant sentinel, लेकिन अगर हम बात करें strong especially with Breach coming back into the meta. I don't think Killjoy is that prominent. Killjoy with KO and Breach being prominent in the meta, I don't think Killjoy is that good now. which is a very good Personal preference. they are playing When does G Resident debut on the server? minute खत्म He was there 40 seconds yesterday, na? and the call out is let's हमने B की तरफ बहुत ज्यादा एबिलिटीज कमिट कर दी गई हैं ध्यान खींचने के लिए enough है चलिए इस साइड की तरफ चलते हैं लेकिन Poach and Sova main is here. Hello, Prom. भैया एक बार अपना डोला भाई से बजा दो लाइक देखो. और वहां पर ईमान तो रहते ही हैं ठीक है कहते हुए वहां पर उनको डुअल जीतना पड़ेगा बिकॉज़ अगर वहां से एंट्री स्लैशर और रिवॉर्ड्स जाते हैं तो डिफिकल्ट हो सकता है उनके लिए सिचुएशन इंस्टेंट यहां पर पुश करा जाएगा Okay, very good position from Mario, but yeah. लास्ट मिनट पुश बट है ये ऑनिक का, अगर प्लांट रुकता है तो बहुत मुश्किल में आने वाले हैं। प्लांट वही रोकते हुए एक्शन This is done. 2v3 का सिचुएशन क्रिएट कर चुके See, हैं। the thing with APH is they are mechanically way better. इन केस बिकॉज़ इतना The thing that she is doing on Sentinel rather than no, I don't think there's any need. I think this comp is self-sufficient, dude. You'll see. अभी तुम लोग इसलिए बोल रहे हो because वो हार गए. जब वो जीतेंगे तुम बोलोगे अरे क्या कॉम्प है. वेपन उन्होंने लूज किए थे, उसके कारण एक दो बाइस मतलब होएगी एंड भाई ये क्या टाइम हो रहा है उधर. मलव is still here in Mumbai ना. मलव didn't travel. ओमेन के साथ जज वो एक्चुअली यूजफुल रहता है ये मैप पे, क्योंकि सपोज आप वो एमेन के बॉक्सेस पे बैठ जाओ तो बहुत यूजफुल, कभी आप एक क्लोज एंगल पे भी बैठ जाओ तो क्योंकि आप वो क्लोज एंगल से एक मार्केट उनको फ्लैश करके इमीडिएटली टीपी करके भाग सकते हो। एस्ट्रा के साथ वो नहीं कर सकते। 1240 किलो एस्ट्रा के साथ क्या एक बात है. मार के आप मरने ही वाले हो, ओमेन के साथ एक मारने के बाद आपको एक एस्केप ऑप्शन You don't cancel me, मैं मस्ती कर रहा हूँ. It's okay. तने तेरे को कोई सीरियसली नहीं लेगा. ज्यादा तेज है उसके बाद आप आराम से विजन भी डिनाई कर सकते हैं मोने टेक्स डाउन वन लेकिन जंपिंग जज टेक्स डाउन टू सुप्रीम इज गोना टेक दैट वन नहीं, this is very dangerous from Iman. Just fall back. Yeah, that is the best thing to do. Just fall back. स्पेसिंग बनाने का लेकिन पूरी की पूरी टीम ऑनिक विदाउट रिकवरिंग Trigger तो होगा alarm bot. Yeah. अलार्म बॉट ट्रिगर होने से पहले ही आगे बढ़ दिया जाएगा स्पाइक भी आगे बढ़ता हुआ So this is a close round, but it all depends on. Yeah, they're grouping up. Yeah, I think this round ideally should not go. Yes. Oof, Georgie भाई. जोक तो पढ़ ले. पढ़ तो लिया मैंने. अच्छा बेस्ट ऑफ लक टुडे. फोड़ के आना जी. नहीं यू भी जीतेंगे तो फिर फेरी टेल रन कैसे बनेगा ये बताओ भाई. इजी राउंड पिकअप करते हैं एक्शन पीएच एंड आप अच्छा नरेशन अच्छा स्टोरी भी तो मिलेगा भाई हमको. उधर आर्यो द्वारा बहुत ही ज्यादा वैल्यू निकालता हुआ, मेरे को लगा एक मार के भागेंगे, बट ऑफ कोर्स ये एक्शन पीएच के प्लेयर है, भागना तो डिक्शनरी में नहीं है, एक मार के दो मारेंगे भाई। वापस हीट स्टॉर्म डिनायल दिया गया जो कि नहीं मलव स्क्रिप्ट नहीं लिखता है. स्क्रिप्ट कोई और लिखता है. मलव हैज अ वेरी गुड सपोर्टिंग रोल. कंटेंट नीडेड और नॉट. बिल्कुल चाहिए भाई. लेकिन 10 नॉक कंटेंट ही तो चाहिए आज भाई. हम जीतने के लिए थोड़ी ना खेलते, कंटेंट के लिए खेलते हैं यार हम. ऑनिक के ऊपर स्लाइट प्रेशर बनता हुआ और दाद देनी पड़ेगी यहाँ पर टीम एक्शन पीएच की जो 2+3 स्प्लिट बार-बार 1+3 स्प्लिट है 1+ या कंदो खेल रही है अभी के लिए उसको बार-बार चेंज करते जा रहे हैं एंड जिस तरीके से सिरोल डेथ अपने आप को बार-बार अपनी पोजीशन चेंज करते हैं अनप्रेडिक्टेबली वाला सबको बोलता है कैसे करना है एग्जैक्टली. हाय विजय ये मेक सेंस नाउ. इन्वेस्ट करा जाता है रिकॉन जीएम गुड मॉर्निंग विजय. आई एम आल्सो इन डिसबिलीफ कि मैं इतनी जल्दी उठ के ये सब कर रहा हूं. शटडाउन करने में कामयाब Yeah. अब This was a very necessary. So again, the timeout has been taken at a very opportune time, and इसका effect क्या होगा? We'll have to see how they play. I guess they shouldn't take mid control here. To be very honest, they should show the illusion of maybe taking mid control, but mid control उनके बस की बात नहीं है. Like if they have to do anything, I would say maybe a split is good for them right now. ONIC के लिए, if I was their coach, I would tell them कि maybe whittle them down towards mid थोड़ा सा and then do an A split. तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, फिर आप देख सकते हैं ऑनिक के द्वारा एक Let us see वही वो कर रहे हैं कि नहीं. इनिशियल एरिया पे एंड
केओ उधर जा रहा है, केओ साइड का नाइफ करेगा। शॉट से घुसते हुए 4 प्लेयर रीमेन से घुस रहे हैं। ठीक है, ब्लॉगर है ना मोहित इसरानी। भाई वो ब्लॉगर नहीं है, ही इज स्टडीड फिल्म एंड एवरीथिंग। he's been part of G for a very long time, from the time they had the Overwatch team, I think, and just like Vatsal. See the Sage. This is why I said the Sage is so good. अब केओ क्या करेगा, पूरा टेम्पो चला गया। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग गुड whoever did. Very confused. This is not the way that 1v1 should have been played. But he doesn't even have the spike. He has nothing. Why would you push him in a 1v1? Makes no sense. Maybe he was trying to eliminate the angle and possibility कि वो ऊपर से आ सकता है. But again, very very awkward. Hi जताना. मैं अभी नींद में हूँ. मैं एक बार टटलौद बोल दो. टटलौद भाई बोलूँगा ऑब्वियसली. लोग ना कर रहे हैं जो भी हैं. मैंने तो व्लॉग्स तो देखे हैं. वाइट स्विंग. Yeah, but मतलब we shouldn't have even gone for a peak, Georgie. I think he played it very bad. This was their round. If he's playing bad, ONIC out playing them. No, they both are playing well. I think APH made a mistake this round. Otherwise, this is a very good level. Yeah, he didn't need to exactly, मतलब. But वही है. It's just that Georgie mentality, like. मतलब टट के साथ कुछ भी लगा दो. ONIC doubters where my okay, this is very doable. They have to retake fast though. They shouldn't allow ONIC time to regroup or take positions. They've given them time to regroup, but yeah, this is still fast. It's okay. अभी जाना चाहिए while the ult is gone. Yes, nice, beautiful. यार ये जो मेटा है, this is for fast retakes. तुम किसी को सेटल डाउन होने नहीं दे सकते. स्पेशली ये लोग तो खेल नहीं रहे, बट द ब्रीच एंड एवरीथिंग, ब्रीच केओ चेंबर होगा, कुछ भी हो गया, डोंट लेट देम सेटल डाउन. वो लोग अपना पोजीशंस ले लिए, सब कुछ एकदम अपने हिसाब से कर लिया, तो वो लोग अपना पोस्ट प्लान खेल लेंगे. दिस इज द मेटा ऑफ फास्ट रीटेक्स. चाहे वो प्लान के पहले हो चाहे प्लान के बाद हो, दिस इज द मेटा ऑफ फास्ट रीटेक. 6 मतलब आई थिंक सो 8:30 होगा ना एसजी में. 8:30 या 9:30. क्या बात है जाने. इसलिए वो प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं. जी जोसे टुडे फ्रॉम लास्ट वीक. लेट्स गो गांधा. See, all they need is your support. If they don't play well, maybe जब वो बाहर होंगे VLT और G, जब भी बाहर होंगे, then you can criticize. But right now, all they need is your support. टेक्स्ट बुक रीटेक. यस कविश भाई, बस वो एक चीज थोड़ा गलत हो गया. जो इनका बीमिन वाला बंदा था ना, ONIC का, ही पीक बिफोर द किल जॉय. वो that enabled them, वो kill enabled them to like अपना पेस को फास्ट करने का रीटेक का. बट अदरवाइज APH played that very well. एक तो यार ये नाइफ निकालने की आदत, मैं बता रहा हूँ. सपोर्ट टू GS. यार GS बड़ा awkward लगता है देखने में. एनालिसिस नहीं आया कल यार, तो मैं बता रहा हूँ, मेरा शेड्यूल बता रहा हूँ. मेरा 7 बजे तक मेरा जॉब चल रहा था, ठीक है. उसके बाद आई वाज सॉर्ट ऑफ कोचिंग सम टीम, एंड उसके बाद आई वाज हेल्पिंग आउट अ टीम कॉल्ड इग्नाइट ईस्पोर्ट्स. तो नाइफ एनिमेशन वेरी एडिक्टिव. वो बहुत गंदा चीज है यार. एक्शन पीएच उनके अटैक पे दिखा रही थी. उनके पास तो फ्लैश भी नहीं था, बट बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं थी. वो हमेशा बस W दबा देते, एंड वो छोटी सी हिचकिचाहट ONIC को अभी बहुत ही
that was bad from EPH. जब किलजॉय ने अल्ट किया है, then you need to go in at that time. You need to make sure कि वो अल्ट पॉप हो. हाँ, कोचिंग कर लो. कल गोलू का कंप्लीट ऑफ डे था, दोनों मैच पे वो चलता जीत जाते. बोल सकते यार, देखो सभी का ऑफ डे लग रहा था स्किल्स को छोड़ के, टू बी ऑनेस्ट. पर ऑफ डे का मतलब ये नहीं होता कि फ्रैग नहीं कर पा रहे या मार नहीं पा रहे. इट्स जस्ट दैट they were making decisions which is uncanny of them. Normally you would expect them to make better decisions. टाइम बहुत कम हो चुका है बड़े मान, एक ह्यूज फ्लिक के नहीं होगा, नहीं होगा. नहीं टाइम But नहीं रह पाएगा उनको डिफ्यूज करने के लिए. ONIC बस हॉस्पिटल जी थोड़ी पैनिक खेल रही थी. आई थिंक they need some time to get into the groove. Yeah. एंड वहीं पे याद दिलाना चाहूंगा हमारी पूरी ऑडियंस को कि ये एक्शन पीएच का मैप चॉइस है फिनिक्स. Nothing more satisfying to see a पीएच के द्वारा pinged player getting killed through a... Dude, very true. वही खतरे में फॉर्म सुन लिया. लेट्स गो विराट. एंटी रोजी ने हेवन पे साइड क्लियर करके ए लिंक पुश करा और नाइफ विफ कर दिया. हाँ, आई थिंक थोड़ा सा इधर पैनिक मोमेंट रियली बैटमैन की तरफ से. आई डोंट थिंक उधर लॉकडाउन यूज करना जरूरी था. अगर वो बस उनकी पोजीशन वही अगेन सी ये बिल्कुल जो मैं कल गाली दिया सबको. थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग whoever did. I'll shout you guys out at the end of the stream. बर्स्ट करेंगे एंड बर्स्ट किया उन्होंने. कभी कभी हो जाता है, बट स्टिल दे मेड इट क्लोज. कोई ना आज कम बैक होगा. लेट्स गो इंडिया, लेट्स गो इंडिया. या दैट इज द स्पिरिट गाइस. उनका इको टूटा हुआ तो सिर्फ एक स्पेक्टर और गार्डियंस के साथ बट फर्क नहीं पड़ता है जब मोनिया इतने एग्रेसिवली ब्लेडस्टॉर्म के साथ एंट्री क्रिएट कर चुका नो नो, एंड ONIC के साथ ये मैप भी. मतलब ऑल द बेस्ट दो वी ऑल. स्किल्स ऑन फायर. या हेवन मैप पे ऐसा कॉन्फिडेंट होके टाइप नहीं खेल रहे थे. ठीक खेला, पर जो कॉन्फिडेंट रहता है यूजुअली, हाँ ठीक भी नहीं खेला. देयर वर मेनी मिस्टेक्स. लाइक मे बी you don't recognize it, but they will recognize that because they are good players. They have Malav. They will all recognize कि mistakes हो रहे थे and they'll rectify. You just have to trust them. Good reason he will qualify groups. Yeah, they should. This was a very poorly played round again. Last के दोनों rounds APS ने बहुत गंदे खेले. एंड आई थिंक वो लास्ट राउंड में छोटी सी गलती. अगर आई एम अज्यूमिंग वो राउंड की शुरुआत में ये बात नहीं हुई थी कि ONIC के टूटे हुए बाइज है, यू नो स्पेक्टर्स आने वाले हैं या शायद बुलडॉग्स आने वाले हैं. तो अगर वो बात होती When I spoke about this last night only. वो क्लोज एंगल्स खेलते Same side of both rounds with KJ backside. Yes, Malav. And जॉर्जी ने जो नाइफ से किया, that wasn't the play. धीरे खेल के कुछ नहीं मतलब नॉर्मल सीए वाला जॉब भी करता है क्या अपार्ट फ्रॉम? नो उन्होंने खुद वो टेंपो मैच नो. सो आई वर्क फॉर ब्लू स्टैक्स एक्शन पीएच को शट डाउन किया. और उसके अलावा हम डू कोचिंग. भैया खुद की गलतियां कैसे एनालाइज करते हैं, खुद का वार्ड वापस देख के. और आज ये जीत भी गई तो फिर से चांस है ग्रिफिन के अगेंस्ट होगा मैच. हाँ, ग्रिफिन के अगेंस्ट ही होगा. राज भाई जब तक नेक्स्ट मैच चालू होता है थोड़ा हेवन का वाटर भी कर दो. आइसबॉक्स का तो कोई मतलब नहीं है. करते तो 2 मिनट दो. एमुलेटर वाले. हाँ, कास्टर ऑन द लेफ्ट. कुछ तो बके जा रहा है. और तो भाई सीए का तो हिंदी भाई मजा आ रहा है मेरे को तो. थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग गाइस. How do I shout you guys out? I haven't got my laptop here. Second screen आया नहीं है. जिसके पास है वो देने को तैयार नहीं है भाई. बेशरम लोग होते हैं कुछ. अलग ही लेवल के फॉर्म पे कुछ कर नहीं सकते कई लोगों के साथ. लगा कि इससे ज्यादा बेहतर और कैसे ये प्लेयर खेल सकते हैं. बट हॉस्पिटल एमुलेटर वाले 8 मिनट्स ब्रेक आई थिंक. 8 मिनट ब्रेक. नाइस. बाकी मैप्स अभी तक 2 मिनट ब्रेक तो मैं ले लेता हूँ भाई. बहुत ही एक्साइटेड हूँ सेवरीन को देखते हुए थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट, क्योंकि स्काई पे मुझे ऑलरेडी एक फैन बना दिया था उन्होंने स्प्लिट पे. अब उनकी केओ का भी मैं फैन बन चुका हूँ. जीजी. Okay, thank you Eric, thank you Krabby, thank you Virat for subscription. For subscribing. Malav vs CA is what I'm looking for. Maybe you get it on Group D. I think APS didn't utilize the power of the Sage here, very honestly. And last 2 rounds, even despite it, APH were coming back 11 all pay. The last 2 rounds, they threw second last round. They should have got an inkling about the economy, and maybe Killjoy plays back either, or you commit
like together towards the back of the side. Maybe you play Sova towards B and not A. You leave A for the retake because A doesn't have as many close corners. And let's say if the opponent has a weaker buy, A is much easier to retake than B. And B पे commit कर सकते थे या B को भी retake पे खेल सकते थे on the back of their killjoy because they had their killjoy. पबजी मोबाइल एंड एमुलेटर नहीं खेलता मैं. अरे आप स्ट्रीम लैब से वाईटी चैट नोटिफिकेशन ऑन कर लो, चैट में स्ट्रीम नाम आ जाएगा. कैसे करते हैं भाई, कैसे करते हैं मेरे को ये बताओ. हाँ तेरे डिस्कॉर्ड आते हैं. हाँ आता हूँ मैं. तेरे को डिस्कॉर्ड पे कॉल कर रहा हूँ, बता मेरे को. डिस्कॉर्ड पे कॉल कर रहा हूँ तो मेरे को बता. टिफिन के सीरीज मस्त प्ले बना रहा था वो से. हाँ तो वही है भाई. नो नो नॉट द एपेक्स यूज ना बट द जनरल बीफ रहता है. देयर इज नो. हाँ भाई बीफ तो है. देखो I think I'll settle this on my stream someday. I think I'll call both of them and we'll do a head on. मस्त बीफ होगा है ना. हेलो हेलो. आवाज हाँ भाई बोल. आ रही भैया? हाँ हाँ बोल. आवाज तो आ रही है. मेरी आवाज आ रही है क्या तेरे को? परसेंटेज है गेस यार. कोई भी आईपीएल लीक कर रही है अब ले लो भाई. बीफ नाम आता ही है जिसने सब किया. मेरे इधर नहीं आ रहा ना. आई डोंट नो भाई. Thank you Salahuddin for the subscription. अरे I'm joking, it's just the fun and games man. भाई हेलो देव. हाँ एक मिनट भैया, मैं पीसी से आता हूँ, ये फोन पे चलता नहीं डिस्कॉर्ड. ओके मेक आउट स्ट्रीम. आई मीन मेक आउट स्ट्रीम. यस मग बैंक की जगह कुछ और बैंक करने का वो हो रहा है. If CA casting, who's gonna take CA only? He's casting this match. Doesn't mean he'll catch every match. He'll cast every match. His priority is still velocity. So they gave like a 4-minute break. Sounds fun. Hello, what's this sussy? Mo bang. नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं. It'll be interesting to see if ONIC make it as the first team. That means one of Action PH or Full Sense, they don't qualify. Oh my god. They don't qualify, dude. One of Action PH or Full Sense will not qualify. That is big. Yeah, so Breeze, I don't like, to be very honest, Action PH, I know they are very aggressive on Breeze. Chalo, bye bye work time. Bye Malav, all the best man. ऑडियंस जो फालतू आग लगाते हैं, कोई आग नहीं लगा रहा. हिंदी कास्टर्स ओशन इन जॉनी. बेस्ट ऑफ लक. नो प्रेशर बट फुल प्रेशर. क्या बात है, क्या बात है भाई बहनों. शुड आई गेट माई टिश्यूज रेडी फॉर क्राइंग टुनाइट? नो. सो ब्रीज, लेट अस लुक एट स्पॉनिक्स ब्रीज. राइट, उनका कॉम क्या स्टैंडर्ड वाला ही है मोस्टली. So they've changed into a chamber from Cypher against Boy with Love. भैया स्ट्रीम लैब्स खोल रहा. And बाकी तो स्टैंडर्ड है. हाँ खोल लिया. उसमें क्लाउड बॉट आ रहा होगा. हाँ क्लाउड बॉट में जाके होता है नेम मॉड्यूल्स अलर्ट, चैट अलर्ट्स आ रहा होगा. चैट अलर्ट बोल के तो कुछ नहीं, मॉड्यूल्स है. हाँ मॉड्यूल्स में चैट अलर्ट आ रहा होगा, उसको ऑन करो. ऑन है. सब्सक्रिप्शंस को इनेबल करो. प्रेफरेंसेस सब्सक्रिप्शन इनेबल्ड है. ऐड चैट अलर्ट करना. ऐड चैट अलर्ट. क्लाउड बॉट ऊपर ऑन है कि नहीं है, पहले वो चेक करो. क्लाउड बॉट ऊपर ऑन नहीं है. वाह शाबाश. चलो अब आ जाएगा. आ जाएगा. हाँ अभी मैं रुको, मैं करके देखता हूँ. किसी को बोलो कोई आप प्लीज बोलो. सब्सक्राइब करो गाइस भाई. कल पता चला इंडियन ऑडियंस को टक्कर देने के बाहर के ऑडियंस भी है. हाँ ये एपेक BO3 में बैन एंड पिक नहीं है क्या? हाँ होता है बैन एंड पिक. You think GS have a chance of beating? Yeah, dude, they will beat them very handsomely.
कोई अनसब करके सब करेगा तो होगा नहीं, पर हाँ, कोई नया बंदा सब करो गाइस, या नया अकाउंट से एक बार सब करके देखो बस, मेरे को रुको मैं बस। करके देखता हूँ दूसरे अकाउंट से कैसे। थैंक यू डॉट लॉट। वेदांत वाह। कोतलकर, हाय। हाय वेदांत। हम्म, Why G getting so much hate? It's usual. It's the Indian pressure, dude. इंडियन कम्युनिटी प्यार देती है तो लेती भी है तुम्हारा। रुक मैं करता हूँ, ओके यश। ऑडियंस सब जगह सेम होती है या मेरे दोनों अकाउंट सब मेरे पास एक है अकाउंट। wasn't yesterday's game supposed to be easy? Not easy. I think Icebox wala was supposed to be tricky. Yeah, Heaven, I didn't expect them to lose Heaven. I still thought it will be 2-1 even if they lost Icebox. But yeah. आया कुछ? अभी तक तो बजा ही नहीं है। Godspeed ये what the fuck was that Godspeed? क्या हो गया? मैंने सब्सक्रिप्शंस तो पब्लिक कर रखे हैं फिर भी। सब यू चेक। कुछ नहीं आया। आई थिंक सब्सक्रिप्शंस पब्लिक नहीं है तुम्हारे। नहीं मेरे पब्लिक है, मैंने चेक किया वो सब्सक्राइबर। आवाज तो नहीं आया Godspeed। इसका मतलब पहले तूने कभी सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब किया होगा। नहीं। सब समझ रहा हूँ। ठीक है आपको भाई। लगता है जी को फ्रैक्चर बैन करना चाहिए, मतलब सिर्फ एक बार गॉड भी से हारे? पर वही है यार, दे से दे नॉट कंफर्टेबल व्हेन यू आस्क, मतलब ही सेड दे नॉट एज कंफर्टेबल। और क्या जवाब, मतलब ऑडियंस लेती है भाई, लेती तो है भाई। मैंने भी, मेरी भी पब्लिक है। वेट, आना तो चाहिए। क्या पता थोड़ी देर बाद आए वो नोटिफिकेशन। क्या बात है, क्या बात है, क्या बोला है भाई, क्या बोला है? देखो वेट ही कर सकते हैं, अपने पास कुछ है नहीं करने को और। सलाउद्दीन के बाद कुछ नहीं आया भाई पब्लिक में। इवेंट्स में जा वो। अब आया दिव्यम भाटिया। आया तो फिर मैंने अनसब कर थैंक दिया। यू फॉर सब्सक्राइबिंग दिव्यम भाटिया। हाँ आ अब गया भाई। मैं ही हूँ। सही है। थैंक यू दिव्यम भाटिया। चलो ठीक है भैया। थैंक यू दिव। पढ़ लेता चल, हूँ थोड़ा। वी आर बैक गाइस। Okay, so let us see ONIC chamber. Yeah, chamber makes sense, but then yeah, LV more को chamber पे डालेंगे ये लोग या सही है। But I think with Cypher they should be better. जैसे ग्रिफिन वाले मैचेस सिंगापुर पे खेले थे या हांगकांग सर्वर पे, ये नहीं पता मेरे को। This is something you have to ask them. Energy rise भाई. Finally energy win something, and the beautiful thing about this is if energy actually lost to rise had a chance of making it to the playoffs. अब तो एकदम भी नहीं है। मैंने कभी अनसब करके सब किया होगा, ठीक है भैया जी, ऐसी सोच। दो तीन चीज ही करते हैं फ्रैक्चर पे, वो वाइपर हल्की सी नर्व्ड है। जी वर्सेस जीएफएन वॉट प्लीज, करेंगे यार करेंगे, आज ही करेंगे। मॉड की तरह मेरा एफ अच्छा लो भाई, सुनिए। ऐड मॉडरेटर ऑन ब्रीज जी का नो डोलेस वाला कॉम्प एपेक में चलेगा क्या? मे भी चल सकता है, डिपेंड्स ऑन देम। आई पर्सनली लाइक द कॉम्प बट आई डोंट थिंक इट्स वायबल उतना। एनर्जी को लेड, एनर्जी लेड के डूबे, हाँ मॉड की तरह मेरा। अच्छा सबको ही लिख दो, एक एक करके दूंगा थोड़ा थोड़ा देर में। वॉच आवर्स कितने हुए पता नहीं, बहुत कम है अभी तो। सॉरी सॉरी, मुझे लगा ये चीट कोड है। तो ये मैच में तो थोड़ा देखना है। फ्रैक्चर नहीं, मतलब ये हेवन देखना है मेरे को। मैं 6:10 पे सोया था तो मैं हेवन मिस कर दिया मैंने। मेरे को हेवन देखना है गाइस, प्लीज याद रखना ना, ये कोई मेरे को याद दिला देना ट्विटर पे या कुछ कि हेवन देखना है। आज कौन से सर्वर पे मैच होगा जी का? आज तो सिंगापुर पे होना चाहिए बिकॉज फैंसी यूनाइटेड तुम्हारा इधर का टीम है। वियतनाम मे बी हांगकांग पे हो सकता है, आई डोंट नो। आइडियली सिंगापुर आई थिंक। बाय गॉड भाई की स्ट्रीम देख रहे GTA 5 में खेल। मेरे मैसेज में इधर जोक मिलेगा, जोक का सेटअप, हाँ वैसे जी लाइक टू टेक द लॉन्गर रूट ऑलवेज। हाँ चलेगा यार, द लॉन्गर द बेटर। लाइक you can enjoy the journey even though the roads are hard, the roads are rocky. At the end of the day you will enjoy the journey because it was an experience, and every experience is
like teaches you something. शैंक्स उतना अच्छा दैट नहीं खेला जितना सॉम लोग खेलते यार. ये सब रिलेटिव ओपिनियन है. राइज, there are deeper issues in rise. I'll be very honest. There are deeper issues in rise. ऐसा लगता है इंडिया का गांव है सिंगापुर. The longer the better. That's what she said. Exactly. Every हर जगह she should learn something. Exactly. But you can, yeah, dude, easily. So I think G20 today, Fancy United, the only caveat is the map veto, because split या ascent में Fancy United can be a bit challenging. उसके अलावा I don't think there are any maps. So maximum 2-1, but I don't see a 2-1. I think it's a 2-0. I think it's a 2-0 wrap. Map चालू हो गया क्या यार? Out instant NC Slasher was there to take down two. And जॉर्जी देखिए हॉल्स की तरफ से काउंटर पुश करके तब तक पनिश कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर एक्सपेक्टेशन के ऊपर खड़े उतरते नजर आई जरूर टीम, लेकिन लुक मोर वेरी क्विक एंड राउंड डन. इट इज सो ओके, यहाँ पे ऑडियो प्रॉब्लम हो गया बोल गाइस. रहा था ऑनिक ऑडियो डीसिंक हो गया उनका. लेट्स सी. को एंड बोनस पे अग्रेसिवली खेलना चाहेगी, एंड देन उनका जब एक्चुअल बाय आ जाएगा तब वो वासी को जेट लैग में नहीं है, फुल पोटेंशियल पे खेलेगी. गैस सबको सेम ही ओपिनियन है रिगार्डलेस ऑफ मैच 2-1 जी के मैन. कोई भी टीम हो सामने प्रेडिक्शन यही है. वीएलटी वर्सेस ओब्लिवियन फोर्स पे क्या थॉट है? वीएलटी ऑल द वे. प्लीज मत बोलो इजी कल क्या हुआ भाई. अब जो सच है मैं तो वही बोलूंगा ना, अब जो भी हो. ओब्लिवियन फोर्स बेस्ट ग्रिफिन beat Griffin, so VLT is gonna have it. I don't think so, dude. I think VLT is much better than these teams. That you're not giving them enough credit, and I think VLT are going to surprise you. Oblivion Force they don't stand a chance, to be very honest. Tell me more, man. Tell me more as to how you hit these shots. जेट लैग का कंटेक्स्ट क्या है? कुछ भी नहीं है भाई. 2 घंटे. सो मैं भी यही बोल रहा था. देन मेरे को पता चला कि यहाँ से फ्लाइट 2 या 3 घंटे की फ्लाइट है सिंगापुर. लाइक व्हाट द फक. व्हेन डज जी प्ले 6 o'clock. एनएन वर्सेस जीएफएन, कौन जीतेगा? एनएन. वैसे तो कल का मैच भी यही प्रेडिक्शन था मोस्ट कास्टर्स. हाँ, तो G2-1 था मेरा प्रेडिक्शन, टू बी ऑनेस्ट. मैप वीटो के बाद मैंने पहले ही बोला था आइसबॉक्स आया तो 2-1 होगा, नहीं तो 2-0. आइसबॉक्स आके भी 2-0 होने का चांसेस था. Yo, you counter jinxing VLT and G? No counter jinxing, भाई. मैं बता रहा हूँ. See, I'll be very honest. I put forth my opinions. Some people may not like it. I still believe VLT has like a 50% chance of getting out of the groups. Like they have a very good chance of getting out of the groups right now. According to me, like VLT's group is now right now 50-50. Depends on who comes in the group, and I still think they'll put up a great challenge. मैं ये बोल रहा था केओ का ये जो बफ आ रहा है, एमएन बीमेन का कंट्रोल फिर से उन्होंने लिया, अग्रेसिवली खेला. अब 5.5 घंटे की फ्लाइट है. वो मेरे को किसने बोला 2-3 घंटे की फ्लाइट है भाई? मैं सिंगापुर नहीं हूँ. VLT can stand a chance to win is वो भी neck to neck. नहीं, I think you are underselling VLT just because of yesterday's result. I think even G is much better than all of these teams. Okay, so I think we are just underselling them because of yesterday's result. Also, tell us what the addition of CA can change for VLT. Tell people how relaxing it will be for Anuj bhai as analyst can solve how. More than that, dude. To be honest, more than that, because the thing is, CA works really hard at his craft. Okay, and he'll add many layers first of all, because from what I can see, VLT में layers की कमी थी. So he'll add many layers to their current comps and strategies, along with giving them newer, more competitive strategies. Will G still make it out of Playins? Yeah, G makes it out of Playins. I'm just disappointed they don't talk the group. So we might get a group D with VLT and G both. इस कल का देखा कि ऐसे फील हो रहा. Exactly. I'm telling you, Oblivion Force को VLT easily will beat. जरूर वो चेंबर के साथ दिखा चुके हैं. 2 राउंड पहले लिमोर भी दिखा दिए थे. तो आई थिंक इन अग्रेसिव टीम्स के लिए This wall is so good यार.
This is such a good wall. I love this wall, यार. aggression की अगर हम बात करें मॉर्निंग की तरफ से वो जो एक ड्राइव भी आया था वहां पर पनिश होते हुए लेकिन look at that और was still there to make things ये even तो more अंकुन तुमने रेशियो प्लस दिस प्लस दैट कर दिया भाई. 1v1 में ले आया भाई ये राउंड. हाउ इट्स अ 5v3 टू APH are done for यार. ऐसे गंदा बहुत ही. Hey Godspeed, hey Kibo, Godspeed, when do we expect our SA teams to win against T1 APAC teams? I think और एक और राउंड one APAC teams. अपने बाय के ऊपर Let me see. पिस्टल और एंटा इको भी Wasn't इस समय एक्शन पीएस के पास like नहीं रहेगा प्रबल दावेदार रहेंगे एक चार करने APAC तो नहीं, but didn't G beat Damwon? Didn't they almost beat F4Q? यहीं पे again यही Why are Bengali so good at FPS games? भाई इतना aggressively पता नहीं भाई. कभी नहीं खेल पाते साइफर के साथ इनफैक्ट Business fish. लर्क पे छोड़ा जाता Okay. हॉल्स कंट्रोल लेने के लिए या मिड से लेट आने के लिए बट जब आप चेंबर ले रहे हैं जब आप अटैक पे वो एक सेकंड एंट्री बन जाता है Okay. ऑलमोस्ट एक थर्ड एंट्री क्योंकि Mid control तो मिल गया इनको easily defense में. That is very good, and they have now seen the trap. Man in the blood. क्या बात है. Thank you N. एक्स्ट्रा जो आ जाता है आपके Diamond is not the best. अरे बेस्ट कहाँ बोला भाई मैंने? Tier 1 बोला है. Tier 1 में बेस्ट तो ना आता. अरे क्या? हाँ Tier 3 4 भी नहीं है ना. Like their third fourth like प्रोसेस सफल होने वाला. मैंने ही बोला ये बात रोल. मैंने ही बहुत बार बोला है. मैं बस बोल रहा हूँ कि टीम जो बोल रहा Tier 1 हराया है ना. F4Q को भी ऑलमोस्ट हराया था. I think there's not a lot of difference between Indian teams and Tier 1 SEA teams. अरे यार मैं वेज हूँ अब फिश नहीं खाऊंगा. मैंने ही बोला था रोस्टर शफल होने वाला था. They just got a new coach. Like they didn't have the impetus needed to win. They're just playing for the sake of it. मंदिर जाने तक ठीक था. क्या APAC के बाद रोस्टर शफल देखने को मिलेंगे? बिल्कुल. क्या VLT में तो नहीं, G में पता नहीं. एंड पहला ग्रुप स्टेजेस में Depends on their own thing ना. क्योंकि वहीं पे याद I think it will more slightly be an internal discussion as to whom they can bring in. I think they're taking over when they talk about T1 APAC. As for them, बहुत ही अच्छा it's the only T1 scene. No, that is wrong. Na T1 में भाई again layers है भाई. How can you say PRX is the only T1? ये ग्रुप थोड़ा PRX पिछली बार जीती भी नहीं थी भाई. एक्शन पीएच फुल सेंस सारे पिछली बार LCQ फुल सेंस जीती थी. तो कहीं ना ONIC कहीं 2-0 होएगा लग रहा. उसमें से हाँ एक लग. होने वाली थी Like APH, अभी के लिए ऐसा लग they play रहा है very aggressively, and that is to their detriment here. Because they started on defense, they can't afford to lose rounds on defense. See, this is good. आर यू उन्हें शट डाउन The thing is, they are losing advantages. Every round, I see again 5v3 में unnecessary peak that gives them the advantage. See again. VLT is less adaptable compared to G. I don't think so. Evoke too strong man. It's reflecting. Yeah. So see, if you buy into the coach's let's say philosophy, you will reap rewards. और after yesterday 2 against तो नहीं expect किया था. अब तो hard. पर कोई बात नहीं. आज इवन हारते हैं then G versus G से बिल्कुल बिल्कुल. You know how important role Golu plays in G. तो ऐसे भी पता था सबको. मुझे लोगों ने प्रोडिजी बोला था या वो मेरा माउस का था पता नहीं. लॉजिटेक का कोई माउस था. नाइस. The fuck happening to camps? ठीक है एक बार मेरा ए साइड मेरे से ले लिया दूसरे बार ये भी 3v5 से 1v1 हो गया था यार. Exactly. So APH का aggression is their own downfall for Breeze for a map like Breeze, especially on defense. टाइम आउट हम एक्शन पीएच से नहीं देखे. सिर्फ ओनिक उनका टाइम आउट बराबर से यूज करते हुए वो ऑफ कोर्स ओनिक का कोच भी है वो उनके टाइम आउट के साथ उनको की इंफॉर्मेशन देते हुए कि भाई ये गलत हो रहा है ये चेंज करना है. आई थिंक वो पर्टिकुलर राउंड पे गलत ये हुआ था कि ऑफ कोर्स सिर्फ टीम डिफ हो रहा था. नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है लेकिन बाकी उनकी टीम I think के एंट्रेंस पे they were just not up to the mark. So yesterday they were trying to force things which weren't meant to be. जो भी मॉली हो स्मोक हो जितना भी Like there are a lot of reasons, but yeah. घुसना है ताकि मोनी को वो ऑप्शन मिल सके फाइट They need to do something very unexpected. Yeah, they can. Like टाइम बाय करना है टीम के लिए. they had more time to prepare. They will come up with
some new fresh things for you guys to be surprised about. What do you think went wrong with G yesterday? Like GFN. So again, GFN on Icebox play very fundamentally correct Valorant, and उसके लिए you have to be perfect. If you not perfect, but you have to be playing in at an ideal level to beat Griffin, जो कि उन्होंने नहीं किया. On Heaven, it's just they became desperate after a certain number of rounds. Also, it was the first match after new patch. वो सब कॉपी है मैं. I don't think we'll see Gambit this year. No, we'll see. They'll just be playing under another name. They just clarified. क्या टीम में जैसे जेट मेन होता है वैसे टीम में मेन हो सकता है, हो सकता है. और उसका हाइपरग्रेशन अब टीम्स रीड करने लग गए हैं. ट्रू. देखिए एक नाइफ भी फेंका गया है हॉल्स की तरफ एंड प्रेजेंस उन्होंने दिखा दिया ए मेन एंड बी मेन पे, जो थोड़ा वियर्ड है मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर आप बी मेन पे वॉल लगा रहे तो ए मेन पे प्रेजेंस क्यों? मिड टू ए करने की कोशिश, इधर वो वाइपर पे रैप करने की कोशिश, बट उन्हें ये पता चल गया है कि वाइपर के साथ अब जीरो भी, तो जीरो आराम से पीछे आ जाएंगे वाइपर के पिट पे खेलते हुए. They don't expect the jet. ऑनिक बोलती है ठीक है आप आपका साइट रख लो, हम हमारे एक पोर्शन साइट लेके प्लांट कर देंगे भाई. बंटवारा कर दिया साइट का. वॉच पार्टी कंफर्म नहीं है. आई थिंक आइसबॉक्स पे भवन को वुमेन की जगह केओ खेलना चाहिए था. पोटैटो मैन. Again. I don't know. APH are playing very weird, especially on please. G sets up Rossi to make plays. It's time they start adding small micro plays. Secondary duelist or C2 duelist. कल वॉच पार्टी क्यों नहीं किए गॉड स्पीड? बिकॉज मेरे को 2 बजे पता चला पम्प्स का नोटिफिकेशन. मेरे को 2 बजे नोटिफिकेशन है एंड मैं उस समय काम कर रहा था. अगर पहले पता था मैं कर देता, बट लाइक इट्स ओके. आज कर रहा हूँ ना. लाइक सॉरी कल नहीं कर पाया मैं. दूसरे टाइम आउट पे एसएन पे एक ही जीते थे, तो इधर ही बात बन जाती है कि कैसा नॉट प्लेइंग केओ इन मोस्ट मैच. मे बी नॉट. लेट्स सी. राउंड कंफर्म कर लो फ्रेंड्स. यप एमेन उन्होंने शट डाउन कर दिया था एक्शन. रॉसी सिटी में होता है 4 लोगों को पीक करता है, नो डाउट. यूजिंग एंट्री बट देन थ्रोज द एडवांटेज. मे बी करते हुए उनके खुद के अल्ट वेस्टेड. बिल्कुल. मिड टू ए एग्जीक्यूट उन्होंने कर दिया. अब एक्शन पीएच का आई बिलीव इधर पहला टाइम आउट आता हुआ वो डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज गोइंग रॉन्ग, एंड वहीं पे सबसे मेन पार्ट रहेगा कि अगर आप एक जगह स्टैक कर रहे हैं एंड यू नो बेसिकली एंकर खेल रहे हैं दो साइड पे, तो आपको तीसरी जगह उधर प्रोएक्टिव खेलना. ईटीआर एनालिसिस के लिए बेस्ट वॉच पार्टी है. थैंक यू ऑल. वाइपर एंकर कर रहा है, देन आपके जेट और सी आई थिंक इट्स अ वेरी इजी टनल प्रोएक्टिवली लेना चाहिए hope फिर for मिड them. कंट्रोल लेना चाहिए. बट Do this wall, take halls control, रुकेगी play chamber B with this low and this low. Okay, play Sova this angle. Okay, and A पे वाइपर को खिला दो. A पे वाइपर को ये सब एरियाज खिला दो, ये या ऑरेंजेस खिला दो, और 2 जन को इधर पुश करा दो हॉल्स. This is a very good counter to how ONIC is playing currently. अब एक इस राउंड में एक वैंडल, हीरो वैंडल जरूर रहने वाली है. बी साइड की तरफ इकलौते एंकर बैठे हैं एपैक में. Let's see what to do. क्रॉसफायर सेटअप भी है. A push किया again, very bad. There's no need for A push. हमेशा मुंबई में ही, हिमेश मुंबई में ही है ना? कौन है हिमेश भाई? मॉर्निंग एंड फुल सेंस फ्रॉम ग्रुप ए. पता नहीं यार. The Prague 68 other they already tried to do this and work in Prague. You think it will work in a tournament? Exactly. Your take on which is best second initiator and Haven along. So on Haven, right now it has to be Breach. The new meta really enables Breach, to be honest. Although this really not possible as is one of the good lurkers and skills is in a good control of Papa Zinga, so hell will only be pseudo duelist. Man, I'm confused. It's okay, Abhijit. Action PH की हरा सकती है full time. Exactly. अरे
और एक क्लोन, क्या बात है। की इन्वेस्टमेंट होती हुई एक टैग गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मैंने। वेरी गुड कन्वर्जन डूड, दिस वाज वेरी गुड कन्वर्जन। अराउंड हम देखेंगे अब ब्रेक में। यप कैफे वाला क्लोन, कमांड भी गया कैफे वाला क्लोन, रेपेलियस गेमिंग वाला क्लोन, वो सोवा को सप्रेस करके वो मार पाएंगे। पियर्सिंग ब्लो का रोशन ने बताया, चैंपियन ईमान का 2K क्लोन। हमें उनका पर्सपेक्टिव नहीं देखने को मिला, तो इंटरेस्टिंग है कि ये पता चलता है कि जो क्रॉसिंग स्मोक्स सेटअप किए थे मामा जी भी यही है ना। उन्होंने कास्टर्स बोल रहे थे कल एक को जो राइट वाला जी स्मोक के था प्ले में वो लास्ट थोड़ा टाइम ऑफ ज्यादा फिनिश नहीं गैप थी। छोड़ दिया था हाँ तो एंड वो देखो गैप वेरी, की बदौलत मैंने तो वो बोला ही वो ने चीज। डबल किल निकाला। तो तुम फिनिश यूज कर लो, कोई भी वर्ड यूज कर अब लो, ये ऑनिक वीएलटी ग्रुप चैंपियंस में देखने ना को जाए मिलेगा बस। फिर स्पेशली अगर आया, आप रिएक्टिव पता नहीं यार। पोजीशंस लगा रहे थे यूजुअली इज द छोटा सा वीडियो ऑन डैमेज 1080p? या इट शुड बी। पनिश भी हो जाता है, बट अभी के लिए Oh, गुड this शॉट video, फ्रॉम yeah, it बाकी should भी be, I ऑनिक guess. ईमेन का अग्रेशन मार्क कर रहे हैं, एमेन का अग्रेशन मार्क कर रहे हैं एंड बाकी तीन प्लेयर्स मिड कंट्रोल Yeah, it's लेते हुए एंड source. इधर फिर से This वही is sourced. बेनिफिट इन फेवर में PH जा रहा है underestimated ONIC will obliterated long awaited APAC Challengers. क्या बात है, क्या बात है। ONIC will go either in group C or D. पता नहीं भाई, पता नहीं। जस्ट करीब लमोर हैं, both the players are sticking the wooden doors, लेकिन उनके I feel like group B का second place might go to group D now. से बच के रहेंगे। काफी अच्छा यहाँ पर आता हुआ 0 पॉइंट का इस्तेमाल Especially if ONIC qualify. इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो मुझे कोई भी ग्रुप चलेगा, अपने टीम बस जीतनी चाहिए, कोई भी टीम होने दो, क्या फर्क पड़ता है। एग्जैक्टली यहाँ पर अभी भी खेल सकती तो अभी वीएलटी के ग्रुप में उनके गेम्स टफ ही होंगे एंड देयर आर नो शॉर्टकट्स। या देयर आर नो शॉर्टकट्स ऑब्वियसली। वीएलटी आर अ टीम, दे नो दिस वेरी वेल, लाइक दे डोंट नीड समवन टू टेल देम कि क्या दिक्कत है और ये सब। देखे होंगे कि नाइफ पूरा घूम के आया था डिफेंडर साइड स्पॉन से, बट ये ऑलरेडी इधर साइड पे पहुंचे हुए हेल्प करने के लिए, बट ऑनिक को फर्क नहीं पड़ता है। No, there is a better wall here, Viper. ईमान I know that you're trying to cut off the site, but there's a better wall. वो डिफेंडर साइड स्पॉन से एक लाइन New chair, nice. Thank you, Vedant. The thing is, teams cannot ऊपर से आते can't हुए go to देख group. के ऑनिक का रिएक्शन था, you know, नहीं, I don't think that is the case in C right now because ऐसा नहीं कर सकते. There are multiple regions जहाँ पे 3 teams qualify कर सकती हैं ग्रुप स्टेज में, तब क्या करोगे? फिर तो तुम चुन चुन के ब्रैकेट बनाओगे. That is, I don't think वैसा फॉलो होगा. बी साइड पे पहुंच गए थे ऑन टाइम एंड उधर ही 2K निकाल Predictions is Sen versus V1. Very tough, dude. I think V1 takes it 2-1. वो भी काफी ज्यादा परफेक्ट थी बिकॉज़ आज उन्हें 3 प्लेयर स्पॉट आउट करे थे Exactly, man. करा और तभी सिरो डेथ ने अपने हंटर्स की वीकनेस करी, उसी की बैक Who will be controller? Hell doesn't like to play controller. अच्छा. टैग पड़ गया था, देन उसके बाद उसके प्लेयर राउंड खेलने के लिए थोड़ी सी दिक्कतें जरूर थी, लेकिन Skills isn't. ऑनिक के पास पता नहीं. I don't feel skills is a good flex, to be honest. What the try since अभी तो it isn't working. Really know that, but C is a YouTube analyst. YouTube बोला, YouTube chat नहीं बोला. YouTube chat मतलब तेरे जैसे लोग तने. Okay, again, like they're taking control very easily, and then this plant is so much better. First of all, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑनिक के लिए, बट जॉली सीधा एक फ्लैश में डैश करते हुए वो पकड़े जाते हैं। इधर अब ऑनिक के लिए एडवांटेज, क्योंकि they're playing without any awareness. GodspeedxD मुझे बस roast करता है. बैक साइड के प्लेयर्स को क्लियर आउट Skills used to be a Phoenix main. Yeah, used to be. Imad, we all used to be like something and or someone. है ना? Doesn't mean we are that person. उनकी टीम बोलेगी Still. जरूर कि टोटे फर्स्ट मिड डोर्स पे है एंड शीरो शायद एमेन पे, बट गारंटीड नहीं है, पीक नहीं कर पाए एंड तो क्वार्टर स्ट्रीमिंग भेजता हूँ, मेरा फैन बनेगा फिर. ओके, पाए थे नॉट मेक सेंस. 7-3 की इधर लीड ऑनिक के पास एंड वही आप देख सकते हैं जो मैं पहले But don't you think we know that already? But he's just. रश किया, अगले 3 राउंड थोड़ा स्लो हुए, डिफॉल्ट पे गए एंड अब वापस There's a reason they are not trying दिखाया him out as एग्जैक्ट the प्लेस flex, right? एनए में भी Meta changed, that's why he had to switch roles. Lol. Okay, Imad, maybe you know better. I'll agree to disagree. रिएक्टिवली आप नहीं Maybe you know कभी हमेशा better. It's okay. आप डिसाइड कर रहे हो Used कि to be, it आपका doesn't work as it is strategy teaming. आने You have to वाला be है। team player. वो ऐसी Main. टीम्स को जो डिसिप्लिन्ड है What team बहुत ही needs. ज्यादा No, it's okay. Imad has his own opinions. Maybe he's correct. But skills could be the flex. Insta वगैरह पिन कर लो, BRG नहीं चाहिए भाई. नहीं चाहिए guys. बस follow कर लो, Twitter पे follow कर लो, चलेगा. साइन जी, what do you think? No.
क्या बोल रहे हो भाई? Sai will go to Sai will build his own team rather, na. Why will he go to a team? He'll build his own team. I think if you give him more control over the team, he'll be better. APH के लिए still winnable है time. हाँ तो they play very aggressive, which is what I'm saying. It's still doable for APH. They're just making it hard on themselves. The skills player is on split now. I don't know. I won't give him a duelist. Yeah, I think शायद इधर मामला समाप्त हो भी जाएगा एक्शन पीएच का। Oh, how many hours in FPS shooting? तो because of course CS 1.6 में I had like 15,000 hours. CSGO में I think so 12, 10, 12, 10,000. And Valorant में maybe I don't know. Valorant में कितना 3,000 होगा? Do you think that lack of practice on the new setups could have caused G yesterday? Yeah, all. चले जाएगा कि हम ऐसे ही खेलना चाहते हैं, अग्रेसिवली खेलना चाहते हैं। ओनिक बस बोलेगी आप लोग खेलो, आपको जैसे खेलना है, हम लोग दूसरी तरीके से ही खेलेंगे। एंड वही एक्शन पीएच को इधर करना जरूरी, प्रोएक्टिविटी। एंड उसी के साथ Maybe 3,000. I don't know Valorant का मैं कुछ काउंट नहीं है। एक नहीं दो पिक निकाल देंगे। Valorant का अगर काउंट करो तो हाँ 3,000 होंगे आराम से 3,000। वो तो 15,000 1.6 हाँ तो 1.6 I'll tell you I used to play 1.6 like 14 hours a day and I've played 1.6 for what 8 years मान लो। अगर तुम बीच में छुट्टी में मान लो 15 के आसपास था काउंट टूर्नामेंट्स एंड एवरीथिंग। You're in what right now, man? No, I'm like gone. I'm no one now. 1.6 में I used to be good. CS:GO में I used to be decent. Valorant में I used to be half decent. APH wins this map, yeah, very much possible. Depends on how they attack. IMO halls control will be very crucial for them. Mid control will be very crucial for them. APH के लिए halls and mid control are the key because ONIC will give them up very easily. We've seen. Which team you were in? 1.6 I was mostly in regional teams. If you heard the names, UBS, negative, UBS, Evolution, Negative Evolution. I had my own team, HQ and all that. CSGO mein I was in G Outfits. I was in JMD. I was in SRA. Valorant mein I'm mostly been in a team called Sangfreud. Uske baad there was a team called Gochi Gang with friends, and I don't know. I'm not saying the exact numbers. Maybe on a coach's G's ex-coach, yeah, they tried him out. Not exactly ex-coach, but yeah. And Valorant में I was then in Rebellious Gaming, and then in Reckoning Esports. Valorant में सिर्फ custom ही खेला है क्या? Official tracker पे तो हाँ भाई सिर्फ custom ही खेला था ने और ये एक ID नहीं है. I had like 12 IDs. एंड वहीं पे बात बन जाती है कि अगर ओनिक कंट्रोल कर रही है Depending on the GS tag, group says nothing else. सही बात है अभिजीत. But the thing is, you can't change your tag once. So अभी GS का tag इसी को global को ही मिल गया. ONIC coach evoke too strong man. Maybe it's not about being a strong coach or not being a strong coach. It's all about buying into the philosophy. If the players buy into your philosophy, like the team will reap rewards. Or either the coach has to adapt to the team's philosophy. I think Evoke couldn't adapt to G's philosophy. Evoke has his own way of doing things, and ONIC have allowed him more control, which is why they are reaping rewards. It's all about personal preference. Ooh, ये हमेशा ये angle रह जाता है, but still they cleared it बाद में. VCT KR GP they always play split. I mean it's reflecting in their game. Yeah, coach आके थोड़ी खेलेगा. Exactly. Hi Dios. 2v2 पे जॉर्जी का वो एक किल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी बदौलत अब सडनली जॉर्जी के पास ये एडवांटेज 1v1 पे टेलविन भी पा चुके थे उनके 2k के बाद एंड अब रिपोजीशन करते हुए बस जंपिंग कर रहे पता है कि कोई भी डिफ्यूज पे नहीं है अब स्पाइक बढ़ता हुआ वो पीक करेगा Very important round. This time Rat should bring Valor stickers for the teams that play at VCT. Maybe बाद में थोड़ा अभी तो सब अभी ये सब जरूरत नहीं है अभी आगे we need to bring in
स्टिकर पैक्स 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए। ओह, एक अच्छी दिस कोशिश इज वेरी ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट राउंड, करी बट ये थी एंगल हमेशा हम छोड़ देते हैं परफेक्ट खासकर जब से नहीं, इट्स अ न्यू गेम राइट नाउ। थिंग्स विल या गेट इंटरेस्टिंग हियर दो मार्शल एक शॉटी और वो लगती है बी ए की तरफ और द बी Ooh, this could be bad because this could turn out very bad. नाइस Oh, बच गए। वन This डाउन could have turned out very यहां bad. पर कर दिया जाएगा 3v4 की क्या भाई अमान, हेलो। और सी गेम में अभी बहुत टाइम है। हाँ भाई, ओपीएम। चले पिक निकालने में और निकालेंगे भी सीए has gone quiet now. दे चुकी है इधर Yes, सीए। एक्शन पीएच को 3 वेपन डाउन हो चुके हैं अभी भी हेड हंटर के साथ Oh, nice one, nice pop flash. जरूर था बट ईमान उन्हें ONIC FTW. 3 वेपन डाउन मतलब Godspeed. Do AC teams have to pay less for scrims if they want to scrim? वहीं पे No, Madhav. You think Kappa is weak link in team? No, WHIS. एक अपॉर्चुनिटी ऑफ कोर्स इधर उनका बाय राउंड है एंड एक्शन पीएच अब देख सकते हैं प्योर बोनस में खेलना चाह रहे हैं बट वो काफी हानिकारक होगा एक्चुअली नो प्योर बोनस में नहीं खेलने वाले हैं जॉर्जिया ना बैटमैन वैंडल उठाते हुए वो थोड़ा वियर्ड है क्योंकि जीरो डेथ पूरा बाय नहीं कर रहे हैं तो एक मिक्स्ड अप्रोच टीम के द्वारा 2 वैंडल, 2 स्पेक्टर, एक शेरिफ, सबको पूरा बाय करना abilities full buy है। शायद हानिकारक Okay. हो सकता है क्योंकि अभी ये राउंड हारते हैं तो अगले राउंड में बाय नहीं आने वाला है उन दोनों प्लेयर्स का अनलेस जॉर्जी 1-2 के निकाल पाए एंड फिर वो ब्लेड स्टॉर्म पे I think they go B. मिड से देखा, आई टोल्ड मिड कंट्रोल और फॉल्स कंट्रोल ONIC आराम से दे देगी और वही जरूरी है इसको लेना एपीएच को। बस ब्रीज में मिड कंट्रोल से बहुत ज्यादा एक्सेस मिलता है। आर द ऑड्स इन फेवर ऑफ जी? या डेफिनेटली द स्क्रिम्स आर इंडियन टीम्स प्ले आर पेड। नो, कप्पा अच्छा तो खेल रहा है यार, क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल एग्जैक्टली, आई स्टिल थिंक थर्ड मैच जाएगा, जा सकता है यार, जाएगा तो अच्छा है हमारे लिए, वी गेट मोर। What went wrong yesterday? I think it was like they were getting aim drift. No, aim drift, yaar, it is very easy to say aim drift. They made a lot of mistakes, and they just didn't play like they are used to playing. It was very uncharacteristic of GA to play this. Ooh, Monie, same angle खेल के बार-बार kills निकाल रहा है. This was very poor from EPH. Ooh. What? What is he doing? Five X odds for G7. कमाल हो भाई. Even in the wing, no one else in the region plays so as the same. People who complain about Kappa should see yesterday shot that Kappa was hitting. It's just the recon that was a mistake. It's okay, man. अभी देखो, एमान ने फ्लैश गलत फेंका तो क्या हो गया? Was the next matchup? The next matchup I believe should be NN. नौ बजे के बाद 12 बजे तो NN वर्सेस ग्रिफिन। या वो हंटर्स फ्यूरी से केजे एंड मिस किया तो थोड़ा सेकंड एंड एम्बैरेसमेंट हो गया। क्या बात है? नो चांस फॉर एपीएस ना? ना नहीं है, अभी भी चांस है, अभी भी चांस है। आई बिलीव अगेन हाउल्स कंट्रोल मिल गया इनको इजीली। मिड ये लोग पूरा छोड़ के खेल रहे हैं। ए पे अगेन ए का जो वॉल ये लोग करते हैं ना, पहली बात जो वॉल वाइपर वाले करते हैं, ये दिस इज वेरी बैड, दिस इज अ वेरी बैड वॉल फॉर देम। आई डोंट नो व्हाई दे डू दिस वॉल, मेक्स नो सेंस। बस खत्म हो गया। अब आत्मन ऑफ लेके क्यों उधर जा रहा है, हॉल्स पे क्रीपिंग कर रहा है नहीं पता। और जॉर्जी यहाँ पे अकेले पुश क्यों कर रहा है? मेक्स नो सेंस, दिस प्ले मेड नो सेंस फ्रॉम ईपीएच। टुडे आई बेटेड ऑन 100,000 जी। क्या बात है, उसको पता है नेक्स्ट टाइम नहीं होगी ऐसी मिस्टेक। हाँ नहीं होगी यार, बोनस था एग्जैक्टली, बोनस एग्जैक्टली नहीं था। दो जन ने दे बॉट आउट पूरा। ONIC कैन इंप्रूव विद गया डेफिनेटली। Okay, now they're fucked थोड़ा royally. क्लीन सिंपल बेहतरीन रीटेक उनको पाएगा डबल डिजिट्स एंड ब्यूटीफुली डन। वो What have you done, full sense? के लिए इंतजार किया जब तक मोनी एक What have you done? एक ऊ तक नहीं करे। हेवन में भी ग्लोबल का कोऑर्डिनेशन नहीं था। हाँ, they became desperate just to
fast. ONI Just to एक quickly. एव तक पहुंचे Easy APH instantly lost. पूरी टीम No, अपनी it's still एक्शन not पे lost, but पूरा पता अटेंशन नहीं. मिड I के ऊपर think साइड के ऊपर this is on full sense completely. डाइवर्ट किया Now एंड APH with full sense and full sense don't qualify. This is completely on full sense because they let ONIC through. ONIC always will have a better chance against APS than on full sense. I believe full sense playstyle counters ONIC's playstyle to a large extent, and full sense just didn't play like they used to, just like G. Godspeed रॉसी ने कल इतना ओवर पिक किया और ओवरस्ट्रीम किया, they had rounds. वही तो बोल रहा हूँ. Not just रॉसी, a lot of coach ना होना disadvantage है, not necessarily, but होना एक advantage है. होना definitely एक advantage है. So what is happening this year? Teams like TS are out. Why? You don't grind as much as others do, they will eventually catch up. याद रखो, the amount of time that you spend in leisure, yeah, doing other things, someone out there or someone else out there is working twice as hard to beat you and to become better than you. So if you don't work hard, if you don't continue to work hard, they'll ultimately surpass you. All the teams that got to chance got 530k for it. Yeah, 580 something. G का टीम बन जाओ. आदित्य, they have Malav. Malav is more than capable. भाई मेरे से he's an analyst for G. I think G doesn't like to give control. मतलब G as in जो भी हैं. तो I think Malav is perfect for them because Malav will have his own input and everything, and they can use that input according to how they wish to. He doesn't qualify. Yeah, didn't qualify. रॉसी पहले ओवर पिक करके भी मारता था, कल नहीं मारा. भाई हर बार ओवर पिक्स नहीं चलते. You have to understand something. Ooh, that was. अगर वो डैमेज नहीं होता साइड से तो फिर ये डुएबल था 1v3. So he isolated fights very well. Although he didn't mean to isolate the left one, he meant to isolate the orange one, but वो left वाला पीक कर गया तो he died. It's okay. फुल रश नहीं हो रहा तो क्यों कर रहे हैं एपीएच वाले? अब उनका प्लान नहीं काम कर रहा तो आर यू जस्ट कॉलिंग दैट. G did mistakes, but GFN, KJ, and Jet were destroying everyone. Jet is attention, and KJ was very unselected. मैंने तो बोला ही था भाई इन दोनों पे नजर रखो. मेरा ट्वीट भाई जाके फिर तुम स्क्रीनशॉट बना के डाल दो भाई जो भी बोल रहा है. साहिल, या मैंने ट्वीट में लिखा ही था अटेंशन और वाया सेलेक्ट पे ध्यान देना. People don't know about the staff and people that help team from backstage like analyst, coach like Malav, you CA. Imad, yes, that's against South Asian teams won't work against different teams. Yeah, PSC is very competitive. Yeah, yes, very true. Best in India losing like this. How will Indian scene improve? Indian scene has improved. It's not just about results. Sometimes results may go your way, it may not go your way, but Indian teams have improved, and obviously there's a lot left to be improved, but yeah, they've improved. ग्रुप अप करके मिड की तरफ से शीरो एंड सेवरिन पहुंचेंगे, इधर शायद पकड़े जाएंगे अ बैटमैन एंड You think traveling on the same day as matches made sense? It made sense to them. They would have obviously gone through the entire thing, right? एंड अब आसानी से साइट एग्जीक्यूट कर पाएंगे क्योंकि देखिए शीरो के पास रिकॉन अवेलेबल है. Beautiful. एक रिकॉन डालना है उन्हें. This is why this wall doesn't work anymore, guys. You have to be more creative with your walls. Are you 2 3 ओके. वो एक एंगल चेक नहीं किया शीरो ने एंड इसी के कारण शायद राउंड भी हार जाएंगे क्योंकि अब आरयू के पास टाइम स्नेक बाइट भी एंड आरयू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 4K के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लच के साथ फिनिक्स एक्शन पीएच को This might just save Action PH. So wasn't playing. जरूरी था. Yes, counts on. And Vision Strike चलता है. I think Breach and Sky make a lot of sense. ऑप्शन ही नहीं किया था. हाफ द टीम वाज देयर ऑलरेडी. गाइस वैलोरेंट देख रहे हो, खुश रहो. एटलीस्ट इंडियंस आर एबल टू कम्पीट टू एन एक्सटेंड फॉरेन टीम्स. सीरियस देख वो तो दिल टूटा था. हाँ, as long as PC Esports as a market in India, Satish, it doesn't matter if they improve or not. सही बात है. Snake Viper Pit Clutch Moss. Bye. Are you stepping up the any more? Bye. ऑनिक बोलती भी भाई. You can always remind of the 3GP videos. Thank you, weirdo. I'm glad I can provide you nostalgia as well on this stream. But yeah, एक
So my new cam is coming soon. Are you goated moment? Yeah. But it's all for nothing if they lose this round now. इंस्टेंटली बी पे टीपी कर लो तो Me more is ऑलमोस्ट cracked. Yeah, definitely too. Tell me more. Tell me more. वही सेम अब चेंबर कर पाता है बट इधर इधर दूसरे साइड पे सेवरिन Why do G remove a sentinel from their account? They don't need it according to them. They can compensate it with pseudo sentinels. मैच पॉइंट ऑनिक के लिए Just qualifying to international event won't matter now. Need to beat teams now. Yeah, very true. Yes, yes के टाइम इंडियन टीम्स ताइवान कितना हांगकांग को हरा पाती थी? Not really. Not really. We became decent towards 2019, I would say, after a long while. But yeah, फिर भी gap तो था. They compete as in able to stand on the feet, giving competition. But again, Valorant में I think people will be able to. It's just because of the skill ceiling. The skill ceiling is very low. Yeah, it might just be GGWP, but फिर से एक्शन पीएच के पास ये जरूर है कि वो अटैक साइड पे वो कंट्रोल कर सकते हैं तो अगर स्पेक्टर्स भी लेके आ रहे हैं तो they can play for the elbow. I don't know why they are doing all this. Just do an A split on the back of halls. ये मैप पे हॉल और play yeah, exactly CA. Exactly. इसीलिए you are my friend CA. बिल्कुल भी इसलिए you are my friend. टीम का क्लियर एक Because you're just so good. बी में जो मैं बोलने वाला था वो सीए ने बोल दिया. पेपर एक्स पर आया था ब्लेज ने सीएस में बिल्कुल या एग्जैक्टली वही तो बोल रहा हूँ 2019 के आसपास दे बिकेम लाइक वी बिकेम गुड हाउ टू काउंटर चेंबर इन केओ you don't necessarily need to counter chamber in KO. You just need to understand that you have to play around in a certain way. You have to position yourself in a certain way. और बेसिक कुछ नहीं काउंटर करना है. I think APS playing no respect and getting punished. Yeah. The thing is, I don't think their breeze is prepared at all. Yes, team was loaned by PRX from G. Yes. 4 second का भाई है ना. Yes. APS playing no respect. ब्लेज में कौन कौन था? मर्जल राफ कैरा रॉसी एंड एसके रॉसी. गुड मैन. आई डोंट थिंक सो. I think ONIC has become good, but it's more like the other team underestimating them or overestimating their own individual capacity. And ONIC have come up against two teams with the same philosophy. Coincidence and action beats both are sort of like that. क्योंकि ऑनिक को स्नेक बाइट से नहीं गन से ही डैमेज करना है. स्नेक बाइट बस एक डिस्ट्रैक्शन. 1v2. Are you again? मैन एडवांटेज Will he be the savior once more? पे आते हुए Flank. गूगल बना चुके हैं ये Ooh! राउंड पे दोनों तरफ से एक पुश आता हुआ एक से निकाल चुके हैं. Nice wall up. हार गए. निकल के गन लेने की कोशिश करेंगे पर 0 पॉइंट उनको रिवील करता है. हार गए ONIC. अलाउ नहीं करता है कि वो एमएन की तरफ बढ़े बट Slasher, you need to pick up the pace. Time ज़्यादा बाकी नहीं है. Reveal होता है एक simple सा one tap. मजा आ गया भाई बुल्ड. Action Camus का एक ये देख के. You have 3 losses now playing competitive, 2 from SA, 1 from TSM. सही बात है. वो SSY है. point highlight करना जरूरी है Phoenix की. What's of you and Griffin E-Sports coming to Valorant? Good for the scene, good for Godp. I hope. Shot by. Are you stepping up? Are you like we don't surrender? It ain't over till it's over. And I love it. 2 rounds, 2 crucial rounds. Underrated तो है RU भाई मुझसे. बात तो सही है. But like I have always rated RU. But yeah, I guess because of the frags and लोगों को impact नहीं दिखता था. But ये this map should serve as a reminder. And it always serves as a reminder from IGLs. If you remember Hellranger का वो heroic performance. And now they're trying to take more. Yeah, now they're trying to take more mid control. Nice apartment. You should expect apartment having a bad day. Yeah, he's a stand-in. What can you do? Cypher over Chamber and Breeze. Yeah, I think teams like but teams like APH should prefer. ब्यूटीफुल भाई देखा जब बोला हॉल्स लेना चाहिए मिड लेना चाहिए मैंने बोला सेकंड हाफ के पहले and now they're finally doing it. It's so easy for them because ONIC is just leaving that and you can't do that on every map. मैंने Ascent में भी ये चीज बोला था
Ascent में they cope because Action PH was making mistake after mistake. यहाँ पे भी Action PH is continuing to make mistakes. If they just take mid control, Ascent, Bees, ये सब जैसे maps में you cannot afford to give up mid. They say time to poach some SEA boys. Modesty कहाँ है? I don't know. RA is known for his clutches, right? Yeah, exactly. आर्य भाई बोलते गेम प्ले दिखाते हैं, सबकी चड्डी खोलते, सबको खोपड़ी तोड़ते. क्या बात है, क्या बात है. हेलो श्रेयस. ओटी हाँ जा सकता है. यू सी देयर इकोनॉमी दे हैव, आई थिंक दे बाइंग दिस राउंड. आई डोंट थिंक दे शुड, but yeah, if they buy this round they can squeeze in another buy at 12-11. If they buy the next round and it's done for 12, I think so with the loss bonus फिर भी they'll be able to buy. So I think it's better that you optimize your buy the next round and don't buy this round, but depends on them how they want to play it. No way this is going to OT. Thrifty निकालेगा, ONIC लिख के ले लो. क्या बात है अभिजीत, निकाल लिया तो अच्छा है. Hopefully you must be manager of some team. You really have deep knowledge. Yes, thanks man. मैनेजर बनने की उम्मीद तो नहीं है. मैनेजर तो नहीं बनना है भाई. when will Indian teams or financial players like we have crazy guy and signify? crazy guy ही आ सकता है. crazy guy आ जाए तो क्या भरोसा. कोच कर लो बेस्ट सीस ओवर. टू बी ऑनेस्ट या not so, like I obviously, जब crazy guy was available I thought G might make a move for him. Ooh, Batman, that is a very crucial. Now they'll be squeezed in, they'll pinch in from both areas. Three-way pressure बहुत difficult to handle. बहुत ही अच्छे पोजीशन पे इधर मैच खत्म करने के लिए मोनी विद अ 3K मैन ऑन अ मिशन, खुद का काम बना चुके हैं ONIC का ये जीत हासिल करने के लिए. बट ईमान विल नॉट गिव अप. 1v2 में है, फ्लैंक आ रहा है एंड सेवरीन उन्हें शट डाउन कर देंगे. एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, ONIC आपकी पहली टीम ग्रुप स्टेज पे उनका स्लॉट गारंटी करते हुए. It is better to full buy after pistol win than bonus, or bonus after the pistol win. No. Definitely buy after pistol win भाई. क्या पागल हो गए. कोच क्यों नहीं रखती, इतनी टट्टी स्टार्ट बनाती है, उससे अच्छा कोच ही रख ले भाई. अज्जू ऐसे नहीं होता, सबका प्रेफरेंस होता है. इंडियन प्लेयर्स वी डोंट हैव टू डिपेंड ऑन दिस. ट्रू, मतलब जरूर कोई खराबी नहीं है बाहर से प्लेयर्स लाने में. क्या बोला मैंने, ONIC निकालेगा. सही बात है भाई. नो बट दे बॉट अभिजीत. थ्रिफ्टी नहीं था, दे बॉट GWP. या ONIC लुकिंग डेंजरस. ट्रू वर्टेक्स भाई. सुपर बस रिटायर्ड. आई डोंट थिंक ही रिटायर्ड. फुल सेंस और एक्शन पीएच को इट्स नो इजी गेम, यू नो. आई थिंक दोनों एटलीस्ट ऑफ कोर्स नया साल है, नया मेटा है, बट पिछले साल की तरफ देखें तो फुल सेंस APAC LCQ के विनर. Full Sense and Action PS, they both play the same, a similar play style. Okay, relying heavily on their aim duels and everything, which is why ONIC was able to beat them with ease. I think VLT के साथ, like even if they go to Group D, I think VLT have a good chance. VLT would easily defeat ONIC. Yeah, maybe. Philippines में हाँ, निकमा गैलेक्सी में. I miss Tesseract and Modesty in APH. Sad यार. मोडेस्की तो आ रहा है ना वापस. टेसरेक्ट तो है ही भाई. हेलो, टेसरेक्ट तो है. टेसरेक्ट ने बस नाम चेंज किया है. एफएस ने क्या गलती की? दे रिलाइड हेवीली ऑन देयर एम डुएल्स. They didn't respect their opposition. Their rotations were very uncanny. They were taking individual fights at places, at choke points where they had already lost control. And to regain control, you need support or multitude of incidents, and those incidents can be triggered not just by one player just raw aiming and raw dogging it. No. टीजर एक्ट 0 रहती है. इंडिया में हमेशा सेम प्लेयर डोमिनेट करते हैं. कहाँ भाई, कहाँ डोमिनेट कर रहे सेम प्लेयर, बताओ. ठीक है, VLT को पकड़ लो, G को पकड़ लो, पर उसके अलावा there are new players which come up ना. You've seen
पहले एनिग्मा में घोस्ट था, इस दे ऑल कम अप, इसकी टीआर कमिंग अप, मतलब प्लेयर्स आ रहे भाई, आ रहे। सारे मैच की वॉच पार्टी करोगे? हाँ भाई सारे मैच ही करूंगा। ओनिक को चांस है, और चांस क्या हो रहा है? क्वालिफाई करके? सॉरी आई डिडंट नो अबाउट इट। नीड दैट अ फ्यू स्पोर्ट्स, या एफएस ने चैंडन लेके खेला इसलिए हार गए, किलो ने अच्छे स्टार्ट नहीं बनाए। क्या बात है अभिजीत। होय होय होय, हेलो नॉकेट, होय होय जॉब स्पीड। Still, I think FS should have won the aim duels because of their skills. बस वही है ना, when you have no plan B, कि भाई सिर्फ aim duels पे खेलते हैं तो नहीं चलेगा guys, at this level नहीं चलता है। जिसमें भी सेम प्लेयर्स ही जाते थे लाइन वगैरह। हाँ तो वो है, बट सीन तो पहले से इम्प्रूव हो रहा है भाई, सीन में डेप्थ तो आई है। डोंट नो व्हाई बट ओनली टू टीम्स डोमिनेटिंग इंडिया, नॉट एनीमोर, दिस वाज अ वेरी क्लोज वीसीसी, राइट? वीसीसी बहुत क्लोज था इस बार वाला। They didn't exactly dominate, they lost 2-0 to Enigma, exactly man. Let us hear what he is saying भाई, वो तो इस कास्ट के बाद आई थिंक 1-2 महीना ही हुआ है एंड धीरे धीरे आप देख सकते हैं टीम इंप्रूव हो रही है एंड सही मोमेंट पे शायद पीक भी कर रही है, क्योंकि ऑफ कोर्स एपैक चैलेंजर्स पे आपको मास्टर्स पहुंचने की कोशिश पे वहीं आप चाहते हो कि आपकी टीम एक अलग ही लेवल पे पहुंचे एंड वही अलग ही लेवल के परफॉर्मेंस के साथ ऑनिक ग्रुप ए जो एक स्लाइटली थोड़ा टफ ग्रुप था उससे आसानी से निकल चुके हैं। अभी के लिए तो जा चुकी है, लेकिन अगेन जैसे जब हमारा रोड भाई मैप ईजीबी थी एग्जैक्टली। एक चीज रह जाती है, थिंग्स नहीं सॉरी, एक्शन को चांस है, और हाँ हाँ एक्शन वर्सेस फुल सेंस होगा आप डिसाइडेड में कल। डोमिनेट ब्रो, वन ऑफ द टीम्स क्वालिफाइड फ्रॉम यूटो इन वन टीम क्वालिफाइड फ्रॉम वाइल्ड कार्ड। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली यार इमर। वो हम लेके आएंगे आपके लिए एक छोटे फनाटिक क्या खेलती है? मैंने कल देखा जो आपने प्लेयर हेल्ड पॉइंट दिलवाते हैं एक दूसरे को, क्या बात है भाई। जो से इंडिया only tournament should see the VCC exactly अभी close how when EG lost 2 times 2-0 close, and in the sense that EG should have qualified in my sense if they stuck to their old comp. The new comp was unnecessary and very like it was unnecessary and too close to the playoffs. Yesterday's Fnatic match was epic. True. For me, when you qualify, then I can say. क्वालिफाई तो की थी ना वीसीसी 1 से ईजी, और जी ऑलमोस्ट लॉस्ट टू गॉड पार्टिकल्स, ऑलमोस्ट लॉस्ट टू वैलर, वीएलटी ऑलमोस्ट लॉस्ट टू रेकनिंग। ऐसा नहीं कि दे डिड यार, तो क्या होगा जी के मैच में? जी जीतना चाहिए टू बी ऑनेस्ट। नियॉन ऑन स्प्लिट, मतलब नियॉन ऑन स्प्लिट मेक्स सेंस, मैं सही बता रहा हूँ। But the problem is it was too fast. The change was too fast, and Excali just didn't feel comfortable on either comp. Split में Neon पे और Heaven पे Breach पे. And to Excali is not like Neon, फिर भी चलो ठीक है, he might have been able to adapt बाद में in the long term. Breach, I don't think Excali is a breach player. Like एक्सकैली को केओ दे देते तो फिर भी वो अच्छा खेलता, स्काई दे देते बहुत ही ज्यादा अच्छा खेलता। अगर तुमको डबल इनिशिएटर में सेकंड इनिशिएटर मतलब एक्सकैली को खिलाना है तो। गार्ड एपीएच इस वजह जैसे पूरी न्यू टीम्स नहीं आ रही इंडिया में, आएगी यार। प्रॉब्लम क्या है, कैसे समझाऊं मैं? जस्ट बिकॉज तुम सिर्फ बीसीसी देख रहे हो, तुम बाकी टूर्नामेंट देखो तो बहुत सारी टीम्स उभर के आ रही हैं। You have Nogas, you have Galaxy Esports, you have Amigos Esports, टीआर तो है ही, गॉड पी अभी रेवेनेंट बन गए, रेवेन वो भी है। नियॉन ऑन हेवन टीएल कॉम्पोजिशन, अगेन नियॉन ऑन हेवन आल्सो मेक सेंस। Combine it with the breach and maybe yeah, combine it with the breach and it makes sense. Next VCC में reckoning का slot confirm. काली on race, yeah, काली on race. से कंपटीशन कहाँ है एग्जैक्टली? बीजे बैन होगा तभी कुछ होगा, नहीं टीओस ऐसे की बात।
सब मैचेस देगा क्या? बिल्कुल गाइस, बीच में मैं सो भी सकता हूँ, ओके, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ। वॉच पार्टी के बीच में ब्रेक ले लेके सो भी सकता हूँ, बिकॉज मेरी नींद पूरी नहीं है। मैं 5-5 मिनट सो सो के भी गुजार सकता हूँ, ठीक है? तो मेरे साथ स्लीपिंग स्ट्रीम कर लेना थोड़ा। सीए काश लिखा हुआ है अभी भी। सुपर जॉनी इज हियर डूड, आई लव दिस his swag guys. I love Super Johnny's swag. He just looks so like not like a caster or an analyst. I mean, he's very good. He stands out like a sore throat. What should how to counter chamber किया? मैंने बोला जरूरत नहीं है chamber के को particularly counter करने की. You just need to play more chamber के लिए. You just need to play more information based. And just you need to find out एक बार के लिए कि उसके ट्रैप्स और ये सब जनरली कहाँ लग रहे हैं. मे बी अगर तुमको तुम्हारे पास इनफ डेटा है तो तुम पहले से थोड़ा देख सकते हो थ्रू आरआईबी और वो सब के हेल्प से. मैनुअली भी देख सकते हो. भाई डू यू प्ले सीओसी क्रैश ऑफ क्लैंस? नहीं भाई, कल एक राउंड था हेवन पे, जी वालों ने सारी अल्ट यूज कर दी, फिर भी हार गए थे ए साइड पर. भाई देखो, ऐसी कोई बात नहीं है आरजे शर्मा कि तुम अल्ट यूज कर लो तो जीतोगे ही. ऑब्वियसली it increases your probability. CA group react too early, man. CA look cute without beard. This beard doesn't suit him. Yeah, he's also lost some weight. like उसका cheeks और ये सब चलेगा. जो मेन जो cheeks जो उसके selling point पे चलेगा यार. और टोपी, I don't think CA wears टोपी like this. I don't know. Super Johnny is that guy in college who never talks to girls till girls fall for him. सही बात है. Super Johnny is for me is Tala Anjum. If you guys know. क्यों नहीं खेलता भाई? कितने एफपीएस खेलता है? I still think इंडिया में अच्छे प्लेयर्स हैं अंडररेटेड, बट थोड़ा रिकग्निशन नहीं है. ट्रू. इंडिया में एटीट्यूड की कमी है यार, सही बताऊं तो. जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं उनमें भी एटीट्यूड प्रॉपर नहीं है. दे जस्ट फील दे थिंक दे ऑलरेडी पीक्ड एंड दे आर टू गुड फॉर एवरीवन. एंड it is good to have confidence, even arrogance sometimes, but it's not good. It's never good if you can't back it up. पहली बात तो. दूसरा, even if you can back it up, sometimes it pays to be humble. Thanks for recognizing me, man. क्या बात है. सीए रॉक द बोट आई बेटर. हार्ट इज नॉट लुकिंग इंडिया. ट्रू मैन. बहुत स्लो चेंज हो रहा है. 2 साल हो गए वीएलटी जीडे स्टिल 2 मंथ ओल्ड टीम्स से वन साइड से हार रहे हैं. 2 मंथ ओल्ड टीम नहीं है ऑनिक. ऑनिक बहुत टाइम से 2 मंथ ओल्ड इज मतलब 2 मंथ भी नहीं, 1.5 मंथ पहले क्या नाम है इसका, बोलने वाला था मैं भाई. इवोक जॉइन. यू कैन बिकम इफ यू रेडियंट. क्या बात है. अभी 2-3 दिन बाद गॉडस्पीड भी मुझे गुड प्लेयर बोलेगा. क्या बात. to say no in players and owning the cockiness with team play. Exactly, Abhijit. Much potential, but I don't know what's going on. True, weirdo. True. Like Kali has. True. Chamber viable on maps like Ascend, where Killjoy is very dominant. Maybe Chamber is combo replacing Jet and Killjoy. No. Not for me at least. Raze is not that viable on Ascend. या उसका यूटिलिटी किट है अच्छा, बट आई थिंक you need थोड़ा. But yeah, Raze Chamber का combination can work, but you need that sort of players, those sort of players. ट्रू अज्जू. दैट ट्रू. रैंक दिन में 2-3 गेम से खेल पाता हूँ, उसमें भी सब ब्रेंडेड आते हैं. रेडेड नहीं हो पा रहा. यूवर्क रेयरली हेल्ड ऑन. क्या Esport doesn't work with recognition. It's just about winning, and being the more recognized person won't make you win. Exactly, man. True. True. Guys, मैं 2 मिनट की नींद ले रहा हूँ. थोड़ा आंख बंद कर रहा हूँ guys, हाँ? 2 मिनट का रेस्ट.
Get only replaced. I'll see analyst, but क्या करना है? मैं reading on normal but race like one more issue on there is no issue also. और अपन इतना G also fancy G should work. Target नहीं करने का. तो आराम से बेड पे सो जाओ भाई बेड उधर है. इधर ही बात कर रहा हूँ ना तुम लोग से. थोड़ा इधर आ जाता. ओके. थोड़ा हटाना पड़ेगा. Yeah. Yeah. No issue talks. No issue talks. Attention and wire selectors. वापस आ गए. How is CP as a coach? He's supposed to be very good. Like I like his thought process and whatever he explains. I like uh, I like his approach as well. जो भी he sort of says, very articulate with his thoughts. Yeah, he's a very good coach. Probably the best in our region. Hello, Raigar. How are you doing, man? Long time no see. Very simple actually. You overthink a lot. Exactly. The overthink to name like they tried to make their own place, which wasn't necessary. But yeah. 3 minutes like favorite screen for every gun. Most random one question. Aman. Uh, see, Prime. I'll go. Vandal. I'll go with Prime or Fever. Okay. Uh, Phantom. Only Phantom. Operator. I think River Operator. Ghost. I think the mechanical ghost. जो है जो भी नाम है उसका. It's the next from the next one. No, they're not. I think G will be vaccinated because they lost to product to one. Yeah, G should be vaccinated. अगर pretty ascent आया थोड़ा सा they might lose one map. That's it. Rohit games तो क्या बात है मेरे पास. It's time to drink some water again. How do coaches make strat? Please tell. So every composition has a purpose. It's like SWOT, okay? If I could write it down here, but how do I show you? I need to show you. So like just like SWOT, every comp has a purpose. Every comp has strengths. Every comp has weaknesses. Okay, and every uh like how do I show you this? Do you think the number of tournaments Indian teams plays a disadvantage for them? No, I don't think it's a disadvantage. आता कोडांग मैच में हो गया आशीर्वाद को क्या बात है देव good luck. So just like SWOT, instead of doing OT, you have a purpose. So every comp is purpose driven. Then you have strengths of the comp, weakness of the comp. So your default has to be such that it drives the purpose. Okay, it drives the purpose. It takes advantage of the strength. So you basically want to be aggressive towards your strengths, and you have to cover up your weaknesses. You have to cover up your weaknesses. Team बहुत कुछ चल रहा है आजकल नहीं मालूम क्या बात है. Hey Godfrey, hey Rishabh. Difference between an analyst and a coach. I think so shown this. I hope I show this again. Is G lost today? I want to be disappointed. I don't think they lose. Best conference at least for me, Opticom, Fanaticom, Chamber, or PG. Maybe. I feel like Icebox is now more open towards interpretation. But yeah, so this is why defaults के लिए it should drive the purpose. It should you should be aggressive towards your strengths.
so that you can take advantage of it, and you should cover up your weaknesses. So like that is how you build defaults. हॉट गर्ल्स भाई इसको कोई टाइम आउट दे दो, गाने वाला टाइम आउट दे दो। इसको ऐसा ही लगा और 3 ओवर हार गया क्या हुआ? So drives the purpose, aggressive towards strengths, cover up towards weaknesses. Okay. ONIC to group C, I guess. Yeah, maybe it is. तने है क्या चैट में? अच्छा। तने दे दे भाई। Drives the purpose, question your strengths, cover up your weaknesses. G group 1 Lord. Group will be good for us. मोड बना दो एक तो, हाँ बना दिया मैंने, बना दिया, मेन बंदे को बना दिया, वो रहेगा। ड्राइव से फोकस ये वो हो गया तुम्हारा। सोचा तो कल भी नहीं था जी हारेगी। हाँ पापा बात तो सही है तुम्हारी, बट आई एम कॉन्फिडेंट। सी ऑल यू कैन डू इज सपोर्ट। ठीक है, हाइड ही कर दिया, क्या बात है, क्या बात है। इनिंग हो गया, 2 किल का, 2 किल किया पहले राउंड में, क्या बात है, उसको जाके बैंक में डाल दे। So any other questions guys? Questions लाते रहो, लाते रहो। Enjoying this, questions लाते रहो, कुछ मस्ती वाला करते रहते हैं। एफडी करवाएगा, सही है। Do you think other teams in NCA are underrated? Definitely, definitely, definitely there are many underrated teams. मेरा सवाल ये है कि कायम सूरन काम करता है क्या, कर दो तो है। प्रेडिक्शन फॉर दिस मैच NN for me, no namers beat Griffin and we could line this year APAC stage to maybe मेरे क्लिप्स दिखाऊंगा चैट में, जॉर्ज डॉट कॉम होगा, नए बायर्स होते हैं, जी शुड स्टिल क्वालिफाई या व्हाइट टीम्स प्रेफर चेंबर ओवर साइफर एंड प्लीज more individual playmaking ability, uh, like, and it enables a free op. It also inculcates basically a double op setup, with both the oppers having this engaging option. But yeah, थोड़ा बहुत बेसिक है, ये रैंक कब जाएगा, कभी नहीं, बराबर। माधव inspired, you should qualify, waiting for a chamber. I don't know why I feel like Sova is more an agent for boomers and agents like Chamber is not an agent for boomers. I don't know why, but I सही बात है ना, मैं भी boomer हूँ। VLT पे bet is, VRR पे bet is against G। हो सकता है। Half of them are salty fans, जिनको लगता है just because कल का मैच हारे आज का भी हारेंगे। Any you do you think G out in pains and they still don't shuffle roster? देखना पड़ेगा। Any new teams are so flexible in regions while our region is not like, why don't G take control of Garage or be open on him? That is a good question. They should, but उनका वही है, उनका अलग philosophy है, अलग play style है। Why are Aussie not using river operator? ये कैसा question है हरिकियन? इस मामले में सैन बेस्ट है, वो बोलता है हारो चाहे जीतो मेरे को टॉप रैक करना समझ में क्या बात है। Tell now please difference between analyst and coach. The analyst is more geared towards the numerical, statistical side of things. He's more the anti-strat guy or the strat guy. A coach will take basically जो एनालिस्ट करता है उसको कोच लेता है, कोच उसको बोलता है क्या क्या करना है, क्या क्या हेल्प चाहिए और क्या क्या बनाना है, एनालिस्ट वो सब बनाएगा, वो कोच को देगा। ओके, एंड वो जो कोच को देगा वो कोच फिर देखेगा क्या क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और वो अपना एजेंट बोलेगा कहाँ क्या इंप्लीमेंट करना है। द फिलोसफी एंड एवरीथिंग इज डिक्टेटेड बाय द कोच, नॉट द एनालिस्ट। Either the IGL where when you don't have a coach, or if you have a coach, the coach. Neutral cup out be great on chamber, great share place. हाँ definitely cup out be good on chamber. कल जीजी बेट पर जी 100 का, क्या बात है माधव। Icebox again, never seen them taking control over us. Again, no namers के लिए I don't mind Icebox. I think no namers will win Icebox.
never seen them taking control of the अच्छी तो झूठ है कभी ना कभी तो लिया ही होगा Ascent is such a good map to watch bro someone play Ascent I think इनका decider Ascent ही ban कर दिया Griffin ने हाँ तुमको फैंसी यूनाइटेड वाले में मिल सकता है if global doesn't ban Ascent I think fancy might pick Ascent या split थोड़ा प्राइवेट में टोटल टीम देख लेना yes 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 के कोच एक दलाल का काम करते हैं नहीं भाई कोच चाहे जो जो एनालिस्ट को दे सकता है कोच खुद भी एक एनालिस्ट रहता है I don't know why RVK shifted to SOA being one of the best Indian player in India. They're trying things out. ऐसा नहीं है कि they permanently shifted them to SOA. तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा NN जीतेगी What do you think Chamber or Cypher and Breeze? I just think Cypher gives them more information or what's but like individual playmaking ability accentuate करता है Chamber and for an open map like Breeze I think Chamber makes sense. चलो मैच मिल गया वापस में आता हूँ ओके सेम कल के जैसा मैप से यार भाई का ओडिन बुर्र ऐसे नाइस व्हाट यू थिंक ये वो क्या टप्पा Sir, I'm confident G will make it. I am confident as well. I asked Mala a question about heaven. He said why they don't approach. He said KJ util है पर कल इतना util नहीं था साइड पे KJ का. Again that depends on interpretation ना. उनको लग रहा होगा कि था है ना उनको लग रहा होगा कि था इसलिए वो नहीं गए मोनिक और एपीएच का प्रेडिक्शन क्या दिया था तूने मैंने बोला था एपीएच 2-1 जीतेगी Ranger का work ethic will make sure they don't lose again in Playins. Yep. RVK used to play so on bind. Yeah, for F1, yeah. Only for one, but yeah. So which is what I'm saying. Like it's complex. Like it's not black and white. They're trying things out. If it sticks, it sticks. I personally don't prefer RVK and SOA, but yeah, personal preference के ऊपर है. If they find some utility, if they find more greater utility in that comp with RVK as SOA, then they'll choose that. It's all about finding the optimum utility. कल गोलू ने इतना लर्क भी नहीं किया क्या कर सकते हैं भाई भाई लीफ ब्रीच खेलता है क्या बात है कौशिक Your predictions are bad for APAC. I believe only in 1% that is true. सही बात है हमको. I also say same answer. कल ग्रिफिन प्यूरे डेमो देख के आया था एनसीबीए के लिए था लाइक 4 स्टार एंड वन ऑन द साइड आई डोंट थिंक उतना डेमो वाला था इट्स जस्ट दैट जी वर रीडेबल कल जी अगर एपीएच ओनिक के ग्रुप में होती तो 26-0 होता इजी वाओ Do you think any Indian team can make it through top 4 is difficult. I think Velocity have a very good chance of qualifying for the top 8 at least और उसके आगे देखा जाएगा. I feel G can give secondary duelist to Golu and Rossi can play Chamber. He is so good. पता नहीं देखते हैं. If ऐसे teams come in top 8 will there be increment in slots allotted in Siege to APAC? 2 slots से ज़्यादा क्या चाहिए तुमको? I don't think 2 slots से ज़्यादा मिलेगा ऐसे को फिलहाल. एटलीस्ट इस साल के लिए तो नहीं मे बी इस साल अगर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो अगले साल मिल सकता है ट्रू आई आल्सो लाइक या अभ्युदय वेलकम मार्क आर्यन वैसे टीम इंक्रीमेंट नहीं ये तो मैंने पढ़ लिया it's about affordability kilo and I need to branch out problem वो है I will always be open to helping teams जो भी हो यहाँ पे हमारे रीजन में but I need to go like I need to transcend this region to be honest. He told he aims VLT in top 5 and G in top 8. I said I think one of the two teams make it to top 8. I don't think both do. जी को प्लेयर की चेंज की जरूरत है नहीं कल स्किल्स क्या खेला सही बात है आदित्य ऐसे में ऑडियंस तो है पर रिजल्ट अच्छा नहीं इसलिए 2 स्लॉट काफ़ी है भाई फिलहाल के लिए हाँ बहुत कुछ सुनते हैं हम अमन व्हाट एफपीएस कोचिंग का
बीपीओ बनाएगा। मैं हूं ही भाई बीपीओ। मैंने इन द लास्ट 4 months, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग मैन। स्वराज नायक, यू थिंक इफ जी वर्सेस ग्रिफिन दोबारा हुआ जी जीतेगी? डेफिनेटली। Look at the comp, it's still very basic. Nothing has changed for them. See, even in the new patch they're playing the old comp because it works फिलहाल के लिए। People have not found a better alternative फिलहाल के लिए। Check see. Hello. Yeah. हाँ हाँ, बोलना बोलना। Gambit. No, don't Google. Don't Google. Go to VLR. Okay. Find out Gambit versus Ascent. There is a match on Icebox. The latest Gambit versus Ascent. Okay. फिर उसका जस्ट कॉपी पेस्ट द सेम जो है लिखा हुआ ऑन यूट्यूब, यू विल फाइंड द वर्ड। सो आई टेल यू, गैम्बिट वर्सेस असेंट जो मैंने देखा था, आई डोंट रिमेम्बर कौन सा वाला देखा था। ओके, इट वाज, हाँ तो वही होगा। राउंड नंबर 1, राउंड नंबर 3, राउंड नंबर 2 भी था शायद, राउंड नंबर 6, मतलब शुरुआत में ही मिल जाएगा। हाँ, and it is very good. Like it is what I used to run with some variations. हाँ समझ गया, इट्स वेरी इजी, यू विल बी लाइक एबल टू अडेप्ट टू इट वेरी इजीली, बिकॉज उसमें कुछ कॉम्प्लेक्स है नहीं, इट्स वेरी बेसिक। हाँ, या आई नो। ये सब काम आ जाता है भाई, ये सब। नाइस नाइस कास्ट, सी वी एंजॉयड अ लॉट। अरे इट्स ओके, at least you did a whole cast in Hindi. I am proud. हाँ। हम्म। या वेरी लाइक वेरी, सी वही है ना कि people think we should go for extravagant things, but sometimes it's the basic things that work, right? Exactly. You just like we talked about the slow thing, na, like individual this. So yeah, it's fine. And with this mid to P wala, it's very effective, and you can क्या बोलते हैं, do a variation of it with a wall. I'll show you later on. I'll show you a variation where you can fake it, like fake and go mid to A. Okay, no problem. Yeah, good luck, man. Bye bye. Good morning, Sid. Vietnam also has 3 slots. Yeah, Vietnam also has 3 slots. No, I don't think we'll get 3. We'll never get 3 slots. Do GE lack gunpower? No. Godspeed 1K GP करो, वरना मैं बता दूंगा ओपोनेंट्स को VLT गैम्बिट। VLT गैम्बिट की स्टैट्स नहीं यूज कर रही है। दिस वाज अनदर कॉन्वर्सेशन। This was another conversation. You guys don't even know what we're talking about. We are talking about a very different thing. भाई कल जो हेवन में वुमेन अल्ट मारा स्किल्स, डूड बहुत मजा, बहुत वो 1v2 वाज एक्सट्रीमली वेल प्लेड बाय स्किल्स।
And the thing is, guys, तुमको समझ में आना चाहिए कि if there is something important, we'll never talk about it here. Otherwise, run it down mid like true DJs. by muter. अबे तने काम का नहीं था बात, ठीक है? तो कुछ there is nothing to give away here because we are talking about a very different thing. You guys will not understand what we are talking about. CS में watching नहीं था, watching भी है, Ogs भी है, players need to perform. The players are performing, guys. Let's not say players are not performing. So let's say NN क्या कर रही है? NN Sky, okay, they pushed here. Oh, अच्छा timing हो गया. Beautiful from wire select. यार ये बंदा, इसका गेमिंग IQ बहुत अच्छा है भाई. To be very honest, मुंह खोल के खेल रहा है. It shows कि ये इतना खोया हुआ है गेम के अंदर कि इसको और कुछ पता नहीं चल रहा है कि ये क्या हरकतें कर रहा है. देखा, ये सब क्लास एनालिसिस है ये ब्रो. जो हेल रेंजर ने 2 बार ब्रीच की अल्टी कि वो जरूरी थी क्या? किसी ने भी पुश नहीं किया. अरे पुश नहीं किया इसका मतलब ये नहीं है कि अल्टी खराब थी. उसको जरूरी लगा, ही डिड इट. इट्स नॉट लाइक सीएस में वाचिंग नहीं था, वाचिंग भी है, ऑफ्स भी है, प्लेयर्स ने तो परफॉर्म हो गया. नमस्ते सिद्ध, गुड मॉर्निंग. बेटिंग एडवाइस दे रहा है. अरे वी आर टॉकिंग अबाउट गैम्बिट वर्सेस सेंड बहुत पहले का, because we were going through gambit versus send पहले. VCC got highest watching as a sub regional event. बिल्कुल. It's any Indian server. I also read on Reddit, नहीं आ रहा है भाई. I'm very sorry. You think she is not as pumped to play this time? अरे ऐसा कोई बात नहीं है सोहा. Why would they not be? Legal TG mod. Griffin can win icebox. हाँ, they can, but I think no namers will edge it. NN पता नहीं, NNN पता है. No, not November वाला. अच्छा, जो मारा कल हेवन पे भाई. सो आई सेड ना, अटेंशन एंड वायर सेलेक्ट आर वेरी गुड डूड. हैं? ये कौन बोल रहा है? चार पांच राउंड चाहिए, कौन बोल रहा है ये? सुपर जॉनी ने बोला. किसको लेके? फिर भी एक कंफर्टेबल माइंडसेट के साथ आगे बढ़ सकते हैं. एंड लुक एट व्हाट इट इज राइट नाउ. एक टेक्निकल पॉज आ चुका है गेम के चौथे राउंड. 6 इयर्स थे फर्स्ट केस में, उन्हें पता नहीं था ये पे कोई है या नहीं. और दूसरा ये लॉबी वाला अच्छा था, सोवा शॉक डॉट भी मारता था. बस भाई 80 किलो. मेरे को फिर से इग्नोर किया जा रहा है. अब पे रुक जा, मैं देखता हूँ. मैंने पढ़ा नहीं पहले. See, I can help, Kilo. I can definitely help. The thing is, you have to understand कि problem क्या. I'll tell you very honestly. I had Indian offers. I rejected all of them, and I'm still helping Indian teams जिनको भी चाहिए. Like whoever wants session basis पे, so like that. And I can even come and help you revamp structure. Not you, but whoever wants can help them with the structure and everything. I'll help them completely. But the thing is, I need to branch out to other regions because otherwise I'll always be an Indian coach. I'll always remain an Indian coach. And there are some people who have the opinion that I may not be good enough. And to be honest, I agree with them. Nobody is good enough right now in the coaching and all those things. We all strive to be better. I also strive to be better. And to be better, I need to have a greater sample size of players and a greater sample size of problem areas, so that I learn how to tackle each problem differently and in a more ideal manner. तो वो है, बट आई स्टिल टॉक अबाउट इट बाद में. हाँ, बराबर टाइम पे रहेगा चैट में तो तू भी बनता. I mean, the Hindi casters are not the best at analysis. True, which is why I always used to watch the English. But the thing is, Hindi casters are not Valorant watchers. You have to understand, they're still doing a good job when you compare them to the fact that they're not actually, they're not actually Valorant casters. Right? Super Johnny is not like a Valorant caster. The only casters that are Valorant casters are basically CA and Necro.
And even Necro, I'll say to a large extent, doesn't know a lot about Valorant. Like he's still doing a good job. It's just CA is the one. Like CA stands out because CA knows so much about Valorant, right? And to compare CA to others would be a disservice to CA and to others as well, because you can never compare someone with such a vast knowledge to someone who doesn't follow Valorant. Super Johnny is all rounder. हाँ. World Titan. Why G's aim is looking less better than others? ऐसा कोई बात नहीं है. You know, someone who's willing to be someone who would fill those things I told you in DM. Like, to be honest, Kilo, I can do it, and I'll tell you names as well. Like there aren't many names. I'll tell you a couple of people I know that might be good for the job. But yeah, oh god, I misplay. Yeah, play or something else. So they're setting it up nicely with the new Icebox thing, but the problem is if we reverse back, we'll watch this round, market round 5. I think that's the problem. The Sova needed to drone. Now right, okay, he wasted his drone already. So he needed to at least recon here or do something. Maybe even just to cross, you use the Viper. So what you do is you use the Viper smoke in this angle. Through the Viper smoke, bounce it off this. Okay. And then you cross. And then you can pick up the Viper smoke. Like that is worst case scenario. But that's are always helpful. If G win today match and GFN lose, yeah, G versus GFN. GA will always have a good chance against these teams because G is better. To be honest, I'll stand by this comment even if G lost. And even if G maybe go on to lose, I'll still say that G is better because they are better. He's not able to win the pistol round and loses the momentum. It's not true. Pistol rounds again are relative. They aren't as important as they used to be. Early Valorant में people didn't know how to play and they were mostly playing the CS style. So if you lose the round, you kind of mostly eco and then it's 2-0. Then if you lose the opponent's bonus, then it's 3-0 and 4-0. So yeah, and 4-0 on both sides already gives 8 rounds to the opposition team. So you have just 5 rounds to work with. You can only afford to give away 5 rounds. But now with the new meta, let's say you're attackers and you plant, you can just go for the force buy and your weaponry will be almost equal to the other team. It will not be exactly equal, but almost equal. Like there'll be like a 30% difference in total weapon, total money spent. Hello, Sappy. Good morning, Sappy. He is not able to win. Yes, no, our professional player in chat. Professional player turned coach now. बोलने से क्या होता है, रिजल्ट भी तो अकॉर्डिंगली आना चाहिए. प्रोफेशनल प्लेयर हिल यू, वो भी क्या दिन थे. परफोफे परफोले दिन से जीत रहा, क्या बात है. अरे भाई फिर वही चैट वाले क्या बात है वो टेक्स. ठीक है ना. See, our job is to educate people. GFN तो बहुत मार रही है. नहीं भाई, G is better, that's true, but they made a lot of smaller. Exactly. Sappy देख लो भाई, सिंपल सी बात है. और ऑब्वियसली सैपी लोगों ने स्क्रिम में खेला, स्क्रिम टूर्नामेंट में थोड़ा तो फर्क रहेगा. देवर मे बी ट्राइंग थिंग्स आउट. ये वो जो ओपोनेंट है, इट्स नॉट लाइक मतलब डन एंड डल केस है. और आइसबॉक्स का मैंने पहले ही बोला था कि आइसबॉक्स विल बी डिफिकल्ट, माइट बी डिफिकल्ट. बज रहे हैं सही भाई, बज रहा है वो. ओके. Again, it's a very uninformative and lack of creativity in these setups and walls. This just reeks the fact that we don't do our proper research in our region, like especially these tier 2 teams. They don't properly research or go into custom, maybe find out things that will be more meta now, or you'll be more comfortable with all of that. And yet Griffin are unable to take
back because they're playing very defensively against such a setup. Against such a setup, you now don't need to play that defensive. You need to be more in the face. You need to play defensive in other setups where you don't have an option. And I'll show you all those things after maybe APAC, because I think I may have shown these to some people, and I hope that'll bring them an advantage. मेरा 9 है, क्या बात है. इशू ये है कि स्कोर बोर्ड देख के जज कर लेते हैं ये टीम अच्छी है ये टीम बुरी है समूह मतलब 50%. ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. वही मैं इन लोग को समझा रहा हूँ सापी कि जस्ट बिकॉज ऐसा नहीं है कि वैलर वॉन अगेंस्ट देम कि टूर्नामेंट में नहीं. कास्टर्स आर म्यूटेड, कॉर्पोरेट कास्टर्स रिफ्ट कंफर्म्ड. I like it muted, yeah, to be honest. Because G is better, but it's also a thing that G need to practice in the new environment, get comfortable. ऐसे परफॉर्मेंस जी से एक्सपेक्ट कर रहा था पर वो इतना डर डर के खेल रहे थे बिकॉज दे आर यूजिंग अ न्यू कॉम्प ना. दे वर maybe they were unsure. There are certain facets where they were uncomfortable, unprepared even. This is the old comp. They're playing the old way. As I said, no creativity. They're still playing the old way. Everything is old. Even the walls, wiper walls, everything is old. You see? Only, let's say, even the defense viper is doing the same retake wall. Like there's a lack of innovation, which is disheartening to see, but expected, to be honest. See, now they're falling back to B. They've used the wall here. Now how do they enter B? So they take mid control from there. That is nice, but बहुत ही timely shot dart. But that means they've already created enough of a disparaging rotation, and now it's an easy plan for them. They get the side for free, even if Viper gets killed, I guess. Ooh, yeah, I mean, it's advantage in him now. Iron Gun buddy. As I perform, he should ban Xbox and stop banning spreads. Will it is actually one of the best side? Maybe. If NN wins VLT, increased chance of getting them or not group. Huh. क्या बात है. GA wasn't playing डर के. Exactly. कितना आ रहा 13-2. क्या बात है. Oh, that's a nice call to save. They'll have 3 weapons going to the next round, and I think they can still scourge for 2 more weapons from their buying arsenal. But I guess it's time for some mid aggression or some A aggression from attention. Maybe even use the kitchen wall wala strat pocket to take down Vera. मेरे को बद्दुआ दी गई थी हारूंगा. प्लेऑफ्स में ब्लीड में पितन मैक्स खेलेंगे. हाँ, पितन मैक्स ही खेलेंगे. अच्छा आरआर प्लस पूछ रहे. अरे मैं पूछ रहा कितना आरआर मिला. लॉल. टाइम आउट दे दूंगा देखो मैं. नाइस. मैंने बोला इन्होंने भाई देखो पैसा चाहिए मेरे को. जीएफ ग्रिफिन मेरे को पैसा चाहिए भाई इस बात का. मैंने बोला और वो हुआ है गाइस. टेंशन मतलब मारेगी थी. एग्जैक्टली सर पे पोस्टर या पोस्टर एंटर या भाई मेरे को पैसा चाहिए इस बात. मैं नहीं मानता. मेरे को पैसा चाहिए इस बात का. सुनो थोड़ा प्रेशर रहता है. हाँ, और अनप्रिपेयर्ड भी थे. नया कॉम भी है ये वो. प्रैक्टिस भी उतनी नहीं. बहुत कुछ है. आई एग्री विद सर. पैसा चाहिए अटेंशन. मैंने तेरे को बताया कैसे फिर देखो हार गए जाके. मतलब पैसा नहीं देना तो कुछ भी करोगे तुम. साउथ एशिया दे दो भाई. कोई बाजा होगा बस भाई. तो मतलब मैंने बोला पैसा चाहिए तो ये लोग हारने लग गए कि पैसा नहीं देंगे. हार जाते हैं इससे अच्छा. इधर मोनेटाइजेशन क्यों नहीं है. वॉच आवर्स नहीं हुए भाई. ये कोई क्लिप कर लेना. हेलो, यूट्यूब पे भी क्लिप का ऑप्शन आ गया. कोई क्लिप कर लेना इफ पॉसिबल. मैंने जैसे इनको ये ऑल्टरनेटिव बताया इन्होंने वो ऑल्टरनेटिव किया है भाई. वो किचन का सेज वॉल के ऊपर वाला टेंशन को दिला के मिड कंट्रोल के लिए. ठीक है, और उनको पिक भी मिला है. हेलो, कोई क्लिप करो गाइस. ये चीज ये सब चीजें क्लिप करते रहो गाइस. मेरा रील बनाऊंगा मैं ये सब चीज का कि दिस इज व्हाई यू शुड हायर मी. इट्स अ वेरी बेसिक काउंटर बट या
It works. See, you don't need extravagant things. I've heard people say we all we had was basic stuff, but you see, ONIC, if you do the basic stuff right, you don't need something extra special. APAC matches fixed confirmed. Godspeed helping viewers. Justice for Godspeed. Clip करो. Why is Brim not viable? Brim is viable on Icebox. कौन बोला भाई नहीं है? Why is Icebox? No, kilo. I have some. The things I have found on Icebox and the things we have found on Icebox, and the things I've also shown to some people on Icebox, the things they have come up with themselves. Icebox is going to be lovely in the future. I'm free for अरे भाई आ जाओ भाई नेकी और पूछ पूछ मतलब किधर आएगा टीएस आऊं टीएस आ रहा Connected. Channel switched. आ गया मैं टीएस Sharky still wants you to join RG? I don't think so. Maybe not. Maybe not. इसका मैं Atmos आ गया मैं एक्शन फीचर हेलो What's up, how are you? I'm doing fine my love क्या हुआ हो गया breakfast Yeah, breakfast done. A little bit of morning prep is well done. let's go We have a scrim in a bit, I think. We're scrimming 2 maps, and after that, I think I want to do some theory and some server work with them. So before that, I have some time to relax and chill out. So I was watching your stream, so I thought might let's as well join. go nice Yeah, are you watching? You're watching the NODWIN stream? yeah Shreya watch party right Sheesh. Hello Shreya so my love Yes. what do you have to say to the chat I mean, nothing. I mean, pretty much red shit. yeah There's a lot of things we discussed in pre-game or whatever that we should have done, and we wanted to do that we didn't end up doing. And so after this map, I think both Head and I were pretty disappointed with how we had played the map. So Yeah. instantly, like the same night, like after 4-5 hours of the game, like we did a quick VOD review of like what mistakes we made and like how we want to, make sure that we can fix that. Because I personally thought like a lot of our icebox was fixable. Like it Very wasn't true. like I don't think we were making any fundamentally wrong plays or fundamentally like we were like we didn't understand how to play the map. I don't think it was anything like that. I just think in the moment we were underutilizing our utility and Yeah, and underutilizing Omen our as well, right? yeah 100%. I spoke to Hell about this and how I want him to improve and how I want him to use his utility a lot more in this map. No, very That's one of true. the first things we Very true. discussed. Icebox में what I felt was your comp. I told these people as well when these guys said कि why not take Sentinel and all. I think this comp works. To be honest, Yeah, this I think comp this comp is works. great. Yeah, it's just that like uh, it felt like you guys were not executing the things you might have prepared. Like Yeah, 100%. So right out of the game, that's what I did. I when I spoke to Hell, I already prepared some defensive setups, some attacking setups, and how I want us to play around the map. So we will 100% be using those and making like our game plan stronger coming into yeah. this next series. And also the thing Yeah. is, see, Malab, like, I mean, I don't want to hate on anyone, right, in the chat or anything, but I told them that Griffin has a very basic icebox, but because they have a basic icebox, they are good on icebox. See, they knew their fundamentals. They were Exactly. executing what they come to do. They had a plan in their mind and it was working out for them. But it didn't work out The thing way is, the they way wanted to. Griffin play icebox, they rely on others to make mistakes, right? Yeah, Like, 100%. Like if you just look at how they're on defense now, right? But when you switch over to attack, just look at where Ace positions himself. They exactly. usually just play 1-4 and work around the map like that. Like where they want to go, Ace goes at the opposite end because that's what he did on Haven as well. Like he's like when he plays Omen, he's in charge of holding down C while the Killjoy works Garage B, whatever she wants, and they use Jet Sky Breach towards A. Like we knew that before the game. Very true. So I mean, yeah, I'll tell you guys something. Within the comms, we decided that we wanted to set the pacing for the game. We wanted to take control. We didn't want to give them control because we know how they like to work around when they get the control. Yeah. And that's something we wanted to do. And it didn't work out, or we didn't use our utility to do that to the best Very true. extent.
I think. Very true. I see. Either the problem here is when you're playing a new comp, right? There is Yeah. bound to be some margin of error, And I and think, sorry, go on. yeah, and the problem was yesterday the margin was larger because of multiple External factors. factors, yeah. Yeah. But I think, like not to blame anyone, of course, this is like with the schedule we've been keeping up with and playing around, it's been Mm. more or less impossible for us to, iron out maps. Yeah. True. It's like, we're playing Icebox for the second time, like let's say from VCC, right? Hmm. We've played Icebox thrice, and on, like, we played it yesterday, we played it twice against VLT, and other, over and above, those maps we didn't play much Icebox coming into this, Hmm. but we've played two different comps because of how the meta has panned out and Hmm. how this thing. So not having enough reps, uh I think is like a huge problem for us. And I Yeah. think, like, hopefully we're able to fix that in the coming future and expand the map pool a lot more. अब मतलब का वॉल्यूम ठीक है क्या guys? I think I increased his volume. Yeah, I was reading a chat as well. Akash, no namers. See, no namers are playing again. No namers are playing the old meta, and they're doing everything exactly like the old meta. They aren't changing anything, and so there's a comfort factor in playing and doing what you've already done 1,000 times. And against a team like Griffin, that will work. But the problem here is like Griffin as a team, unless and until you allow them to enter into a match like in a competitive stage, it's more or less your world. Like the ball is in your court when it comes to a team like Griffin, Yeah. and which is why I'm confident that if a rematch happens, G wins because for a team like Griffin, it's 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 uncanny to win against teams like G just purely because their playstyle relies on other teams to make mistakes. And I think once G, like Malav said, iron out their Yeah, 100%. things, it's very easy for them. You know what's funny? I was What? reading through VLR and someone said Griffin's IGL said that they thought they would lose against us. I think I read like a comment like that as well. So I mean, I don't I know. can see where he's coming from because, to be honest, apart from Icebox, I never gave them any chance. I said कि 2-0 होना चाहिए. If there is Icebox, Yeah. there is a potential to be 2-1, but I think even then G can adapt, right? Yeah, 100%. Like So we definitely should have adapted a lot yeah, faster and played a lot better on uh, on the maps. There's no two ways around Malav it. is I think. reading VLR forums. I don't know why. We all I read read VLR. VLR for I read VLR forums after losing, to, like, to see what people say about us, because that's like kind of like fuels me to a certain extent, like Yeah, Reddit, VLR, everything. But yeah. Godspeed No Namers has been thrashed few weeks ago by Paper X. Akash, score lines are very relative. See, you have to understand winning or score line is just a consequence. It's about the process and how you what your philosophy what your philosophy is and how you execute your philosophy or how you inculcate your plays to enable your philosophy. Just as I told you, see, every comp has a PSW, which is purpose, strengths, and weaknesses. So then it is all about inculcating those purposes, strengths, and weaknesses into your defaults. Executes are different. For defaults, that is how you play. So every team has that. Yeah. Just like that, no namers may have gotten wrecked by Paper X. It doesn't mean that no namers may not beat Paper X sometime in the future. It all is Yeah. very relative. You have to understand score lines are very relative when it comes to Like, Valorant. yeah. Like, what makes, like, what's a better way of putting this? Like, another anecdote, maybe. Yeah. Let me think. Maybe something from a regional scene, if I can find something. Oh, I can find now. And let me think. Yeah, I wanted to use something around Enigma, since like everyone loves talking about Enigma, like, because they've done a lot of good things. So what is something Enigma struggle with that other teams don't? Um, I'm trying to think, but nothing's coming up as of now. I don't know about Enigma, but I remember if you see about the comp thing, right? That sometimes the comp plays a role. And as far as 13-0, 13-2 is concerned, if you guys remember, Reckoning were once thrashed 13-1, 13-2 By by VLTA, yeah, by and then VLT. yeah, and only to come back in VCC and take one Yeah. map off them. Yeah,
and almost win 13-11 Icebox. They almost won, if not for very good. Sorry, talking about in-game stuff, bit of advantage. Yeah, And even is they were up 4-0 at one point, yeah. and then ended up choking. Can you ask Malav the reason behind the Omen pick? So in the current meta, we don't think playing Vipers single controller is viable for a team like us on Icebox, especially I'll give a better example. Like on Bind, how Hell would like to on Bind how you have Viper smoke up wall up at random intervals. We would do something like that, and like to just to play around. So I don't think so. We didn't think doing things like that were viable anymore. Like just playing Icebox solo controller, like to have a mid smoke and like your wall up at the same time. Like that's just And because of the yeah. Viper nerf, now you can only have it on for like 12 seconds, na? Yeah. So we'd much rather have some sort of additional utility to help around with. And I think Omens has been a great pick on Icebox. Like I love how he plays out on the map, True. and people like don't give him enough attention or like love. I mean, I very much agree. Omen can serve the role of an aggressive anchor, and his support utils are very good. Yeah, 100%. His verticality on Icebox S tier. His flash on Icebox also S tier. One way potential on Icebox also S tier. Yeah. The only issue with like what you can say is like in earlier like some of his smokes wouldn't fill like the entire areas, but now But now that's it also does, fixed. yeah. Yeah, so then there's also one there's Like personally, I like if I am like deciding a comp and I have full control over the comp, right? yeah Then I would go for Brimstone for like the brim. yeah, Okay, like a pure anchor for one area. but that's isn't only viable towards the A side or No, no, like B we side. I guess one way types you can करके. yeah, So on like the reason why I can get behind a pick like that is because if you're playing Brim B, right? Like yeah, plant denial has been such a strong meta on Icebox. yeah, I can definitely see why you want to do that. And plus, after plant potential with Brimstone can be insanely strong. Like how people exactly. would play with the Viper. So I see why you want to play a comp like that. But the reason why we picked the Omen over the Brimstone is because Omen offers a lot more in terms of controlling Individual as well. ability. Like the verticality thing beats Brimstone. That Yeah, is 100%. that is what champions Omen, and especially on a map that enables verticality, right? It Yeah, basically Icebox is champions the prospect of verticality. If you yeah. see all teams outside, like how Asuna used to play Reina, he used to Yeah. use the verticality so well. So Yeah, that's something we're trying to mimic as well ourselves, like to use yeah, the verticality with the Omen and the Jet to like get picks or advantage and like make sure that the opponent aren't ready to clear certain angles. But it didn't pan User out. joined your channel. Hello. hello. Stream chalo, Shaki, by the way, Godspeed ka. If you say anything, just say. Hi. Chalo, bye. User left your channel. Could you ask Mullah why they didn't ban Icebox when they know it's Griffin's best map? NN also didn't ban Icebox. Because we haven't had the time to prep out Fracture or another map like that we go to. We haven't And had the time to do that. I'm gonna move us to a different channel. User yeah. left your channel. You were moved. And also the thing is, Malav, Griffin's Icebox is a known quantity. Okay. Yeah. Griffin's fracture is not a known quantity. Yeah. So why would you go for the unknown instead of going for the known? You know how they play. They play very basic stuff. They Yeah. rely on mistakes. You'll very much be confident for Icebox rather than We were confident on Haven as well that we would beat them. Haven to But anyway you should be. yeah. But yeah, I mean, just And thank God the veto pointed out just like I told you. yeah. I saw Heaven Icebox. So we had the win rates and stuff. Like, so we wanted to have better side selection and all as well. So I Yeah. think that also panned out really well for us. For me, what was shocking is that they chose to go Haven defense first instead of going Haven attack first. Their Haven attack is the strongest attack side for them. So it was interesting for me to see them to save that for the last instead of just getting 9 rounds or like 8 rounds even. So But I'll be on honest, defense, they I got it. also thought the same, but then I came to the conclusion that Griffin might have seen that you guys were not fully confident in your place. Yeah. And to take advantage of that, they went for the more secure side where they can be more in control of the outcome of the Yeah. first half.
because they didn't want to give you that momentum, right? Let's say if they start an attack, they do their plays, it doesn't work out, you guys have your momentum back, you guys have your Yeah. mojo back, and then it's game over, because Yeah. that is all you guys needed Yeah. yesterday, nothing else. So if they saw that and did that, then I think it's good. But Yeah, it's good. But I think, like, if I have a strong side, I would have 100% picked it first to just, yeah, have I more agree. footing to play with. I agree. That is why I'm said, nah, I was also confused. But then I just Yeah. thought that maybe the Griffin IGL or someone was helping them might have said, ki, see, Global is not looking confident. Global are sort of Weakish. Yeah, you can say seeking. that. Also, they're playing desperately once they go behind. Yeah. Like, so we can take advantage of that. We can play a bit. Like, if you saw that defense, they were playing very safe, sort of like. I think the biggest problem on defense is we didn't disrupt the Killjoy util enough. Like, that's one of the problems we Very had against true. Very VLT as true. well. But we decided we had protocol around that. We have certain things to do, but it's just that in the heat of the moment, You didn't implement it, right? yeah, we didn't. And Yeah. like that, I think that happens with, like, I just don't think it's us. I think it's every team. Yeah, dude. Being If- unable to, like, If yeah, every team every team employed or deployed everything that was told to them by their coach or analyst or whoever, then to there's no there's no trouble. But yeah, then you're winning 13-0 every match. Ah. Like, you're not even, yeah. so Why not Astra rather than Omen to anchor B or A? Because Omen's verticality and Omen's flash are better than anything in this world. and Astra's smokes are already not that viable on Icebox, to be honest, because they're Plus, half. with Astra nerf, there is no way Hmm. we play Astra anchor out of all playstyles. Yeah, Plus, Astra star placement on this map is a little, like, wobbly. Yeah, yeah, if you compare this, okay, compare Icebox to Haven, right? Like, on Haven, you can still double star A lobby. Like, that used to be the way you play. But on yeah. Icebox, you can't double star a certain point because there is another avenue to get into the same location. And Now, especially. also you can still, despite the nerf to her stars, right? You can still take control with a single star, like smoking off the A entry and just using maybe a breach stun from A link, right? If they are playing breach along with in their comp. So there's still ways you can employ, like take utility from Astra's current kit, right? But Yeah. on Icebox, there is I can never see Astra That here. happening, yeah. Yeah. क्या एक्सक्यूजेस बना रहे हैं? वीडियो तो पहले ही होता है सर. आपने VCC फाइनल्स नहीं देखा शायद से कि हम हेवन कैसे खेल रहे थे उधर. Why don't I GE don't take think- garage control of him? Garage on the Icebox. Yeah. No, Heaven, sorry. Felt like they were desperate. Yeah, they were Yeah. getting desperate once they started losing rounds. They were sort of panicking and getting desperate, like making desperate moves. If you like, it was very evident for anyone Yeah, like 100%. half a brain. It's very evident that they were getting desperate. And I think whoever, like maybe if it's the Griffin IGL or someone, but whoever noticed that is good. And if they didn't notice that, they just went defense, then I don't know what to say. Malav is G looking to implement Brim or any map, or do you guys intend to go full Omen? Expect the unexpected kilobyte. No, Brim to very much. Dude, Brim is a GE agent, I'll tell you. Very honestly, Brim is a very G-esque agent. But you have to understand that there has been no time to practice as well, guys. So maybe down the line they will implement Brimstone much more. Guys, even if there's time to practice, like just watch last night's Cloud9 versus the Guard bind, right? They still Yeah. played Astra Viper. Like, Yeah. there was still double controller being played by both teams. So even they haven't had the best time, I guess, to implement. Yeah, sorry, I'm unlucky. To implement, I think, new comps. Yeah, very true. Which is why what I feel is like, obviously I have a special place in my heart for Brim. That is different. But Yeah. I'd love to see Brim getting implemented. Bro. Even before the buff and all nerf thing, I was very adamant that if you can play Viper Astra, you can play Viper Brim, you can play Astra Brim Yeah. as well. Yeah. And there will be teams who will implement that, but you need when you sacrifice something that is meta for something that is not meta, you need a lot of time to prepare for it. Oh, 100%. 100%. Normally, let's say you take a week for preparing a map, prepping at least a decent level.
If you're doing something off meta, you need double the amount of time. You need at least 2 weeks for that map, because for the non-meta thing, you have to realize how the meta counters that, because that is why it's the meta. Like, there is a reason the meta is called the meta. It's because it enables a certain style of play. So a lot has to be done for implementing something that is not meta. So, which is why you see Omen wala thing. And again, I would go back to this, Malav, the Enigma thing, right? We talked about The Sky Breach or the like their comps comps they're on, playing. yeah, their comps they played in the playoffs. They might work in the long run. Nobody's saying it might not. 100%. Yeah. But what we To saw was they switch, changed too quickly. Like, Yeah. so that's the thing. You cannot change everything too quickly. Icebox may, to me, Omen makes sense, and especially Playins was a place where you could experiment. To be honest, because according to me, GU is the strongest team in this group. We are the strongest team. Yeah. We should have been topping the group. Exactly. But it's hard to win the game when you're fighting against yourselves as well. Yeah, I completely understand. But what I'm saying is, Yeah. I think I can also get behind the fact that you can try and use these comps here to see the viability and how much you're prepared, or how much preparation it's going to take, how much additional preparation it's going to take, because I think you're the strongest team here. And like, even if you may not top the group, you are still confident you will go through anyway. 100%. Like, obviously, like now, like do or die, but I don't think there is any dying for us to do any games. So. Karthik Tripathi, thank you for subscribing. But dude, let's be very honest. I have full respect for Fancy United Esports. But again, as I said, Griffin, for what I said, Griffin, at least I gave them a chance, like on a map. Fancy United, their two cores are Split and Ascent, and G is better on Split, to be honest. Ascent is something like a goofball, because you don't know which Fancy United will show up on Ascent. Like, there are times where they play very well on Ascent, very strong, very tactically adept, and there are times where they just run it down sites, execute. Yeah, Malak. From what we've seen recently, they've just been doing like 5-man executes. Exactly. And the reason why they can go in for something like that is because if you look at the comps they're playing, like Astra Omen, Yeah. they have so much more utility to play with in terms of defaulting, and they have so much more Astra utility for like site execs and stuff that they can afford to do things like Yeah. that. So, which is what I said. it's Like, a viable thing. I but think it's also counterable. Yeah. So if they just run it down, things that can pose a threat to global. Yeah. But if they But we're play fully the prepared normal, to handle the yeah, regression. obviously you're prepared. But it's something that historically global has always. बीस है, हाँ, वो ऊपर नीचे कभी भी हो सकता है But किसी का. if they play in the normal way, like normally how they play, like taking some mid control, going a shot and all that. Yeah, that's a coding still been working on recently on Ascent. Yeah. Like the guard play basically. Yeah, Like, exactly. take a shot and then 6 p.m. Yes, guys. 6 p.m. 6:30. G's match on stream. Yes, every match is on stream. Every match is on stream. Every match will also be on this stream as well. मैं 2 घंटे की नींद में उठा हूँ, guys, only for you guys. Wow. I slept at 6:10 after watching the first map of Energy Rise. So I was trying to watch Cloud9 versus Bind, Cloud9 ka Bind. Then I was like, so I decided to go. So last night I slept in. So I'd gone through 4 maps. I wanted to go through 4 more. So I was like, maybe I'll do 1 or 2 more. So I was watching Cloud9 versus the Guard ka Bind. And then watching that only I fell asleep. I was like, no way I can watch anything more today. I was very tired after. True, man. I'm feeling tired now because of the lack of sleep itself. Yeah, we were talking to like what time did you end up sleeping? 2:30 का तो हम लोग बात कर रहे थे ना कल. I slept at 6:10. I told you. We were talking late night. Yeah, I was on my desktop till 5 o'clock. Then I went to my bed, fired up my laptop, watched Energy versus Rise first map, and then slept. Sleeping stream. Oh, that chair is back. नहीं है, नया chair है भाई. I think G didn't get proper time for preparation yesterday because like there were common mistakes which none of us. Exactly what I said. Like, हाँ, तने meta is equal to Mala Valley tactical analysis. Exactly. Wow. Sayan, that is very true, which is what we're saying. There are factors that led to that. But the thing is, the kind of team that G is, they will never, like, there are no excuses for losing. For a team like G,
against a team like Griffin, there you can find reasons, but there are no excuses for losing because that is just how good G is compared to Griffin. I am not disrespecting Griffin by saying this, Yeah. but that is just the truth, and I'm obliged to tell you guys the truth. It's just that Global is that much better than Griffin. Like even on a bad day, Global should be able to beat Griffin, which is why people are shocked. But which is why I'm so confident that even if let's say they've lost, I'm confident that they'll eventually get out of the groups. It was just a matter of topping the group. Like Oh yeah, 100%. That's the goal. maybe like you'd have gotten one extra day, Malav. Yeah. You have qualified today. Like you would have qualified today maximum. Yeah, if you would have qualified, like we get the extra day to prep, but like now like the day offs and stuff like that, Yeah. not what we are looking at. Like no day offs. No day offs, but you get one extra day of prep to compensate for the flights. Yeah, yeah. And But that is now the we'll max make up with it. advantage. Yeah, we'll make up for it with. Like, CU was insane, dude. So I tweeted yesterday when I saw Icebox picked, right? I was like, guys, you have to pay attention to attention and wire select, because from the streams that I watched, right, of Yeah. Griffin very early, and the notes that I had from like even a few months, like not months but a few weeks ago, I had noted those two players down as players to watch. And the first map, attention was very influential. I would not say he was like the star, but the second map, wire select and attention literally carried them. Yeah. The individual plays that wire select was like coming out with, it was honestly very good to watch. And wire select has a good gaming IQ. For people who just underestimate Griffin, like there still are players who have a very strong gaming IQ in that team. Yeah, I mean, setups and stuff. It's just that you guys are disappointed. And again, there are people who are saying, ki, oh, now what will happen to Velocity? Dude, the point is, just because G lost this match doesn't mean that that region is stronger than us. I still believe that our region is stronger than their region. And which is why I still back G to absolutely win and qualify. And similarly, I believe VLT will win against Oblivion, because there people are saying Oblivion, the Griffin beat GE and Oblivion beat Griffin. Like, so I think Oblivion. I think Griffin's Haven was better than Oblivion, but Oblivion just adapted better on the day, and Griffin didn't. yeah, I would say Oblivion feels to me more like a random team. Yeah. So if you compare the two teams, Yeah, Oblivion is like random, while Griffin is more like budget FPX style yeah, exactly. game. That's what I told Hellranger, before the map. Like these guys are budget FPX. Yeah, so which is why this is why I was of the opinion that Griffin is not to be taken lightly, just Yeah. because of the fact that their playstyle is very fundamental, and any Yeah. team that is fundamentally strong will pose problems if you have an off day. Yeah. So Oblivion is not Griffin. That is why I am confident that VLT का कोई वो नहीं है trouble, because Oblivion is a random team. Oblivion is more like your momentum based team, where Yeah. you give them momentum and that will like cause you problems. You don't give them Yeah. momentum, you continue to disrupt their playstyle and they can do nothing. Griffin is not like that. Griffin will find ways. Like Griffin has preparation, something Oblivion I fail to see in their matches, very honestly. Which is why you should also take results. You should not take results at face value. Just because Oblivion beat Griffin doesn't mean Oblivion is the better team. Like for this tournament, Hopefully we get to play Griffin again. you will get to play Griffin only. Dude, no namers are definitely winning. What's the next map? I haven't seen the video. I also. अरे भाई, Wait. World Titan कैसे दिखाओ? What if ONIC comes in Group D? SB and ONIC are really good teams. What you thought about VLT? Yes, Lemonade. Very true.
any team that comes in Group D, VLT will have to respect them. But to be honest, VLT have a very good chance of qualifying. This is just my opinion. I'm not saying like Then VLT are in VLT very safe hands should right now. qualify, but yeah, I mean, like what Wallab said. For me, very honestly, VLT has a very good chance of qualifying from the group. Yeah, and they're in very safe hands as well. Like, Yeah, yes, CA is gonna work his ass off. He probably is right now. yeah. So not scared about VLT at all. Haven is the next one. Yeah, so I think it's done. No Nemas 2-0. Hmm. See, the thing is, one thing I noticed in Griffin's play, and one thing maybe you guys somewhat missed out on, right? Which these guys are also saying, right? The garage control thing. That's the thing we've historically struggled with. I don't think this is the first time we're struggling with Yeah, Garage on exactly. Haven. Like against VLT also, we failed to capitalize on anything like that. So I just don't think it's just a Griffin thing. Like so if you look at how we've lost Ice on Haven, right? Like Yeah, we decided that we would use shock darts at B to break the alarm bot. We would use the yeah, aftershock to break the turret if we could. We would try and basically disrupt this setup because then people just go in for stacks, and that's basically what happened. Like every time we went into A, it's not a coincidence that they have Sky Breach and Killjoy potentially holding down the site. It's yeah, not. It's not a coincidence, right? Like that they're getting stunned, flashed, and Killjoy just swings out and kills 4. It's not a coincidence, right? yeah. But it's just that historically, as a team, we've struggled with something, and like while it does seem like a band-aid fix uh, would have solved the solution, it hasn't for us. Yeah, I mean, see, band-aids are band-aids for a reason, right? Yeah, Because they are temporary, and you never know when someone tears it off. Right? yeah, But yeah, so the thing with Griffin, you will notice in the NN game now, if NN do take garage control, Griffin don't know what to do. Like yeah, they just can't react to garage control yeah. because all of their like I don't know why, but it creates sort of panic in them, which shouldn't be the case. Like if you take Hmm. the case of ONIC for example, why Kappa break AJ alt in eco round? Why Kappa break AJ alt in eco round? Oh, okay. Wait, why Kappa didn't break Killjoy at any हाँ round? didn't होगा ना. Oh, okay. So that round was a horrible miscom from our side. There is no reason for Kappa to break the Killjoy ult when we have a breach on the team. Yes. There is no reason for Kappa to do that. Hell didn't call out that he had used his aftershock just a second before the Killjoy ult was deployed, and in Kappa's mind, that's what was happening. So Kappa thought that Hell will break the Killjoy ult and he wouldn't have to do anything. That's why he went in for kills. And then suddenly they realized that Then they realized that we had messed up. yeah. That's the calm in the situation. I mean, see, there is a reason why people are deterring from using Killjoy nowadays, right? Yeah, It's because that's why we Breach is switched to back in the meta. Cypher. Yeah, That's why we switched to Cypher on playing on it's Haven. because Like Breach is when back we in the switched. meta, and once Breach is back in the Yeah, meta, your Killjoy is useless. yeah. And then the I like so Mala, what I did was I have found alternative uses of Killjoy ult, right? Hmm. On Like attack. did you see one of the runs on how we had used it Yeah, on yeah, yeah, like the A, like get it to get A long and A short control, yeah, and then you like line it up with another ult to get the side control. yeah. So like how we had used it against VLT was we used the Killjoy ult to get A short A long by denying it by using the small cubby and A long, and then we breach ulted side to take A side control. So layering like that is something you can do. I think that's what you're talking about. Ask Mala why Rossi so much overheat. Guys, okay, if you tell Rossi to not go aggressive, it's like telling Mbappe to not make aggressive runs. User, how does my friend know? My friend is Mala Popat. He is the analyst for I Global was in the Esports. voice comms, Yeah. unfortunately. कल जी ने क्लीन राउंड निकाला ही नहीं, मर मर के जीत रहे थे. So that is what na they weren't as locked in. So it's Yeah. if you had to say. So I was talking about the Killjoy ult na malab. On Yeah. attack I can still see utility. Huh. On defense there is no place. I mean, look at what happened to VLT when they ran it. Like Vibur was placing ults so far back, like trying to get Exactly. control of the map. Like even on even yesterday, even against Griffin, like they placed the ult near Heaven Stairs to get like very less map control, and True. that doesn't impact the retake as much Exactly. as.
So, which is why I have seen attack is still viable. Defense, there is no good alt now for Killjoy. Yeah, there isn't many. Yeah. Okay, so Kilobyte, since you're saying Mbappe reference won't understand. If people understand cricket, it's like telling Rishabh Pant, नहीं यार, तू shot मत मार, तू slog मत कर, तू आराम से खेल, क्योंकि It's तुम like telling out Virender हो. Sehwag to not use his front हाँ, foot. हाँ, it's like saying, it's like telling, like I can't tell Rossi that, hey Rossi, don't go aggressive, don't play your natural playstyle because you're getting punished for it when Yeah. he's Rossi. It's like telling Virat Kohli to not abuse. Yeah, it's like this. And if I'm not trusting my star player to activate his own playstyle, then there is more things wrong than my star player not getting picks. Bro, user, I'm very sorry, मेरी G versus GFN वाली predictions wrong चली गई. मैं पैसे refund कर दूंगा. आपने बैटिंग की थी तो फिर आपकी गलती है उसमें. It's like telling Kilobyte not to be a 2 rupees analyst. The fuck, lol. Bro, Rossi aggression is good, but not over aggression. That's what I'm telling, bro. That's costing rounds. To be yeah, Ritik. Yeah, I Yeah, mean, so I but mean it's that's a good, part and but you parcel can of game. see That's it. that okay, over aggression is also good, but yeah, yesterday there were times when Rossi became desperate, and you Yeah, have to everyone understand. became desperate. Yeah, Not just Rossi. Everyone was exactly. desperate. It's like saying fire to don't burn the paper, just color it. Yeah, fire color, nice. Fire. Though controller meta on Icebox is overrated, I think it's underrated, Nitin, and you'll find out soon why. How is it overrated when no one's playing it? Yeah, and you'll soon find out why. It's just the beginning. It's just the tip of the iceberg. There is a lot of preparation that can be done, and to be honest, I am open to giving any team my comp and whatever I've built, and I'm sure if they like inculcate that, and even the Omen wala, I believe these are very viable, and these will become meta very soon. Like we said, right? Like C9 still playing Astra Viper, and Yeah, same for like Guard who are playing the Ascend comp. Like even though Viper is not viable, and you might see more teams drop the Viper in the long run, yeah. that doesn't make it that you can't play the agent. Exactly. So Viper's viability has decreased, especially on maps like Bind and Yeah, Icebox. The viability has decreased as a single controller and as an anchor, most of all. Because the whole point of being an anchor on Bind is that you can guard either hookah or your A shot alone. Let's say one angle, one entire area. But now the hookah size has increased. Your double utility, you cannot open both your utilities at the same time. So Viper is not as viable in keeping hookah control. So now you people will find alternatives, and now since people will find alternatives, now you can inculcate better agents rather than Viper. Go for a single controller. You can still go for Omen on Bind. Like you can, but I still think, like, given the verticality of the map, yeah, it doesn't help Omen in a single controller comp. true, very true. Which is why I've always Yeah, defended Brimstone on Bind, especially with the increase in radius. Now Brimstone can should they don't Brimstones don't have to hug U-hauls yeah. to smoke B anymore. So I think Brimstone now becomes very viable on this map, even more so than before. Especially the Stim Beacon makes him a super duper anchor if you know how to Yeah, play it. And his ult and molly have always been good. Like yeah. there has never been a doubt. Ask Mala why G plays Omen in Icebox. We've already asked him. And also one more thing about why we play Icebox. Hellranger has always been a great Omen player. I don't, if at any point I can be in a situation where I can have Hellranger go to a lot more of a comfort pick, or like a pick he's played a lot, I will do that at any point at any day. Very true, because I you will have do to that. understand Hellranger has to spend a lot of time micromanaging and IGLing. Yeah. So the more comfort that he has, the better it is for the team. And for him. And he can concentrate so much on Huh. himself, like fragging out ways. Why Rossi don't play like normal Jet, get a kill and dash away? Why? इसका जवाब तुम्हारे नाम में ही है. इजी है क्या ये करना? मतलब तुम खुद ही नाम देखो, तुम्हारा इजी है क्या? There is not one single playstyle. There are Jets who don't Literally even the easiest. they like
there are now there are jets that don't even dash into the site. They reserve their dashes. So there are multiple ways of utilizing your kit. Skills, fake teleporters, even that 1v2 was so well done, and It skills played so overall. smart. Me and Malav were talking as well. Skills was just sublime yesterday. And we spoke about why Skills was playing Yeah, so well. yeah. And that was, I think, I was really like he was hyped. Dude, but that is something we all need in general. Yeah, Like to have that player and that mentality yeah, for a coach or an analyst. That is all you need. You need yeah. players who will say, भाई तू जो मेरे को देना है दे, तू जो करना है कर, मैं मैं फोड़ेगा, मारूंगा, मैं हाँ, मैं फोड़ेगा, मारूंगा, मैं बस. कुछ भी करके खोलूंगा, साइड खोल दूंगा Exactly. मारने के लिए. Yes. इंडिया came from far away just to lose Ulmo. पूरा इंडिया उठा के नहीं लाए हैं भाई. ग्लोबल के 10 अरे बंदे गए भाई, हैं. एक मैप, एक सीरीज आ रहे हैं and सब पागल हो जाते हैं भाई. These are the same kind of people who are saying Enigma is the best South Asian team Yeah, so I agree. without making educated reasons behind. Yeah, I had the same like opinion, and I still said, even when Enigma, as soon as they picked their new comps, I was like, Enigma's losing, because see, I am very much of the philosophy, if it's working, why will you change it? Yeah, if nothing's broken, don't fix it. Yeah. And the same thing I called out Reckoning, right? For the same thing for TR. I'll call out anyone for that. I even said yesterday, Griffin Wala mein, कि Global would have won this easily if they played Viper Holocom. But the thing is, Playins are the best place to try this. Like, because they will now know exactly how much to prepare going into the group stage. And if they were in Group A, then I would have criticized, ki, oh, they shouldn't play this comp. But they are not in Group A, na? They are in Group B. Like, it's, if anyone can deter Global Esports from qualifying from Group B, it is Global Esports. Yeah, 100%. That's why I said, no, it's hard to win when you're fighting against yourself as well. Their own way, some can use as a floater, some as entry, some as anchor. Yes, Abhijit, very true. Why don't you become coach for Global? Global has an analyst, which is who is called Malav Popat. I am pretty sure I am talking to him right now. And Malav नाम का analyst है, but काम coach का भी करता है. खाली थोड़ा. See, the thing with analyst and coach is, a coach is also an analyst, and in the absence of a coach, an analyst is also a coach. When you have no coach, then obviously your analyst becomes the coach. It is. Do you think we aimed lift by ACA players? I don't think. No. I don't think it's. I mean, Golu had a horrible game. Otherwise, Yeah, he would have, like, everyone knows how he aims and how good he is. So I think Golu would, if Golu steps up. what Like was which SK season? Rossi's role in Blaze? Entry? No. That is the thing. SK Rossi was not entry in Blaze. Do you see what just happened? Can we get back to the match now? Yeah. The thing is, Malav, you arrived, right? हाँ, So तो फिर everyone, थोड़ा ऊपर तो yeah, वो तो he's पहले eager वाला to था. ask. Sorry for sabotaging your stream. No, but this is better. Engagement. If Malav is the coach of GE, then what about Rex Streams? True. True, Rex user. Streams is a myth. Guys. Rex Streams is a You myth. need to know that every analyst is a coach. Every coach isn't an analyst. So I'm very much of the opposite opinion, Abhijit. I'm like, an analyst can be a coach, but there are certain characteristics of a coach that he cannot altruistically replicate. Yeah. For that, he needs experience. A coach is an analyst just pure out of experience, because he has done the job of an analyst already. Like, I'm talking about present coaches. Let's say MCE. You talk about Mikes. You talk about anyone who's been a coach for, like, who's been in the game for longer than, let's say, 1 year. They've already done the job of an analyst pehle, because there were no analysts pehle. There was just coaches. So I'm of the opposite opinion that an analyst needs to learn how to coach. A coach has always known how to analyze, because that was their job. Like, because there was no specialization pehle between a coach and an analyst. Yeah. Like, YB is not an analyst, but he's a coach. But again, Antidote said even in a coach there are divisions, that he's a performance coach. He's not a strategic coach. Yeah. So yeah, that's different.
So that is even more going into sublets of coaching. तो completely अलग बात है. But see, the thing is, I very much agree with the fact that global, like, it is better for them to hire an analyst because Hellranger is someone who likes more control over things, Yeah. and like an analyst like Malav makes more sense because Malav will provide him with every equipment in his arsenal, and then all Hellranger has to do is like what the IGL is supposed to do, but he has all the data in his arsenal, which Malav helps him with, Yeah. and like they don't need a coach because in game, Malav as an analyst will also have a bird's eye view. He will also see the problems that a coach will do. Mm-hmm. If it was, let's say, another team, I would say like yeah, if it wasn't Hellranger as the IGL, I would say yeah, they need a coach. But again, Hellranger is someone who likes control. It's just like Boaster. There is a reason why Yeah. Fnatic coaches left. Wait. Every coach would be performance coach for strategy. You need analysts on a coach as the game is new. I think that's wrong. Straight Hmm. up, I'll be honest, because what a performance coach means is someone who's in charge of motivation, comms, and making sure that Yeah. the mental and stuff is correct. Yeah. While a strategic coach is someone who's in charge of strats. So if everyone is of the thinking that YB is making new strats, then I think that's wrong, because Anti himself said in that not interview, right? That Yeah. iska काम yeah, क्या है उसका, what is it काम? Like work ethic and stuff that he Yeah. brings to the team. So it's a lot more different, I think. And an And analyst, like if you come for CS, like an analyst isn't in charge of making exactly. strats. So yeah. And the thing is, an analyst may make strats, but a coach, a normal strategic coach, will be in charge of how of dictating how to implement those strats. Like Yeah. an analyst will come up with data that see this works, this doesn't work, this is why it works, this is why it doesn't work, and then it is up to the strategic coach to employ it in their current strategies or to make a new strategy that fits the team. An analyst is not going to worry about a strategy fitting the team. He is going to come up with potentials that can fit the team, and then it is the job of a strategic coach to find out which one fits the team. If you Yeah. have those three, if you have divisions in coaches and analysts, like if you Yeah. are a team that can afford all that. गॉडस्पीड कप्पा ए पे बाहर आके रिकॉन क्यों यूज करते हैं? That that I must say is a horrible thing that he did, and he was like like the first thing he did was that apologized for that, Yeah. and he used a word that I would not like to repeat on stream for himself. Do you think Indian teams have attitude issue with coach? That's why they're not hiring coaches? No, that's untrue, because we've been trying out since coaches for a long while. Yeah. So if we And didn't want to hire a coach, we wouldn't try out with a coach, and we were very serious about playing with a coach. You guys know how serious we were with Ewok, but the team just wasn't comfortable with the style of coaching Ewok brings, and that doesn't make Ewok a bad coach, because if you see where Ewok is with ONIC, I mean, they've shocked the entire world. the thing is, Ewok is not someone who adjusts. Yeah, From you what could I've seen. say so. So there are two types of coaches, as in pure coaches. Someone who has his own separate philosophy and he will not deter, like Marcelo Bielsa, if you say. Like he has his own philosophy. Wherever he goes, he will implement that only. Because he believes that is the correct philosophy, he is not willing to Right. adapt. And Yeah, I then can get that. and then there is the other coach who will implement new philosophies based on how he sees the team is, how the players are, their capabilities and everything. You're of that kind as a coach, right? Yeah. Like you personally? Yeah, very I true. think we discussed this, like when we were talking about your coaching style. Like when I was supposed to do ROG Academy, you were like, take some time to like observe how the team functions, Exactly. and then you like go out and Because I think to be a successful person, see, there is a reason Marcelo Bielsa doesn't have titles. He has respect, but he not sure who doesn't. that is, but Marcelo Bielsa is an Argentinian manager in right. football, I've and been following. he's I've been revered as yeah, as a legend in the managerial right. department. Got that. But he's never been successful. It's because of how he is. It's because of his approach. He has a very pragmatic, direct approach and a very one-dimensional approach to things. Enigma got YB at that time. Only VLT and GE should have hired. I know GE tried, but you need a good international coach that understands the SEA. How much of SEA, not even SEA, how much of SEA did YB understand to beat regional Is the competition? other person Blay? No, the other person is Malav. Guys, can someone add Malav here, please?
Yeah, like how I don't know how you cannot differentiate Blay and Malav in terms of voice. It's very I think, like in all respect to Ivy, but I think people have overhyped him a lot when he maybe yeah. first joined Enigma. I didn't know he was a performance coach first of all. And yeah, maybe. And the thing is, I don't know. you are saying international coach that understand C, but international teams are pursuing Indian coaches. Then what? Like, I mean, ये क्या है? ये क्या दोगलापन है? बंद कर दें हम सब कुछ, छोड़ दें, माँ बाप से माफी मांग के वापस काम करने चले जाते हैं. Dude, there is no such thing as Indian or international, local or international, regional or international. It's just about your idea and how good you are. And to be honest, Yeah. I say yeah, there are only a few in number, but we are as good as international coaches. Maybe not all international coaches. There might be so many international coaches that are better than us, but I'd say a large proportion of whom you think are better than us are not. This is what we discussed, right? Like, Yeah. people think international coaches are better than us just because the fact short Vera, because of the region they're from. Just Dude, that's the thing. It's because we have a region bias and a racist bias as well, racism yeah. bias as well. Whatever Shinobi did to G, G looked way more disciplined in LCQ. Arey, Shinobi is the god. He is someone I look up to as well. So there is no way I will be able to replicate what Shinobi has done because of one, how smart Shinobi is, and two, what Shinobi has done with the team he was on when he was playing professionally. Exactly. I can't replicate that success, and even if I'm able to do like 2% or 5% of that, I will be a happy man. And the thing is, you have to sometimes understand that Shinobi turned out to be a good fit because he was someone from the second kind of coach that I said. Yeah, He didn't bring his own philosophy that you have to play this way, we'll do this, we'll do this. No. He's just streamlined what Global used to do and refined it. yeah, If you saw the 100%. place. That will work for every team. See, this is why I say the second type of coach finds more success than the first type. You can see firsthand in terms of Shinobi versus Evoc, let's say, for Global, right? Yeah, Very honestly, because the first type of coach, the pragmatic, direct, or the one-dimensional thinking coach, it is very hard to find the perfect fit for him in terms of team. And yeah, even if you find over time, that team will also get bored. yeah. And then you have to continuously make roster shuffles, changes to keep the philosophy intact. Because they 100%. will start deviating from the philosophy. Because everyone has a limit of adjusting. You Yeah, can never be like it can never be a one-way process. Adjusting can never be a one-way process. Shinobi, Malav is Malav. We should gang up and remove Rex Dreams as he took Malav hostage earlier. True. Why don't Why you do you guys guys hire hire Shinobi? Shinobi? Shinobi is Shinobi also is very working for interesting. someone. CLG Red, the CLG female team. क्या ब्रिम ऑन हेवन वेरी ट्रू वाइबल है ये वॉचिंग ग्लिच हो गई है मुझे 98 दिखा रही है भाई कोई बात नहीं थर्ड 114 दिख रहा है मुझे 114. जो भी हो भाई नंबर से क्या फर्क पड़ता है गाइस वी आर ऑल हैविंग अ गुड टाइम गॉडस्पीड का दिल उससे बड़ा है. we are talking to each other we are having a good time we are discussing actual important stuff rather than fucking talking about who's friends with who and किसको क्या खाना चाहिए किसको नहीं खाना चाहिए Shinobi's with you. Yeah, so again, so I that is why I said there will be many coaches who are better than us, but a large proportion of coaches that you think are better than us are simply not. And I have been told this by through first-hand experience. The teams that I've helped, the teams that I have been talking to and trying, like earlier, they have told me that they have faced disappointments with many known coaches. Like they tried out many Yeah. known coaches, but they were disappointments. So it's not entirely true that you need an international coach. Maybe I'll be a better fit for VATG or someone. But Like, yeah. Go on. Sorry, I yeah, don't want to but cut you off. the philosophy that I have, I always take a 7 day session, like Yeah. which is genuinely free. And if I have to work somewhere permanently, I will always take a 7 day session. And what I'll do is in those 7 days, I'll find out if the team is comfortable with how I approach the game, and if I am also comfortable with Yeah. with how the team is responding and reacting to things.
And Like if think about no, go on. yeah, and if we are a perfect match, then yeah, it's yes, because I don't want to waste my time, and I'm pretty sure I don't want to waste the players' time as well. Yeah. Yeah, you were saying, Malaf? I was saying that like Zonic, right? Do you Yeah, think he would have been the same level of a coach and had the same success if he wasn't on Astralis? exactly. Like maybe on Vitality he doesn't get the same level of success. Then you can't say okay he was a bad coach. When with Astralis he's literally created an era and the best team to touch CS:GO, right? Yeah. So yes. Dhaval LF Kidwani, problem with Indian coaches is that teams will not have, that will have, not us, is that they lack international tournament exposure, lack of achievements. But knowledge doesn't come from international tournament exposure, it comes from sample size. And lack of achievements is very relative because you see any VCT champions, that is their local. Why is any VCT greater than any, why is any VCT champions greater than VCC champions? They are both champions of their own region, right? yeah, like competition might be different, but yeah. Yeah, but it's Oh, at the okay, end of there's the an day. interesting question in chat. LF or Amatras or Omen for VLT? I don't know, man. To be honest, I feel I thought like, I think this meta actually like helps VLT so much. dude, They can go Brim. back to old VLT. Yeah, Brim. First of all, Amaterasu breach. Amaterasu breach and Brim combo. Like there is so much, dude. And Helef Cypher, so you can put Helef on Cypher for a lot more maps since you don't necessarily need to run Astra. And then ASSOA, so yeah, so Vibor Omen for me. yeah, and the beautiful thing about Vibor is flex. Like flex Yeah, as in yeah. actual flex. He can play so many agents because I think his knowledge is very like Vast. thorough in terms of, I mean, he made the best of the time that he was benched to like, I understand so yeah. many agents properly. I think so. रिज्यूमे छोटा है बस हमारा स्किल कम नहीं है वाई बी इज डूइंग व्हाट सिद्ध यूज्ड टू डू भाई सिद्ध मैनेजर था He was manager. परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं था सिद्ध आप मतलब क्या Okay, बोल so रहे हो थोड़ा तो सोच के बोलो Ace leaked Vibor is playing Omen, so yeah. Vibor is playing so we are correct right Ace league as in where I think Ace streams now from Chennai, so you might have seen his oh stream. I thought Twitter या कहीं पे Yeah, can we almost. see Merzel in APAC no Has he Vibor traveled with the team? I'm not sure about that only. no I don't think he is Godspeed I appreciate what you do hope you coach great teams and you will but I am just pointing out facts that teams take in consider yeah so that is what that is Again, why not a BRB. yeah, that is why Dhaval, I'm saying everywhere I offer 7 days. Like I'll offer 7 days to any team that give me a tryout. Let us try things out. If it works, why not? Like, and to be honest, I've gotten really good feedback from the teams that I've helped and I've grown as well in the past 3 months, especially when I've expanded my universe, so to say. I now have helped over 150 players in a team environment. Okay, which means around more than 20 teams. And the sample size. Focus on the game, bro. Okay, Sachin. Thank you for pointing that out. We will. Marzel might play Brim. He was grinding Brim in rank. He's not there, as far as I know, in the boot camp. I think he's supposed to come before the group stages. Who? Marcel? Yeah. Okay, I didn't know that. Sid was manager and hype man. Exactly, Abhijit. So hype man And and professional trash talker. what was the eligibility criteria to become an analyst? Just get good. I mean, I mean, I don't think there's an eligibility this thing. Like I personally didn't think I was good enough to be with GE, but I tried out for the team, and yeah. If so, Vibor plays Omen means VLT dropping double duelist in maps, untrue. Completely false. They played Amatras to Reina. yeah. They can do that a lot more if they want to, and I think it's viable. I think Amaterasu is very comfortable on KO as well. Yeah, And 100%. Breach and all. If So, you're yeah. saying double duelist, नाम के दो duelist, like game में अगर तुम duelist click करोगे तो क्या हाँ आता वैसे है? हाँ So those are like obviously your Jet Phoenix, Raze, yeah Reina, this thing, Neon and stuff. So if they want, they can still play double duelist because Amaterasu has showed that he can play Reina, and Amaterasu is a duelist main, exactly Phoenix main. Phoenix main, yeah.
So guys, Sachin Bish just told us to focus on the game, and yeah, Malav, please let I us don't want. focus. No, you cannot. Uh, Chat, VLT does have a guys. second First, duelist. check Opal on Twitter. I said you can't go into the groups where teams for your region are already there. Like I said, okay, then that's good. But another thing said playing a duelist and IGL both is sometimes, yeah, sometimes it's tough. How do people IGL and But there, duelist? yeah, go on. Yeah, please, Malav, take it away. I'm eating some papaya. No, so what I was saying is, if Amaterasu feels uncomfortable IGLing as a duelist, if he's playing the Reina, uh, we know for a fact that Helef and this guy, what's his name, Ace have taken up like part of the IGL responsibilities on certain maps and have done so certain times. So those two will be in charge of stepping up if Amaterasu isn't comfortable calling on Arena. True. So if you from CS:GO, what was it? Was it uh MIBR? What was the last team Cold Zero and Fallen were together on? Yeah, might be. So on that, I clearly remember Cold Zero saying, "I call on 3 maps, Fallen calls on 3 maps." Yeah. So systems like that, like, are still, I think, extremely viable in Valorant because of how much of a difference there is between maps. Dude, even in India, entities, I used to call a nuke. Yeah, and Entity's nuke was insane, wasn't it? Hmm. Yeah. Yeah, Matrasu. See, again, what you guys feel is an international bias because you feel they are better, and I get the point, but I don't think that is the case. Just like you guys are now comparing Amaterasu to C IGLs, is he better, is he not? The Yeah, you region doesn't compared. matter. Yeah. See, as an IGL in Valorant, it's so much harder to rank IGLs because first of all, not many IGLs call out of a strat book in Valorant that I Yeah, know of. All 95% of calling is done mid round because in Valorant there are so many variables and so many factors. Like if you have, let's say, अगर तुम लोग बोल रहे हो कि हम लोग A hit करेंगे, B हेवन खेल रहे हैं हम लोग, हमको A hit करना है, but हम A link extended A hit करेंगे. Like B CMI jet player will dash A link and we'll do an extended A hit that way. There will be so many things that can completely change how you approach that round. exactly. Like one killjoy molly can stop how you approach that round. Dude, one KO knife. One KO knife पूरे टीम को खत्म कर देगा, एक KO knife तो. Yeah. So there is Bolu so didn't play up to many. his potential. Yeah, Yeah. yeah. Have GLT and VLT tried any Indian IGL? अरे IGL तो Indian ही तो है हमारा. Players ही सारे इंडियन है. I think he meant Indian coach. I don't think so. They have 2 Indian analysts. And the thing is, guys, I'm not okay. So one thing, I'm not saying me, Malav, and CA we are better than others. We are not. Yeah. Everyone I'm suits a saying team try differently. us out. Okay, just like my philosophy is try me out for 7 days. If it works for both of us, it's okay. If it doesn't, we will both learn from it. Yeah. There's no harm in trying things out. You can't just like you can't just outright say we need an international coach because you've never seen what a coach can do, and you now that we've actually seen what international coaches do, the entire spectrum of it, I think now the spectrum should be wider to include coaches like us. Like, A lot of them are paycheck stealers, guys. Don't worry. to be honest, I can't name and shame anyone, but there are many I could. And Everyone. Like, this is straight up from the horse's mouth. I'm not making this shit up. If I would name anyone or say anything, they could put Elephant Chamber and use him as a suit. they See, are putting Elephant Chamber. He's been grinding it so much in yeah. Pugs. It's pretty And obvious. again, see, the thing is, you see it at face value कि मैं ये change कर दिया, मैं ये change कर दिया, हो क्या? Again, as I told you, every comp has a purpose, a strength, a A weakness. weakness. If you change, let's say, And a a counter. cipher, yeah, counter. I came in a weakness, right? Because Acha, weakness, okay, you put it in weakness. yeah, Okay, I think, like, I would put it differently because, like, the difference, like the weakness of a Sky Breach comp, like, you could put it together. Like, the weakness of a Sky Breach comp is information gathering.
So if Like, I'm playing defense or attack, I will play a lot more aggressive. So that's hmm, the weakness of a sky breach comp to me, and the counter. So you can, I understand why you put both together, but yeah. like I think I would, So yeah, I like think I'd that go makes back to sense. accountancy for this. There was a phrase. There is a phrase. So I'll just rephrase it in that sense. Every counter is a weakness, Yeah, but every that's weakness is not a counter. so that's what if you look at Yeah. it differently. So which is why I wrote na ki this is my version of a SWOT. I Yeah, don't think SWOT belongs here. Like people fair who do enough. SWOT, I don't think SWOT belongs in I here agree. because you need to interpret purpose. Purpose is nowhere in SWOT. How will you inculcate purpose in a SWOT thing? Because purpose is something subjective. You will bring it. When you talk about SWOT, you talk about objectives, right? Yeah, So you cannot include purpose into the SWOT thing, which is why I came up with this one, which is purpose, strength, and weaknesses, where you find out the purpose of your form and what you are meant to do, and the purpose will drive the default should drive the purpose home. The strength, the what I naturally select is whatever the strength is of your comp, the default should accentuate or enable you to use that strength, and whatever the weakness or counter is, you have to ensure that your yeah. default is covering it up. Correct. Very true. It's a very basic thing. This is Uh, yeah. go on. So this is No, no. why we can talk all we want कि हम इसको इस पे डाल दे उसको इस पे डाल दे हो गया. But one single rule can change the entire diaphragm of your tactical structure. Yeah. Yes, Malav, For, you were for saying. for me, CA should just stick to casting. Just my thoughts. कौन बोला There ये? was this is Bharat R said that in chat. One, you guys don't know what work CA has done as an analyst. How can you say you should just stick to this thing? Two, CA has a very clear goal in his mind is that he wants to take an Indian team to a Masters, and he's not going to be able to take an Indian team to Masters without being a coach or an analyst. I think this is straight up weird for you to say that. Like And CA का analysis किसने देखा है यार? Like who has seen how good he is as an analyst except on when he's streaming? Like have you guys and seen how he functions in a team environment? and three guys L plus ratio. Okay. Very sorry, but मेरे को ये करना पड़ेगा because see This these is are straight up nonsensical untrue. statements. Straight You up guys don't untrue. know abilities. Okay. You guys don't know his ability. Okay, maybe if you saw his ability and you thought he was not good enough, I would give you that. But you haven't seen him. Yeah, you haven't seen his strength or like what he's good at. Like I haven't seen it. Godspeed hasn't seen it either. How CA works in a team environment. So I True. think it's straight up weird to say that he should be But we still stick to trust the fact analyst. because we talk to him. Yeah. We And have and ideas that we bounce off of each other, so we know that. and ASA and the VLT team aren't dumbasses to suggest Anna that we should take CA, right? Like they know how good he is. That's why they are working with him again, right? When they need him, they asked him to join them, and he See, I'll did. be very honest. Uh, G wanted Malav, G took Malav. yeah. VLT wanted CA, VLT took CA. By that Yeah. logic, I am not good enough. But वो untrue है because your coaching style will maybe suit another team better. No, but I'm saying, see, so in that case, CA is better than me. Yeah. And if you think I am good, then why are you thinking that CA is not good enough? By CA को कौन ये बोला CA is a great हाँ ना analyst? यार, Exactly. CA like sweet guy, bro. Like that guy. Like recently, like you tweeted out recently, ना? You tweet like when VCC में सब कुछ groups का हो गया, हाँ. and like people were giving him hate. I'm like that guy's trying to fix the situation. वो बेचारी को क्यों मार रहे हो तुम लोग? उसको चाहिए कि सब कुछ अच्छा हो. वो fix कर रहा है और लोग जाके उसको गाली दे रहे हैं. It's because Which is CA had to leave because of conflict of interest, not because VLT wasn't satisfied. हाँ तो no one said कि CA left because VLT wasn't satisfied. Yeah, CA found okay. So at that time when CA joined NODWIN Gaming, he thought for him the goal was to grow in SE as a caster. It still is the one of his like primary goals, and NODWIN was a better way of reaching that target. Yeah. CA be like मेरे को क्यों तोड़ा? Exactly. हाँ. Internet police become Enigma's coach, two coach better than one. फिर वही बात. See, I'll be very honest. I can't offer myself to you or any team. I'll be very honest. If you think of it as an ego thing या जो भी, you might. This is my approach. I will never approach a team saying मेरे को ले लो.
ठीक है? Wait, VLT contacted you? No, कौन बोला? Someone in chat said, yeah, read Rahul Gaming's message. कौन है राहुल गेमिंग? Anna, one day that he contacted Godspid there. I have cleared this up with Anna. Okay. First of all, I didn't want to message Anna because I didn't want to disturb all of this with nuisance. But I was getting so many DMs and messages about it. I finally contacted Anna on Instagram. I asked him. He said there must be some confusion. We've never tried to contact you. Okay. So first of all, this is like this must be some confusion. Okay. Casters and Mana said that his casting was a exposure. I have rethanked it. So many people don't know this, but he was an analyst in LOL. Yeah, he came from League. Even I was the caster to start with. Yeah. So by that logic, I should stick to casting as well. No, but the thing is, I'll say, matlab, casting का some people might have the opinion कि caster analyst क्या करें, ठीक है? And also, casting is of two types: play by play and Exactly, color. color. So like yeah. मतलब he was ASMR always करने color. बंद करने बोलो, क्यों भाई? अच्छा ही तो कर रहा अरे है. नहीं, मेरा my nose is blocked, so if I Yeah. try to clear my nose, उसके वजह से, so sorry. I'm clearly the best analyst on the show. Everyone's name beside. Yeah, true Vortex. True. Anna said that he contacted. नहीं राहुल ऐसा नहीं है. अभिजीत Anna said it took CA as they used to see in their past comfort. Otherwise they have taken Godspeed. Anna's words बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला अन्ना ने. पहली बात, ठीक है? You have to stop these things. और दूसरी बात, मैं एक सही बात बोल रहा हूँ. मैं जो बहुत बोल रहा था वो कंप्लीट करता हूँ. मैं किसी टीम को नहीं बोलूंगा कि मेरे को ले लो, ठीक है? I am of the opinion that I will work hard and hard and hard. Dude, I've been sleeping at 6 o'clock because I've been just helping teams out for the past 3 months, 2 months after Arrow. Because I am of the opinion that no matter how good I am, I strive to be better. And if there is some team that sees that I have worked hard enough to be better or to be their coach, they will approach me. Like only I know how much I've improved in the past 2 months because of the sample size. I have now, as I said, coached as in held over 20 teams. So every team, every player in the team had a different approach, different problem. And when I actually had an opportunity to solve those problems and attempt to solve those problems, my sample size, my knowledge, my experience, everything increased of how to deal with those things. Now I have a wider base of problems I can identify, rectify, and eliminate. Yeah. Coaching is all about experience. And you asked about the difference between an analyst and a coach, right, guys? The thing is, an analyst experience doesn't matter that much. Analyst is more about data and HISAB. Coach everything is experience. You have to deal with situations that are way outside of your control or whatever you have experienced. It's like preparing for an exam. You can just prepare theory. You can prepare you can practice maths questions, right? But you will never have the same maths question appear in the exams unless you're going for state board exams. Unless you're going for state board exams. But that is true, right, Palav? So you will never have the same exact maths problem, right? Yeah, I understand why you say that. So which is why all you can do is prepare, and the more you prepare, the better you get at solving like the problem solution part of it. Coach me, please. हाँ तने ठीक है. Once you achieve something with the team you're coaching, then you get knowledge. Is it right? It works this way. Can I answer this? Yeah. To a certain extent, I agree with this. Let's take a very recent example, right? MCE. Yeah. He was on complexity, I think, before this, right? What was he on? What team was he coaching in Valorant before Guard? Oh yeah, I think it was complexity. Yeah. Yeah. So on complexity, people didn't rate him very highly as a coach, but you guys understand. But everyone understands that he's a god coach now, And he's been a god coach since CS:GO. It's just that people don't know him. Even when I tweeted he was about coaching Chaos in CS, Chaos को किधर से लेके गए थे? Chaos best CS team, ending में में. And the thing is, I remember I was raving about VLT getting sessions with Elma Pudi, VLT or someone, right, from TEC, whoever won Genji ke saath the session. And there were people. Oh, Genji as well. Lol, I forgot that. Yeah, and then people were like, check Opal Suite, confirms that. Nice Anshuman, thank you for the information. I trust you.
So that is very good news for us. So that means we So still no have a GVLT chance. same group. Yeah. And the thing is, I had like people spam on Twitter saying you don't just because he's an international, you just hyping him up, don't overrate and all this. I was like, dude, first of all, it's an opinion. Okay. Second of all, I know just how good Elma Pudi is because I've been following him. I'm not just someone like who's hyping someone up just because he's international or he's coaching Genji. I have followed Elma Pudi for a long, long time. Even before he was an analyst, when he used to put out videos on YouTube, I've been Yeah. following him from that era. So don't you come at me telling me who am I to judge or anything. I've followed him for a lot, and I will stick by my opinion because I've seen how good he is. Yeah. Also, we should carry on. We have two scrims to go Oh, to, good luck, so man. I'm gonna go for that. Thank you everyone for having me. Thank you Godspeed for having me. Arre. And You yeah, come have a back great whenever stream. you want to. पक्का पक्का पक्का. Just ping me. आज जीतेंगे तभी आऊंगा मैं Yes, stream yes. पे. Pakka. Okay, चलो bye. Chalo, bye. Disconnected. Yeah, Elma Pudi YT channel is pretty good. Yes. GL Malav. Yes. Everyone should wish Malav जीतेंगे. Nice. So guys, वही बात है. Analyzing matches after they are done is very common and simple because we know who is where. The court is allowed to exactly who's coming at you. No one's happy. It's like people are saying कि people should get international coaches, which is where I'm saying कि it's like that is just racism bias. That is just color bias that you want. It's like Kappa said ना कि brown चमड़ी का कोई value नहीं होता. No, that's what I intended to import from the street. You might want to check it. Okay. ऊपर क्या हो गया अंकित को? ONIC locked the first decade. Looks like searching the same GA and make it out. The chances to get into group T. इंडिया में इतना टैलेंट भरा पड़ा है. एग्जैक्टली फनी और फनी तो है. कप सेट ब्राउन स्किन का एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता. एग्जैक्टली अभिजीत. सैपी स्ट्रीमिंग व्हेन अगले जन्म भाई सैपी स्ट्रीम में बिलीव नहीं करता. कोई दिन कुकिंग स्ट्रीम जरूर करें. एंड ऑनेस्टली कीप सेइंग एन एनालिस्ट जॉब इज इजियर मोस्ट ऑफ द टाइम देन अ कोचेस जॉब. Yeah, see again, it's a biased thing. I'll be very honest, and Malav will also agree. Everyone will agree. An analyst will always believe that he can do a coach's job, and maybe he can, maybe he can't. That's no problem. I'll start cooking stream. Yes, exactly, Safi. We all need that. मैच दिखा भाई दिखा रहा हूँ. सॉरी टाइम आउट था. मेरे को कुछ चेक करने बोला क्या? Arikian. Guess who we are scrumming right now? Who? Griffin? मजाक कर रहा हूँ. They're still playing. Would see how they are taking control of mid and garage. See, like Griffin had to adapt and PRX. Nice. Guys, please guess. Hint तो दे दो. की हाल जॉर्ज स्पीड. Hello Shitej. Messenger. Okay. I'll open it on my phone, so these guys can't see. Oh, nice. Messenger who? Messenger is a new team, dude. Few more orgs are coming, hoping they'll approach you because we want more competition than just top 4 teams. Maybe they will, maybe they won't. I'm not saying I'm looking. Range hard का max score बताओ भैया. 24. Leaks दो God. कोई leaks नहीं है मेरे पास. Don't you think best teamers can win easily? No. You can see that full sense and APH lost to ONIC. So it's a 2v3. They have 9 seconds. He's looking to delay them coming. Yes, in reward, which is good now. But they smoked them off. Let's see what. Okay, they're returning, which is good. So this was a good attempt, even though they will lose this round. And this was a good attempt. So you use the brim molly
to cover up the area. So even if they come, they'll receive a lot of damage and they'll whittle down. Normally, since it's an early plant, so they'll reserve some time. They'll like to waste time, and then eventually, when they before they come, you'll get to dodge the KG ult and come back from the cave. So, which is a good thing. It's just that Ace was very quick to get a favorable angle here. I think Guilty might prefer Brim or Omen as the playing fracture nicely. Maybe. Region बता दो Godspeed. Region? हमारा ही है भाई, region हमारा ही है. Please इसको time out दे दो webcams वालों को. Net APAC is 4.04. Any idea why? June. VCT will be played on 4.03. I don't think VCT will be played on 4.03. ऐसा कुछ आया है क्या? Was going to Masters from APAC. For me, I think there are many dark horses. Paper X for one are almost certain for people, but I'd say now they stand a good chance. I'd say Bleed is very X, like they are sort of the X factor because we don't know how they'll perform within Maxi. As far as I know, on scrims they've been on fire. We have all protein pulpit visitor scrimming on 4.88. Nice. So I'll say PRX and maybe NOS. Boom looking good, yeah, but it's very difficult to name two actually right now because I don't know about Bleed. That's the problem, and I think there is a very good chance Boy with Love or Bonkers can also surprise because again, you don't have a lot of data for on those teams. Zorgia, no, I don't think Zorgia can, like, very honestly qualify. Maybe they'll finish third. Sergio is someone I think. Don't you think Griffin plays only on aim and they have no strats? Griffin has strats. Griffin has basic strats. So sometimes you don't realize that they are strats because they're just basic. Why would they play APAC like old version for the fundament? I don't know. Like we'll have to confirm this. TH teams, yeah, TH teams. Full sense maybe if they qualify, but now they're not even guaranteed to qualify. Also, without Superbus, they kind of look lost. MITH might be an X factor, depending on who they get in Group A as the fourth team. And Georgia might be third. Like, is it possible for GE to move to South Korea and participate in the tournaments? I think that is something they discussed. Chance of Fancy United against GE. Fancy United chances, I'd say 25%. Don't you think VCT के लिए circuit points होना चाहिए? VLD and GE last 2 times to top 2? No. Circuit points are always there for the main event, not local events. Main event for that region. I wish to get into them, Vishal. Follow DDK. Follow Daniel Kapadia. Okay. Follow MCE. Follow Mike's HD. Okay. Follow the coach of this. Who that guy is? I'll tell you. Some Philippine coach. I'm forgetting his name. Coach Brian or something. Circuit points are for APAC. Yeah. Yeah, Varun, very true. Indigo is wishing Anna for future matches. Damn. Imagine send Mike's HD. Yeah, but I think so. Someone already took Mike's HD, na? If I'm not wrong. Lothar bhi achha. Lothar is good, but yeah, Sleepy doesn't do a lot of tactical stuff. Even I don't post any much like tactical stuff. And then तो heaven में बड़े वाला glitch यूज किया था पहले मैच में अगेंस्ट फैंसी. अभी तो ये सब अलाउ हो गया है यार. I think because Latin America में भी and NA में भी ये हुआ था and they allowed it. Love Singh, I don't have a team currently. I'm currently coaching a team, an EU team called Ignite Esports, and I'm trying out for teams. अच्छा ये अभी भी rebellious वाला है. NN की जगह NNN रखना था नाम. हाँ भाई ब्रीच कितना क्लोजअप से क्यों दिखा रहे हैं?
let's look at Vera. They have money as well. They have the impetus. I think a C split, and it's over. Because you see, they have the sky alt and a breach alt. So if you do this, you can't do A when the opponent has a breach alt specifically. You can't do B. C is the only place where if you do a C split, you can catch breach off guard, or you'll have multiple avenues to tackle the breach alt from. Ryan Esports coach, I don't know. T1 फाटू के होते हुए कोई और कोच क्यों? Exactly. Observers us. What are your expectations from Gene, VLT, and APAC? So I expect at least one of them to get out of groups. Top 8 is what I expect. Maximum top 6. I don't think we go beyond top 6, but it'll be a very good learning experience for us. Man, they're not going for a C split. Sad. I'd have gone for a C split here. You think G's executes on Heaven have become too predictable now? They are predictable, but predictability sometimes is not wrong, because then you can catch people off guard with certain. So you can play with the tempo of your predictable calls to catch them off guard, because they're expecting a different tempo. So sometimes, even if your strat is predictable, you just play with the tempo and you can win rounds. Lose the event. If they win the event, dude, I'll be happy. See, again, if you ask me a question, I'll answer it truthfully. But as a supporter, I would be happy if both teams qualify. And the further they go, the happier I am, because I'm supporting G and VLT to the end. I'm supporting them because they are representing our region and they are the best from our region. We have sent two representatives. We should support them. Next 2 years, definitely, Kibo. I think within next 2 years, you should definitely see an Indian team in Masters. देखा सी का nice. But they उनको force किया गया सी जाने पे इस बार. If they went by their own volition, तो भी हो जाता. Could you tell us a bit more about Team Wolf? क्या बताऊं? That Team Wolf, almost निप से लोहे के चने चबवा दिए थे. इन हिंदी इट्स अ फ्रेज, इट्स अ मुहावरा. भागा ग्रिफिन ने. हाँ. Ooh, Sea Fat, nice. But it's too late now. Yeah, it's done. It's done. As I said, NN20. Nice. कुछ तो और सही हुआ. What else do you want to know about Team Wolf? You can ask specific questions, ना मतलब. Guys, give no namers a name, a home. G. Yes. Guys, give no namers a home. G lost to this. भाई memes चालू कर दोगे अब तुम. Yes, G lost to this. So again, as I said, NN will provide you with the most resist. NN should have provided G with the most resistance. जो मैंने बोला था अपने prediction में. अब वही अब Griffin versus G low bracket होगा if they win Fancy United. If they win against Fancy United. By the way, it's Dosa, not Dosa. Yes. See how I pronounced it? And roster total age is less than the age of Godspeed. क्या बात है विशाल? I'm going to pin this tweet. जो भी सबसे अच्छा चीज रहेगा उसको पिन कर दूंगा मैं. ठीक है. ING चेक फ्लाई. ठीक है. जो भी अच्छा जोक मारेगा उसको पिन कर दूंगा मैं. ठीक है. सही है. By the way, it's dosa, not dosa. Okay, it's dosa. I'm 29. Yes. Bajaj Saab, don't you think there will be a better region when non-CS background players become pro? CS players choke on international. No, it's not about choking, VLT, Ronish. I think it's not about where you come from.
If anything, the CS players have more exposure towards online events, like international events, than other players from India, like other esports players. मे बी R6 का बोल सकते हो, पर उसके अलावा और किसी के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है बाहर के टूर्नामेंट्स का. टू ओल्ड. भाई जी किसके साथ स्क्रीम कर रही है, थोड़ा हिंट दे दो. VLT के साथ कर रही है जी स्क्रीम. ऑल्सो गाइज थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग. जितने भी लोगों ने किया है. स्वराज नायक, ध्रुव एविएशन, कार्तिक त्रिपाठी, जेपी गेमिंग, निंजा भाई. एंड इजी है क्या? But I feel like those who started with Valorant are going to do better. Yeah, maybe they will. But वही है. They will join group A or D. Oh. D आ जाए तो VLT तो फिर भाई सेट है. अगर D आ गई तो सेट है भाई. अगर D आ गई तो सेट है भाई. ओपनली क्या ऐसा ट्वीट किया भाई, मेरे को समझ में नहीं आया कुछ. ONIC look the first ticket to club so Playins. And then seeing G or GM make it out greatly improves the chances to get into group D. अगर ONIC group D में चली गई तो दिक्कत है. कब तक हो? पूरे टाइम तक हूँ. सिंगापुर जाकर VLT के साथ स्ट्रीम करेंगे. ठीक है भाई, मैं चलता हूँ. राइट. Fighters, LOL don't have larger prize pool than CS. Better infrastructure. Thank you for subscribing, whoever did. Jon Snow. I know nothing. Apparently we have something in common. कितना टाइम है? I think we have 8 minutes now. Let's see what is the next match. The next match is BAAM. Big BAAM versus Full Sense. अच्छा जल्दी खत्म हो रहा है यार. It's good for us. 2020 हो रहा है, जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है. ग्लोबल का मैच पहले आएगा भाई. विंटर इज गॉन नाउ, प्लीज लीव बजाज साहब. स्नो भाई क्या बात है रोनिश, क्या बात है. अच्छा उतना नहीं था, पिन नहीं कर सकता मैं. जल्दी होगा जी का मैच भी. यस. फुल सेंस बिग बम. फुल सेंस प्लीज मेक इट क्विक. ओके. बजाज भाई को सुनना प्लीज. आई हैव टू स्लीप एज वेल. यू हैव टू अंडरस्टैंड. टीआर वर्सेस ऑगलिस फाइट चल रहा है. नहीं देख सकते भाई हम लोग. सारे मैचेस 2-0. हाँ बैन करो भी है रोनिश को. नहीं भाई. See, मेरे चैट में बैन कोई नहीं होता है अपार्ट फ्रॉम स्कैमर्स. ठीक है. मेरे चैट में सबको आजादी है अपनी चीज बोलने की. अनटिल अनलेस यू आर डिसरिस्पेक्टिंग समवन आई केयर अबाउट, तुम मेरे को डिसरिस्पेक्ट कर सकते हो. आई डोंट केयर अबाउट माई सेल्फ. वो चलो. बूम मार. इंडियन स्पोर्ट्स का कुछ नहीं होगा जब तक मॉडल भाई वैंडल नहीं उठाएंगे. क्या बात है. अगर ऑनिक डी में आए तो लड़ाई लग जाएंगे. नहीं, आई डोंट थिंक उतने लगेंगे. एज आई सेड, ONIC has faced Action PH and Full Sense who have similar playstyles. VLT has a different playstyle. I think VLT will be able to counter ONIC and beat ONIC, to be honest. काम हो गया है, कुछ बड़ा आने वाला है. मेरे को व्हाट्सएप करके बता भाई. कोई अच्छा जोक बोलो भाई, इतना फुटेज नहीं खाना खाना था. गॉड स्पीड जीरो सेल्फ रिस्पेक्ट. सही बात है. फुल सेंस. फुल सेंस इवन दो some of their plays didn't make sense yesterday. I still hope the Full Sense will pick things up. मैसेज कर मेरे को डैश. बताओ मेरे को. बूम बम वर्सेस फुल सेंस. बूम बम. यार साइबोर कैन यू मैसेज.
साइबर कैन यू मैसेज आयान? कंफर्म होने से बताएगा तो क्या फायदा, मेरे को बता तो दे। The last time I saw an Indian team on land was someone when someone was changing. क्या बात है भरत। Godspeed AM पूरा दिन। AM पूरा दिन मतलब व्हाट ओवर। तो भाई सुनो आरुष, इट्स ओके, कभी कभी होती है गलतियां। डायमंड वर्सेस डीआरएक्स को, डीआरएक्स won't mind, look at their comp, they're still playing the old comp. Spirit आज पूरा दिन, yes, really wish EG was here, they could have been here to be honest. Hey Conan, let us see if there's anything. We'll try it lightly, okay? Yes, Remit, same. There's a new number one in South Korea on Slayers, right? The ESC VLRT team, yeah. What's our stream पे मत खोलना, okay. Nice. बजाज भाई दिल पे हाथ रख के बताओ, जी वर्सेस फैंसी यूनाइटेड 2-0 जीई भाई। यार कोरिया चैलेंजर प्लेयर्स इस लैंड विद ऑडियंसेस 200 लाइक्स नहीं हो रहा क्या गाइस, क्या बात है यार। EG looked promising in the beginning but could not adapt to the new meta. EG didn't have to adapt to the new meta because there was no new meta उस समय। They changed their comms thinking they were prepared when they were not prepared because they hardly played any official with it, and the time they had maybe it wasn't enough. अबे यार पूरी बात ही व्हाट्सएप पे करता ना, वो चैट को भी क्यूरियोसिटी है भाई। क्यूरियोसिटी अच्छी बात होती है ना, गंदी बात हुई ना। स्लीपी भाई देखो, स्लीपी एंड आई आर टुगेदर इन जिंक्सिंग टीम्स ना। मुझे क्यूरियस नियॉन इज फास्ट इफेक्ट पॉई। Can I get my hopes high for the Griffin match? Definitely. Do you think VLT and G will pick Neon in APAC? No. मुझे क्यूरियस रहना पसंद नहीं, लेकिन मुझे डायरेक्ट इन्फो पसंद है। क्या बात है। अरे players will feel it. Just don't think too much, you guys. Leave it to the players. They will win. मन्नू भाई तुम्हारी गाड़ी पम 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 नहीं चली क्या? मन्नू भाई गाड़ी चली पम पम पम। क्या गाना था वो भी। हाँ मन्नू भाई, खेलेंगे रे ऑफ कोर्स भाई। पनौती मेरे को बोलो, स्लीपी को बोलो, जिसको बोलना है बोलो। You think Chamber should have 3 trademarks? This other abilities are not works like Cypher having 2. I'm not, no, because what he lacks in traps, he more than makes up for it with free guns and free op. Why don't many teams use KO, his counter for every agent? Yeah, so KO is a counter agent, but counters don't work every time. You only need to counter something that you cannot understand. If you understand something fully and if you can play around it, there's no need for countering it. You only have to counter certain things if you feel you those are so imperative that you cannot play around it. Very good over GMS. This match should finish first. Yes. What do you think about GE Icebox draft yesterday? I think it works. They just didn't execute it as to how they must have planned it. जिंक्स मत करो यार, सॉरी सॉरी करो, वैसे भी जिंक्स ओनली स्लीपी पे वर्क करते हैं भाई। फिलहाल तो देखो, स्लीपी तो पब्लिकली पोस्ट कर रहा है, स्लीपी और मैंने जो जो बोला है दोनों ही वैसा हुआ है। ग्रुप ए हम लोग दोनों का सही हुआ, ग्रुप बी उतना ही हमारा टट्टी हो गया। सॉरी, ग्रुप ए भी अब टट्टी हो गया ना। हाँ, दोनों ही टट्टी हो गया हमारा। पहला दिन मैं और स्लीपी 2 आउट ऑफ 2 थे,
ठीक है, सेकंड डे सब कुछ चौपट हो गया कल, आज भी भाई ओनिक में चौपट करते हैं. Why is guard so effing good right now? Because they have an understanding of the meta thanks to their coach MCE, and they trust their coach. And if you trust your coach, many things are possible. I felt the Sentinel like chamber would have been better because they got. So again, it's relative. For a team like Griffin, you don't need to do extra. But if G want to make this their default comp, then they have to practice on it, right? If G APH make it, then NNOC group CD. G APH and group AB 50-50. मजा आया ना न्यूज़ सुन के? Yes, very happy for you ना. I think you shouldn't play. I think you shouldn't play KO to counter KO based comp. Like if your opponents are playing KO, they cease to stop for 6 minutes. Yeah, I mean KO is a very interesting, intriguing prospect because then also you can do a lot of stuff. He is very good pick on Breeze. KO is good on Heaven as well. I think you shouldn't play. हो गया. Let me drink some water, guys. I'm on. Hello. Can you hear me? I'm under the water. Some more my action. Hey, don't you think lighting fast was off yesterday? His confidence was looking low, and this is first time going out to play. Yeah, maybe. Yeah, I think it looked off, but it's not all of those reasons. Maybe just he wasn't feeling it. It's one of those bad days. The thing is, too many players were having a bad day. If only one player has a bad day, you can still win. But if too many players, if many players from the same team choose to have a bad day on the at the same time, it's diabolical. मेरा लैपटॉप दे दे, मेरा फोन चार्ज पर लगाते हैं और एसी ऑन करते हैं. लैपटॉप दे, पहले लैपटॉप देके फिर चल. ठीक. Now, super bus better than, yeah, super bus like not bad, like maybe better, maybe not according to you guys, but thing is super guys इसको time out कर दो. The thing is super bus was already imbibed in it. How much you got the chair for? This is 17,800 something. You I'm back, gone for lunch. Nice. Amar, welcome back. This is comes to India also. Ban करो ये webcam bot. I don't think G should find a split as their strong. I don't think they need to. I don't think he was benched. Maybe I don't remember the issue. Maybe he went into military or something. I have no clue to be honest. I don't remember, and I don't want to assume things. Oh. मोड दो बैन लेता हूँ है भाई मोड है. कितने कॉन्ट्रोवर्सी 4 अकाउंट बैन हो गए हैं. डू यू थिंक ब्रीच इज ओपी या द करंट मेटा enables breach more than other the second initiatives? Is there a 90 club with 3 slow next level again is yes remember related to PRX शिपा गया था exactly. See याद दिला दिया. तो अभी आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर और मैं श्योर नहीं हूँ तो आई कैन assume like I can give you any assumptions. I don't think he was benched because clearly they were more comfortable with Superbus and his knowledge and everything, understanding of their teammates and everything, they were already built. Should they buff Phoenix? Yeah, I mean, any agent with that low of pick rate and with the advent of new agents, Neon, and then Phoenix doesn't give you any unique thing apart from his ult, right? मैच अभी स्टार्ट हो गया फिर टाइम है अभी स्टार्ट हो जाएगा 5 मिनट में. आई थिंक बॉट है वो दोज आरंट अकाउंट्स. अभी स्टार्ट होगा. ओह न्यूगिन नाथोंग तो दूर दूरी त्रांदुकविन. वो मुझे लगा था लोग आगे कर रहे हैं. हाँ.
What are you up to these days? Nothing much, man. Doing my normal work at BlueStacks, and apart from that, just helping some teams out. And imagine if it's losing to BAAM. Hui, 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 hui. I don't think that will happen. So guys, I sometimes I'm cringe. I'm very sorry, but when I get tired, I become cringe. Used to play customs together with Madi Bhai. Yaad hai? Yes, yes, I remember, Baran. People resume the success before now everyone is cool with everyone. It's okay, time आएगा, time आएगा. Just wish we could see Peter. Salamakero. Oh, you're right. I am magic. Is that him? Yeah. It has to be. Peter! Peter! Hey, Peter! Peter! Oh! Hi. No. It's okay. I'm a nice guy. This name are hard to read. Legendary scene was this, yeah. 1, 2, 3, 4. Might be wrong, but I guess कॉपीराइट पड़ेगा नहीं पड़ेगा फिर और उतना सा दूर पड़ेगा तो ठीक है मोनेटाइजेशन ऑन होगा I've brought my laptop finally, it's charged, it's ready to go, and here we are. And roasted total pencils are less than क्या बात है ईशान good one. What is the one biggest problem with GE and VLT each right now? GE, I don't think the problem is maybe they base their plays too much around SK Rossi. I think they need to diversify. How to counter Viper in Breeze? To counter Viper in Breeze on, let's say, if he's playing B or A, that is a reason why many people have started playing KO. But I think the best way to counter him is to just play your own game and to close the gap as much as possible. Do you think G has a chance winning against Action PH? Yeah, maybe, because again, Action PH plays a playstyle that historically G has had a problem adapting to. Will they adapt this time or not? Is remains to be seen. Because sort of the first round push on belt reminded me of PRX. Do you think G has a chance? As I said, easy है क्या? How to counter Viper? Please बोल दिया मैंने. Do you think VLT and GE should limit ऐसे tournaments and play SEA tournaments together? I mean, they would love to. If you see the past 3 months, the trajectory, VLT and GE have dropped a lot of SA tournaments, and I think they'll continue to do so. It's just about the SEA events inviting them more than, let's say, them not playing, like them choosing to play SA tournaments. If they get more invites or if there are more SE tournaments that involve or include these guys, then like they'll always love to do that. Every team has a chance of winning against any team FFS. Yes, अभी पकड़ लिया यार तुमने तो मेरे को हैं या तो फुल सेंस वन क्या बोलते हैं हमारा एफएस आल्सो वन अ मैप अगेंस्ट ए हमारा फुल सेंस इंडिया वाला फुल सेंस I know Ishan. No Tane. So they are restricted to some regions. Okay, FS banned Icebox, BAAM banned Split. Will they go for Ascent then?
You think GVLT will get disbanded due to weak? Never, Manan. These guys are very good visionaries. Okay, GVLT owners are good visionaries. They will never do this. Like, this is their passion. This is their vision. Long big mind. FS, please select something good. Please select Ascent. I want to see Ascent. तो मेरा जैसा भी दिखता हूँ मैं फिर जिस बिकॉज मोटा है सिंगल दिखता है ये तो गलत है लव फैमिली तुम्हारे जैसे दिखता है क्या बात है द पिक्ड ब्रीज एफएस ओके अग्रेसिव प्ले स्टाइल कैन मेक सेंस बट रोस्टर चेंजेस है भाई अभी एपीएच में रोस्टर चेंजेस नहीं है स्टैंड इन आया है एपीएच में Modesty isn't playing right now but I think he'll be back for the group stages if I remember correctly maybe not हम लोग हेवन भी बैन करेंगे ही करेंगे they're taking so much time probably deciding which one to ban heaven yes the ban fracture it's up to fs now I think they should push the decider to ascent and not heaven but let's see what they do like obviously it depends on them more so than me or anyone else for that matter I'm getting fat by just sitting and studying any suggestions how to get slim मैं भी वैसे ही fat बना हूँ भाई तेरे को मिला yes ascent is the decider हाँ we might not get to see the decider but yeah ये दो मैच है ना हाँ बेस्ट रीजन I would still say EMEA just because of the wide array of metas that you get to see sub metas within metas so like the region entirely has a general meta then you have sub regions like you have regions within EMEA, sublets of regions within EMEA. They have their own metas, so it's very good for interaction for at least as a coach. This is skipping some events if they are getting C invites. Yeah, so that is what they're ambitious. So, dude, these two teams are very passionate and ambitious, and the odds as well. ये मोटे के बात नहीं है मुंह देख लो और उनका सर्कल मोस्टली सेम दिखता कौन सा सर्कल ये थोड़ा मतलब ये इन्होंने बोला है कि इनको कुछ बोला तो बुरा नहीं लगता हाँ मेरे को नहीं लगता इट्स ओके हाँ ये जल्दी खत्म हो गया था जी का मैच 4 बजे भी हो सकता है इनफैक्ट कितना 2 बज रहा है रैंक द डिक्रीजिंग ऑर्डर I'd go for EMEA I'd go for KR go for NA I'd go for SEA I would go for LATAM. I think LATAM is not as good as SEA. They've had a miraculous run. I don't think they're as good. Then maybe MENA and then Oceania. Right now in terms of regions. Yeah. FS20 एसेंट कर हाँ भाई तो मेरा फैक्चरिंग में ट्यूशन है इसलिए हाँ बुरा सबको लगता है बस पे रिएक्ट नहीं करता हाँ वही बुरा इन द सेंस आई डोंट टेक इट टू हार्ट चलता है भाई व्हेन कैन सी रेकनिंग इन सी सीन पता नहीं भाई क्यों रेकनिंग पता नहीं रेकनिंग इज अ टीम वेरी क्लोज टू माय हार्ट बिकॉज that was the first team that gave me a coaching chance. I think there should be no any region instead change it to America. Between South and North, the sub regions like EMEA does it, CIS and C. In fact, does what say? Maybe, Abhijit. There are two ways to looking. There are multiple ways of looking at same thing. Also. Doesn't mean a particular way is correct. It's all subjective.
Oh, I forgot Japan, right? I would put Japan under Latam. Then go for Mina, then go for OC. I think OC is the weakest region because of just one team. Mina has more teams. Japan now, the current meta has many teams. Latam has fewer teams but better quality than Japan. C again has more quality teams, more competition than Latam. NA has more competition than C amongst themselves. KR does not want competition, but their overall quality is much better than the NAC. And EMEA are the overlords. I think there should be no. Have you seen any Brazil games? Team Loud has been, yeah, Team Loud has been playing very well. I've seen Team Loud. $100 advert पे लिख रहे हो क्या? हाँ भाई. Expecting too much from Indian team is like expecting non-GE aspirant to players GE advanced in the first round. They don't even play that much events. Might take them time. Yeah, it will take them time. Russians हैं वो. Oh ho. किसी को ये म्यूजिक याद है? I think if Starlink come in India, they won't need to travel to other regions in the next 2 years. क्या बात है भाई? ला दो भाई विशाल स्टारलिंक. मनन भंड. That's a stupid logic, man. अमेरिका दिन. क्या बात? भाई मैं तो ये सब में विश्वास नहीं करता. Banning normal civilians for anything. I don't believe. I think India will still. हाँ, 1-2 साल तो है. But good growth. It's getting like we are getting good growth. Starlink मतलब Elon Musk. Starlink मतलब Elon Musk. मस्क भैया आएंगे इंटरनेट लगवाएंगे. Gambit is ganned. Hello Manan. Gambit is not banned. The org is banned. The players will still compete under a different banner, like under their own private banner. Not right now, Abhijit. Very deadly internet police. It might even lag. Stim beacon plus neon might even lag for you. Plus the slide. Stim beacon neon into slide into side might even lag for you. Yeah. So that is true. But Gambit came out with a statement that they'll let their players. Okay, that's a fast U-Haul stake, and they've taken showers. So this will most likely be a retake, and they're focusing more on like a two-pronged attack, two-pronged backstab, and it's a very good choice because the showers guys are keeping them busy. Yeah, now it's fine. Reload, guys. Reload. Fine now. कैपिटलाइजेशन को कितना यूटिलाइज कर पाते हैं. अपने आप को अपड्राफ्ट करके काफी ज्यादा एक अच्छी हाइट पे जरूर खड़ा कर लिया है जो जॉन होल्सन ने. फर्स्ट किल निकाल लिया है अपनी टीम के लिए. 4v4 का सिचुएशन बना. Hi Abir, FP is dropped. Yeah, now it will be fine. Just refresh. ब्लाइंड करके पीटीसी Just refresh, guys. अगेन मैन काउंट एडवांटेज अपनी टीम की तरफ लेते हैं. Look at Lami Snacks. जिस तरीके से यहाँ पर उस प्लेयर ने पिक निकाला, that was amazing. PTC with the 3K. Full sense denying
the round for Big BAAM और in fact मात्र 2 player lose out Yeah, हुए हैं, best and now best server for their both. Yes. weapons. Oh no, this is a nightmare for Team Big BAAM. जिस तरीके से आपने स्टार्ट करा था, आई थॉट कि जीत जरूर सकते थे, बिकॉज फर्स्ट पिक यहाँ पर भले प्लांट जरूर हो गया था, उसके बाद पिक भी यहाँ पर निकला जरूर था जॉन ऑल्सन के इतने बेंच की तरफ अपना Spam sheesh. मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक वहाँ पर पिक जरूर हुआ, लेकिन द इंफॉर्मेशन जो डिलीवर हुई, जो इंफॉर्मेशन फीड हुई उनके प्लेयर्स के लिए, वहीं पर उन्हें वर्कआउट करती हुई नजर आई टीम फुल सेंस। And अब परेशानी थोड़ी सी बढ़ती हुई देवी और सजरो, because Now they've gone back to default. B-long पे कंट्रोल रेंज आएंगे, स्काई यहाँ पे होल्ड करके रखा है, जेट उधर शावर्स के उधर स्पॉट हो गया। एक बार भेजने में कामयाब नहीं हुए हैं, so they can play अच्छा, around. BTC is trying यहाँ पे टेलीपोर्टर को अटेम्प्ट पे आया था पर नहीं हुआ। Who you got for today, G और फैंसी जी? कॉपीराइट नहीं कॉपीराइट कुछ नहीं भाई, अटैकर्स कंप्लीटली कॉपीराइट क्यों आएगा? तो डेफिनेटली पीछे से एक अटैक आई हैव वॉच पार्टी पॉम्स, अगर तुम इसका बोल रहे हो। बाहर गर्मी कैसे बजाज भाई? इधर तो ऑलरेडी लग रहा है जून जुलाई, इधर थोड़ा गर्मी है। हाँ बस एसी चलाऊंगा मैं अभी। पिछला मैप हेवन था तो यार। Okay, so now they know कि इधर है। मगर उधर जॉन ऑल्सन टेक्स डाउन, अच्छा एंगल है वो, so that is a good revised angle आजकल जेट के लिए। बहुत ही अच्छा इस्तेमाल ट्रेल ब्लेजर का। नहीं, they can get seriously caught here. बच गए चालाला के वैसे, but they could have seriously gotten caught there. Seems like this is going to be a fast match as well. Yeah, it should be. स्पाइक ऑलरेडी बी लॉन्ग की तरफ ड्रॉप आउट हो चुका है। बैकस्टैब अभी के लिए कोई नहीं चेक कर रहा, तो कहीं ना कहीं एज अ सरप्राइज फैक्टर जरूर वर्कआउट तो कर सकते हैं। लेकिन द इंपॉर्टेंट पार्ट वाज इस राउंड में ज्यादा खोने को कुछ नहीं है बिग बैम के पास, तो अगर पिक्स मिलते हैं तो अच्छा जरूर रहेगा। इन में देखिए जंप करा, साउंड आई एंड लैंड स्नैक सिक्योर द फाइनल पिक 4-0 इनटू द फेवर ऑफ फुल सेंस। ये टीम जिस तरीके से कंट्रोल्ड वे में खेल रही है, यहाँ पर बिग बैम को कोई मौका मिलने वाला है। बाम ने हाँ वो बीलोंग पे बहुत प्रॉब्लमैटिक हो सकता था। Exactly. बाई के ऊपर कैपिटलाइज करने की जरूरत है, अब कोशिश करनी पड़ेगी। However, it does not seem completely possible, क्योंकि अगेन दिक्कतें इनके लिए बढ़ती हुई ही नजर आ रही है। स्पेक्टर्स के सामने भी इनका बाई काम नहीं कर पाया था, तो अब तो दोनों ही तरफ फुल बाई दिखाई दे रहा है। So I guess full set might be able to take another round from them. 5-0 का स्कोर लाइन देखने मिल सकता है हमें। However, 4-1 की उम्मीद रहने वाली है। Everyone's running this new Vandal, RGX Vandal ना। I meant the skin using हाँ। एक सफलता मिली थी। फर्स्ट पीक में खेलने की कोशिश थी आउट, इनफैक्ट ही वाज अबाउट टू यूज हिज ये बैम फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बार एडवांटेज मिला, पर उधर से पीटीसी इधर पुश करके इंफॉर्मेशन मिल गया। अब ये लोग इसको पुश बैक कर दिए, पर सोवा को अब नहीं पता है कि यहाँ पे कोई है या नहीं। ओके, जेट इज फॉलिंग बैक। Oh, he didn't fall back. Nice. This round seems like a done deal unless and until something drastic happens, because siege का wall भी लग गया है, the plant is there, पूरा showers control इनके पास है, 5v3 man advantage है। ये not RGX। अच्छा, dog by sky would have been better. True. ये 3v4 हो गया। This is poor from BAAM. This is very poor from BAAM. Very poor from BAAM. Okay, this entire post plant was poor from BAAM. First of all, showers guy को इतना आगे नहीं खेलना चाहिए, कुछ प्लांट इधर का है, पहले इधर फाइट लेना चाहिए यू वॉल्स वाले से। शावर्स वाले को एकदम पीछे खेलना चाहिए अभी, बिकॉज अभी ऑब्वियसली वो लोग शावर्स पहले कंट्रोल लेने आएंगे। ट्री वैंडल, ओ ब्रीच प्लस कियो प्लस एस्ट्रा चेंबर जेट। हाँ, it's good. It's good if you want to play that way, but you need one information वाला एजेंट, either Sky or Sova. Check him PC. उनके सामने था, मैन एडवांटेज उनके पास आ गया था और मैप कंट्रोल ऑलरेडी छीन चुकी थी फुल सेंस ऑन अनदर लेवल दिस टाइम, और कहीं ना कहीं कोई तोड़ नहीं है इस टीम का। रीटेक पे इतना ज्यादा फ्लूइड। Nice, PTC is hugging the entire B-long byline. स्पेक्टर हाथ है माउथ और चालाला के पीक पे I think so he'll flash. Nice. Nice. रीड जरूर होता हुआ रेल बेसर की मदद से तीनों प्लेयर टीम को जरूर पता लगी। क्राउड बस के अराउंड के लिए कोशिश थी, एक प्लेयर को Nice. Very good pairing.
बहुत अच्छा पैर में खेला। बूम बाम ओनर इज मॉडल, बूम बाम नहीं है नाम, सिर्फ बिग बाम है। the fluency on this like full set काफी ज्यादा अच्छे से अपने executes को निकालते हुए तीलू भी इट्स लाइक फुल सेंस वालों को बहुत गालियां पड़ी हैं कल के मैच को लेकर। finally इनके नाम आता हुआ and John also closing the round for themselves 6-0 का यहाँ पे एक गेम बन चुका है। First whole quarter in that हेलो मिमोजा, कैन यू इमेजिन यहाँ पर एक बिलोंग दे ही नहीं रहे भाई। जब दे रेक्टिफाइंग द मिस्टेक्स जो उन्होंने कल किए थे। भले ही बाय आए थे 2 राउंड में, बहुत अच्छी कोशिश जरूर करी गई, पिछले से पिछले राउंड में प्लांट भी करा गया, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से रीटेक पे खेल रही है टीम फुलसेंस, कोई तोड़ नहीं है। नाउ बाम का टाइम आउट इज टोटली जस्टिफाइड टीम। आई थिंक दे नीड टू फोकस ऑन शावर्स कंट्रोल मैक्स लॉस बोनस ऑलरेडी हिट कर लिया था उसका, बिकॉज़ 6 राउंड विद स्काई डेफिसिट में जा चुकी है। विद स्काई इन द टीम। उनको नहीं लेना चाहिए बिलोंग कंट्रोल उधर। स्ट्राइक भी अवेलेबल हो जाएगी, एनटीके को बस एक पिक चाहिए, इल्यूजन दिखा सकते हो, बट दे शुड फोकस मोर टुवर्ड शावर्स आई थिंक अभी। लेकिन उसके अगेंस्ट हंटर्स फ्यूरी तो अभी तक नहीं है, लेकिन अगेन कॉस्मिक डिवाइड इज देयर, तो शलाला ही कैन यूज दैट फॉर द रीटेक। और हम सबको पता है फुल सेंस बस भाई एफएस करो, फुल स्क्रीन ही तो है। प्लांट हो जाता है, प्लेयर्स को टेक डाउन अच्छा नहीं है, देन उसके बाद ट्रेड्स के लिए जाइए। और अगर आपके मिस्ड मैप 2 एंड नाउ दिस ऑलरेडी विन दैट राउंड। कैश की एक बार बात करिए, ऑन एन एवरेज 8000 है फुल सेंस के पास। ऑन द अदर साइड दे आर नॉट एक्जेक्टली अटैकिंग देम, दे आर प्लेइंग इन अ न्यूट्रल जोन। लेकिन 7वां राउंड स्टार्ट होता हुआ देवियर सदुन, इट सीम्स लाइक फुल सेंस ने एक्सेलरेशन द पेडल दबा दिया और वो रुकना नहीं चाह रहे हैं। exactly and दे आरंट एक्चुअली अटैकिंग देम। मिमोजा तो मैंने बोला है कि जो भी अच्छा जोक मारेगा वो मैं पिन कर दूंगा। सी शावर्स कंट्रोल, पैसे दो भाई मेरे को, बाम मेरे को पैसे, मेरे को ये भी क्लिप कर लो। अपने आप के जो टाइम आउट है उसमें जो डिस्कशंस किए थे उनको काफी अच्छे से एग्जीक्यूट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगेन मैन काउंट लॉस को यहाँ पे बैलेंस करने की कोशिश जो नाकामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। एक्सीडेंटली डिलीटेड, कोई बात नहीं for 1v4 that's remaining for him। भाई एपैक के आने वाले मैचेस, वाह वाह वाह। नहीं अभिजीत ट्राई हार्डर, डिलीट कर दिया मैं मसा ने, कोई बात नहीं, कोई नया आ जाएगा भाई। बिग बैम के द्वारा बहुत ही ज्यादा अच्छा इस बार देखिए, यहाँ पर दोनों की दोनों फाइट की गई थी हर वक्त। अग्रेशन, इट्स कंट्रोल्ड अग्रेशन, इट्स नॉट अग्रेशन। डिलीट मिमोसा, क्या बात है, क्या बात है, कोई बात नहीं, चलता है। बट चैट ही तो डिलीट किया है। डिलीट मिमोसा, क्या बात है। और वहां से गेम चेंज जरूर हो सकता था। अगर आप मिनी मैप पे फोकस करें, यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी। ही स्टेप्ड अप एट द परफेक्ट मोमेंट, फाइनली 1 राउंड ऑन बोर्ड। देखा शावर्स कंट्रोल लिया, जीत गए भाई, ये भी कर लो। मेरे को मॉड मिल गया, जॉर्ज। तो अगर बिग बैम अब ये राउंड हार गए फिर से उनको कैश में ना थोड़ा सा क्रिपलिंग डैमेज जरूर पड़ने वाला है, लेकिन दिस टाइम बिग बैम प्लेइंग स्लो। ट्राई हार्डर, यू मेंट दैट फॉर बाम ना, एंड यू एज वेल। चलो फाइनली नोजा, मेरा मैसेज डिलीटेड। अरे विशाल भूल से हो गया। थॉट्स अबाउट योर ओन बाइंड, इट्स वेरी वायबल। आई सॉ अ गेम चेंजर्स टीम रनिंग इट श्रेया। I'll tell you in PM maybe, I can't tell you here publicly. So there might be some surprises if people are watching Game Changers. There are spicy comp, very spicy comp. SBI for Vishal. No kid, no. Say no. No. क्या बात है। ऑलरेडी शावर का कंट्रोल टेलीपोर्टर का इस्तेमाल पीटीसी की तरफ से, तो वो साउंड जरूर आएगा और साउंड क्यू के ऊपर वो करने की कोशिश। लुक एट दिस, 4 प्लेयर एक प्लेयर को मारने के लिए आए हैं पीटीसी। भाई लुक एट द इंपैक्ट पीटीसी इज हैविंग हियर। वेरी गुड जॉब, लेकिन वक्त के अगेंस्ट अभी ये क्या करेंगे, ये टीपी लेके जाएंगे भी, मेरे को लग रहा है। दे विल फील लाइक दोनों इधर है, टीपी लेके भी नहीं गए इधर। नाइस, वेरी गुड चॉइस। Euro Atlas are huge, yeah. But dude, I completely agree with you, because like CA will be implementing that already for Asteria, though if it's a spicy comp. It's a spicy comp, bro. Team, but our ranks are low. How can we start a journey? Just practice, watch VODs together, okay?
Try and help each other as much as possible. Play in as many tournaments as possible. Review your tournament wards. You know, find out what mistakes you're doing. तो मेरे ख्याल से जॉन ऑल्सन को अभी के लिए दूर काफी दूर चले जाना प्रीपोन हो सकता है, हाँ बिल्कुल प्रीपोन हो सकता है. Prediction for top 2 teams will qualify for Masters, Paper Rex and maybe Naus. And yep, he will take him out. Operator save भी होती हुई और वो cash नहीं build up होने देंगे. Again a very good thing from the side of ये लोग को मिल कैसे रहे हैं इतने लो रैंक के buddies? लेकिन at the end सबसे ज़्यादा damage कहाँ दे सकते हैं, and that is the cash. Yeah, unfortunate. I was watching a bit of your finale. Double operator setup जिसमें every single मैं यूक्रेन की सेना के साथ मिलकर रूस के खिलाफ तुम्हें अपना पूर्ण योगदान दे सकता हूं. अगर यूक्रेन मुझे इजाजत दे तो मैं यूक्रेन का सैनिक बनकर रूस पर हमला कर सकता हूं. ममूसा अग्रवाल, क्या बात है. कौन सी टीम का मैच है? इसके बाद ग्लोबल का मैच है. यार एफएस को क्या हो गया, इतना अच्छा खेलते थे, अभी भी अच्छा ही, मतलब आज तो बेटर खेल रहे हैं एटलीस्ट. See, Big BAAM का the timeout really worked. Now they focused on actual things. Following real well यहाँ पे पीछे से एक काफी अच्छा एंगल बना लिया गया है from the side. Shoot! Yes. Makes a shot that connects literally on the head. Kill यहाँ पे निकाल लिए गए हैं constantly. And PTC again being the member that he is like. जी का मैच प्रीपोन हो जाएगा. बाम में क्रेजी का था ना, he went to निग्मा गैलेक्सी. एफएस गंदा खेल रहे हैं थाईलैंड वाले, तो किलोबाइट को भरो. सही बात है. पूरी तरीके से जॉन ऑल्सन पीटीसी ने शट डाउन कर दिया बिग बैम को बिकॉज़ 3 पिक्स जॉन ऑल्सन निकाले में तो अच्छा फक यार, मेरे को लगा ये क्या आवाज आ रही है. Might upset. Yeah, so that was another team that I said, and I think Georgia would do well to finish third, like top 4. थोड़ा बहुत कैश बिल्ड अप हुआ था बिग बैम. Like my top 4 would be Bleed, बिग बैम हार जाती है तब उनको Georgia, Paper Rex and Naus. डबल डिजिट पे आ चुके 9-3 हो गया. जॉन ऑल्सन हाँ कुछ भी. aggressive towards ये Geelong. कौन सा ईयरफोन यूज करता है गॉडस्पीड? ये वाला है. Necessary. Mouth was very lucky. This is JBL something. Bleed can win this whole tourney. Yeah, true. We won't know until they play a tournament official match with the new. बहुत ज़्यादा संभल. No. Philippines is stacked. AK. श्योर के अंदर जाते हुए कोई दिक्कत ना. Philippines की जो 3 टीम्स हैं, they already so stacked. यहाँ पे छोड़ दिया. ओशियानिया की टीम्स अच्छी नहीं है, but bonkers में potential तो है भाई. I will not rule them out. डिफेंस को. But maximum I think they can go is top 8. I think they'll be happy with the top 8 finish here. जाहिर करते हुए दिखाई दे सकते हैं. Now look at this. अब रोटेशन आती हुई Waiting for SBE versus VLT. Winners bracket. वो भी एक दो करी गई और स्ट्राइक यहां पर लगाया जाएगा यूफॉल की तरफ डिवीजन यहां पर ऑलरेडी डिनाई करके रखा See, awareness is good, but अभी Love Family is left. Oh, nice. on top of the barrier. Nice one. He's out. Hunters Beautiful. killed the spike planter. लेकिन अब it's a 3v5 situation. NTK कौन जीतेगा आज? ग्लोबल भाई. ओसी के टीम्स का एक्सपोजर नहीं मिल रहा. It's very sad because potential here is huge. Exactly, Shreya. I just like XM mouse compared to other mouse. पता नहीं क्यों. Wow. You know about the brackets? नहीं, I don't. TR की भी मैच चल रहा है. हाँ, but you can't watch. इंडिया वाले yeah, in terms of scene, Oceania is almost non-existent. You have to move out. You have to branch out in order to be relevant. And अभी भी 2 राउंड्स बाकी है फर्स्ट हाफ के. Bonk. Bonk. 2 राउंड्स पे बिग बाम कैपिटलाइज कर पाती है या नहीं because But I haven't net lag anything spicy. I haven't last 5 minutes. Nothing spicy. Bajaj, my man, what's up? Hello, Jashan ji. What are you doing, Jashan ji? Is India greater than OC? Yeah, I believe so. I believe so. 11वां राउंड आने वाला है. अगर Right now, yeah. जीत लिया जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है बिकॉज़ एक हीरो वैंडल नतोंग के हाथ में जो कि Okay. यहाँ पर लगने वाली है मोस्ट प्रोबेबली Belong कंट्रोल लेने गया. कैसे लेंगे कंट्रोल ये ब्रिमस्टोन और सेज के साथ? इस्तेमाल करते हुए नाउ आई अच्छा, स्मोक किया है उधर. स्मोक करके they've taken control उतना तक का एरिया. ओके, और शावास कंट्रोल ले लिया इधर स्काई के पीछे. और वाइपर इस गोलू को सी खेल रहे हैं यहाँ पे. ओके, दे नाउ नो इधर प्लेयर है. शावास का कंट्रोल इनको मिल गया. ये पता मतलब अज्यूम कर लेना चाहिए इनको.
और उधर अब ये बिलोंग की जगह हुक्का जा रहे हैं। इन्होंने ये भी पता कर लिया हुक्का के बाद प्लेयर है। So they now have info of one guy being a shot, one guy being outside hookah, and at least someone being there at showers and someone being there at belong. So what they must be thinking कि ये लोग default खेल रहे हैं. So watch what he writes. Yeah, I also wanted to watch the G match on stream. हाँ मेरे को watch what he writes कल दोपहर को 2 बजे confirmation मिला. FS more like fast setups. Not joke, try its observation. Nice. लास्ट 40 सेकंड्स बचे ऑन क्लॉक एंड उसके बावजूद यहाँ पे कोई भी पिक ऑफ्स नहीं दिखाई दे रहे थे. However, in the last 5 seconds, we saw. I think BAAM played this really well. They sort of showed their presence everywhere. Belong में smoke दिखाया. हुक्का में even though unintentionally उसके डॉग से स्पॉट हुआ. शावर्स में obviously उनको पता रहेगा कि कंट्रोल लिया है, तो शावर्स को छोड़ के रखे assume करके रहेंगे. और शॉट में उधर हुआ तो चारों एंगल्स. what they assumed is like BAAM is obviously spread out because B-long में कौन एजेंट था वो नहीं स्पॉट किया. हुक्का में सेज को स्पॉट किया. ए शॉट में कौन है उसको स्पॉट नहीं किया. और शावर्स में कौन है वो पता नहीं है. So they must be thinking कि ये लोग स्प्रेड आउट होके खेल रहे हैं and then they regrouped और उस समय हिट कर दिया. जशन जी को लेट रियलाइजेशन हो रहा है कि उसकी जीएफ एक्चुअली जीएफ नहीं है. ऐसा कुछ था ट्विटर पे देखा. वाई बेचारा. BWL got picked by an org. Yeah, Persija Esports. Is a very famous football club, Persija. Bonkers boot camping in Thailand? I believe so. कितना वॉच हाउस हुआ अभी बहुत कम है भाई. Did Bonkers travel to a sea country for they can't play from Australia dude. मौके नहीं दे रही है टीम. मौके बिल्कुल नहीं दे रही है टीम को. So उस पोजीशन में आने के बाद सिर्फ well yes we should get ETC with the op. Quite an impressive kill coming in from the side of John Olsen. बहुत ज़्यादा अच्छा एक opening मिला है इस round पे. And there comes another one. This was unnecessary though. That has been taken down immediately by Chalala. बच गया John Olsen. I mean Chalala. Unnecessary सी कोई फायदा ही नहीं हुआ. Very unnecessary. 4v4 का situation and HP loss लेकिन ज़्यादा दिखाई देगा for the side of full. When does Indian football hogs pick teams? Hopefully. वेरी फेमस नहीं, लोकली फेमस नहीं भाई. इमाद इज वेरी फेमस. तुम फुटबॉल ढंग से फॉलो नहीं करते. फिर एशिया में पर्सिजा इज वेरी फेमस डूड. क्या आप बोल रहे हो? ना सर इतने मोड्स रखोगे तो वॉच आवर्स कंप्लीट नहीं होंगे. वॉच आवर्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन मॉड्स. मॉड्स के वॉच आवर्स भी काउंट होते हैं. 2 ऑप एंड चेंबर अल्ट भाई सोचो. बट लास्ट राउंड है ना तो उसने ले लिए होंगे. समझ रहे हो? ऑप को फिर अभी छोड़ के देखो असॉल्ट उठा लिया. नाइस लैमी. तो पता चल गया साइड पूरा क्लियर है तो मोस्टली बी लॉन्ग पे ही है अभी अल्ट. ओफ नाइस प्ले भाई. खत्म. एग्जैक्टली. एंड राइट नाउ ये जो स्कोर लाइन दिखाई दे रही है इसके ऊपर दोनों ही टीम्स कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रही है. दोनों के लिए काफी ज्यादा एक यू नो important round रहने वाला है. But right now already nice adjustment. Monetized. monetization I know. अच्छा ठीक है यार क्या कर सकते हो. काउंट होते हैं जहाँ तक मेरे को पता है. मैंने पूछा था. नाइस वेल प्लेड बाय द ब्रिमस्टोन. ब्रिमस्टोन का मॉली एंड द अल्ट एट द सेम टाइम इट सेव्ड. नहीं तो हाफ हो जाता उस समय. अनमोड से क्या आते. Pretty interesting. Yeah, EISL is a very good initiative from NODWIN and ISL. I love watching it. I love supporting my my boy Saransh Jain. I love Saransh. I used to watch his games and he may not have adjusted to the FIFA 22 playstyle much because I saw him struggle thoda sa. Maybe there are better players now, but yeah, he'll always be an OG. डिफ्यूज हो गया डूड. हाँ डिफ्यूज हो गया मैं बोल रहा हूँ पर उसने अच्छा खेला. मतलब मैं बोल रहा हूँ वो हार गए पर अच्छा खेला ब्रिमस्टोन ने. सर फैंसी बेटर देन ग्रिफिन maybe. Do you think the Indian teams in this tournament will pull things off? Maximum I can see Shreya is top 6. The being an optimist guy, top 6 like. I expect at least one of them to qualify into top 8, like qualify into playoffs. मैच 6 बजे पहले स्टार्ट हो जाएगा. हाँ अगर ये जल्दी खत्म हो गया तो स्टार्ट हो जाएगा.
Godspeed, what do you think about what happened to the guard versus C9? I think it's just C9 was superior. The guard made a lot of mistakes. They failed to adjust in the mid rounds. I guess it was like they failed to micro adjust based on how Cloud9 were playing, and Cloud9 were very flexible. Especially Odisha boys are stronger. Nice. I want RCB to back a Valor lineup so at least they can win title instead of hurt. क्या बात है अभिषेक? पता चला यहाँ पे भी सेकंड आ रहे हैं, यहाँ टाइटल नहीं जीत पा रहे तो भाई कुछ भी ब्रो लास्ट टाइम डिफेंस हो गया था, डिफेंस के बाद मारा ब्रिम ने FS1। दोनों प्लेयर को मारने का नहीं, मैं अल्ट की बात कर रहा था, वो मॉली और अल्ट की बात कर रहा था। मैंने तो मारने का कुछ बोला ही नहीं। मैंने बोला क्या कि राउंड जीत गया? सॉरी, तो मैं सिर्फ वो अल्ट और उसको हाईलाइट कर रहा था। माय बैड। आरसीबी शुड गेट एन ईस्पोर्ट्स टीम 4.4 भाई, दैट वाज इनसेन। 30 ये अच्छा था गुरु। Okay, they've taken Chao's control. Now they're falling back from here, पर Spike अभी भी इधर है। Maybe they'll show presence. I think they'll. Okay. इतना abundantly तोड़, हाँ नाइस। दूसरी तरफ वो लोग स्पाइक अभी तक इधर ही है, पर I think they just show presence towards B and return to A because we can see the spike. So chat, we must only appreciate a play if the team wins the round of it. मॉलियर राइट तो है बट राउंड गया। हाँ मतलब what are the chances of G? 75% of winning. So अब इधर आया, अब देख रोटेशन होगा। नाइस। वाइपर सामने आ रहा है, वाइपर को हेड ऑन फाइट मिलेगा 1v2। Nice, they played it well. Fulson played it well. Honestly, I'm surprised. So Sendin doesn't get a coach, and if they do, what according to you will be best? I don't think they need a coach. First of all, they need to first widen their agent pool, and also they need to like move on from the beta meta sort of. Chokers तो already है ना वालों में, क्या बात है। कल जी के मैच पे एक का 4.9 था, केडी सेज था, आई गेस। सीज कौन था? नाइस वन, बट दिस शुडंट हैव कम दिस क्लोज। पहला बात तो Godspeed was reading chat when FS was diffusing spike and he saw after Brim killed, so had to let him. Yeah. It's good that you let me know. Very thank you guys. उसमें तो बिल्कुल सही। पर I guess knock at icebox पर I guess icebox पे होना चाहिए। दूसरे में तो सेज था ही नहीं ना। वायर सेलेक्ट क्या खेल रहा था आइसबॉक्स पे? ठीक है, ऐसे तो बैक टॉप टीम्स ओनली विन, नो हार्ट एंड लिवर। क्या बात है। हाँ तो वही वाइपर खेल रहा था। हाँ 1v5 सिचुएशंस यहाँ पर इकलौते बचे तो एग्जैक्टली यहाँ पे एक फ्लॉलेस निकालने की पूरी उम्मीद फ्रॉम द साइड ऑफ फुल सेंस। लेट्स सी इफ दे आर एबल टू डू दैट। So one thing I'm liking about full sense is they're not committing the spike पहले. This is good. Siu was too good yesterday. G2 playing Raze and Chamber on split. Yeah, I think it makes perfect sense. I think God will improve a lot now. Hopefully. I mean, they have all the tools. They have now the support of the org, and they are so talented. I fully support them, and I just wish that they'll do
what they want to do. It's because we all like we all know how passionate the Godby players are. Their style of play is very uh, anti-India, anti-SA, anti-SCA style of play. They actually want to play the art of Valorant. You know, the art of Valorant. Can you speak Bengali? হ্যাঁ একটু বলতে পারি বুঝতে পারি এই সবকিছু Shazam on Jet or Tens maybe Shazam on Jet I think with this you can give Shazam his jet back. The thing is who plays Sova then properly? Anti-India कौन बोला बे? What happened to that C plus SA lineup please? गॉड पी वाले पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ ट्विटर पे बात करते हैं तो एंटी इंडिया क्या बात है दे play well without the CS template like you said earlier in the stream yeah winning will be difficult though as Godby doesn't have Tim coach buff Tim will be busy with GF Godspeed so no help seekers damn Abhijit you are not with Modi or anti-India Godby Kaijal I think it should now be Wimp right a direct replacement this is so one-sided it just shows ki full sense could have easily beaten ONIC dude इन लोग को थप like they needed a slap on their face which was ONIC's performance their performance against ONIC when can see a Indian T1 super team hopefully man someday I've always said this that India needs a super team so that we attempt to go far in international tournaments and from then on other teams also will improve Ewok buff see Ewok buff to hai they're playing nice ONIC but I'm very sorry Fulsen should have beaten them yesterday it's just Fulsen's own cocky and arrogant playstyle that led to their defeat I think one good team will be out today who will be that action PH they'll not be out today right वो कल है match your Indian super team I'd say SK Rossi DM SK Rossi DM SK Rossi DM Helef Lightning Fast and Ace SK Rossi DM Helef Lightning Fast and Ace what is your image of a super team so तुम full sense stan हो stan नहीं हूँ मैं stan was like college का first year IGL yeah Ace and Helef both can IGL team and Rossi Jet कौन खेलेगा Rossi Jet खेलेगा yes tomorrow but who will win according to you action I think full sense stop better idea let's quickly do a best roll of SA now Rossi Helef और DM और लाइटनिंग फास्ट मतलब सब एम वाले सिर्फ एम वाले नहीं भाई बुद्धि भी उनमें जीजी हो गया भाई पहला मैच यही चीज एक्सपेक्टेड था फुलसेंस की तरफ से इनफैक्ट ये चीज मैं कल एक्सपेक्ट कर रहा था लेकिन देर आए दुरुस्त आए सही समय पर लस्सी आया गाइस स्ट्रेटजी का और 12-3 शिकस्त देखिए अब भले 13-3 एक स्कोर लाइन जरूर है लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये सिंगल डिजिट वो भी एस कैन आई चीज ना I think Amaterasu is the coach. काफी ज्यादा अच्छे तरीके से माइंड प्ले करती हुई नजर आती हुई टीम फुलसेंस एंड आई एम वरीड बिकॉज़ अगला मैप पे कौन का होने वाला है अगर हम बात करें फ्लेक्स इनिशिएटर अगर चाहिए तो हम सिंगल डुएलिस्ट में डीएम को डाल देंगे और फिर सेंटिनल में रॉसी को डाल देंगे very impressive when it comes to that and I think Nathong being the duelist hell of over skills yeah personal preference वो चीज देखने को नहीं मिली क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा जल्दी शट ऑफ किया गया wherever it came from the side of full sense and I'm very impressed by the way Shalala played and PTC again very impressive ये दोनों ही प्लेयर्स काफी ज्यादा प्रभावशाली परफॉर्मेंस देते हुए बहुत तरीके हैं खिलाने के ये सुपर टीम में किसी के पास पैसा तो बना लो भाई की टीम हेलो इस बिग ब्रेन पे है स्टार्ट कोच और मोहम्मद परफॉर्मेंस कोच क्या बात है नॉन बंगाली
सेटअप है No one from और EG? उसके बावजूद काफी No, ज्यादा not right चमक now. दिखाते हुए। लेकिन चलिए यहाँ पर अगर हम बात करें जो हेडशॉट परसेंटेज है वो बिग बैम के फेवर में बहुत ज्यादा था, 10% ज्यादा। या सक्षम, लेकिन चलिए ये टीम हाइलाइट्स मस्त की नजर रहेगा। डालते हैं। पीटीसी एंड यहाँ पर उनके जो साथ शलाला थे, दोनों के दोनों प्लेयर ने कहर बरसा के रखा होता है इस मैप के अंदर। एग्जैक्टली एंड यहाँ पे एज यू कैन सी काफी ज्यादा consecutive kills आते हुए from the side of full sets and Super constant team play style. aggression from their side. Entry Knockout बहुत ज्यादा constant high की गई nice. and Big BAAM को बहुत कम मौके मिले सिर्फ कि bleed वो वालों launch पे की है। side तक even execute कर पाए। और जब आपके पास ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, आप बैक चलो पैसा दो, मैं हेलेफ को मेल करता। उसके बाद हम सबको पता क्या है बात है, टाइम आउट यहाँ पर फुल वन साइडेड गेम। बिग बैम द्वारा वहां से 2 राउंड Currently Rofil is the best jet of India. राउंड यहाँ पर हराए गए। अब सिचुएशन यहाँ पर क्रेजी इसलिए ना Maybe जहाँ पर जो राउंड्स थे लग रहे थे most impactful बोल सकते हो, बेस्ट तो नहीं बोल सकते। वहाँ पर भी उनको एक शिकस्त झेलनी पड़ी, तो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग जरूर था। GLT बना देंगे। अगेन अगर आप वो राउंड्स भी जीत रहे, एक टीम होके जहाँ पर आपको पता है कि ये Global velocity, बावजूद भी मैन डिसएडवांटेज में GVE फुल सेंस की वो टीम जीत गई, तो उनको ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस स्काई हाई चले जाएगा और उसी कॉन्फिडेंस को वन ऑफ द बिगेस्ट वेपन की तरह इस्तेमाल करते हुए नजर आई फुल सेंस की टीम। अब बढ़ेंगे वो लोग अपने मैप पे। I think any super team without Helef is not a super team anymore. I'm very sorry, but that is just my opinion and that is correct. Mimosa best jet, true भाई। बिल्कुल एक हवा के झोंके की तरह मैप आके चला जाएगा एंड पता भी नहीं चलेगा। That's what I think. It may sound Yeah, Rofil is done, हाँ। परफॉर्मेंस देखा उसके हिसाब से लग रहा है कि that is Exactly, most impactful बोल सकते हो। सीधे बोलो रियलिटी में इसके रॉसी। इस मैप के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है, लेकिन चलिए Now time to sleep, सिद्ध को पता है भाई। जो लीड उन्होंने प्राप्त करी, इनफैक्ट जो 1-0 की स्कोर लाइन करी उसको 2-0 कर जरूर सकते हैं, लेकिन आई स्टिल एक साथ दो इनिशिएटर कैसे खिलाओगे? तो बेसिकली तुम क्या करोगे, अगर एक साथ दो इनिशिएटर खिलाना है तो रॉसी को यू शिफ्ट टू अ सेंटिनल रोल, डीएम को तुम प्राइमरी डुएलिस्ट बना दोगे उस समय, और हेलेफ और लाइटनिंग फास्ट में से किसी एक को सेकेंडरी इनिशिएटर बना दोगे। और फिर हेलेफ फैन बेशरम हूं मैं ये बोलने में कि हेलेफ राइट नाउ माइट बी द बेस्ट प्लेयर इन द कंट्री ओवरऑल। The amount that he has improved is insane. Imagine Helef being able to like IGL. मैं कभी नहीं, एक टाइम पे मैं सोच नहीं सकता था। Now Helef can IGL. Helef does help in IGLing duties and everything. Dude, Helef, I would stick my neck out and say Helef is the best player right now overall in terms of impact. DMS Reina. अब हो गया बहुत बात सुपर टीम का सुपर टीम देखो इज जस्ट अ डिस्टेंट ड्रीम। तुम लोग ने पूछा, मैंने बोल दिया, अब खत्म करते हैं ये बात को, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट दिस इज ऑल्सो डिससर्विस। जो करंट टीम्स हैं दे आर ऑल्सो वेरी गुड। तुमने मेरा ओपिनियन पूछा सुपर टीम अगर बनेगा तो कैसा बन सकता है, मैंने दे दिया। अब वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, लेट अस ब्रांच आउट। ओके, ड्रीम टीम में प्लीज यार जीशु की बात ना करे स्ट्रीम पे मेरे। need to change in mind? Not much. I think whatever they need to change, CA will obviously tell them. What do you think of MW1 as a player? He's currently the only player who's good at playing most of the agents in the games. Yeah, definitely, but MW1 has another equally passionate career choice, so it's very hard for him. Amaterasu said someone wanted to IGL in the BFF and they got thrashed in that match, so anyone but Amaterasu on IGL, not sure about that. Imad, with time anything is possible, and you have to understand that will be a different team, so maybe वो IGL वाला जो नया IGL बनेगा it sticks there। यहाँ पे नहीं काम किया इसका मतलब ये नहीं कि he is just not a good IGL, है ना? ऐसे भी तुमने पूछा, मैंने ओपिनियन बता दिया। ऑनेस्टली आई डोंट थिंक लाइक ऐसा है, बट मे बिकम द परमानेंट सिक्स्थ इन प्लेइंग टू, मे बी Helef filters, I won't say is the fixed IGL.
बट फिल्टर पर से फिल्टर नहीं होता, फिलर होता है, या मतलब फिल्टर बोल सकते हो, फिल्टर पता नहीं तुम्हारे में। हाँ भाई साहब यही स्पैम करो मुंह। भाई मुझे टट्टी नहीं आती, कोई इलाज बता दो भाई। कायम चूरन खाया करो, नहीं तो ईसत बोल खाया करो। ओके, तो ईसत बोल बोल के एक चीज आता है, यू सर्च इट। सुबह सुबह उसको पानी में घोल के 1 ग्लास पी लो, आ जाएगा। कम ऑन लाइक द स्ट्रीम इज, क्या बात। एनी चांस ऑफ इंडियन प्लेयर्स गेटिंग साइंड अब्रॉड? या दे कैन। मर्जन प्लेस ऑफ कप्पा, व्हाट डू यू थिंक? नेवर। फुल प्लेस होगा है, ये सब दोगलापन है। आईजीएल फिल्टर नॉट फिलर। हाँ हाँ ठीक है, फिल्टर वही मैं बोला, आईजीएल फिल्टर बोल रहा हूँ। सिर्फ फिल्टर बोल रहे थे तो मैं थोड़ा। जी का मैच 4 तक स्टार्ट हो जाएगा लगता है। यस, डू यू थिंक देयर शुड बी कंट्री वाइज टीम्स इन वैलोरेंट? वैसा टूर्नामेंट्स भी आएगा, आई एम वेरी श्योर। एक बार हुआ था टूर्नामेंट ईयू में कंट्री वाइज। रेडबुल ने कराया था या किसने कराया था? किसने तो कराया था? पीजीएल ने कराया था शायद कंट्री वाइज टूर्नामेंट्स, या ब्लास्ट ने कराया था, ब्लास्ट प्रो नेशंस बोल के। हाँ, अश्नीर ग्लोवर वैन। आयरन पे रैंक के लिए रोज दो इजट, क्या बात है। इज्जत बोल या इज्जत गोल, पता नहीं क्या है भाई। लगता है तुझे भी नहीं आती। नहीं, मेरे को आती है, मेरे फैमिली में कुछ लोगों को प्रॉब्लम है। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाट यू मीन बाय अ फ्लेक्स प्लेयर? फ्लेक्स मतलब फ्लेक्सिबल प्लेयर की वो हु कैन प्ले सेवरल एजेंट्स। भाई ओशन की क्या आंखें हैं भाई, मेरे को कोई बताएगा ऐसी आंखें कैसे मिल सकती हैं? ये इतना बड़ा, इसकी प्रेशर में they wanted to obliterate the competition and they did it with full ease, but इसका कॉर्निया इतना बड़ा कैसे है? इसका ब्लैक पार्ट इतना जूम्ड कैसे है? और कुछ ही देर में हम बढ़ते हुए बढ़ेंगे इनफैक्ट अपने दूसरे मैप की तरफ, जो भाई इसका ब्लैक पार्ट इतना बड़ा कैसे है भाई? इसका आंख का ब्लैक पार्ट, या इसका प्यूपिल्स इतना बड़ा कैसे? मैं प्यूपिल का वर्ड ही भूल गया था। कल भी मैंने ये मुद्दा सामने रखा था कि ये वही ये देखो भाई, मेरे देखो पहले पूरे के पूरे एपैक रीजन को रिप्रेजेंट करके यहाँ तक पहुंची है। इस बार प्लेन्स के अंदर थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। क्या है ये? प्यूपिल्स है ये? क्या है? डैम भाई, भाई स्टड तो है भाई। लुक एट हिम, ही हैज वर्कड सो हार्ड ऑन हिमसेल्फ। दिस इज व्हाट IRL anime is. True dude. definitely was, and you think Valorant is an Asian game, that will be a good country wise? Yeah, TikTok से कर रहा हूँ भाई मैं। 15 मिनट से रिकॉर्डेड स्ट्रीम, 15 आपके जवाब का वेट कर रहा। क्या बात है, इंटेलिजेंट पीपल्स हैव दैट काइंड ऑफ थिंग। मतलब तुम बोलना चाहते हो मैं बेवकूफ हूँ? ठीक है, चलेगा, मैच वो किया जा रहा है जिसके जो ये कोई नहीं सोचेगा। प्रेशर कितना ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, बट देन अगेन maybe won't be as good as they can be. Nobody said they can't be. ये कार्तिक आर्यन कब से कास्टिंग में लगा? मैप बन जाते हो आपके पास एरियाज जहां पर आप लर्क बहुत अच्छे तरीके, ऑब्वियसली मिड का जो एरिया रहता है लर्क आप बहुत अच्छे पिन मैसेज रियल मींस फॉर द एवरेज प्लस। इसको सही तरीके से एग्जीक्यूट करना, if they do it, क्या बात है, it's all for them. If they do it, they तालियां बजती रहनी चाहिए। वेल डन। डिसाइडर्स जिसका शायद ही कोई बोलेगा कि नो डिसाइडर तक जाना चाहिए, क्योंकि आगे भी इंपॉर्टेंट मैच। Exactly, I mean, alright, important match की आप बात कर रहे हैं तो क्या भाई ओशन, मतलब you know you're handsome and all that, मतलब ऐसे ही बोल दो कि तुम नहीं। जो देखा मैंने तेरा कमेंट, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट मर्जिल? ही इज अ वेरी गुड प्लेयर। कुछ भी बोल दोगे हैं, कुछ भी, कि आगे और भी इंपॉर्टेंट मैच है, डिसाइडर नहीं जाना चाहिए? क्या बात है, सब दोगलापन है। कौन सा मैच है? क्लास जाके आया, अभी सेकंड मैप चलेगा फुल सेंस वर्सेस बिग बाम का, और उसके बाद जी का मैच है। व्हाट ही टोल्ड, ही सेड कि डिसाइडर तो नहीं जाना चाहिए बिकॉज आगे और भी इंपॉर्टेंट मैच है। मजाक कर रहा हूँ मैं, ही वाज आल्सो किडिंग गाइस। इसको लेके कुछ बना मत देना। पॉसिबल ग्रुप फॉर्मेशन, वी हैव 2 टीम्स ऑलरेडी डिसाइडेड, can decide the team knows well. बात करी है, as you can see, Hmm. it looks pretty standard.
अगर ये मैप के बात करेंगे। डिफेंडर साइड ओशन फ्यूचर से आया, ही इज टाइम ट्रैवलर, क्या बात है। ग्रिफिन वर्सेस जी, रिडेम्पशन आर्क इनकमिंग, यस। उसके साथ-साथ आपने किसी एक साइड पर कैमरा लगा दिया, आप थोड़ा सा पीछे आकर के खेल सकते हैं एक्सेट्रा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स बी साइड के अराउंड ऐसी शुरुआत होती है इफ वी टॉक अबाउट द एंकर्स एंड ऑल। एंड वहीं पर फुल सेंस की तरफ से अगर हम लोग बात करें, चालाला को देख सकते हो आपकी, उनके पास चेंबर है जो ट्रेडमार्क अपना वो सेटअप कर सकते हैं बैक स्टैब्स देखने के लिए। प्रीटी वायबल, प्रीटी सेंसिबल, एंड दोनों साइड वाइपर्स होना इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओशन विद रीजन वाइज गॉडस्पीड, क्या लगता है बेटर टू बी अ 6 मैन इन टॉप टीम और प्लेइंग इन 5 इन टाइम टीम? कोई मेरी बुराई कर रहा है। प्लेइंग 5 ऑब्वियसली डिसाइड जाएगा तो और फिनिश लाइन आहा है, वाह। के लिए तो काफी करीब है बिकॉज़ एफएस ओनिक एनएनजी मे बी गाइस, पैसा लगा दो, स्किल्स इज गोना किल इट टुडे। स्किल्स ने तो कल भी मारा था भाई, स्किल्स तो मार ही रहा है। तो ग्रिफिन ही सामने जी हार गया तो आउट ऑफ टूर्नामेंट, यस। मेरे वो 1000 लगा दिया लाइफ में, बस एसके रोसी जैसा कॉन्फिडेंस चाहिए, बिल्कुल। चेंबर और साइफर एंड ब्रीज, जैसे कॉम्पोजिशंस के बीच में फर्क की हम बात कर रहे थे, चेंबर वर्सेस साइफर यहां पे देख then why Marcel not leaving? His choice. He came into Valorant pretty late. He's learning and he feels like a family at VLT. तुम विबोर के बारे में भी सेम बोल रहे थे, अभी विबोर टॉप 5 में, अभी प्लेइंग 5 में आ गया तो तुम मार्शल के बारे में बोल रहे हो। लेट देम बी यार, उनकी टीम है। there must be some reason now why they're sticking together, and it's better that they're sticking together unless like Marcel gets a very like lucrative offer in terms of maybe building his own team or something. Better है ना यहाँ पे। He's playing with people he is known entire Valorant का scene में, जब भी वो since he entered, it is better for him. Did you take 3 more minutes VLT alpha और beta बना के? हाँ सही बात है। पूरा एंगल देखते होते हैं, वो सब चीजें की जाती हैं। What do you think about Twitter battle against issue? I think that was not that big matter. फीड करवाना What's up? It was a very big matter, but it's all right. I don't want to talk about this issue. Sure. Production तो है। ऐसे बोलते हैं ना, global esports attacking is weak because of their very slow execution towards side. They executed. That is their philosophy. इसका मतलब तो नावी का भी attack side weak था। I'll show you, और नावी का attack side winning ratio is almost 58%, which is the highest in CS:GO history. अभी CS:GO statistics में। यहां पे खेलती हुई नजर आ रही है अटैक पे, बट डिफेंडर्स के जेट दोनों सब बोल रहे थे कि वो शुड, हाँ भाई टीवन इज बैड भाई। देखो टीवन के बारे में कुछ मत बोलो, इज अ वेरी वेरी एंटरटेनिंग गाय, आई लाइक हिम वेरी मच। उस बंदे के बारे में मत बात करो, मूड खराब हो जाता है। मतलब गेम शुड सेट आउट बिफोर शुड अलाउड, सही बात है अभिजीत। Hitting on minus a big issue, yes, but let's not talk about it anymore. Okay, very good. Okay, this guy is. Ooh, he shouldn't have gotten even a single kill, but he gets 2, and they're not clearing the back of site. They're planting, they're not even clearing. Okay, this round should be done for BAAM. Yeah. Yeah, this is done. This is done. All because of that cipher. Which content creator do you follow from India? Content creator, भाई ऐसे content creator जैसा भारी शब्द मत बोलो। I watch Veggie Paji. I watch a bit of T-Bone. If I'm bored, I watch Sai. Okay. I watch Superman. पता नहीं, और इन से मात्रा गेटिंग साइंड नहीं भाई, मेरे को कुछ नहीं पता। अब इग्नोर करा मैसेज तो लड़ाई हो जाएगी। सच बताओ तो टीम्स लाइक द गार्डन इंस्पिरेशन है हमारे लिए। नाइस। एनएन उतना कुछ इंस्पिरेशन नहीं कर रहा है। गार्ड भी कुछ उतना इंस्पिरेशनल नहीं है। मिड से मूव करना चाहते हैं, हालांकि वो अकेले ही हैं मिड पे अगर हम बात करें। एंड आप बी विंडो पर देखिए, चेंबर जी वहां पर जाकर के थोड़ी बहुत इन्फो ले रहे हैं, हालांकि वो आगे नहीं जा रहे। दैट मींस ऑब्वियसली वहां की कमिटमेंट तो ऐसे हो नहीं रही है। प्लस रॉन वो सीसी पूछो, मतलब गेमिंग रिलेटेड ही होगा ना। साइड से ए साइड पर मूवमेंट हो सकती है। व्हाट अबाउट बेस्ट राजस्थानी स्ट्रीमर? सिट से नो कैप। डिड यू सी वेजी पाजी हैदराबाद टूर? अच्छा चौहानी नहीं देखते? नहीं। वॉच पार्टी आपको मिल गई? यस वैभव। जरूर किया अपने काउंटर जेट को,
हालांकि दोनों सिर्फ एक दूसरे को देख पाए, लेकिन अब 101 का डैमेज देते हुए Oh, this could be very close. जरूर आएंगे साइड के अंदर। अभी It's a 3v3. Nathong is stranded basically. वो लोग fall करके rightly so. They'll entertain the caveat, you know, and hope कि स्काई को कुछ प्लेमेकिंग कुछ मिले, बट जेट इधर ही मार्क करके रख रहा है, साइफर भी इधर आ रहा है। और डिफेंडर स्पॉन पे जिस तरह से मौजूद है, काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हुए नजर आ सकते हैं ये बिग बैम की टीम के लिए, बट ही नीड्स टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। अभी ब्रिज के नीचे आके खड़े हो चुके हैं और इनके सर के ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है इन द फॉर्म ऑफ साइफर। ओह नो, ओह नो, एज आई सेड गेस नहीं किया था कि पीटीसी इतना ज्यादा क्लोज होंगे। दो पिक्स निकालते हुए नजर आए और देखते नाथोंग अकेले ब्यूटीफुल प्ले बाय पीटीसी, बट ही गॉट लकी बिकॉज़ उस पर साइफर ने आवाज दे दी यार। टीम स्पिरिट एंड नॉट गिविंग अप इज व्हाट आई थिंक मैटर्स द मोस्ट। नाइस, या मिस्टी ब्लास्टर सिद्ध से नो बेस्ट राजस्थानी स्ट्रीमर। जी मैंने सोचा था पहले सुपर चैट करूंगा, बट ओके ओके। बजाज सर एनए में कौन क्वालिफाई करेगा? कर गए ना, मतलब आई थिंक ऑप्टिक माइंड, ऑप्टिक और क्लाउड 9 बेस्ट टीम इन एनए राइट नाउ, क्लाउड 9 व्हाट राउंड, यस bro, slow execution only works on Navi. I think in case of global it works. In slow execution they sometimes don't check corners. हाँ तो वो errors हो गए ना, that is not the problem of slow executes. Optics so good, V1 is so good, yeah. V1 और Optic में होगा तो कौन qualify? I think Guard plays well, but I don't think they can qualify. F is playing so well, will Kilobyte win coach slot? Yes, Kilobyte coach slot में. Penny best jet any? Maybe, yeah. To be honest, Penny might just be best jet any. बात मत कर मेरे से। Flawless award, best team in world, best team in world. Very tough. First of all, thank you for subscribing, Kaushik there. ये ओशन थोड़ा ज़्यादा चिल्लाता है, इसलिए आवाज़ कम करके रखी है तेरे। मगर दिक्कत अब थोड़ी सी बढ़ने वाली है क्योंकि Best team in the world. बैम की तरफ से अब हमको एक बाय आउट देखने को मिलेगा। ऑपरेटर देखिए ऑनलाइन आ चुकी है नाथोंग के लिए। I still say Gambit right now, but इसको देखने को मिलने वाला may very well change. चले जाता है तो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। 4 प्लेयर्स ओशन 0 क्रेडिट्स पर आ चुके हैं और ड्वार्फ के पास भी कुछ ज्यादा नहीं है, 150 क्रेडिट्स। I think Liquid have a good chance of overtaking Gambit now, but depends. Yeah, and NA have also improved. Cloud9 का NA टीम्स इतना मजाक बनाते थे, आज रीजन की बेस्ट टीम बन गई। राइटली मजाक उड़ाते थे, एक टाइम पे मजाक थे वो लोग। What do you think will win V1 versus? I think V1 wins it 2-1. Team Liquid best team for me. Mechanically, Liquid is the most gifted. Send Prolly, Senior is cracked or yeah, Gambit. अगले 50 सेकंड में इन तीन प्लेयर्स को फुल सेंस के आगे मूव करना नाइस वन पीटीसी। दोनों स्काइस का इस्तेमाल किया गया था, ट्रेल ब्लेजर का भी इस्तेमाल जरूर किया गया एक बार केव का जो शॉर्टर एंगल रहता है वहां से देखने के लिए, बट बिना उन्होंने पीटीसी को पिक किया। क्या मारा है भाई जॉन ओल्सन ने। They're playing some amazing Valorant, yeah, but they've not been tested properly, right? Only जवाब गया है, he has changed things. Yup. Scream on Sage or support is just too good. Yeah, Battle Sage. Scream add a shot machine. Machine. लैमी स्नैक्स को पिक ऑफ करने के बाद वहीं पे पूरा जो राउंड था वो headshot के फेवर में चले गया था, प्लस didn't take any loss in terms of individuals body. What do you exactly do, sir? Hi Dusky, I'm new to this channel. Welcome to the channel Dusky, and I'm a coach. I'm a Valorant coach, sort of. Yeah. अल्टीमेट्स ऑनलाइन आ जाएंगे। लैमी स्नैक्स को एक पिक मिला है और मिला हंटर्स फ्यूरी आ जाती है। दे विल हैव द ब्लेड्स के साइड से पूरा ये कंट्रोल ले लिया। सीकर्स ऑलरेडी अवेलेबल है बट दैट्स नॉट द मैटर। जॉन ऑल्सन के अगेंस्ट नहीं, पूरा एंट्री दे दिया। अब ये साइड घुस जाएंगे, बस पता चल गया एक को मार दिया, दूसरा पता है कहाँ है। नाइस वन फ्रॉम साइफर, गेट्स एटलीस्ट वन। बट यार मिड वाला बंदा विल बी क्रूशियल नाउ। यार मिस कर दिया मिड वाले बंदे ने। नाउ ही इज गॉन। Hello sir, I'm new to this channel. Hello sir, welcome to the channel.
लिक्विड को देखना ही नहीं है, कौन बनाते हैं। CS:GO स्क्रीन वाज डिफरेंट फ्रॉम वैलोरेंट स्क्रीन, दे डोंट टॉक अबाउट वन टॉप्स। VCC 2 में बिग 3 है, सिर्फ 4 या 5 देखने में मिलेगा मे बी। That's why fanatic every time brings news that how do they manage? They spend time in game and on the game. John Olsen, goat by goat. Can you see Chinese teams coming and dominating the scene? Yeah. Please share us the aim routine which you gave to CA. What's up, dude? Karunga. Do you feel if there was no COVID, scene of Valorant could have been 2x? No. I think scene of COVID actually enabled Valorant, to be very honest. Valorant may not have been as big as it is right now if there was no COVID. Very honestly. और अभी तक वो चीज फुल सेंस बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें करती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ साथ अब 3-2 की स्कोर लाइन जो अभी इन्होंने बनाई है उसको देखना होगा कितना आगे तक फुल सेंस कैरी फॉरवर्ड कर सकती है। सेव भी नहीं हो रहा क्या भाई? NNU डायरेक्टली गो टू मास्टर्स। व्हाट्सएप दादा जी जीतेगा ना आज बिल्कुल। फिर ब्रो इसके रॉसी ओवर पीक्स बिकॉज़ ही शक्तिमान इज नो गंगाधर शक्तिमान है, सो गणेश गंगाधर शक्तिमान। ये भाई ये बात मैंने 2017 में लिखी थी कि गंगाधर ही शक्तिमान है। हेलो गॉडस्पीड, हाउ आर यू? हाय सुप्रीम, लेट्स गो। ऑनलाइन कंपटीशन न होती तो कोविड के वजह से इफेक्ट होता। हाँ, अगर कोविड नहीं होता तो मैं आज VGM खेलता। क्या बात है विशाल, एग्जैक्टली सही बोल रहा है। हम देखिए वाइपर्स वॉल जो डिफेंडर्स वाइपर्स वॉल है, जब वो अप होगी तो एक बार के लिए तो प्लेयर्स को घुसने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन उससे पहले सारी यूटिलिटीज अटैकर्स अपने डाल रहे हैं एंड हर कोने में यहां पर इस्तेमाल किया गया था। I don't like that corner anymore, to be honest. और एक और पिक शायद हंटर्स फ्यूरी से आ सकता था, लेकिन लास्ट वाला मिस हुआ। हालांकि अब एंटी के एक पिक निकाला जरूर था, बट दूसरे के चपेट में वो खुद आ गए। 2-on-2 का सिचुएशन बन चुका है। स्पाइक लेकर के जाना है, चला डिसीजन यहां पर बन very good positioning. Please summarize what Molov said about yesterday. He said they were bad, which is why they lost, and they've corrected whatever they found out were their mistakes, and they'll be better today. And if I know right connects with the audience more, so yeah, maybe. Yes, he reached today. Passion or practice? Wait. Why our region don't have much crack players like any? We lack passion, practice, anything else? Maybe impetus or kuch nahi. FS almost through. Maybe you could say they threw. I don't think they threw this round. I think BAAM's response was amicable, and they sort of made it difficult, especially coming from this area. He flashed the pop flash thing with the sky. He made sure that he isolated this area and then captured this area. It was just Chalala enabled FS to win that round, otherwise they would have lost that round. That was a good play by the Sky. A Dorf. Directly go to Masters? Like इधर भी तो directly Masters जाता है, because it's an entire continent, just like Asia is an entire continent. Yes, Avijit. Meta is meta because meta is something in some utility that makes it meta. Exactly. Other than PRX 4 second, who is the best jet in the APAC region? I think John Olsen is good. Eman is Eman and Georgie. Georgie is also good, but no, utna nahi. Who else? Jing is good. What was that? Well, I think full sense के players का aim next level पे चल रहा है। पहले तो elbow का वो flick और John Olsen। Why is Mumbai server lagging so much nowadays? 1 out of 3 games I get server problem. भाई मेरे को भी मिल रहा है, क्या करें? मैं तो खेल ही नहीं रहा हूँ, फिर भी मिल रहा है। I feel PC gaming and never top mobile gaming because of the geographic and economic state of APAC where good mobile devices. Exactly, but sometimes in the future. Seoldam, huh? But Seoldam is no more in the APAC region, right? The C teams are not showing some flashy comms as of now. Because they are more comfortable. See, Southeast Asia is all about comfort. If they find comfort in something, they'll play that. Godspeed can velocity game dominate in breeze against these teams? Yeah.
आकाश यहाँ पर अभी के लिए डेफिनेटली नंबर्स जो हैं वो हो चुके हैं फुल सेंस इस गेम को भी 2-0 ही खत्म करना चाहिए You एंड think जॉन Askeros is good enough to play in tier 1? He wants to LFT? Maybe not tier 1 because all tier 1s have a jet right now. Maybe he can go to someone like tier 2. Maybe he can go in a team like Nigma Galaxy right now. Maybe. I'm not saying for sure if he wants to LFT. But I don't think. I think Global is a very good supportive org and a team as well for Eskerosi. Like, there's no reason for him to leave right now. Could come top 3 masters. एग्जैक्टली एंड उसके बाद I बाकी think काम right वाइपर्स now के the साथ perfect में blend नजर would be जा Paper सकता है X, इजीली प्लांट यहाँ पर थी कर देंगे but Bleed can also do some damage if like Suldam left North option, yeah. So he's not in any team right now, right? वाइपर ऑलमोस्ट दिख गए लेकिन What do you think about M42 Esports? It's a mess right now. I hope they sort things out because the org is a very good one. They have the funds. They're willing to spend funds and everything. शॉट लेंगे लेकिन डॉर टेक डाउन करते हुए देखो Oh, nice. बहुत कम थे Nice one. आपके 10 एचपी पर थे Mom ka Sova you see. देखा गया वहीं पर थी के द्वारा एंड दैट्स Rossi can dominate even with G. Stop thinking. Exactly, Abhijit. बेहतरीन राउंड एंड वो राउंड आता है टॉप की खातिर अच्छे पिक्स लाजवाब पिक्स Even penning or guard Trent, very tough question. But I'd go for guard Trent. Remember, TR split comp against EXO, KO and Breach. It was awesome. Wonder why it is not used by known orgs. It's basically comfort wala cheese. TR found utility in it. Other teams prefer other comps. It's okay. बहुत important जैसा आपने मेंशन किया again क्योंकि जैसा मैं बात कर रहा हूँ Dude, खा लिया अब नींद आएगी. Bleed Esports. I'll open a gaming cafe in Kolkata. Damn, VJ. Nice. I hope you do. कोशिश अभी भी यही चीज है कि इसे देखा जाए ऑलराइट ऐसा लगा कि एक बार के लिए पीना शायद स्नेक बाइट डाल सकते हैं अगर वो डालते हो थोड़ी सो जाओ यार. अभी कहाँ से सोऊं? कार ट्रेन प्लेस हैकर ही सो गुड. हाँ. अच्छा था हालांकि चाला को यहां पर पिक किया जा चुका है पीटीसी उसको इन द Nice comeback. एंड फुल सेंस के प्लेयर्स This round is very necessary for बहुत ही BAAM. ज्यादा अच्छे पिक्स निकाले डैश नहीं उनके पास एक और पिक चाहिए उनको डैश के लिए ताकि उनके पास वापस से आ सके लैमी स्नैक्स सोवा के को जस्टिस अच्छी सी देते हुए हालांकि अब लैमी स्नैक्स को ये राउंड निकाल करके देना पड़ेगा वापस से उन्होंने एक रिकॉन डार्ट डाला जिसमें से एक प्लेयर को डैमेज करने की कोशिश की लेकिन उनके बिल्कुल सामने जेट इस समय 8 गोलियां उनके पास 4 इस समय के लिए गोलियां ही विल टेक द प्लेयर्स डाउन लैमी स्नैक्स सोवा से कमाल रेस से कमाल जो 5v2. मार लो एक जब की. Feels bad for crazy guy. Yeah, maybe after this shuffle कुछ होगा. If G versus Bleed Esports 7 can just take. खोल दिए थे उन्होंने खो दिए Nice idea. कोशिश करी कि पिरामिड्स के पीछे से फ्लैश भी 6k के रेंज में कोई गेमिंग चेयर क्यों नहीं है? नहीं है भाई. वहां पे एक क्लीन अप किया जाए नहीं हो पाया ड्वार्फ ने बहुत ज्यादा परेशान किया ड्वार्फ और मियाओ ने Yeah, that can be a factor. AK, nice. That's a good thought. I like you. Because you finally like someone in the chat has actually made sense. Cryo feels like the best player in NA right now. He's just too good. Cryo sells, yeah, man. एक और राउंड की विन में क्योंकि क्रेडिट्स बिग बैम के good. पास ज्यादा नहीं बचे हैं 2650 एनटीके के पास नानथॉक के पास 2050 क्रेडिट्स बचे हैं तीन प्लेयर्स हैं जिनके पास बाय अच्छा हो सकता है पीना ड्वार्फ और मियाव थोड़ा सा एनटीके और नानथॉक को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा प्लस ब्लेड स्टॉर्म भी इस वक्त उस जेट पे अवेलेबल नहीं है तो शायद थोड़ी दिक्कतें बिग बैम को हो सकती है बट फुल सेंस I don't think they should buy this round. Very honestly, BAAM. At last, it all comes to him, isn't it? other than एमएस के भाई को भी बुलाओ भाई वो है ही नहीं. जो राउंड है जो शुरू होने वाला है उसके राउंड डेफिनेटली मैंने फोन से सर्च भी किया. क्या वो कर सकते हैं अगर I think he's busy. डिफेंडर साइड पर इफ यू आर जस्ट गोइंग फॉर इट वाइपर्स पे टे साइड पर प्रोबब्ली कमिट करने की Where is MSK? डिफेंडर साइड से पीना वो कर सकते हैं MSK Valorant. जा सकता है बदन अगेंस्ट प्लेयर्स को पता है कि नो इकोनॉमी थोड़ी देर के लिए उन्होंने शैम्बल्स में करी है जो क्रेडिट्स हैं वो शैम्बल्स में I think वो ग्लोबल के समय चालू करेगा. दे माइट गो फॉर इट ऑलराइट कॉन्कोर्स आगे आए थे बट जॉन ओल्सन पीना को कोई लेकर के जा चुके हैं बाकी शायद दिक्कतें या नहीं चाहिए वो सब. किया बट नतोंग व्हाट ये तो शुरू होने से पहले You mean we don't make sense? Boycott. चलो classes done. Back to Godspeed watch party. Let's go cruiser. एक ना पैरा. My brother is planning it.
देखना पड़ेगा. You think G should buy Crazy Guy and bench Kappa? I don't think you have to bench Kappa. But yeah, maybe if Crazy Guy is available. Because see, that's the thing Hellranger said as well. Like, if you want to bench a player, you need to get someone or have someone available who's a major upgrade. Otherwise, there's no reason to, like, swap anyone in the team. And to be honest, there is no one that like better than Kappa in the Indian region right now. Which area are you planning to open? Yeah. Oh my god, IGL in Valo because I'm not able to find IGLs for my team. So where should I start with? There was a short caller for my team in LOL, PGM and World, but start with the basics of Valorant. Just try and play together, see what happens, how it sticks. Try to gain as much information from your team. Tell your team to feed you information about what is happening all around the map. Raise your awareness levels. Try. Like try. Okay. It's a very. I don't know. He was FA at some point. Kappa, don't touch. Yeah, I know, decryptor. I said I thought I heard something about something, but he ended up in Enigma Galaxy. So, God IGL, I have like a very left field thought. Try and play without any sound. Try and play some comps without sound. That will raise your awareness of every angle and everything. If you want to play seriously. Only Crazy Guy is being talked about joining you. Other players not available. It's just the Sova thing. I think Crazy Guy is just like, and people are just thinking about replacement for Kappa, which is why they are just thinking about Sova. There are many players, but again, depends on G and who they think is good enough, if anyone is good enough in their eyes. If this match gets over early, then next will be G. Yes. Bye. Will be back after some time. Gotta work. Bye, Abhijit. अच्छा डोमिनेट कर रहा है फिर चलो अच्छा एंड अगला प्लेयर वुड बी माउजिक जिनको की पिक किया जा चुका है नाउ पिना इज लास्ट वन सर्वाइविंग एंड वेल से नो मोर 3-9 पर स्वैप डेफिनेटली किया है फुल सेंस ने दे आर प्लेइंग माइंड गेम्स एंड फुल सेंस इज ऑन अ फुल स्पीड रन मोड फुल स्पीड के साथ ये टीम आगे बढ़ तो रही है स्प्लिट भी 13-6 जीत गए स्प्लिट का कॉम भी पुराना वाला है यहाँ पे कोई जवाब या पहले दो राउंड बहुत इंपॉर्टेंट और अभी तक कोई भी जवाब नहीं मिला है बिग बैम की तरफ से फुल सेंस को शट डाउन करने का बहुत क्लीन हाफ यहाँ पे फुल सेंस की तरफ गया है और देखना ये होगा पिस्टल राउंड अगर जीते जैसा आपने कहा पहले दो राउंड मैं तो बोलूंगा पिस्टल जीते तो वो गाड़ी आगे बढ़ सकती है अगर पिस्टल हार गई यहाँ पे बिग बैम फुल सेंस सीरीज क्लोज करके ही दम Geez, I would be amazing. I don't think it happens just because I think Sai is better if he builds his own team, right? Vision Striker dominating as always, yeah. But they lost to on Slayers, which is ESC VLRT. कितना ज्यादा कारगर दोनों टीमें इनफैक्ट हो पाती हैं लेकिन जैसे कि हम लोगों ने बात करी जो पहले दो राउंड हैं जॉनी उनके अराउंड ही पूरा गेम प्रोबेबली बन सकता है सोचिए अगर दो राउंड्स दोनों के दोनों फुल सेंस निकाल गए क्योंकि एम पर दे आर डेफिनेटली Riot can kill Sova literally any day. They need a versatile player if they want any. I think the next agent will sort of lower the pick rate for Sova. The lower, like the hint suggests that it is going to be an initiator with some part of Sova utility, and I think that is going to be superior than Sova. It is time. It is time. Impress now, IGL or and move on, boys. Yes. पर जज भाई पे लीक्स नहीं होंगे तो और किस पे होंगे मैं कुछ नहीं बोलने वाला यू नो एनीथिंग अबाउट ओजी वाला लाइनअप नहीं मैं कुछ नहीं जानता हूँ ये सब के बारे में अगला इनिशिएटर है लिक्स मिल गई एजेंट्स एंड देयर रोल्स एंड काउंटर एजेंट आई शुड ट्राई टू गेन एज मच इंटेल एंड वो सिचुएशन बेस्ड कॉलआउट्स वो सब तो आगे दूर की बात है फर्स्ट अंडरस्टैंड योर टीममेट्स ट्राई टू प्ले एज मच 5-man as possible try to see what is their core competencies I have an exercise that can help you the next agent is an initiator and is being built to replace Sova yes cruiser hopefully I think Saibi amazing Sova constantly frag nikalta है Sova and seeing other Indian men Sova struggling to the heads up to yeah so that is one thing we talked about like I talked to many players like
you know, you have to give credit to Sai in a very difficult year where everyone was blaming him for what happened with Excalibur and everything. He changed his roles from Jet to like suiting other roles, and then he had to like switch to Sova just so he can bring Vim back to his OG Sentinel role. And he did that very brilliantly. Like the speed and pace and quality with which he adapted to Sova was honestly so good, and it just shows how competitive Sai is. He wants to win, and to win he will do anything. Like his team needs a Sova, he made him, like he became the Sova. Bro, but Kappa का एम तो देखो ना ब्रो, इट्स अ गिफ्ट गेम नो मैटर हाउ मच ड्राफ्ट यू मेक. अगर एम नहीं है, एम है कप्पा में भाई. हेलो, कल के मैच में देखो कप्पा वाज हिटिंग गुड शॉट्स. ओके 11 बड़ा बड़ा, बट इन दिस एरिया इट इज नॉट गोइंग टू वर्क. या not even Park Street, it has to be where it has to be Fulbagan or somewhere like middle of Calcutta. FS तो धागा खोल दिया, खोल नहीं वाला था guys. GodspeedxD VOD Reviews with tidbits where he teaches new stuff. Do tune in for those films. क्या बात है Joseph, thank you. I should observe my players and the comfortable play styles. Yeah, everything. Observe your players. That is the first thing that you should do. Why is everyone so concerned about Kappa? Yesterday Nicoron had such an impact, and when Nicoron still you wanna kick. Exactly guys, can we stop this chat यार? अगर उनको लगा कप्पा is not performing, या कप्पा को खुद लगा he is not performing, he'll just leave. He knows he provides value. They know he provides value, which is why Kappa is there in the team. You guys have to understand that. भगवान ही अच्छों को निकाला यार, कप्पा के पीछे पड़े हैं भाई. बेस्ट है जी में ओनली नेक्स्ट इनका प्रॉब्लम नहीं है. उसको थोड़ा अग्रेसिव कॉन्फिडेंट खेलना चाहिए, बट वो नहीं खेल सकता विद सोवा. ही कैन नॉट बी एज अग्रेसिव एज अदर्स. भगवान ही अच्छों को निकाला. इज देयर अ थिंग कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट विद टीम्स? या डेफिनेटली. भाई के कप्पा के पीछे क्यों पड़े सब पता नहीं यार. वीसीसी लैंड कब होगा यार? होपफुली कभी हो भाई. लैंड तो होने वाला है 2022 में, बट वीसीसी का देखते हैं. इंडियन चैटर्स कांट हेल्प इट. मेरा चैट पढ़ लो प्लीज प्लीज. भव्या, क्या था चैट तुम्हारा? भव्या, आज हांगकांग के सर्वर में होगा या का जी का मैच? आई डोंट थिंक सो. हो भी सकता है. Isn't this the time for India and SA region to focus on teenage talent so that will be as good? Yeah, so academy structure build करना बहुत important है इंडिया में now. I did that with Reckoning Esports. हमने academy structure बनाया, and to be honest बहुत हद तक we were successful as well, even though Godspeed you live in Calcutta. Yes, I think people want a scapegoat. True. कप्पा सबका पप्पा. True. एक थ्रिफ्टी निकालना चाहते थे, हालांकि लैमी स्नैक्स को पिक जरूर किया गया. ब्रिज के अराउंड का इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश हो सकती है. नाइस पता भी चला कि कोई ना कोई एंड देखिए टैग भी डेफिनेटली किया गया, लेकिन जॉन ओल्सन जैसे आए जरूर थे. एक हेड अगर लग जाता है. Can you help me? Earlier it was easy to play Viper and now in latest place I can play so good. What agent should I try instead? Unto Lurk play slow, try Omen. नजर आ रहे हैं, but then the only question is it enough? 5-10 अभी भी पीछे हैं. Try Omen. Can even now it's also viable for Sky. Yeah, C9 got 3 academy players. Yeah. He doesn't play like any other Indian. They respect and play within the role. Support means support for him. Yeah. We have a blind audience. Education not there. No, yeah, ये सब मत बोलो. Mentality is there. People here think older players can't play good. हाँ, वो तो है. 3.5 का होगा. Yes, होगा. अगर ये खत्म हो जाए टाइम पे. हाय नींद. अगर 6 बजे होता ना, मैं तो यहीं पे बैठा बैठा सो जाता हूँ भाई. इट्स गुड कि अभी हो रहा है. यार जो लोग सेटअप्स बनाते हैं ना कि बेड के जस्ट पीछे है, वैसे ही होना चाहिए. मैं कंप्यूटर को यहाँ पे रख के बेड पे मस्त लेट जाता है या बैठा रहता और वहां से ये पूरा कास्ट कर रहा था. मजा ही अलग आता. Don't think it's unfair that EMEA is playing on, we are playing on 404. EMEA is also going to come to 404. गुड क्यूटी, क्या बात है शहजाद, क्या हाल है? प्राइसिंग फैक्टर डिपेंड्स ऑन इंडियन टीम वांट्स इंस्टेंट रिजल्ट्स. एवरी वो तो मेंटालिटी है ही. टीम्स नहीं तो फैंस भी. इन बच्चों को बताओ बीजीएम नहीं कि बच्चे खेलें. यूज ऑन Cloud9 domination, they deserve it. They are by far the most flexible team along with the guard
and V1. Those three are very flexible. Optic is trying to be, but I think Optic shouldn't try to be that flexible. There is utility in what they do already. उनको कहीं और utility ढूंढने की जरूरत नहीं है. He's old but still one of the crispiest streamer. Yeah. Just look at Rexy. People underrated Rexy so much कि ये क्या है. But Rexy has the highest headshot percentage among all Indian players. Imagine. Whereas we don't. Yeah. I think Indian teams need to play more SEA tourneys rather than playing SEA tourneys. If they are offered, obviously they will, na. क्रॉसफायर वो लोग भी सेटअप नहीं कर पाए और बिग बैम कंप्लीटली कैपिटलाइज कर गई. फुल सेंस एक बार फिर से रीसेट की तरफ जा चुके हैं. इको राउंड रहेगा. Guys, I'll be back in 2 minutes. अगर किसी तरह से या तो एक किल चाहिए या फिर I go to washroom. कोशिश की जाएगी ताकि ब्लेड स्टॉर्म I'll be back. और थोड़ी फाइटिंग पॉसिबिलिटी रहे. चाला ला के पास उनका टोर डी फोर्स अवेलेबल होगा और साथ ही साथ थी के पास भी वाइपर स्पिट है जिसके अराउंड ए साइड पे तो चलिए एटलीस्ट डिले करने. Back in 2 minutes, guys. Okay, तब तक मैच देखो. डिलेज डेफिनेटली होने चाहिए भी, बट मेरे दिमाग में इस समय ये चल रहा है कि अब फुल सेंस शायद वो इस चीज़ को रियलाइज कर रहे हो कि नो हमने क्या गलती करी है स्वॉप के बाद से, क्योंकि स्वॉप के बाद देखिए पहला राउंड उन्हीं के पास आया था. हालांकि जो फोर्स बाय हुआ उसके बाद शायद थोड़े से कदम डगमगाए थे, बट एज ऑफ नाउ अगर हम लोग बात करें चालाला को आप देखिए उनके पास उनका अल्टीमेट टोर फोर्स डेफिनेटली रहेगा, इस्तेमाल उसका वो कर सकते हैं. दूसरी तरफ पीटीसी अगर प्लेयर्स कम बचते हैं कुछ भी तो वो डेफिनेटली जा सकते हैं. इस चीज़ के लिए जॉन ऑल्सन के पास उनका अल्टीमेट आता हुआ ब्लेड स्टॉर्म का इस्तेमाल वो करना चाहेंगे एंड दिस इज वेयर फुल सेंस कैन प्ले रियली गुड. देखिए वो एम पर अच्छा खेलते हैं. चालाला के पास टोर फोर्स, जॉन ऑल्सन के पास ब्लेड स्टॉर्म. अल्टीमेट्स पर खेलना ही यहाँ पर एक मेजर कंसर्न बन जाता है. माओ उनका हंटर फ्यूरी एग्जैक्टली फ्यूरियस नहीं हो सका. देन अगेन राउंड तो अभी शुरू ही हुआ है और ए साइड की तरफ को मूवमेंट हो रही है जहां पर जस्ट एक वाइपर है इस समय थी. लेट्स सी कैसे वो खेल पाते हैं क्योंकि उनके ऊपर इस समय एक पूरा पहाड़ टूटने वाला है. हर तरफ से प्लेयर्स जाने की कोशिश करेंगे. गाइडिंग लाइट का इस्तेमाल किया, प्लेयर्स आगे मूव कर रहे हैं लेकिन नेथोंग को डाउन किया दीप के द्वारा काफी ज्यादा अच्छे तरीके से. हालांकि साइड तक प्लेयर्स पहुंच चुके हैं बट देन अगेन बिना प्लांट करते हुए नजर आ रहे हैं. उसके बाद अब खेलना है प्लेयर्स को रीटेक पर. एक अच्छा थ्रिफ्टी निकालने की एक बहुत बड़ी कोशिश हो सकती है बट देन दिस वाइपर स्पिट माइट जस्ट डिनाई अ फ्यू थिंग्स. बिल्कुल सामने प्लेयर्स हैं जरूर बट क्या पता है इसके बारे में. डॉक्टर को स्पॉट किया गया, पिक जरूर किया गया सही समय पर बाहर निकल के एक और पिक. जॉन ऑल्सन बीइंग द जॉन विक दैट वी वर टॉकिंग अबाउट एंड दे गेट द राउंड फॉर देमसेल्व्स. थ्रिफ्टी इंडीड अ ब्रिलियंट वन और बहुत ही ज्यादा शानदार थ्रिफ्टी यहाँ पे जॉन ऑल्सन ने अपनी टीम के लिए निकाला है. गोइंग एब्सोल्युटली न्यूक्लियर ऑन द लैड्स ऑफ बिग बैम. जैसा आपने मेंशन किया उम्मीद थोड़ी सी थोड़े से चांसेस कम थे फुल सेंस के राउंड निकालने बिकॉज बाय प्रॉपर नहीं था बट फिर भी एक ब्लेड स्टॉर्म को जिस तरह से यूज किया गया वाइपर स्पिट के अंदर बहुत ज्यादा इंप्रेसिव. लुक एट दिस डिके चल रहा था बट फिर भी धीरे धीरे एक शिकारी की तरफ में कदम उस वाइपर स्पिट के अंदर आगे बढ़ा है और एक एक करके यहाँ पे शट डाउन किया फुल सेंस को. सॉरी बिग बैम को. फुल सेंस ने अब एक एडवांटेज आ चुका है. एक और कदम जीत के और करीब आ चुके हैं. बस 2 राउंड्स और चाहिए मैप को और सीरीज को क्लोज आउट करने के लिए. 6-11 की स्कोर लाइन. बिग बैम बाय तो किया है बट देखना होगा कितना संभल के यहाँ पे एग्जीक्यूट करने की कोशिश की जाएगी. और फुल सेंस अब जाकर अपना अल्टीमेट लगाती है. अब जाके वो वाइपर स्पिट हमको नजर आती है ए मेन पर. थोड़े समय के लिए सोचेंगे प्लेयर्स फिर शायद पीछे खदेड़े जा सकते हैं. हालांकि इसके अंदर आउटड्रोन करने की शायद कोशिश हो सकती है मॉक के द्वारा. यस गोइंग फॉर इट. आउटड्रोन किया गया, स्पॉट डाउन करने की कोशिश की. हालांकि ड्रोन उस चीज के लिए कारगर नहीं हो पाया बट फिर भी पीटीसी को पिक डेफिनेटली किया गया. ऐसे में आप मिड के राउंड देखिए. सोचिए अगर जॉन ऑल्सन पीछे से घूम करके आ जाएं तो जरूर दिक्कत दे सकते हैं. हालांकि वो वुडन डोर से अभी के लिए अंदर घुस रहे हैं. ए साइड के अराउंड जो कमिटमेंट है वो की जा रही है दोनों साइड से एंड वहीं पर थोड़ी सी दिक्कतें बन सकती हैं. ब्रिज से भी प्लेयर्स आ जरूर रहे हैं. जॉन ऑल्सन को समझना पड़ेगा कि जस्ट उनके साइड से प्लेयर्स आने वाले हैं एंड हर कोई घुसता है. जॉन ऑल्सन हालांकि 2 पिक्स निकाल चुके हैं, जंप की और प्लेयर्स को देख लिया है. अब बाकी प्लेयर्स को भी वो मौका देंगे आगे आकर के खेलने का. हालांकि अब बैम के प्लेयर्स एक एक करके डाउन हो रहे हैं. इनफैक्ट एक ही प्लेयर यहाँ पर बचे हैं डॉर्प एंड राउंड निकाल करके अपनी टीम को दे गए. एक्स्ट्रा क्रेडिट्स और उठाएंगे प्लांट करने का. When you least expected him, he got the round. Yeah, जिस तरह से शुरुआत करी थी फुल सेंस ने और जॉन ऑल्सन ने इन पर्टिकुलर ऐसा लगा नहीं था कि बिग बैम इतनी जल्दी ट्रेड्स ले पाएगी और ट्रेड्स के बलबूते पे राउंड कन्वर्ट हो पाएगा. बट किस्मत का भी साथ देखिए पीटीसी
को वहाँ पे टेक डाउन किया गया। जॉन ऑल्सन कोशिश बहुत ही बेहतरीन थी बट ज़्यादा कुछ अकॉम्प्लिश नहीं कर पाया। ड्वार्फ लास्ट मोमेंट पे सही तरीके से अपने टीममेट को ट्रेड किया और राउंड अपनी टीम के नाम किया। 7-11 पे आ चुके हैं, डिफरेंस बहुत ज़्यादा कम है। ओशन मात्र 4 राउंड्स का फर्क रह गया। मम्मा गिलास ले, अरे बिल्कुल राउंड जरूर कम हुए हैं बट देन अगेन अब समझना ये है कि ये प्लेयर्स इस चीज को प्रेशर की तरह ले रहे हैं या नहीं, क्योंकि फुल सेंस उनको तो बस बैठे रहना है एंड बैठ कर पिक्स निकालने। एनटीके का एक प्राइम एग्जांपल बन जाता है जिनका ट्रेड यहां पर लिया स्नैक्स 1-2 स्पॉट्स एंड बोर्ड टेक्स क्या हाल है गाइस? आउट ऑन करके जस्ट आई एम बैक। कोशिश देख भी लिया है उनको एंड बैक साइड से थी भी आ रहे हैं। बैक अगेन। होना दिक्कत बन चुका है। 1-2 क्या चल रहा है? रियलिटी डिडंट प्ले इट इजी चैलेंजर। किलो वाइड भाई ने मस्त कोच किया है इसको, सही बात। फुल सेंस के प्लेयर्स as they're just going on to it और अब बस एक सैलरी सी प्लेयर से बहुत ज्यादा है। एवरेज सैलरी नहीं, हाईएस्ट सैलरी में भी हाँ इंडियन प्लेयर्स को थोड़ा मिलता है अच्छा, बट इंडियन प्लेयर्स को एक्सपोजर भी ज्यादा मिलता है। गॉडस्पीड कोई गेस्ट को बुलाओ भाई, एमएसके को बुलाना चाहता हूँ मैं, देखता हूँ। स्ट्रॉन्ग मेंटल यहाँ पे चाहिए होगा बिग बैम की टीम को। मनी वाइज सिचुएशन इज नॉट लुकिंग गुड। टाइम आउट एक यहाँ पे आता है, एक टैक्टिकल टाइम आउट लिया गया है टीम के द्वारा। आई डोंट नो क्या कॉल आउट्स रहने वाले इस लास्ट राउंड के लिए। फुल सेंस ऑन द अदर साइड जस्ट प्लेइंग अ वेरी ब्यूटीफुल गेम राइट नाउ, और खास तौर से जॉन ऑल्सन क्या परफॉर्मेंस है। लुक एट दिस 24-12 पे ये जेड बैठी है और इनके बाद नेक्स्ट क्लोजेस्ट इज 14, 10 किल्स ऊपर। आई मीन सोचिए ये आराम से 2 का केडीए लेकर के बैठे हुए हैं। अगर अभी भी कुछ भी होता है कोई दिक्कत इनको नहीं होने। प्लस आप देखिए कितना ज्यादा अच्छे तरीके से क्रेडिट्स को इन्होंने अपने रखा हुआ है। ये वाले राउंड में अगर ये प्लेयर्स चले भी जाते हैं, खत्म भी हो जाते हैं, फिनिश भी हो जाते हैं, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। अगले में फिर भी बाय इनके पास आ सकता है। वहीं पर अल्टीमेट्स भी अवेलेबल रहेंगे, हंटर्स फ्यूरी रहेगा। एक अगर आप पिक निकालें या फिर मर भी जाएं तो भी जॉन ऑल्सन के पास उनका ब्लेड स्टॉर्म रेडी हो जाएगा। बुला रहा हूं मैं एमएसके को, बट देन अगेन मोनो फ्रेंड यूज किया जाएगा। जाते हैं लेकर के खुद को या नहीं। दूसरी तरफ जैसे कि आपने बैम के प्लेयर्स की बात करी है जॉनी, शेरिफ्स, एक हीरो वैंडल, आई डोंट नो, डाइसी तो है। डाइसी तो काफी ज्यादा रहने वाला है। They got lead, everything top speed, man, everything Godspeed. ब्लेड स्टॉर्म पे खेलने की कोशिश आगे बढ़ते हुए नजर तो आ रहे हैं ए मेन की तरफ, बट लुक एट द रेडार। फुल सेंस, ओ माय गॉड, ए साइड को डायरेक्ट कंटेस्ट भी नहीं करना चाहते, मिड पे आ रहे हैं और हॉल से बैक स्टैब करके पीठ पे गोलियां मार के खत्म करने की कोशिश, एंड दे आर डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब। They want to enjoy it and well they are enjoying it. केव के अराउंड के मेन केव का एरिया देखने की कोशिश थी, लेकिन वहीं पर जो केव का शॉर्टर एरिया रहता है उसी के अराउंड यहाँ पर टेक डाउन करने की कोशिश है। एंड आप देखिए लैमी स्नैक्स आए, हलचल मचाई, चले गए आराम से बैक साइड से, जैसे कि हम बोलते हैं कि धप्पा किया एंड निकलते नजर आए हैं। एमएसके अपनी भाई एमएस कितनी देर तक क्या वो डीले कर पाएंगे अपनी हार को, यही एक सवाल बन जाता है। लेकिन शॉक डार्ट पीडी, they just wanted to have their own fun as they are getting this game. Full sense, full speed run, and well, they got this one. Elimination था, but they were like, no, we still want to fight. I mean, definitely, और एक tough fight. Alright, MSK is coming in 10 minutes, guys. For G, we will have for G versus Fancy, we will have MSK. क्या था कि हर बार डायरेक्ट हिट्स हो रहे हैं, अगर हम थोड़ी बॉडीज कमिट करें मिड की तरफ, we can get an easy round, और इस राउंड में भी वही देखने को मिला। आखिरी राउंड में फाइनली क्लोज आउट करने में कामयाब रही फुल सेंस। 13-7, 2 सिंगल डिजिट फिनिशेस, पहले 13-3 और अब 13-7। बाम आउट, यस बाम इज आउट। ये वाले में भी देखिए ऑलमोस्ट 13-3 कर सकते थे, जैसे 10-3 तक पहुंच जरूर चुके थे, लेकिन चलिए एक बार स्कोरबोर्ड पर जाते हैं, नजर डालते हैं कि Okay guys, MSK is coming. MSK will be there for G's match 3 hour पहले, so think player will be prepared. Yeah, player will be prepared. Players they are already told कि अगर जल्दी मैचेस खत्म हो रहे तो एक्सपेक्ट कि जल्दी चालू हो जाएगा। यहाँ पे बिग बैम के पास ज्यादा मौका नहीं था। कुछ राउंड्स ऐसे थे जहाँ पे बिग बैम ने अपना टीम प्ले बहुत अच्छा दिखाया, बट ज्यादातर राउंड्स में जॉन ऑल्सन इंडिविजुअली बैम का बूम बम हो गया, क्या बात है। साबित हो गए थे कि बिग बैम उनको रोक ही नहीं पाई, क्योंकि चाहे अटैकिंग साइड पे बात करें, डिफेंसिव साइड पे बात करें, मल्टीपल राउंड्स में मल्टी किल्स निकाले, 2 से 3 पिक्स निकाल के अपनी गेम अपनी टीम MSK pockets, yes, MSK will be there guys. Also humble request to all of you, प्लीज MSK को जाके सब्सक्राइब कर लेना, मैं लिंक दे दूंगा जब MSK स्ट्रीम चालू करता है, ठीक है। इस वक्त फ्रैग विंस भी काफी ज्यादा देखने को मिले कंपेयर टू द लास्ट गेम। 11 फ्रैग विंस रहे, 2 ऑब्जेक्टिव विंस
उनके हाथ लगे, बट एट द एंड इट्स द टोटल स्कोर दैट मैटर्स। 13 का आंकड़ा पहले छुआ, जीत हासिल करी, और साथ ही साथ जा चुके हैं कल के FS वर्सेस APS प्रेडिक्शन FS। उसी के साथ दुख खुशी अगर कहीं है तो बैलेंस भी बने रहता है, दुख भी रहेगा, क्योंकि बिग बैम का सफर जो है यहीं तक का था। दे आर आउट। काहे का दुख जॉनी भाई? अभी सिर्फ एक ही एलिमिनेशन हुआ है जी। डेफिनेटली थोड़ी देर बाद एक और मैच आएगा, उसके बारे में बात उस समय जरूर करना चाहेंगे, लेकिन जैसा सिचुएशन यहाँ पर रहा है वैसा सिचुएशन वहां पर भी किसी टीम के लिए हो सकता है। we'll have to just know understand कि वो गेम्स कैसे जाते हैं, मैप्स कौन से रहते हैं, बट उससे पहले एक बार इस मैच की मैंने तो आपको भी सबने कहना ही नहीं किया, बहुत जनों ने किया गाइस, एंड आई ट्रूली अप्रिशिएटेड। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग Yeah, I have seen Suspi. वो कंफर्टेबल स्वैप फुलसेंस ने ले लिया था, Right, लिया, yes. एंड देन अगले राउंड को करके डबल डिजिट पहले हिट कर लिया 10-3। ज्यादा बड़ा एक फर्क बन जाता है। 7 राउंड्स का पास था जिसके अंदर कोशिश जरूर करी बैम के प्लेयर्स ने कि वो 5 Yeah, Sentinels aren't making masters, I think. बट उससे ज्यादा नहीं कर पाए वो लोग। हालांकि Wikipedia जाना पड़ेगा यार। उनको बार-बार प्रेशराइज किया जा रहा था। आप देखिए हर एक राउंड में इट वाज लाइक उनके ऊपर चढ़ करके उनके या तो क्रेडिट्स को खत्म किया जा रहा है, या फिर एक-एक करके प्लेयर्स को डाउन किया जा रहा है, यूटिलिटीज का सही इस्तेमाल किया। It's full screen, okay? तो आई सब ब्रो चेक ओबीएस। हाँ हाँ, मैं तो बोल ही रहा हूँ, वीटो डन, नाइस। मतलब कुछ स्पाइसी है क्या या नहीं है? Channel seems buzzing these days. Bajaj bhai, thank you Abhyudaya yaar. It's all because of all of you guys. It's because of CA. It's because of Malav. It's because of all of these guys. And to be honest, they pushed me so much to stream. First of all, okay, they pushed me to stream so much. Pehla baat, that I'm I feel so sort of indebted because like it feels so good that someone pushes you to do all of these things. All the best. तो obviously भाई बोलने की जरूरत नहीं है, they got this, full faith. And CA has rated me, Malav and Malav so many times, and see, and Mimosa, he shares and retweets our links and everything. And pro players who help us with, they come on chat, they come talk to us and everything. Like, don't give up bro, just be content, you will be at the top my friend. Thank you PH. I came from C. Exactly, Remit. So all of these are to thank, and for all of you guys as well, for you guys to come up, show up on my stream and then remain. Like, it's honestly like a very emotional thing for me as well, because I'm an emotional guy for all of this. I'm very awkward with asking for things and everything, and like, I'm just very obliged as to what all has transpired in the past 1 to 2 months. I feel very humbled with all of this. It's just people realizing how good you are and a natural reaction to watch you. Yeah, but maybe matlab, it's just that I'm humbled by all of you guys and your reactions, and yeah, I'll continue to be. I'm in top 13 leader. क्या बात है World Titan? I came from 13 when you played Astra with Valor against. Damn Tanish, सही जगह पे आए तुम. When does G play? G, that is why Malav is what I thank. Not thank, but I am so happy for you seeing. So like what you said, those sentences, like coming from someone like how can I say this, like whom I've known from so many years, and I know that, like, Godspeed, hope you find a good orc soon. Yeah, hopefully, man. Okay, let's go back to this. Let's remove the emotional shit talk. Okay. Boom, MITH Cerberus. डोंट क्राई, पर नहीं मैं भाई रो नहीं रहा हूँ, मैं वैसा उतना भी इमोशनल नहीं होता हूँ मैं. हेलो,
उतना भी इमोशनल नहीं होता हूँ मैं. हेलो. So boom, MITH, Cerberus. Now boom is from ID, which is Indonesia. MIT is Thailand. Cerberus is from made in Thailand. Yeah. So ONIC can't go in Group A, can't go in Group B, right? So the only two regions where ONIC can go is Group C or D. Really don't know. Rice feed. What are you eating? I'm eating cucumber, dude. It's healthy during the summer season. When does alter ego play? सही बात है भाई. Now come to full sense. If full sense qualifies, full sense cannot be in Group A. Full sense cannot be in Group C. So B or D, right? No namers. No namers cannot be in Group B. No namers cannot be in Group C. So again, A or D. And G, if they qualify, they cannot be in Group D. So A, B, or C. Let's see the two first seeds. Now ONIC will get preference because they're the first seed. They can't go in Group A. They can't go in. They can't go in Group B, right? So C or D. Let's say ONIC, I think, goes D, right? Then the first seed of second group, which is no namers. Now no namers cannot go in Group B and C, A or D. D पे already ONIC आ गया. So on no namers go A. So no namers go in A. अब Group A का second will be full sense. Now full sense cannot go in Group C. So full sense goes Group B, according to me. You can join Exploit as a head coach. I mean, they have sexy, right? No, but because ONIC had a tougher bracket, I'm just giving them preference. And going by alphabetical order as well, Group A gets preference, right? So ONIC Group D, no name is Group A. Group B is for full sense, and Group C is for global. सब अच्छे प्लेयर्स कोलकाता से ही होते हैं कि क्या बात है. टीम सांप ओपी भाई. Yeah, if NN goes, but I think ONIC will go Group D now. Okay, but second situation. No, VLT can still be ONIC very truly like. Okay, second situation. What if a action PH qualify? If action PH qualify, तो पहला तो सेम रहा है ना. पहला दो is in ONIC goes D and they go A, right? And then ONIC and then action PH will also go B, right? Because C has nows, so it is okay. Action PH या FS whoever qualifies, I think this will be the groups. Group A में no namers, Group B में
एक्शन पीएच या फुल सेंस, ग्रुप सी में ग्लोबल एंड ग्रुप डी में यू गेट ऑनिक. सो दिस इज माय प्रेडिक्शन गाइस. कोई क्लिप कर लेना इस पार्ट को, हम डाल देंगे कि प्रेडिक्शन फॉर ग्रुप्स. People sleeping on NN. Yeah, NN is decent. Guys, to be honest, what you guys are not understanding is ONIC played this Playins against the two teams that had a similar play style. पेनल्टी कहाँ पड़ी है भाई? हमने तो सारे खेल लिए. या फिर ग्रुप ए इजीएस्ट हो जाएगा. या ग्रुप सी में ही जा रहा है ग्लोबल, टू बी ऑनेस्ट. लाइक जो मैं देख पा रहा हूँ ग्रुप सी में जा रहा है ग्लोबल. गाइस कोई ये क्लिप कर लेना, ये याद रखना कितने घंटे के अंदर था ये. कोई अगर देख पाए ये कब था, ये टाइम स्टैम्प, दिस इज प्लीज याद रखो. I'll write it down. This is what I feel. Right name. ब्लू से लिखा हुआ है. ब्लू ले लो, छोटा कर लो इसको. ओके, टू बी नो नेमर्स. ओके, ONIC action PH full sense global esports. और ग्रिफिन भी साइड में डाल देते हैं जस्ट बिकॉज मतलब आई डोंट वांट टू बी मीन टू समवन. लाइक इट्स नॉट लाइक आई एम सेइंग कि ग्लोबल ही क्वालिफाई करेगी, इवन दो आई एम कॉन्फिडेंट इन ग्लोबल चांसेस. सो दिस इज द ग्रुप गाइस. मैच चालू होने वाला है. हाँ, मैं बस वहीं पे जा रहा हूँ. जस्ट पुट इनिशियल्स, नॉट कंफर्म राइट. No, so this is my prediction because I think ONIC will get preference because they are Group A. So I think they go to Group D, and no names go to A. Yeah, I mean global will qualify, but I have to be respectful. जैसे मैंने action PH full sense लिखा है, I just have to be respectful to the team. Reaching out to more hours, इतना stress बहुत time से नहीं. देवांश भैया थैंक यू फॉर द सब्सक्रिप्शन. बट हाँ यार, वो तो होगा ही. मतलब आई हैव आल्सो रीच्ड आउट. होपफुली in the I think so in the coming 4 to 5 days you should have a clear like resolution. Maximum 1 week ki I think you guys will find a new home. Pith, Maxi, Darion, yes. Do you think VLT can beat South Build? I think only one of them will. Yeah, they can. They can, yeah. वेरी मच बिलीव. ऑफर से पर बहुत चूज लोग आ रहे हैं, वो तो आएंगे श्रेया, यू ऑल्सो नो दैट. जी अब मैच अबाउट टू स्टार्ट. ओके, सो गाइज इसका कोई स्क्रीनशॉट ले लो. इसको हटाओ, अरे इसको रहने दो. ओके, स्क्रीनशॉट ले लो कोई. गाइस मैं भी ले लेता हूँ. स्क्रीनशॉट ले लिया गया गाइस. अब इसको हटा के, इसको बंद करके, F11 करके इसको हटा, मतलब इसको रहने दो. एमएसके ने स्ट्रीम चालू की क्या? नहीं की.
Yeah, it is never going to be easy. Fancy is exponent 5 on NN is exponent 5. Exponent 5 is Naos. Monka S. गंगाधरी शक्तिमान है. You. Connected. Channel switched. Microphone muted. Don't I let's go. By group C is also possible for ONIC region wise. नहीं है. How is group C possible by? आईडी बोल के इसलिए बोल रहे हो क्या? हाँ पॉसिबल. तो बेसिकली उसका सी और डी पॉसिबल है ऑनिक का. ठीक है, तो उसको डी जाएगा, वो सी पे नहीं जाएगा, उसको प्रेफरेंस मिलेगा. राइट. ऑनिक को सी या डी जाएगा, ऑनिक डी गया. अब क्योंकि ऑनिक डी चला गया तो ग्रुप ए में तुम्हारा एन जाएगा, क्योंकि उसको ए या डी ही हो सकता है. अब क्योंकि ए या डी हो गया तो फुल सेंस सिर्फ इधर ही जा सकता है, नहीं तो फुल सेंस डी पे जा सकता है, फुल सेंस सिर्फ इधर जा सकता है बी पे. क्योंकि बाकी तीनों भर गए तो ग्लोबल सी पे ही जाएगा. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? कोई चांस नहीं लेने का. समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? ऑनिक ग्रुप सी या डी में जा सकता है. ठीक है, ऑनिक डी चूज करेगा ऑब्वियसली अगर उसको चॉइस मिला, प्रेफरेंस. राइट. अब क्योंकि डी भर गया तो नो नेमर्स के पास ए ही बचता है ना, क्योंकि नो नेमर सिर्फ ए या डी में जा सकता था. अब क्योंकि ए और डी भर गया, फुल सेंस बी और डी में जा सकता था, फुल सेंस बी में जाएगा, है ना. फुल सेंस अगर हुआ तो, और एक्शन पीएच हुआ तो वो बी में जाएगा, क्योंकि बी या ए पे ही जा सकता था, है ना. तो ये एक्शन पीएच जाएगा. क्योंकि बाकी तीनों ग्रुप भर गए तो ग्लोबल इसी में जाएंगे. मैं मैच के बाद और अच्छे से समझा दूंगा. ठीक है, एकदम अच्छे से समझा दूंगा लिख लिख के. टीम डिसाइड नहीं करती है तो बेसिकली उनको प्रेफरेंस मिलेगा ना सी या डी में से. उनको सी में क्यों भेजेंगे अगर वो टॉप सीड है तो? उन्होंने प्लेन्स में टॉप सीड लाया तो सी पे क्यों भेजेंगे? टॉप सीड को तो ऑब्वियसली डी पे भेजेंगे ना. टॉप सीड को सी में भेजेगा कोई तुक्की नहीं बनता है, क्योंकि वो ग्रुप ए से है. और सबसे बड़ी बात है कि एनएन अगर डी चूज कर ली तो ऑनिक को सी जाना पड़ेगा. ऑनिक सी गया तो फुल सेंस फिर किधर जाएगा? फुल सेंस बी जाएगा और फिर ग्लोबल ए जाएगा. ठीक है, तो ऐसे होगा. तो ऐसा भी हो सकता है. These are the two possibilities. I suggest you watch more of the TH and PH scene. Yeah, true. And ONIC को पहले प्रेफरेंस नहीं मिलेगा because they are from group A. भाई 2 बार सी आ गया तुम्हारे में डेल्टा, और एनएन सी में नहीं जा सकती भाई. एनएन को तुम डी बोल रहे हो, अगर गई तो ग्लोबल और वेलोसिटी दोनों के लिए अच्छी बात है, बिकॉज फिर ग्लोबल ए पे जाएगी. बट वो बेस्ट केस सिनारियो है. आई फील ग्रुप ए से होने की वजह से ऑनिक को बेटर मिलेगा चांस, और ऑनिक ग्रुप डी जाएगी. एक ग्रुप से 2 टीम्स जाएगी ना टॉप 8 में. हाँ, Opal. No, they honestly have no options left because VCT was very close. Bang and perform better than Eccles and BBJ. Yeah. ऐसे बायस थोड़ा डिसाइड करेंगे. अरे डिसाइड करना पड़ रहा है ना कंट्रीज की वजह से. ऐसे तो तुम भी तो बायस डिसाइड कर रहे हो. तुम कैसे बोल रहे हो एनएनडी जाएगी? तुम ग्रुप बी, तुम अगर तुमको प्रेफरेंस देना है तुम ग्रुप ए को दोगे या ग्रुप बी को दोगे? ऑब्वियसली ग्रुप ए को दोगे ना, जिन्होंने पहले क्वालिफाई किया है. बिकॉज टेक्निकली ग्रुप ए ने पहले क्वालिफाई किया है. ऑनिक वाज द फर्स्ट टीम टू क्वालिफाई. तुम ग्रुप ए भी देख रहे हो, तुम ये सोचो ऑनिक इज द फर्स्ट टीम टू क्वालिफाई, एनएन इज द सेकंड टीम टू क्वालिफाई. सो तुम ऑब्वियसली फर्स्ट टीम को चूज करोगे ना. मैप में मैच लगा, सही बात है. आइसबॉक्स आता हूं जैसे कि हमने बात ऑब्वियसली हेवन भी देखिए, ग्लोबल ईस्पोर्ट्स हेवन भी उठा सकती है. लाइक दीस आर द काइंड ऑफ मैप जो कि हम बोलते हैं कि नो वो या ग्लोबल हेवन ही उठाना चाहिए, क्योंकि उनका कंफर्ट जोन जरूर बनता है. एंड डिफेंस साइड पे कोई है प्रीटी गुड.
I think global esports की तरफ से ascent Why they have groups and not or brackets? maybe even bind 3 maps हैं इनके Because पास groups option ही है ना, groups के अंदर GSL brackets है. exactly but 3 main strong suits हैं जिन पे I think यहाँ पे rely करने की कोशिश की जा सकती है. So ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा कि आइस बॉक्स पे अपना जो यूजुअल ग्लोबल esports हमको दिखती है वैसी ही नजर आए. Ascent going for one of the strongest map picks और फैंसी यूनाइटेड आई थिंक अब एक अच्छा मौका है कि स्प्लिट को या हेवन को यहाँ पे बैन करके पूल से बाहर कर दिया जाए और मे बी इवन बाइंड तीनों के तीनों में से एक भी मैप बाहर चले जाता है. मे बी बाइंड वुड बी द डिसाइडर ना बिकॉज़ वहाँ पे स्टार्ट्स इवन है दोनों के. एग्जैक्टली दोनों 64% अपना विन रेट लेकर के चल रहे हैं उस मैप पर. बट देन अगेन Ascent choose किया है. डिफेंस पे किया जाना ये दर्शाता है कि स्वॉप कुछ भी हो थोड़ा सा कंफर्टेबल डेफिनेटली जीई ही रहने वाली है. Nice. बाइंड का बैन यहां पर देखने को मिलता है जिससे Mine लेना चाहिए जी को Ascent. Damn nice. ऐसे में ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स प्रोबेबली अब उनके ऊपर इस चीज का भार स्प्लिट पर भी हमने उनको गेम्स बनाते देखा है, हेवन पर भी गेम्स बनाते, तो जो भी मैप आए शुड बी द वन दैट दे डिसाइड टू विन इन डिसाइडर्स इफ वी गो देयर. एंड अब तो 2 ऑप्शंस यहाँ पे बचे हैं एंड ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स का बैन है. स्प्लिट बैन करके हेवन डिसाइडर यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा. या इट कैन बी प्रीटी गुड फॉर देम बट आई थिंक आज का पूरा मुद्दा यही रहा है कि जितने भी मैचेस हुए सब 2-0 खत्म हुए. ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स दे नीड टू मेक श्योर कि आई थिंक दोनों टीम्स का इंटेंशन यही रहेगा कि ट्रेंड को फॉलो करें और जल्दी से जल्दी इस सीरीज को क्लोज. My bones right now. Oh my god, damn. Post jump. BT. Heaven decider. Yeah, I think this makes sense. 81%. I'll just put that in. 1 extra percent though. I think this makes sense. वहीं पर ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स की बात करी जाए 66%. Here we go again. वापस जल्दी जाओ. देखिए मैचेस भी ज्यादा खेले. We just talk about it. And ग्रिफिन के अगेंस्ट जो ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स का कॉम था that was जेट, ओमन, सेज, स्काई, वाइपर जिस तरीके से इन्होंने खेला था. एंड वहीं पर अगर हम लोग बात करें फैंसी के लिए they had chamber, they had jet, like it was just proper the same split man. Icebox all good. chamber third map जाएगा रे बाबा. that there was so फैंसी वर्स्ट मap पर split. हाँ तो बात करें कि कितना अच्छा एजेंट बन जाता है with the newly formed नहीं देगी भाई, नहीं देगी. जस्ट चिल मारो गाइस. लगा दिया येलो के अराउंड ट्रेडमार्क आपने आते आते किचन में कहीं पर लगा दिया जैसे इनके आपको लगता है कोई मिड से आ सकता है तो ट्रेडमार्क वहां पर इन्फो देगा. आपका राउंडेवू लग रखा है, मे बी आपका स्टोर डेपो से आप बी एलीज देख करके इंस्टेंटली अपने आप को वापस टेलीपोर्ट करवा सकते हो. छोटी मोटी चीजें बट देन अगेन आपको अपने एम पर बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा. एग्जैक्टली अगर आपका एम सही चल रहा है चेंबर के साथ आप बी साइड कंफर्टेबली डिले कर सकते हो अटैकर्स का पुश. आई मीन रॉन्डेवू के साथ जैसा आप एक्सप्लेन कर रहे हैं प्ले मेकिंग पोटेंशियल रॉन्डेवू और उस ट्रेडमार्क के चलते बहुत ज्यादा अच्छी बन जाती है. एंड मुद्दा सिर्फ वही होता है कि आपको अर्ली पिक्स अगर मिल रहे हैं पिक्स डोंट इग्नोर देम. पिक्स मिले बहुत अच्छा है टीम के लिए बट मेन ऑब्जेक्टिव इज टू डिले द अटैकर्स. डिफेंडिंग साइड पे जब चेंबर को आप खिला रहे होते हैं अटैक साइड पे आई थिंक यू स्टिक विद योर टीम. ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड वहाँ पे नहीं करना पड़ता है. बट उसी के साथ यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये भी रहता है कि कल जो मिस्टेक्स थी कल ग्लोबली all 7 matches are 2-0. I think ये वाला maybe a fancy Ascent 50-50. yes श्रेया. सस्टेन करने के लिए नहीं था उनका. I will Ascent सब इंडियन टीम्स का इतना अच्छा नहीं है. ये क्या वीट होता भाई. I think they have something prepared for Ascent. I think Omen आएगा. They'll pull out Omen for Ascent. Put yourself in the player's shoes. You'll never be disappointed if the team loses. Glad to see कि अगर आपको इंडियन टीम हारेगी तो पिंक डिव को ही स्पैम करेगा. Yes. जिस तरीके से टीम खेलती है क्योंकि But हाँ वही है. देखते हैं कि अगर आपके पास ऑपरेटर है तो आप या तो बी साइड पर ही बैट करके खेलना चाहेंगे. आपने सीधा एक प्लेयर को पिक किया डैश करके आप येलो के अराउंड आ गए. इस तरीके से आप खेल सकते हैं. या फिर ए साइड की बात करें राफ्टर्स पर रह सकते हैं. नेस्ट का एंगल्स या छोटे मोटे एंगल्स बेल्ट के अराउंड देख सकते हैं. ये सब चीजें होती हैं. बट ना मिड पर पहली चीज तो आप किचन के अराउंड है. आप धीरे धीरे ट्यूब से आगे बाहर निकल रहे हैं. आप खुद को एक्सपोज करवा रहे हैं. एक बहुत बड़ा फर्क बन जाता है. हालांकि रॉसी ऐसे में पिक जरूर निकालते हैं बट देन अगेन जैसे कि आपने बोला बीइंग डिफेंडर्स आपको पता है अगर आप डिफेंडर्स हो के एग्रेशन दिखाते हो और वो काम नहीं करता द नेक्स्ट राउंड यू शुड बी द डिफेंडर्स इटसेल्फ एंड दैट इज आपको खुद अटैकर्स को आने देना चाहिए. क्योंकि देखिए टाइम जो घड़ी रहती है सुई का कांटा उनके लिए ज्यादा डगमगाता है. उनको पहुंचना है साइड तक, उनको करना है प्लान. एग्जैक्टली आई थिंक वो टाइम के अगेंस्ट भी खेलने की कोशिश की जा सकती है कि आप जबरदस्ती ज्यादा से ज्यादा देर तक डिले कराएं और फिर उसके बाद जब टाइम कम बचता है अटैकर्स के पास हिट करने के लिए तो कम्युनिकेशन में वहाँ पे गैप्स रह जाते हैं और गलतियां होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं. तब यू जस्ट नीड टू टेक योर शॉट्स. एंड क्या हुआ वीटो? आई जस्ट जॉइंड. जो हम चलेगा तुम्हारे मैच के टाइम करेंगे. जब भी लेट
एग्जीक्यूट्स देखने को मिलते हैं। क्या लिखा भाई किसी ने मेरे को टैग करके, आई एम वाचिंग योर स्ट्रीम फॉर द मीनिंगफुल वॉच पार्टी, अदर पीपल आर डूइंग वॉच पार्टी जस्ट फॉर फन, थैंक यू व्हाट्सअप, ऑलवेज कीप योर होप्स लो बिकॉज ऐसी कोई बात नहीं है। वेट व्हाट वाज दैट एनालॉजी बाय ओशन, कोई बात नहीं। द वीटो वाज आइसबॉक्स, एसेंट एंड हेवन, डिसाइडर हेवन है, असेंट और हेवन में ग्लोबल आर अटैक एंड आइसबॉक्स में दे आर डिफेंडिंग आई थिंक, या ऑलराइट, क्यू कमिंग इन प्रीटी गुड। जैसे कि हमने किलर्स की बात करी राइट, उनका और रॉसी के हमने स्टैट्स देखे जरूर थे। Yes, MSK is here guys. Duelists नहीं इस्तेमाल हो रहे हैं फैंसी के द्वारा, just as we talked about it। तो अब देखते हैं कितना ज्यादा कारगर इनका ये कॉम्पोजिशन रहता है। हाइड्रेट, क्या बात है। To be honest, I love this composition. एक pseudo duelist है in the form of chamber। अगर आपको aggressive pushes करने हैं, वो aggressive pushes आप KO और Omen से भी करा सकते हैं। So no duelist double controller composition के साथ यहाँ पे fancy हमको नजर आती है। double controller, double initiator। हार गई fancy icebox। double sentinels पे global esports आ चुकी है। This is the OG comp। Yes, this is। क्या हाल है सर जी? बस चल रहा है मोहन भाई, क्या हाल है? वाइपर कहाँ है रे बाबा? खेल सकते हैं काफी ज्यादा अच्छे तरीके से। वाइपर आई डोंट थिंक इज नेसेसरी। तैयार रहेगी। इनके अगेंस्ट खेला है हम लोगों ने स्क्रिम्स में, बहुत इनकंसिस्टेंट। यस श्रेया, यस हम लोग ने भी बहुत खेला है। 5 प्लेयर्स हैं। I would want to see what they actually जी नॉट यूजिंग चेंबर, नो let's just see। नो वाइपर। हाँ आई डोंट थिंक वाइपर इज नेसेसरी इन द न्यू मेटा। मतलब इट, या ही इज स्टिल वायबल बट आई डोंट थिंक ही इज नेसेसरी नाउ। या गॉडस्पीड, मैंने बोला ना 2 कंट्रोल वायबल नहीं सुबह। हाँ तो मैं क्या मना कर रहा हूँ? यू गाइस कांट वॉच इंग्लिश ब्रॉडकास्ट? अब देखना होगा कि किस तरह से यहाँ पे स्टार्ट शायद नहीं है। यू नो व्हाट आई विल से नेक्स्ट, सेम कल वाला व्हाट द फक। एच के सर्वर है या एसजी? होप एसजी है। हेलो, क्या हाल है वैसे? बिल्कुल ठीक। मेरा माइक वो बहुत ज्यादा तो नहीं? नहीं परफेक्ट है। अच्छा सही है। मैं बस अपनी सेकंड स्क्रीन वो कर रहा हूँ। हाँ 75 एचपी पर है। Then I'll go live, I'll tweet it out as well. How much time until the match? चालू हो गया है, पहला राउंड चल रहा है। स्पाइक एक ही Oh बाहर है। damn, शायद डिसीजन we late? यस जल्दी आ जाओ जल्दी। थोड़ी देर के लिए देखना था, अच्छा समझना से था। मैं कर रहा हूँ, एक हाँ, सेकंड सेटिंग अप। हाँ गाइस सबको ये MSK को जाके हाय जरूर लिखना, मैं MSK का लिंक दे रहा हूँ जैसे उसका स्ट्रीम में लिंक आएगा। Gonna see him someday sooner or later। नाइस अग्रेशन। निकाल चुके हैं। इसको बोलो फैंसी करो। सामने एसके रॉसी 78 एचपी पर। यस आई कैन। तुम लोग बोलना, तुम लोग। फ्रंट डैमेज हुआ है उनको, साइड के बिल्कुल अंदर की तरफ पहुंच। वाइपर है बजाज भाई, पावर ना ले लो। ए साइड पर प्लेयर्स करना जरूर चाहेंगे जो कि वहां पर तैनात है, तैयार है, तत्पर है। यस आई कैन क्या बात है? के बारे में पता चल चुका है, धीरे-धीरे आगे जा रहे हैं। यस आई कैन 23 एचपी, नो यू कैन नो। एक प्लेयर को डाउन किया, लेकिन शुरुआत ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स की अच्छी होती हुई। भाई ये बंदा लैग होने लगा है। ज्यादा बेहतरीन ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स ने अपनी करियर पिस्टल राउंड जीत के जेट प्लस का कॉन्फिडेंस आ गया ना, तो जी सही बात है। फैंसी यूनाइटेड कोशिश थी नंबर्स के साथ खेलने की, बट अगर एसके रॉसी के आगे आप ऐसे ग्रुप डब होकर आएंगे, दिस मैन इज डेफिनेटली गोना मेक यू पे। प्लस आज आई थिंक फॉर्म अच्छा चल रहा है। आज पहले प्ले में ही देख के लग गया कि फॉर्म अच्छा चल रहा है, एक प्ले में देख के। वाइपर को ही बोला नशे हो रहे हैं, नो स्लीप के। सॉरी इन्हें प्रोडक्शन विजुअल ऑडियो, या प्लीज गिव एनालिसिस। यस सॉरी कोशिश रहेगी दूसरी तरफ। लाइटनिंग फास्ट है, लेकिन लाइटनिंग फास्ट ही अकेले इंपॉर्टेंट नहीं है। नो सो एक साथ बहुत he was isolated here, that is not good, but this is a good wall by Golu. It denies them the... लेकिन रीलोड पर चले गए और उसी का पनिशमेंट उनको। भाई क्या हो रहा है? मेरे को कुछ के साथ ट्रेड्स किए जा रहे हैं। बीएमपी की बात करें, वेल क्या बात करें, इज डाउन एट द सिचुएशन। ये डिनाई कर दिया। अरे भाई एल रेंजर एंड कापा थोड़ा सा मिड से खेल रहे हैं, उनको पता है कि बी साइड पर ही हलचल हुई है, हर कुछ बी साइड पर हुआ, तो यहीं पर अब ये एंगल डिनाई कर दिया इस वॉल से, तो उनको अब इधर से ही आना पड़ेगा। और खुद भी एलिवेशन का फायदा उठा लिया। ऑब्जर्वर इज नास्टी। हाँ भाई सोचने के लिए, हालांकि यहाँ से पीछे नहीं जा सकते। आप देखिए हेल रेंजर तैयार रहेंगे एंड जैसे ही प्लांट होता है, ऑल्दो बस वो रॉसी का ये पोजीशन इस बार मेरे को नहीं समझ में आया। आई थिंक अ बेटर पोजीशन वुड हैव बीन समवेयर अराउंड हियर और ऑन टॉप ऑफ दिस बॉक्स। दीस टू पोजीशंस आर बेटर फॉर हिम, और मे बी ऑन टॉप ऑफ दिस बॉक्स, दिस वन। वेटिंग ऑन टू इट, शॉक डार्ट, ये जो टाइम बाय आउट करवाया जा रहा है, सो लाइक दिस बॉक्स
ये 3 पोजीशंस would have been better for SK Rossi. रोल अच्छे से अदा करना है रॉसी हाँ स्ट्राइट्स क्लीन नहीं लगते एकदम बहुत बीटी लगती है डुअलिटी ऑफ रॉसी ये सब करते हैं तो लगता है कि क्या बीटी बोल भाई हेलो हेलो अभिजीत वेलकम बैक नाइस रेंजर फाइंडिंग द ओपनिंग दूसरा पिक नहीं निकाल पाए और कापा ने पिक निकाला है हेल रेंजर इज स्टिल देयर 1v1 यस आई कैन की एचपी बहुत ज्यादा कम और नाइस नाइस वन हेल रेंजर आगे गए पता था कि अगर डिफ्यूज को टैप करते तो हारने के चांसेस ज्यादा थे आगे गए पहले क्लीन किया अपने ऑपोजिशन को और फिर इजी डिफ्यूज करके आ रहे नहीं बजाज भाई आ गया मैं वापस लेट्स गो यहाँ पे काफी प्लेयर्स लूज कर दिए जी ने जो यस N1 नाइस वन नाइस कन्वर्जन इवन दो बहुत ज्यादा हार गए और अब बोनस नहीं होगा इसकी वजह से दिस विल बी अ फुल पाई राउंड मैं इसको थोड़ा म्यूट कर ले रहा हूं ₹9 का नैनो सॉम एफएस भवन मेरे बच्चों के बाबा क्या बात है मन्नू एक्सपीरियंस तो मजा है ऐसे मैं वो वैसे बोलने वाला था एक्सपीरियंस तो है बट नहीं मेरे को मजा बड़ा आता है वैसे बोलने में लेकिन जी अंदर एंटी इक्वल्स माके को बुलाओ लकी है माके नहीं एमएसके ना एमएसके आ गया भाई ओके फैंसी नाइस ओके no so this was a very good play from the Omen even though he got just one kill he's forced like global into responding much faster so he unsettled the global players here this was a very good play by Omen उसका ये जो फास्ट टीपी वाला सेटअप था from here to here and then taking them head on close the space down and once he gets this kill the other guy has to trade once he's traded they have to respond a lot faster because the others have converged up until then बहुत सही है 3 बंदे थे साइड पे we need this round बहुत ही इफी लग रहा है यार ये राउंड to be very honest ये राउंड तो सेव ही होगा फिर से ट्रेड मिस हो गई और नहीं ट्रेड हुआ था सो द फर्स्ट ट्रेड हैपेंड पहला वाला ट्रेड इसका इस बंदे का ट्रेड हुआ बट देन आफ्टर दैट आफ्टर ओमेन डाइड ना ओमेन ने इतना स्पेस क्रिएट करके दे दिया कि बाकी लोग बराज्ड इनटू द साइड विदाउट थिंकिंग टू मच हो गया चालू एमएसके Microphone muted. नहीं हो तक चलो ऐसे स्ट्रीम कप्पा ट्रेडेड बोल यस तो माइक सीधा नहीं है क्या बहुत वेरी कर रहा है अब ये स्मोक नाइस स्पॉट कर लिया तीनों लेफ्ट साइड में अब राइट की तरफ आ रहे हैं ओमेन फिर से वही टीपी इस्तेमाल करते हुए नाउ हिल स्मोक ओके ही स्मोक मिड दिस इज इंटरेस्टिंग बेसिकली दोनों टीम ने वहीं पे स्मोक कर दिया नहीं था भाई लास्ट राउंड 4 मर गए थे बोनस नहीं था बोनस था ही नहीं ओह दे नाउ फॉलोइंग बैक बट जी हैज रेड इट नाइस वन देखो अब ये जो विजन है ना दिस विल विन देम द राउंड ऑल रॉसी नीड्स टू डू इज टेक दिस विजन और कुछ नहीं चाहिए अभी इवन दो वाइपर ये कर दे रहा है तो फिर इधर से आने में प्रॉब्लम होगी they don't have anything ना they don't have anything to play around sage भी नहीं है उनके पास and they're falling back but G didn't rotate nice one beautiful from Kappa and Golu they've held off long enough for the rotation to arrive only 20 seconds left all depends on SK Rossi's pick yeah this is the next pick this is yeah nice lands this nice read by G yeah beautiful hold by Golu and Kappa they held on long enough for the rotation to arrive skills arrived from here Rossi came here so by the time the plant went down they could already encroach from these two areas which is very good and also the read was obviously good and it was a calculated read because
यहाँ पे they never managed to enter. इधर smoke कर दिया. Rossi was still watching this angle, or they never entered from here because they can't. बस मैं तो वेट कर रहा हूँ कुछ बोलने का हमारे. नहीं आई एम डूइंग समथिंग, वो मेरा लॉगिन नहीं हो रहा था, अब हो गया. हो गया? जस्ट लाइक आ जाओ. हाँ. हाफ ए डे एंड इम्प्रूवमेंट. अभी 3-1 चल रहा है ग्लोबल. नाइस यार, नाइस. That is a very bad position. Why is he taking that position over and over again? इंसाइटफुल वो बताने वाला हूँ कि ये लोग ग्लोबल वाले जीतेंगे क्योंकि ये लोग नया वाला बंडल यूज कर रहे हैं. बस देखो सुन लिया भाई. अब मेरे को कुछ नहीं बोलना. ये जिंक्सिंग्स वाली बातें आगे आगे थोड़ा ट्विच चैट को मॉडरेट करके अरे बिना वाह. अरे एंटी रॉसी. आर यू वाचिंग ऑन ट्विच और यूट्यूब? ट्विच. बोल भाई आप और एमएसके चाहे तो साई और हैकर को ज्वाइन कर लो. नहीं वो लोग अपना कर रहे हैं. इट्स ओके. This is day 1. This is day 2, right? This is day 3. Day 3? Yeah. Okay. Microphone muted. Defense में 1-on trade isn't really worth it ना. वैसे भाई हाँ, and it's a very one and done posi. Like I don't understand. बोला ना बहुत डिफिकल्ट है भाई. बिना सेज के इनका कॉम्प इज नॉट गुड. फैंसी का they have to take snow control every round to get the plant, and even then the plant is not necessarily go down. It's just इस बार ग्लोबल ने थोड़ी गलती कर दी. well being targeted by the मिस्टर बजाज. डार्की आजा. डार्क यूनिटी पे आजा. हम मैं और एमएसके बैठे हुए. आजा एमएसके को भर देना. देख जिंक्स हो गया. एक राउंड हार गए थे. Yeah, cruiser. So the new meta, the new Icebox meta, you have to take this control. You have to take a control of at least this area, if not more. User joined your channel. आ गया डार्की. Official watch party चल रही है bro. आप not allowed नहीं है. ऐसे तो नहीं बोल लो. एक से लाइव भाई मैं हाय बोलने वाला था और मैंने जो हंसिया है एमएसके ने जो जिस लहजे से बोला है ना, मतलब फुल एक्सेंट बना. हाँ यार ब्रो असल में हम बहुत बड़े यूट्यूबर्स हैं तो प्लीज. और मैं अगर एक बच्चा होता. एक सेकंड एक बहुत फनी चीज है. सिर्फ 1K फॉलोअर अलाउड ओनली. सही है ना? ओह माय गॉड. कल आना यार भाई मैं तो ये बोल रहा हूँ. ओह डिटेन. लो रॉसी. एंड एमएसके भाई. एंड एमएसके ने जब से बोला जी जीतेगी कि नया मंडल है तब से दोनों राउंड हार गए भाई. मैं अब कुछ नहीं बोल रहा भाई. मैंने कुछ नहीं बोला. I swear it was all Godspeed. इसने जल्दी से बोला कि एमएसके कुछ जल्दी से बोल दे ताकि मेरे से हट जाए ब्लेम. कितना टाइम बाकी था राउंड खत्म होने? वीटी भाई. अरे टाइम खत्म होने का बात नहीं है. ये चेंबर तो लड़ रहा था ना, तो डिटेन हुआ. इसका मतलब बगल में यहीं पे होना चाहिए ना. तो हाँ इसके तो सिर्फ वो भूल गया बेचारा. हाँ एंड एमएसके चल रहा है मेरे चैट में. लेट्स गो. फॉलो कर देना यार एंड करने से पहले. चालू हुआ स्ट्रीम? हाँ मेरी लाइव है. I think so yeah. लाइव है. चलो guys. Yeah, I'm just tweeting it out. We're live with the watch party, co-streamed with Godspeed for super insightful jinx. जिनको परमिशन नहीं मिली वो भी कर सकते. ब्लैक मार्केट स्ट्रीम कर ले. हेलो गाइस चैट में दे रहा हूँ. प्लीज गो एंड दोनों की स्ट्रीम खोल. प्लीज गो एंड सब्सक्राइब गाइस. Okay, मैंने खोल दी. I'm sharing it on YouTube. सही है. I've done the tweet as well right now. Let's go guys. Please subscribe. और उधर जाके लिखो एंड एमएसके. हाँ मेरे को इधर आके बोलो. हाँ डार्की तेरे को मैच के दौरान एमएसके को. अच्छा एंड एमएसके और करो जिंक्स ब्रो. इट वाज लाइक देखो इंटेंशनल नहीं था. सभी मैच लगाओ. हाँ नाइस शॉट.
यार Give it a प्रॉब्लम shot वैसे। नहीं, I think. प्रॉब्लम ये है कि फैंसी का जो कॉम्प है वो इजीली काउंटरेबल है. I kind of like the KO on Icebox. हाँ हाँ केओ चलेगा, केओ बहुत दिखने को मिलेगा आइसबॉक्स I में. think वाइपर की जगह इनको सेज चलानी चाहिए थी. भाई तुम ये सब बोल रहे हो, Nice shot. डुएलिस्ट नहीं है उनके पास. अरे हाँ, ये तो मैंने देखा ही नहीं. चलो तो वो उसको ड्यूलिस्ट की तरह चला रहे हैं ना KO बॉय को, बॉय। हाँ, पर एंट्री का कोई डिसंगेजर नहीं है, सिर्फ चेंबर है. और चेंबर डिसंगेज एक्टिवली नहीं कर सकता, पैसिवली कर सकता है. And do you think they're using the Omen as a entry as well, right? He's taking the first picks as well. Yeah, so Again, Omen has always been like an entry बीटा के टाइम से. देखो अटैक में आई थिंक थोड़ा मसला होगा, डिफेंड में तो फिर ये निकाल लेंगे क्योंकि ये डबल कंट्रोलर भी है और यार मेरे को तो आराम से होल्ड कर सकते बहुत डर लग रहा है. अभी एमएसके ने जब से बोला तब से एक राउंड नहीं जीते हैं भाई. भाई यार ये सब नहीं है यार, इस वजह से नहीं हुआ है भाई मैं बता रहा हूँ गाइस, कुछ करो गाइस. एंड एमएसके सब्सक्राइब, थैंक्स मैन राहुल. लेट्स फकिंग गो मैन. यस सर. जी फाइटिंग Fortune G versus Fancy United during my school event. स्कूल इवेंट बात होते रहेंगे ब्रो, ये थोड़ी रोज होगा. एंड सबसे बड़ी बात क्या पता है, सेज नहीं है ना इनके. अब इनको बी पे ये लोग प्लांट ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बिना स्नोमैन कंट्रोल के ये लोग प्लांट कर ही नहीं सकते. इनको प्लांट करने के लिए यहाँ पे इनको स्नोमैन कंट्रोल चाहिए ही होगा एमएसके. हाँ बहुत मुश्किल हो गया. वही किक एमएसके चल रहा है. एमएसके को बोलो फैंसी को सपोर्ट करे. फ्रॉम गॉडस्पीड, थैंक्स मैन. गॉडस्पीड अपना बॉय है. गॉडस्पीड अपग्रेडेड वर्जन है. देखो फिर से वही हो रहा है, दे आर टेकिंग एक्टिव कंट्रोल साइट का, पर उनको they have not committed the plant and they're pushing into the side. अब प्लांट कमिट किया, बट वही है, वही मिस्टेक है. आई जस्ट फील उनको स्नोमैन कंट्रोल लेना चाहिए बिकॉज वेरी वन डिमेंशनल है ये प्लांट. अगर तुम सिर्फ येलो के इधर से खेल रहे हो तो यू नीड कंट्रोल ऑफ बोथ एरियाज. Nice one, Skill. I like the new icebox. Yeah, I like the new icebox as well. Nice one. बहुत super good है. Let's go, guys. Nice one, skills. Let's go. Guys, come on. Let's spam करो chat में, ठीक है? Let's support G, okay? मैं बताऊं बी साइड अभी भी ब्रोकन है. अबे येलो वाला बॉक्स की जो इन लोगों ने थोड़ा सा चेंज किया ना, ब्रोकन तो है, चेंज हो गया. पर जो है हाँ लाइनअप क्या है बता. एक लाइनअप है जिससे आप अभी भी थ्रू मार सकते हो, वो जो जगह नहीं है. हाँ देखा मैंने देखा. कौन सा? जो छोटा सा लाइन के बीच में है, जो है ना, किधर? टॉप साइड के? अरे नहीं भाई, पीछे बैक साइड के उधर से. हम भी देख रहे हैं वो टिकटॉक वीडियोस. हाँ नहीं मैंने खुद कस्टम में जाके निकाली थी और कॉम में ट्राई की. चलो जी फाइटिंग, लेट्स गो गाइस. स्पैम करते रहो, सपोर्ट करते रहो. वैंसी यूनाइटेड इज प्लेइंग अमेजिंग. मुश्किल लग रहा है जी के लिए. नहीं किधर ग्रेगरी, किस तरफ मूव करना है? टुवर्ड्स मी और टुवर्ड्स द लेफ्ट? जैसे मेरा वाला है ना एमएसके, वैसे कहीं पे रखो तो. ये मेरे बाथरूम नजर आने लगता है, फिर मैं वॉशरूम जाऊंगा, तुम लोग सब नजर रखोगे. नहीं कैमरा इन द सेंस, मतलब कैमरा का प्लेसमेंट बोल रहे हैं वो लोग, मतलब ओबीएस पे, लाइक तुम्हारे सॉफ्टवेयर. थोड़ा सा ऊपर करूं? कहां पे करूं? टॉप राइट के बगल में करो, टॉप राइट के बगल में. अच्छा मैं करता हूं, एक सेकंड. इसको मैं ठीक कर देता हूं. वहां पे ओ नाइस पॉप फ्लैश, ब्यूटीफुल पॉप फ्लैश भाई. ओ भाई रॉसी भाई, स्किल्स गेम है. हैट्स ऑफ टू रॉसी भाई. यहाँ पे बच के निकल गया, मतलब बीआरबी गेम, मतलब क्या बात है भाई. यहाँ पे बच के निकल गया, मतलब बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत ज्यादा बड़ी चीज की है ये रॉसी ने भाई. नाइस ऑन रॉसी, बेस्ट प्लेयर. दे वॉन दैट राउंड बिकॉज ऑफ रॉसी. अगर रॉसी उधर मर जाता तो ये राउंड जीतने का कोई चांस नहीं था. बॉयज नेक्स्ट मैप के लिए आई विल स्विच द हेलो वीएलटी बूट कैंप. हेलो जिंक स्टार. भाई इसे नहीं बोलो यार, ऐसे नहीं बोलो. देखो बस याद रखो, जब एमएसके नहीं आया था तब 3-1 चल रहा था, अभी 5-4 चल रहा है. नहीं है, कोई ऐसा सीन नहीं है. कल मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा था, गलती से हार गए. मैं कर रहा होता स्ट्रीम जीत जाते.
ऐसा कुछ नहीं, एमएसके तुमने बोला था कल तो इजी जीतेंगे इसीलिए। हाँ, नहीं नहीं, दैट्स व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अवर बॉयज। यस डूड, रॉसी उधर जो खेला वेरी बहुत क्लच, तगड़ा सीन किया गया बहुत सही था वो। और बहुत इंपॉर्टेंट किल ऑन दिस एज वेल। हाँ भाई कापा ने भी एक बंदा मारा है, क्या हो गया? हाँ, तो मारा है, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, नहीं मारा। हर बंदा माय मैन प्लांटेड ये एट सी करो। वाला भाई प्लांट सबका था, नाम नाइस एंड देखा। रॉसी, नाइस एंड कापा, नाइस एंड स्किल, नाइस गोलू, हाँ नाइस एंड नाइस रेंजर, रेंजर, लेट्स नाइस एंड रेंजर। गो। अबे एलरेंजर जब भी किल विल लेता है ना तो वो ज्यादा हाइप वाला मोमेंट लगता है। वॉच पार्टी तो है, वॉच पार्टी तो है डैश। Oh, did you look at the Fnatic kitchen setup? Yeah, Cruiser, I saw. I retweeted it as well on Twitter. मस्त था, बहुत सही था। At the end it comes down to Rossi. हाँ भाई, रॉसी और गोलू ने राउंड निकाला भाई। जो बात सेटअप देखते हैं, टाइम आउट खत्म हुआ, देर गोइंग फॉर अ फास्ट ए एग्जीक्यूट। दिस इज समथिंग आई लाइक, ये अपने कॉम का स्ट्रेंथ को प्ले कर रहे हैं। देयर स्ट्रेंथ इज गोइंग फॉर एक 5 मैन एग्जीक्यूट्स और वो लोग वही कर रहे हैं। दूसरी तरफ डिफेंस देखो, दिस इज अ वेरी गुड सेटअप बाय स्किल्स हियर। आई थिंक दिस इज अ वेरी ऑप्टिमम सेटअप। वाइपर का वॉल होने पे भी ये सेटअप अच्छा है, लाइक डिस्पाइट वाइपर का वॉल। सी रोटेशन, सो व्हाट स्किल्स डिड हियर इज उसने जो नैनोसॉम्स हैं वो पहले इसलिए यूज किए क्योंकि वो डिले करना चाहता रोटेशन आने के लिए। उसका मकसद किसी को मारना नहीं था वहां पे, उसका मकसद वाज जस्ट टू डिले देम फ्रॉम टेकिंग, प्रिवेंट देम फ्रॉम टेकिंग साइड कंट्रोल टिल द रोटेशन अराइव्स। अरे अरे थोड़ा लेफ्ट में मार। अरे नाइस। It was a counter this play only which FU did last round. हाँ, so this is like this is Fnatic's rush only. This is Fnatic's rush only, but the plant Viper ult करके plant होता था। At the end it comes down to Rossi. Let's go Rossi, let's go. एल रेंजर निकाल लेगा, शपाटर है। मुश्किल तो है, depends on Kappa. Yes, exactly. कप्पा क्लच द राउंड भाई, कप्पा ने वेल डन कापा, बहुत अच्छी उसने रिपीट की है, तुमने देखा ना? हाँ, दे लेट हिम देम क्लियर द एंगल देन ही रिपीट। नाइस वन यार, वेल डन। एंगल होल्ड करते हुए तो मर जाता वो। और अच्छा किया बिकॉज दे ही न्यू, कप्पा न्यू की प्रायोरिटी उनका जो प्रायोरिटी है वो डिफ्यूजर है। एग्जैक्टली। Oh my god, कप्पा, let's go guys, ठीक है? तो है कापा, पापा तो है। पापा है, पापा पप्पा तो है, कप्पा कप्पा जल्दी से पप्पा क्लच कर लेता हूँ, फिर पापा भी तो बनाना है। बिल्कुल, एक्सपीरियंस ऐसे ही चीजों में काम आता है। क्या बात है डैश, बिल्कुल सही। चलो बाकी कप्पा सबका पप्पा भाई, ब्यूटीफुल। 6-4 हो गया आई थिंक सो, एन 8-4 हाफ बेकन्स अस बिकॉज ये राउंड आइडियली वी शुड विन अनलेस कुछ बहुत ही ज्यादा अनटूवर्ड्स हो जाता है। हेल रेंजर ने कॉल दे दिया है, वेरी गुड फ्लैश, आइसोलेट्स द गाय, टेक्स द फ्रैग, नाउ ही शुड फॉल बैक। अच्छा नहीं, स्मोक करके अभी भी पकड़ के रखा है। शपाटर। उसके पास बैकअप भी है एसके रॉसी के थ्रू। एसके रॉसी आई थिंक सो इधर केव देख रहा है, केव बोल दो, राउंड कुछ निकाल बोल दो। लेगा ये रॉसी, व्हाट डू यू थिंक? इजी किल्स। हाँ हो गया, ये राउंड खत्म है बिकॉज एसके रॉसी हेल रेंजर का राइट देख रहा है कि कोई क्रॉस करके हेल रेंजर को मारने नहीं जाए, और हेल रेंजर ये वाला एंगल को स्मोक करके ये एंगल का देख रहा है कि कोई एडवांस नहीं करे स्मोक के थ्रू, स्मोक पुश नहीं करे। एक्सपीरियंस तो है भाई, सेटअप है। एंड ही इज कंटिन्यूइंग टू रीस्मोक बिकॉज उसका रिचार्ज हो जा रहा है व्हिच इज गुड। हाँ वही है, इसी चीज के लिए है। नाइस, उसने स्पॉट किया, इसने मारा। बेट एंड स्विच, वेल डन, वेल डन। तालियां होनी चाहिए। ये तुमने कैसे बजाई? क्रॉसी कल वाले मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, 9 और 12 बजे वाले। ये तो एलिमिनेशन गेम है राइट? हाँ ये तो कल भी है, कंफर्म करना है। कल डिसाइडर्स है ना, कल मजा आएगा भाई। इस वेबकैम वाले को कोई हाइड दो।
वेबकैम वाले को हाइट दो। हाइट दे दिया सिद्ध ने। वो वेबकैम वाले मतलब वो स्कैमर्स आ रहे हैं। अच्छा ये वॉल बहुत सही की है। ये वॉल हम भी मतलब बहुत यूज करते थे। दिस वॉल इज वेरी गुड बट द थिंग इज किलजॉय का सेटअप इज और बी पे है विच इज वाई आई डोंट थिंक इनको बी पे सेटअप कराना चाहिए किलजॉय को टू बी ऑनेस्ट। बी रिटेकेबल है, ए रिटेकेबल नहीं है अगर ये लोग छोड़ दें ये करंट कॉम्प में। अरे रेंजर को बेचारे को पड़ गई स्मोक के थ्रू। नहीं यार लास्ट टाइम लाइटनिंग फास्ट ने खेला था नहीं ऐसे आई थिंक। ओह नाइस रॉसी एंटी। इसके राशि लेट्स गो। प्रॉब्लम क्या है कि ये रिटेकेबल नहीं है। ये जिनका जो कॉम्प है ना ओपोनेंट का बहुत तगड़ा कॉम्प है, इनके साथ ये रिटेकेबल नहीं था। इनको किलजॉय को ए पे ही खिलाना है और किलजॉय ने जो कल स्किल्स एलकैट है और मैं आपकी स्ट्रीम देख रहा हूँ। इंशाल्लाह पास हो गए ब्रो। क्या बात है भाई, यही सब आएगा एग्जाम में कल। कर दिया एमएससी ने जिंक्स। आप पास हो जाओ तो बता देना मेरे को। ये सबको फेल कराता है। कोई नहीं जो स्किल्स ने उस राउंड पे किया था ना 5-4 वाले राउंड पे, राउंड नंबर 9 पे, वो ही करना है ए पे कि नैनोसॉम्स ऐसे डालो कि वो लोग जब साइट में घुस रहे हो उनको डिले, उनको प्रिवेंट करे साइट लेने से, और उनको प्रिवेंट करते करते तुम्हारा रोटेशन आ जाएगा बिकॉज यू नो कि वो लोग 5 मैन एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना। तो यू यूज नैनोसॉम्स एज अ डिलेइंग टैक्टिक, यू यूज केजेस यूटिलिटी not as a tactic to gain to deal damage या कुछ. If you deal damage fine, but your main purpose is to defend your site and prevent them from taking control. तो you're dead. Hot child molding कहाँ है भाई? hot child किधर है? hot child बेचारे का एग्जाम रिजल्ट भी जिंक्स कर दे भाई। इसकी स्ट्रीम इज वेरी बिहाइंड है निखिल, सही? Really? Do I have उनका ओमेन इतना स्पेस बना रहा है। हाँ भाई, उनका ओमेन इज बेसिकली द डुअलिस्ट प्लेटफॉर्म स्ट्रीमिंग। I don't have a delay enabled. I think ये स्ट्रीम मुझे वो करनी पड़ेगी, रिफ्रेश। हाँ एक बार रिफ्रेश कर लो। पॉज रिज्यूम। अबे ये तो स्ट्रीम ही अटक गई। अबे यार तो बस मैं अपनी स्ट्रीम खोल रहा हूँ। एक सेकंड जल्दी से नोडविन को कॉल करके बैन करवा देता हूँ। हाँ लो ये बैर की। हाँ 6 महीनों के लिए इवेंट से बैन। क्या बोल रहे हो? लेटर इवेंट भी नहीं आएगा। क्या बोल रहे हो? लेटर में हैशटैग नमक छिड़को लिखा हुआ है। कह रहे बैन क्या, वो वैसे ही क्वालिफाई नहीं होता, अब क्या फायदा। ओ फेक टीपी नाइस। इजी कर रहे भाई। मैं बात करता हूँ यार। मिड पुश कर। ओ माय गॉड फैंसी, दिस इज, मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ इस चीज पे। ये मैं इस चीज पे कुछ नहीं बोलूंगा। इनेबल लो लेटेंसी इनटू चेकर्स। हां कम ऑन हेल रेंजर दबा कर दे इसको। नाइस ट्राई। अटक गई मेरी स्ट्रीम। नाइस वन फ्रॉम येसी कैन भाई। मैं YouTube पे देख रहा हूँ। येसी कैन ने बहुत अच्छा संभाला है भाई यहाँ पे। डैम हेल रेंजर को सही चेस कर रहा है वो भाई, बहुत सही किया उसने। ट्विच बहुत अटक रहा है ब्रो। I can't गो टू watch YouTube, Twitch. 2x करके खेल। आई मीन देखो, मैं बोल रहा हूँ 2x करके खेलो यार पापा ने एक्सपेक्ट तो सही किया था, लेकिन अगर वो मार देता ना ऐसे पापा दोनों को नहीं मार सकता था यार। हाँ मुश्किल तो था। रॉसी सब जगह से बच के कैसे निकल जाता है गॉड वे। एमएसके कोई इधर सक्षम राहुल गेमिंग इधर बोल रहा है कि सेटिंग्स में नीचे जो सेटिंग्स आता है ना ट्विच का सेटिंग्स वाला आइकन, उस पे जाके लो लैटेंसी इनेबल कर लो। ओके आई विल चेक दैट। वाइपर ने एक डैमेज नहीं लिया भाई, वही तो मतलब बहुत अच्छा खेला भाई ऐसे कैन ने। उसने यहाँ पे थूक के माइंड स्पिट करके अपना इस जगह को बैरन इस जगह को एक्चुअली वो कर दिया, प्रिवेंट कर दिया इधर से पुश करने के लिए लोगों को, और दूसरे एंगल पे फाइट लेता रहा बिकॉज ही नाउ नोस कि इधर से कोई पुश नहीं कर सकता। पुश करेगा तो वेरी लाइकली वो एक राइट क्लिक है। हेलो गाइस। हेलो ये कौन है? यार एडवांस लो लेटेंसी तो ऑन है।
अबे but मुझे लगा still प्रोटू है lagging for me. शिट कौन आया ये? रीपर है ये तो रीपर है अरे शिट पीक कर ले औरत, प्रोटो से हल्की गेम वाला। अबे यार पीक कर ले अबे औरत। यार पीक कर ले और थूक गए यस। अब भूलना अभी तो नहीं ज्यादा भाई, व्यूअर्स है, कैंसिल हो भूलना जाएगा नहीं, भाई, नहीं बोलो। भूलना नहीं, बस इस चीज को कभी भूलना नहीं। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं भाई, तेरे को जब लगता है हम कबर तक भूलेंगे? लेके जाना है इस चीज को, हाँ कबर तक लेके जाओ इस चीज को। मैं तेरी कबर पे लिखवाऊंगा ये चीज। हरकत ही ऐसी है मतलब, अब खुद बताओ। अच्छा हाँ नहीं नहीं मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। हरकत ही ऐसी है। थूक स्वेट दोनों सेम ही है। स्नेक बाइट, अरे स्नेक बाइट होता है, हम लोग थूक बोलते हैं लाइक उसको। थूक बोलते हैं थूक, क्योंकि वाइपर की थूक। हाँ हाथ से थूकता है वाइपर, छे उसी हाथ से खाना खाता है, sounds wrong bro. उसी हाथ से खाना खाते हैं। Godspeed. हाँ हाथ से थूकता है, say that again. हाथ से थूकता है। Damn man, you nasty. स्काई के डॉग को कुत्ता, हाँ भाई अच्छा लेट है डर की। स्काई को तो हम लोग कुत्ता भी नहीं बोलते, बिकॉज जितने कम सिलेबल्स, सो जितने कम सिलेबल्स रहे उतना अच्छा रहता है, तो डॉग बेटर रहता है हमारे लिए कुत्ता की जगह। कुत्ता डॉग, तो डॉग जल्दी बोला जाता है। गोस्ट पे यार और थूक इसीलिए, स्नेक बाइट बोलोगे बहुत लंबा होता है, ठीक है। वो डॉग भी नहीं है, वो वुल्फ है। अरे भाई हम लोग डॉग बोलते हैं, वुल्फ हाँ, बोलने हम लोग जाएगा, हाँ, डॉग बोलने जाएगा। देखो एक बात बता रहा हूँ डार्की, आज तुम्हें एक बात बताता हूँ जो शायद पाकिस्तान सीन में जल्दी से लोग बताते नहीं होंगे तुम्हें, ठीक है। क्या हाँ, कॉल आउट्स के पीछे भी एक लॉजिक होता है। बहुत मुश्किल है यार अटैक। कॉल आउट्स ऐसे बोल सकते या आसानी से आग दे सकते, वो बोल रहा। नहीं नहीं, कॉल आउट्स ऐसे होने चाहिए जो जितने कम सिलेबल में बोल सके उतने होने चाहिए, ठीक है। ओके कम सिलेबल्स का मतलब है जितने छोटे में बोल सको, हाँ, आसानी से नहीं, जितने छोटे में। तो इसीलिए लोग स्नेक बाइट को थूक के सब बोलते हैं, बिकॉज वो तुम जल्दी प्रोनाउंस कर सकते हो। वो तो मुझे पता है। क्या बात है, तुम्हें बताया ना, चैट को थोड़ी पता है। अच्छा चैट, टेक्निकल बातें टेक्निकल गुरु भाई हम ये सब पीक, हम ये सब पीक कर ले औरत औरत नहीं बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, हम बोलते हैं 410 410। हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है कैसे बोल रहे हैं? हट गई हट गई म्यूट करके बैठ जा। अबे नहीं भाई, वे तुम बोल लो भाई, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। पढ़ता तो है, पढ़ता है। डार्की भी लाइक लिख लेता हूँ कहीं एग्जाम में ना आ जाए। कप्पा डिस्ट्रॉइंग एवरीवन भाई कप्पा, सी दैट इज वाई। आज तुम लोग देख लो और डिसाइड कर लो कि कप्पा क्या है। तुम लोग जो बोल रहे थे ना, कप्पा हैज बीन परफॉर्मिंग एट अ वेरी कंसिस्टेंट लेवल पिछले 2 महीनों में, 1 महीनों में एटलीस्ट। वीसीसी Q2 से व्हाट स्पीक कर ले औरत, इट्स अ वेरी इनसाइड जोक क्रूजर। हमारे साथ एक रीपर जी हैं, रीपर नाम का लड़का है, बड़ा कोई सेक्सिस्ट बंदा है, कैंसिल करना होगा ट्विटर पे। हाँ और आई थिंक मैंने चुप कर जाना यार। गॉडस्पीड की चैट में एक दो लड़कियां भी देखी थी, उनको दिखानी पड़ेगी, उनको अभी क्लिप दिखाते हैं उन लड़कियों को भी। फॉर इंस्टेंस इंस्टेड ऑफ अंडर हेवन से हेल, एग्जैक्टली साइबोर्ग। सो इसीलिए ये सब कॉल आउट्स आए हैं। अंडर हेवन इतना लंबा बोलने की जगह हेल हो गया, जनरेटर की जगह जेन बोलते हैं हम लोग। इट इज जस्ट टू रिड्यूस द सिलेबल्स, ताकि जब तुम टूर्नामेंट में हो या प्रेशर सिचुएशंस में हो तो तुम कम सिलेबल्स में जल्दी कम्युनिकेट कर पाओ। कम कर लो, एफिशिएंट कम्युनिकेशन बेसिकली। इसीलिए हर मैप में 3 कबीज होती हैं। गॉडस्पीड को पता है ये बात। ये भी कभी है, हाँ ये क्या, ये भी कभी है। अबे पर हाँ ये भी तो कभी है यार। नाइस ट्राई वैसे। सही टीम में हम एक दूसरे को कुत्ती बोलते हैं। अभी वो भी बोलूंगी, मियाओ को पीक कर ले औरत बोल। बॉयज गलत रीटेक चला गया बॉयज। रिकॉर्ड करके डालना श्रेया, मजा बताओ। कापा इज द शार्क ऑफ जी, चेंज माय माइंड। यार तुम लोग क्या कर रहे हो ये पीक कर, इतने व्यूअर्स और तुम ये हाय कापा को भाई कैंसिल बॉयज, रीपर को कैंसिल करना है हमें। स्मूथेस्ट टीम। हाय इमाद बोल रहा है, इमाद बोल रहा है उसके गंवा टीममेट्स अंडर हेवन नहीं बोलते, हेल नहीं बोलते, अंडर हेल बोलते। ये क्या भाई अंडर जी फर्स्ट ऑरेंजेस। हाँ भाई तो इसका मतलब हुआ कि वो हेवन हुआ। हाँ
नहीं तो भाई कॉल आउट ये भी हो सकता है ना, वो बोट के बगल वाला एरिया, बोट के बोट के राइट वाला एरिया। बट ऑनेट ने उस ट्वीट उड़ा दी क्या इसकी, वो पीक कर ले और डाली मिल नहीं रही। अंडरग्राउंड खेलते क्या? कुछ लिखा हुआ होगा। कप ऑफ फ्लिक्स भाई, सही मैसेज। रुको मुझे ढूंढनी पड़ेगी। द प्रॉब्लम इज, की बात आ जा भोसड़ी। द प्रॉब्लम इज फैंसी यूनाइटेड का जो कॉम्प है, इट इज वेरी डिफेंस हैवी, और उसी के वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। और वो साथ पिक कर लेते हैं। नाइस वन हाँ बोली। डिलीट की हुई है, हाँ डिलीट की हुई है इसने। डिलीट की हुई है? कितना खुशी से बोला है, देख रहा है? मैं ऑनेट से मैं खुद वीडियो ले लेता हूँ। नहीं पर देख रहा है कितनी खुशी से बोला, हाँ हाँ डिलीट की हुई है। कल जीशु कैंसिल हो इससे बेटर तो इधर उधर बोल दो कॉम्स में। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, इससे बेटर तो इधर उधर बोल दो, सामने पीछे, बस ये सब बोलो। अबे वो अरबी कॉल देते ना, गड्डामक वरक आलिमीन आली साहब सब बोल दिया भाई। फॉरवर्ड जाओ यार, नहीं राइट नहीं। लेफ्ट। खत्म, प्लान नहीं होगा, मोस्टली प्लान नहीं होगा। कैंसिल भेज दिया, लिंक नहीं है, डिलीट। प्लान नहीं होगा, प्लान नहीं होगा, जाओ करो कैंसिल। प्लान नहीं होगा। शिट यार, शिट। अमतरासु अच्छा था। बोलू डेम भाई यार, क्या राउंड तो यार। ओपन प्लांट क्यों करना था, पीछे की तरफ प्लांट कर सकते थे हम। That's he can man, he did it. नहीं पर पीछे वाला प्लांट में भी सीटी से दिख जाता है यार, ब्रिज से। क्या यार उनको यार ऐसे करना, वैसे रीड अच्छा किया यार। Let's not like discredit that. नहीं नहीं वो तो है, मैं बोल रहा हूँ कि उनके पास भी और कोई जगह नहीं था प्लांट का। Oh, he almost even killed. Oh भाई यार, ये इसमें ऐसा कहने 2 राउंड्स बहुत गलत भाई ऐसे कहन भाई, तू क्या घूम रहा है, मुंह हिला रहा है अपना। आइस बॉक्स। गॉडस्पीड थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच ब्रो। कोई बात नहीं, हमारे मेरे पास शैडो प्ले वीडियो, क्या मतलब। अबे ये रही क्लिप, ये रही, मिल गई क्लिप। अबे भाई क्या तू साइंसदान बन रहा है, मैंने खुद भेज दिया नीचे। हाँ वही तो कह क्या रहा कर ले कैंसिल। बॉयज ये तो कह रहा है ओपनली, कर लो उसको कैंसिल। लो भाई सुन लो अब तुम कर ही नहीं सकते मेरा कुछ भाई। ये लो सुनो, सुनो भाई। आप लोग भी हाँ सुनाओ उसको, दिखा दो बस। अबे नहीं चला भाई, सुन लो ना, चला गॉडस्पीड पागल। श्रेया और सब कोई सुन लो भाई। हाँ देख लो भाई सारी बोलो एट वॉल, हाँ वॉल था। अच्छा इको भी नहीं था। Vestige of Flash. Last player Speak standing. ये मैं सब्सक्रिप्शन में चलाऊंगा अपनी। Vestige of Flash. Last player standing. सुन रहे हो गाइस? और एक बार, लास्ट बार चलाता हूँ। Vestige of Flash. कैंसिल रीपर। Last player standing. आपको ट्विटर उसका शायद मिले नहीं, क्योंकि वो लाइक इट्स लाइक गार्बेज स्पेल्ड। ओ भाई नाइस गोलू। सारी फीमेल्स आ जाओ। इसको कैंसिल करें। डैम भाई हील कर ले गोलू अपने आप को, मेरी जान। नाइस ट्राई। लेट्स गो गाइस, फैंसी यूनाइटेड अब इको पे हैं। नाइस वन। Come on boys, come on. Time for Global to take the lead. Cancel कर दो फटफट अब। Dude we won in eco. Yes. You didn't see? Yeah, sorry. इको राउंड जीत गए। यस लेवल पे आ गए और अब उनका इको है। नाउ वी हैव द एडवांटेज। ये सीए कास्ट नहीं कर रहा है ये वाला। और जो कुछ और निकलने वाला था, कंट्रोल किया। हाँ भाई एसरोला। ओके बहुत ज्यादा डैमेज पड़ चुका है यहाँ पे, बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर है ये लोग। सही है सही है। फनल इनटू बी, फनल इनटू बी। पीछे से आएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं उखाड़ सकते पीछे से। अच्छा उखाड़ सकते हैं। माय बैड माय बैड माय बैड माय बैड। मेरा ट्वीट देखो। हाँ ये राउंड के बाद देखते हैं। फिर से वही प्लांट यार, प्रॉब्लम वही है ये सब प्लांट्स में। स्किल्स अरे यार ये सी कैन मत कर यार तू। हैकिंग कर रहा है।
हाय। जब नहीं समझ आए बोल दो हैकिंग कर रहा है। क्या कर रहा है भाई? यस आई कैन, मतलब यस आई कैन नाम है तो कुछ भी करेगा। हैकिंग कर रहा है, हैक कर। Dude, this guy is so good. अबे नहीं, अबे गन बैरल दिख गया था हल्का सा। नहीं यार। What? कर रहे तू? ये जैसा कि हमने गेम निकाल दिया अगर निकल गया तो। खेल रहा है यार हिल रेंजर, उसकी गलती नहीं है, टाइमिंग। हेलो ब्लिस्टिक, व्हाट्स अप? उसकी बुलेट्स तभी खत्म हुई। यार ऐसा है But we still have the buy. We still have the buy. We are going for an A execute. इसके knife में 2 जन spot हुए हैं सिर्फ. They have come aggressive. That Omen will try to take the first peak. वो याद आ गया। Okay. Acerola takes the first peek. He gets info. He flashes. He falls back. It's lagging for me. Oh. Pakistani internet, you know that. He falls back. The Sova is behind the side. There are 4 players A now. Fancy United have a stack at A now. So Global have to be wary. Fancy United spot Rossi. Rossi falls back. Skills with the ult. Skills with the ult. Buy round. Mods हैं भाई, mods हैं. Okay. So that clears, but G have not acted on it. G have not acted on it. G are coming now, but Fancy are already 4 towards the side. This may be disastrous for G. भाई ये बहुत ज़्यादा disastrous हो सकता है. Okay, trades in and out. It's a 2v3 for GE. Rossi has lined up the op at rafters, और जहाँ पे Viper default smoke position होता है. It's very difficult. He has to switch to an assault because he doesn't have dash, or he's saving. He's going to save. He's going to save, I think. Oh no! Oh, Hellranger took the bike. क्या? My casting कर ले अच्छी करता है. Thank you, Saksha. Dude, beautiful play by Hellranger. He can now fall back. SK Rossi can now use his op in an optimum manner. This angle is very great, like very graceful for SK Rossi. Is very beneficial. उसको एक clear peak मिलेगी. He has to get the first kill. It's very important that SK Rossi gets the first kill. Hellranger is watching backstab, but all three plays are coming from Snowman. SK Rossi fires, misses. Okay, Hellranger trying to distract. SK Rossi takes the kill, but they trade. Oh, yes, I can with the double and. Okay, these are desperate times. रॉसी पे प्रेशर बहुत आ गया। मोशन रियल आईडीज। हाय, हम भी ट्राई कर रहे हैं कुछ ना कुछ। देखो कुछ तो करें, मतलब कुछ तो वैल्यू लाने की कोशिश कर रहे हैं ना। Dude, these are desperate times. SK Rossi with a Vandal and full armor, but Kappa has nothing. Kappa on the classic. Skills has a Sheriff. Kappa has his ult though, and there's no real buy except SK Rossi. He's gone for the hero buy. Kaya khatam tata. Nahin buy. There's still hope. They're going towards A, but Skills is trying to make a play towards mid. It doesn't have. Nah, dude, I had an important message come up, तो मैं उसका reply दे रहा था. Okay, falling back to A. Fancy United are playing a very passive setup at A. Global have to react fast and hope. Okay, they've spotted. I think so. The rotation arrives now. Yeah, see the KO is diverting back towards A. They have to act fast. Global have to act fast right now. If they wish to take control of site and get the plant down, they have to act fast. They do. The Sage wall comes in. They take control of backside. They take control of site. And they have the plant. Beautiful pick from SK Rossi. He still has his dash. He can get another peek. Will he take it? High Z takes him down. Bye. क्या बात है? We got new caster. Hello, Buster.
भाई हम कुछ बस ट्राई मैं कर big रहे हैं, fan, बोर bro, हो big गए. fan, bro. नाइस कास्टिंग डे, नॉट इवन किडिंग. थैंक यू सक्षम. Asarola with the 3K, and this अब pushes problems Fancy है. United into map point. That's just unfortunate. This was always going to be difficult this round. Global did well to बताएगा get the मैप plan पे down किसका without है? losing any. Huh? Map pick Fancy United का है. हाँ बताइए. No, there's still hope, guys. दोनों कंट्रोलर बहुत अच्छा खेल रहे हैं फैंसी वाले बॉयज के. I feel like they need to take more control towards mid. I hope they take more control towards mid, because that is where the utility lies for global. Fancy United are letting mid go because they know global are trying to hit sides, and a slight micro adjustment might just help. ये सोवा पे ऑफ चला रहे हैं फैंसी वाले. हाँ सोवा पे ऑफ वायबल है, लिक्विड वाले पे चलाते हैं. किलजॉय पे भी चलाते हैं. Acerola continues his aggression, but that funnels global towards the B side. Kappa is watching the flank, but he also has the spike near him. It's crucial that he survives. He wants to use the drone. He uses the drone. कैसा है प्रो भाई? कुछ 2 रुपए खर्च से काफी अच्छी खर्च कर रहे हो. थैंक यू सर. मस्त. आप बताओ. आई नो ऐसे चिल्ला नहीं रहे. Okay, Hellranger has found his spot. This could be deadly. Yes, but Acerola comes from behind. He might catch him. He might just catch him. Yeah, Hellranger is spotted. Oh, but SK Rossi takes Acerola down. He helps Hellranger survive. That is brilliant. This is just breathe life. But Heisey with the op from Snowman. Kappa has the line. Kappa has the POV. Please, Kappa. Nice smoke. Nice smoke from Hellranger. Dude. नाइस यार, राउंड हो गया. Beautiful evasion. Just wasting Heisey's time, not letting him actually diffuse in peace. Heisey can't do much with an op in his hand. The dream stays alive. 2 more rounds for overtime. बड़ा प्यारा स्मोक कराया था हेल. Yes, but SK Rossi का वो kill on Acerola was crucial. Cause नहीं तो Hellranger मर गया था. वो Hellranger गया था वरना. SK Rossi skill. क्या? अरे गॉडस्पीड रनिंग कमेंट्री नहीं दे प्लीज. तुम्हें सब कुछ पहले पता चल जाता है, भविष्यवाणी कर रहे हो. Damn, Helen Rossi got us the round. Exactly. Stream कब कर रहे हो भाई? Buster stream कब कर रहे हो भाई? That one round cost them. It's okay. It's still not done. 2 rounds left. Fancy have the economy with them. They can still buy for at least this round. It will not be a full buy, but yeah, they can still find utility in that buy. The question is, will they save this round, or will they go for a quasi buy this round and push for the 24th round? क्यों कास्टिंग कर रहे हो भाई? ऐसे ही मस्ती में कर रहे हैं. थोड़ा हाइप क्रिएट कर रहे हैं. बोर हो जा रहे हैं. यूफो वाली जैम्पी भी करता है, सुबह पे एग्जैक्टली लिक्विड पे करते हैं. निवेरा भी करता है. जब निवेरा सुबह खेल रहा था. अब उसकी वो हेल्फ वाली भी बहुत टाइट थी यार, वो क्लब 4K वाली. एरो में होता बस्टर तो इंस्टेंट किक. क्या बात है यार. अबे बहुत फनी वीडियो थी यार. यूफो को बेचारे ने अगर राइट टू एस डांटे तो ज्यादा बुरा लगेगा कि यार ये इतना नाइस बंदा मेरे को कह रहा है, आए चुप कर क्या कर रहा है. नहीं, राइट टू इसका बोलने का स्टाइल अच्छा है यार काफी. अबे नहीं, मतलब वो फुल ना एसके रॉसी का साइट है. सा बंदा बोल रहा है उसको, मैं चूत क्या कर रहा है. एसके रॉसी का साइट है और डिफेंस के ओमेन ने एंटी स्मोक कर दिया है एंगल को. अब वो सेग्रीगेट करके दिल गो फॉर अ क्विक फाइट. वो लोग क्विक फाइट पे आने वाले हैं. फैंसी वाले क्विक फाइट लेने वाले हैं यहाँ पे. यस, एसके रॉसी ट्रेड हो गया है, बट इनको भी पता रहना चाहिए. दे शुड बी अवेयर. ये बाकी लोग फॉल कर चुके हैं. यहाँ पे प्लांट है. ओमेन हेलरेंजर फ्लैंक पे जा रहा है. दे हैव टू होल्ड ऑन समहाउ. दे हैव टू होल्ड ऑन समहाउ फॉर द फ्लैंक. बहुत ही ज्यादा लेट फ्लैंक हो रहा है. हेलरेंजर ट्रस्ट हिज टीम. Nice, but they find Hellranger.
Oh my god, is this curtains? Thank god. पोस्टर निकल जाएगा कफा की अर्थ से. Oh, Yes. nice, यार. Skills with the save. Okay, that gamble does not. Come on यार OT ले जाओ. That gamble does not pay off for fancy भाई. और अब OT का ये बहुत ज्यादा chances हैं guys. क्या बोल रहे अब OT के बहुत ज्यादा chances हैं. I think. हम लोग भी Godspeed की स्ट्रीम खोल लें क्या? अबे गॉडस्पीड की स्ट्रीम भी डिले हो रही है. इतना लंबा राउंड हुआ है ये. गॉडस्पीड से मुझे देख भूख रहा हूँ लग गई है. उसमें थोड़ा लेट आ रहा है. यानी जब वो पहले बोल देता है. अरे तो क्योंकि यहाँ से स्ट्रीम पे तो डिले होगा ना. मैं तो तेरे को तू मेरे को टीम स्पीक पे सुन रहा है. हाँ वही कह रहा हूँ. When you use 100% of your brain. ये कौन है फैंसी यूनाइटेड? ब्रीजर. ये वही है अपना वाला जिनके साथ हम स्क्रिम करते थे. गोटी मुंह में था भाई. बच गए. This Godfeed guy is a professional jinxer. MSK ने बोला OT ले जाओ. Let's go. वही है फैंसी यूनाइटेड जिनके साथ हम स्क्रिम करते थे. वियतनाम वाली टीम जिसको मैंने 8 की रेटिंग दी थी. Out of 10. मैंने कहा 20 बदतमीजी कर रहा है भाई. तो बेसिकली हम स्क्रिम्स में भी ना ऑपोजिट टीम को मैं रेटिंग देता था डिपेंडिंग ऑन हाउ दे वर प्लेइंग. एंड अच्छा वन वे है वैसे ये बाय द वे. हाँ वन वे तो अच्छा. अबे उन्होंने थोड़ी बनाया था. उसके लिए तो है ना. उसके लिए बन गया था. हाँ Tier 4 श्रीलंकन टीम. क्या बात है निखिल. के दे आर प्लेइंग. बहुत पेशेंटली खेल रहे हैं. पर फिर से वही है फैंसी का स्टैक है इधर. उस स्मोक की वजह से देखो इन्फो कितनी गई कि उसने देख लिया गोलू को जाते हुए. बहुत सही फ्लैश भाई. बहुत सही फ्लैश. बट भाई ये एमएस के जिंक्सर निकला. इसने ओटी बोला है इसलिए ओटी नहीं हुआ. रिस्पेक्ट तो सर्जियो. हेलो सर्जियो. एंटी यार भाई मैंने बहुत हाइप करने की कोशिश की गाइस. ओके अगर मैं बता रहा हूँ अगर स्मोक नहीं होता ना तो राउंड जीत जाते. मैंने अपनी तरफ से मिड के स्मोक से इन्फो भी गई है उसकी वजह से स्टैक हुआ है ना. हाँ वही कह रहा हूँ. मैंने अपनी तरफ से बहुत ट्राई किया भाई. हाइप किया. अब मैं थक गया. 30 सेकंड्स में जाने की वजह से मुश्किल हो गया इनके यार लिए. ये वैसे सीरियसली एमएसके तू बहुत जिंक्स करता है. थोड़ा बोल मत. औरत बेटा तेरे को अभी कैंसिल तू हीरो नहीं. जा कर ले. जा कर ले. ट्राई कर ले. आई डेयर यू टू कैंसिल दिस किड. आई फील लाइक मिड पे इनको जाना चाहिए था. इनको ये राउंड मिड हिट करना ही चाहिए था. वाइपर अल्ट सुनते. प्लीज स्टॉप दिस किड बिफोर ही बिकम्स द नेक्स्ट जीशू. डैम मैन यू गॉन ब्रो. भाई मुझे ये कंपैरिजन ना करो भोसड़ी के. Oh man, this guy is using abusive language, so we're gonna be muting him for the rest of the stream. VLT ऐसे last hope I guess. अभी बेटा एक मिड कंट्रोल ले सकते थे. ट्यूब्स और मिड का कंट्रोल ले सकते थे. कहीं भी जाते बी जाते ये जाते वो उनके ऊपर था. पर मैं 4 राउंड से चिल्ला रहा हूँ 4-5 राउंड से कि मिड कंट्रोल चाहिए हमको यार. बोलो यार थक गया भाई मैं. भाई 13-11 भाई पर कास्टिंग ठीक ठाक तो कर ली भाई. मतलब जैसा भी क्रिंज किया पर ठीक ठाक कर ली कास्टिंग. नहीं है इसके. तुम तो कास्टर हो. बताओ जब कर रहा था रनिंग कमेंट्री तो ठीक ठाक थी या कैसा था? अच्छी थी. ठीक अच्छी थी वैसे. इट्स नॉट बैड. यार असल में दो टाइप्स होते हैं ना. एक तो एनालिटिकल होता है एक प्ले बाय प्ले होता है. सो यू वर डूइंग द मिक्सचर ऑफ बोथ. हाँ तो मैं एनालिटिकली कर सकता हूँ नॉर्मली. मैं मतलब मैंने कोशिश की थोड़ी प्ले बाय प्ले करने की उसके साथ साथ ताकि प्ले बाय प्ले मैंने नोटिस किया लोगों को ना. आई थिंक उनको बस फैंसी तरीके से बोलना आना चाहिए. ओ क्या मार दिया ओए क्या मार दिया. ओह माय गॉड व्हाट द फक. बट मैंने वो सब नहीं किया. मैंने एनालाइज थोड़ा करते हुए थोड़ा वैसे कर दिया. इसको मैं डेमो रील बना के भेज सकता हूँ क्या कास्टिंग के लिए? आई वुड सजेस्ट नो. किसी कास्टर के साथ कर लो ना. मतलब एक कास्टर को बिठाओ उसको बोलो प्ले बाय प्ले करे और तुम एनालिटिकल वो कर लो तो वो बहुत फिट चीज हो जाएगी तुम्हारे लिए. जस्ट हैव प्ले बाय प्ले वाला. सीए प्ले बाय प्ले तो नहीं करता है ना. सीए दोनों करता है. लाइक मतलब कभी प्ले बाय प्ले करना पड़ता है. डेमो कर लो 5-10 मिनट्स वाला विद हिम डूइंग द प्ले बाय प्ले एंड यू डूइंग द एनालिटिक. बहुत फिट चीज हो जाएगी. दैट वुड बी अ रियली गुड शो रील फॉर यू. सही है.
बेटर देन अ फ्यू मोबाइल कास्ट। समुंदर से अच्छी कास्टिंग थी, नो कैप। ये गंदा जिंक्स हो गया भाई एमएसके के वजह से, भाई सब एमएसके के वजह से जिंक्स हुआ है गाइस। गाइस नहीं, मैं देखो, मैं मेरी दिल से दुआ थी गाइस। पिटीशन टू चेंज एमएसके ट्विटर हैंडल टू जिंक्सर एमएसके, सही बात है। गॉडस्पीड एंड मी कास्टिंग डुओ, लेट्स गो निखिल। तो मैं अपना ट्विटर बायो आज के लिए चेंज कर देता हूं। प्रोफेशनल जिंक्सर। प्रोफेशनल जिंक्सर। प्रोफेशनल जिंक्सर। अनफॉर्चुनेटली एंड एमएसके भाई। गाइस ट्रेंड करा दो एंड एमएसके को। बॉयज कर दिया मैंने। यार वही कर दिया मैंने। ठीक है बॉयज, रुको एंड एमएसके को मैं पिन कर देता हूं गाइस। भाई मैंने एंड डाल एमएसके दिया। को पिन कर रहा हूं मैं। रिप्लेसमेंट मैसेज नियॉन। एंड एमएसके मोरकम की नियॉन वाला कॉस्प्ले देखा? हाँ वो है I छोटे know भाई why की G चड्डी versus वापसी कर। VLT looks so good when there is G versus C. कोई प्रोटेक्शन मत दो, कल से हार रहे हैं। एंड प्रेडिक्शन सही ये बात। इसकी प्रेडिक्शन थी ना गॉडस्पीड की, मुझे पता था। मैंने कुछ प्रेडिक्ट नहीं किया भाई, मैंने बोला मैं सपोर्ट कर रहा हूँ ग्लोबल को। यार वैसे आई नोटिस एवरीवन वाज लाइक यार फैंसी यूनाइटेड एंड ग्लोबल मोस्ट लाइकली गोइंग टू बी आउट ऑफ द ग्रुप स्टेजेस। नहीं मैंने तो बोला था नो नेमर्स और ग्लोबल, और मैंने बोला था सबसे ज्यादा टक्कर ग्लोबल को नो नेमर्स ही देंगे। और मैंने ये भी बोला था ग्रिफिन का आइस बॉक्स स्ट्रांग है। मैंने ये भी बोला था कि फैंसी यूनाइटेड को पता है इंडियन टीम्स थोड़ा कैसा खेलती है, बिकॉज फैंसी यूनाइटेड इंडियन टीम्स के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रीम कर मतलब स्क्रिम करते हैं। मजाक है विशाल, ऑब्वियसली मजाक कर रहा है। और बोला था 2-0 रिमेंबर। अरे भाई अंकुर छोड़ देना ये सब, क्या बातों में लगा हुआ है भाई। अच्छा बॉयज, सो यू विल हैव two South Asians representing North America in the CS:GO RMR. Yeah, Momo just qualified for RMR guys. मोमो एंड उसके साथ एक और है, वो भी पाकिस्तान का झंडा है उसका। वो भी पाकिस्तान है, पर मेरे को तो सिर्फ मोमो का ही पता है। शाज नाम का बंदा है, पता नहीं क्या नाम है उसका। So they have like two Pakistanis. Bad News Bears have two Pakistanis. तो रिट्वीट करते हैं। शायद नाम नहीं है उसका, प्लूटो है ना। डिप्रेशन शेरी। यार वो है पाकिस्तानी है वो लड़का, क्या नाम है हाँ उसका? साथ से राज करके नाम है। पड़ेगा, ले लो एक और ठीक कर ले भाई, यहाँ पे डार्की आके यही स्पैम कर रहा है सिर्फ। डक टेप कितने का आता है यार पाकिस्तान बहुत में? वेला है डक तो टेप महंगा डार्की। है, 200 रुपए का अच्छा वाला आता है। डार्की सीरियसली तो बहुत वेला है। भाई हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? आई एम अंडर द वाटर। गो गो गो। क्लाउन टू कोई भाव नहीं दिया एमएसके को भाई, ऐसे मत। और किसने भाव नहीं दिया भाई? क्या बदतमीजी उसने चल रही है? कौन उसने बर्थडे कर रहा है? एक जिंग सेकंड। जिंग जब से बोल रहे हो यार किसी के भौंकने की आवाज आ रही है। ओ भाई तुम्हें तो बड़ा समझ आया भाई, कॉन्वर्सेशन कर रहा है भाई फुल बैठ के। अबे ये क्या ट्वीट किया? क्या ट्वीट किया? क्या हो गया? अबे श्रेया का ट्वीट देखना है मेरे को। हाँ मैंने भी देखा। क्या है? पीक कर ले औरत। ओह माय गॉड, गिफ्ट देखो। ओह माय गॉड। गोपी बहू। ओ भाई भाई साहब, इमोशनल डैमेज भाई, ओ भाई 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 बहुत डैमेज हो गया यार मुझे। आवे तो रो रहा है भाई। यार रो रहा है भाई लड़का। क्यों आता हूँ मैं इस टीएस इमोशनल डैमेज के लिए। क्या है? जेफी नहीं लोड राइट टू इसका ट्वीट देखो। यस, कौन सा वाला? हम सबका ट्वीट। क्या ट्वीट है? और वो ये अच्छा था राइट टू वाला। Go for Sky Esports. अरे Let's go Hyderabad. Let's go. अरे छुट्टियां है क्या एक नंबर का बेंचोद? Are you happy? No bro, I'm a G2 fan. Go for Sky Esports League. Let's go Hyderabad. Let's go. मोमो
चुतिया है क्या एक नंबर का भेंचोद 16-9-10 इमोशनल डैमेज वाला आवाज तो आ गई। अबे वो लेट्स गो हैदराबाद इस पे वो सूट करता है, ये क्या बात हुई यार? चुतिया है क्या एक नंबर का भेंचोद ऊपर भी शॉट Bye. Not a single day was sold out in Bindi. Empty stand-ins for session of all 5 days, and these buyers talking about Karachi crowd. भाई I so भाई टेस्ट wanted. मैच वैसे भी बड़ा, इतनी गर्मी होती है, कौन आके देखेगा भाई? एज कितना पतला हो गया यार डूड, इंस्पिरेशन डूड। I think 37 degrees है कराची में, I think right now. बताओ Karachi भाई। temp right now. 32 हो गया, चलो। What does it feel like? 32 isn't that. कितना 32 वहाँ पे? हाँ। हमारे यहाँ अभी मैं कितना गया है? था, मेरे सर में दर्द हो गया था ब्रो, इतनी गर्मी थी। 37 शो हो रहा था गाड़ी में। हमारे यहाँ 31 है। एसी की हमारे यहाँ सर्विस 32 है, हमारे यहाँ 32 है। फील्स लाइक 32 as well। एसी की सर्विस है ये, फॉरेन कूल बन रहा है। एसी की सर्विस है। Under the water. वेट कर कर रहा हूँ मैं बस। वेट कर रहा हूँ थोड़ा। पीक कर लो यार। ओशन भाई, ओशन भाई, क्या चल रहा है? ये कौन सी गेम है? पबजी मोबाइल वाले बॉयज आ गए। जॉनी ने चश्मा उतार दिया, लेट्स गो। अबे फुल हमजा इब्राहिम लगता है यार ये मुझे। अबे हाँ लगता था। मेरे से आई कैंट अनसी इट मैन। और भाई हमजा इब्राहिम व्हाट्सअप। इरफान जुनेजो का क्या सीन है? क्या कर रहा है? काम पर अच्छे से बोल रहा है। काम पर मेरी बिल्ली शिट। अबे मैच कब है? अगला मैप कब है? अभी 5 मिनट में चालू होगा। गॉडस्पीड वॉच पार्टी राइट कैसे रिक्वेस्ट करूं? वो एक फॉर्म होगा, वो फॉर्म फिलअप करना है। क्या बोलते हैं वो फॉर्म अब से आई थिंक सो पब्लिकली अवेलेबल होगा, बोला गया। इनसाइडर बताता हूँ। राइट टू इसने लिखा लेट फॉर जिम, उसकी वजह से। मुझे भी पता है किसकी वजह से। ये लेट्स गो। जिसको चाहिए 500 रुपए की टिप्स, 500 रुपए की टिप, 500 रुपए टिप। क्या है? एज कितना बड़ा हो गया गॉडस्पीड यार, अब नहीं देखा जाता वीसी ऐसा गेम प्ले। कोई बात नहीं, भेजो ना फॉर्म। हाँ फॉर्म एमएस की फॉर्म। आई डोंट थिंक क्या हुआ, फॉर्म चाहिए? एक सेकंड। हाँ कहाँ, एक सेकंड। फॉर्म का लिंक है क्या एमएस के? हाँ दे दूं? हाँ दे दो ना। श्रेया चाहिए, बिकॉज वो पब्लिकली यहाँ पे पोस्ट किया गया था श्रेया। एंड ये आई थिंक ये है फॉर्म। मैसेंजर पे दे हुए हो क्या आ रहा है ट्विटर पे? क्या अश्लील चीज हाँ आ से रही है? कहाँ पे दूं? ट्विटर पे दूं? दैट सेम वॉच पार्टी थिंग। कहाँ पे दूं? या टेल मी ना। हाउ आर यू आमिर लियाकत? आई एम यार क्या नॉट हुआ आमिर मतलब? लियाकत। मैं क्या बात करना चाहता हूँ? प्लीज यार। अरे भाई कल सरिश you'll Dude. ask Mithika, she has some explaining to do by the way। भाई आपकी 3 वाइफ्स हैं, बताया नहीं। देखो आमिर लियाकत does not have 3 yeah definitely current wives, ठीक है? उसकी I said on the ex-wives stream that we should have gone mid, like taken the other route, if not inside Viper, or just take the other route, right? I think only Navi could pull off the Huh? 30-second executes in CS:GO। Oh okay, बहुत all the मुश्किल best होता है 30 सेकंड में ब्रो।
व्हाट एक्सप्लेनिंग? हाँ यार बहुत फनी सीन हुआ है सेरिश। वो मैं फॉर्म बता तो रहा दिए जा रहे हूँ। हैं। मैं I'll tell you later. नो नो आई विल सेंड यू फॉर्म। यार वो किसको चाहिए था फॉर्म? श्रेया को मैं तुम्हें यहाँ पे दे रहा हूँ गॉडस्पीड। इधर टीएस पे। ओके हाँ मैं भी कर सकता हूँ फिल। वो तो एमएस के बताएगा। हाँ लेकिन डार्की उसके लिए परमिशंस लेने के लिए बड़ी जद्दोजहद है यार। फिल तो सब कर सकते हैं। लाओ दो, मैं जरा कांटेक्ट थकवाऊं फिर कुछ। वेट लेट मी जस्ट टर्न ऑफ डिस्प्ले कैप्चर गाइस। Sai joining in VOD Godspeed Esports. Sasti Chairs is saying hi. Godspeed Sasti Chairs aka Sarish is saying hi. Hi How is Sarish. KG versus Fancy? Hi Sarish. यार मैंने we भेज were दिया। watching it as well and we just Sai joining lost in VOD यार। nice man. Fancy played well. I think yes I can ने 3 super impactful rounds निकाले that ended up becoming the Yeah, yes I game can changer I would say. definitely. 3 rounds में उसने super impactful round Lucifer कहाँ and बोला? those rounds were at a time where it affected the next round as well. तो वो बहुत ज़्यादा like impactful थे। पिस्टल राउंड उसने impact दिया था। एक राउंड था एंटी इको में उसने बहुत अच्छा impact दिया था। So I was like my ranked games could never. Yeah, if you want, I prefer solo queue में ना मुझे बहुत मस्त अच्छा हाइप लगता है। किया KO है बहुत इंडिया अच्छा एफटी लग रहा डब्ल्यू है। करके और ऐसा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इट्स ओके द बेबी। ऐसे टीम्स के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं तो पीआरएक्स फिर ब्लीड एफएच के सामने तो 13-0 इट्स ओके। मतलब अभी भी क्वालिफाई हम आराम से कर सकते हैं। एक ही मैप हारे हैं। इट्स ओके। स्वर्णिम राज जीजी नहीं, केओ जीजी तो नहीं हुआ है मैं भी गाइस। स्प्लिट पे खेलता हूँ, बड़ा मजे का है। जीजी नहीं हुआ है भाई, जीजी नहीं हुआ है। भाई एक और मैप है 13-0 मार देगी अभी ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स उन लोग को। लेट्स गो। भाई कितनी देर में होगा मैच लाइव? मैच स्टार्टिंग लिखा आ गया। वन डे रियली यार एक और चीज है। आई थिंक जो है ना ये लोग क्या करते हैं, दे गिव यू सुपर गुड टीममेट्स वन डे। लाइक यार बहुत गेम जीत लिया ये लड़का, अब यार आई एम गोना साई गिव लाइव हिम द स्ट्रीम और शिटिएस्ट रुचिर ने टीममेट्स इन लीक द किया। लॉबी। Yes, Global Esports will win, inshallah. KG Global did not use KG ult in the last round and they pushed without it. I don't know. I don't know, man. इन लोगों ने timing, they just made it difficult for themselves, यार. 30 seconds. Ah, man. I एमएस don't के know. भाई को जो चुप करो, जिंक्स ना करो बोल के 13-0 करेंगे जी। इंडिविजुअल स्किल्स अरे भी भाई बहुत नहीं मैटर होगा करती jinx हैं। यार। हाँ मैं जो यार there is no such thing as a jinx, ठीक है? मिमोसा। Jinx is the tech की admin है jinx. हाँ ये। Okay, nice. They want to play fast. I like this. I like this. They have changed the tempo. They want to play fast. They want to keep Fans United under pressure. नहीं सक पाएगी फैंस यूनाइटेड, नहीं सक पाएगी अगर फास्ट खेलते रहे तो। ब्यूटीफुल पिक फ्रॉम एसके रॉसी। दे हैव टेकन ई शॉट कंट्रोल। नाइस फ्लैंक फ्रॉम स्किल्स। स्पॉइलर। अबे एक तो ऑब्जर्वर कोई टाइट है, किल के वक्त ही हटा देता है। हमें किल फीड में देखना पड़ता है। हाँ भाई रॉसी ने मारा कि नहीं मारा। अबे भाई यार ये लोग दरख्त वाली गोस्ट बहुत यूज कर रहे हैं, ये अच्छी है। अबे क्योंकि इनको वीसी के अकाउंट्स है ना। ओ हाँ, ओ नेवर माइंड। यार नाइस। Average users on live stream मतलब concurrent watching या views that come up on the 20 concurrent like average concurrent ये क्या viewers. था? यार मिमोसा सारा यू आर राइट विद द टीममेट्स अलॉटिंग। कल मैच 3 मार है, कोई हादसा हो गया भाई। वेट वी लॉस्ट वन मैप। या सच्चिदानंद VLT लास्ट होप नहीं यार, जो ग्लोबल कैन स्टिल विन गाइस। शेरिश वो दैट 1v2 यस आई कैन का आई वुड गिव क्रेडिट टू यस आई कैन। वो वाला उसने बहुत अच्छा खेला था। उसने रिस्क लिया कि they're gonna come towards B। वो प्लान गलत था बट इट्स नॉट लाइक कि they had the information के वहां का प्लान they thought he's gonna come from under tube तो they didn't risk it। वो थोड़ा सा गलत हो गया। यस आई कैन का वो क्रेडिट है उसमें। वाह क्या बोलूं मैं, Nice one, एक्चुअली Rossi. प्रेस्ड आई कांट। सब मिमोसा की गलती। No way they lost this. It's okay guys. We are winning हाँ this मिमोसा round. ने जिंक्स किया गाइस। मिमोसा है।
यार क्या है ये फैंसी वाले, कैसे क्या खेल रहे हैं फैंसी वाले भी भाई, इतना कोऑर्डिनेटेड तो खेलते ही नहीं थे भाई ये। किलर क्या ये फरारी पिक दे रहा है भाई ये बहुत बंदा, कॉन्फिडेंस में खेल रहे हैं फैंसी वाले। खत्म, ये तो डिफ्यूज हो जाएगा, ये तो कुछ कर ही नहीं सकते वो लोग। वो प्लांट उधर ही नहीं, फोर्स का डिसीजन अच्छा था, दे गॉट द प्लान डाउन। एमएसके चिंग्स डिड, आई एम टेलिंग यू, मिमोसा टॉक्सिक। मेरे को नहीं बोलो यार, मैंने नहीं किया यार। ये बिल्कुल है भाई। आई हैव अ रियली गुड डे, आई विल विन, लाइक मेरा पूरा पेज ग्रीन जा रहा होगा, ठीक है, फिर अगले दिन ऐसी कोई गार्बेज टीममेट्स होंगे, दे गोना पिस यू ऑफ एंड यू लूज। It's all about luck, bro. No need to cry about it. And when you're playing matchmaking, you need to give your impact in every round. जिस तो राउंड में तुमने कुछ basically- भी नहीं किया ना, you lose that round. बेसिकली आई से हाँ मैं बता रहा हूँ एमएसके, ग्लोबल को मिड कंट्रोल लेने की जरूरत है। यार वो ग्लोबल रीटेक्स हार रहे हैं। रीटेक्स तो हार रहे हैं, इसलिए हार रहे हैं ना बिकॉज वो फनल करके 5 मैन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो उनके पास सिर्फ इतना सा एरिया है ना। एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रखना पड़ेगा इनको। हाँ, उनको मिड कंट्रोल लेना पड़ेगा, फास्ट से फास्ट खेलने से कुछ नहीं होगा, उनको मिड कंट्रोल लेना पड़ेगा। नो होप कांट इवन विन अगेंस्ट Yeah, I don't play Bahrain anymore. Like ओल्ड जी इज बेकार। बैक। भाई ऐसा मत, there's still lots of hope guys, it's okay. It's just 2-0, dude. Yeah. Global Esports is giving it their all. अभी जो जिस इंटेंट से वो लोग खेल रहे हैं, aggressive बहुत अच्छा है। But Fancy United भी अच्छे ही, मतलब वो भी aggressive खेल रहे हैं। So like वो भी खेलने ही आए हैं ना फैंसी वाले। I think their mental is gone, to be honest. No. Yes, I can see that. यार ये लोग ये तो नहीं सोच रहे यार हम लोग सिंगापुर आए और ये सब। वही ना, वो सब दिमाग में चल सकता है, because I can see their mental is a bit gone. 2 राउंड के बाद टाइम आउट ले गया, मैप में मिड भी है थोड़ा कंट्रोल। एग्जैक्टली सैपी, वही है, सेम आइसबॉक्स में भी सेम हुआ, यहाँ पे भी सेम हुआ। They needed a lurk in icebox too, they need one now too, but they can't as they have a solo controller on Astra. Fancy United so brilliant at retaking, तुम सिंगल ये सब नहीं कर सकते। This is guys, mid control low please guys. Full diffuse हो रहा है मेरी जानो। Guys, mid control low. We have to take mid control guys. We have to take mid control. एक बात बताऊं गॉडस्पीड, हाँ, रीटेक ये लूज कर रहे हैं because they are not taking garden control after। अरे वही ना, because they are jumbled up इतने से जगह पे, और वो भी फॉल करके ए में आ जा रहे हैं, तो उनका सिलेंड्रिकल बहुत व्यू बहुत छोटा हो गया। तो वो लोग ऑलरेडी जो बाकी जो एरिया है, ये सब जो एरिया है, वो तो ऐसे गिव अप कर दे रहे हैं फैंसी को। तो फैंसी को टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, वो डायरेक्ट रीटेक पे जा रहे हैं। और वो अकेला बेचारा साइट वाला कुछ कर ही नहीं सकता। क्या करेगा वो, इनको मिड कंट्रोल लेना पड़ेगा, नहीं तो हार गए हम। जी जी, आई एम नॉट वाचिंग। बहुत मेसी लग रहा है, मेसी लग रहा है। मैं बोला ना, देयर मेंटल इज गॉन है, इसके मैं बता रहा हूँ ना तुमको। सही बात है, वो लोग यही सोच रहे हैं हम लोग यार, एसजीपी आए। सिर्फ वो नहीं, मेरे को लग रहा है मेंटल इज गॉन। मेरे को लग रहा है लास्ट के जो 2-3 जो राउंड्स हारे ना आइस बॉक्स पे, और जो पहला राउंड हारा ना पिस्टल का, अभी एसेंट का, उसके बाद ऐसे टाइम पे नहीं करना चाहिए मेंटल लूज इस तरह। तो तुम्हें याद नहीं है बड़ा, तुम्हें याद नहीं है जैसे बड़ा हमारे में भी हुआ था तो था, लोग गलती करके फिर इनके स्टेक्स ज्यादा है ना। अरे पर हमारे भी स्टेक्स थे, मतलब जो भी थे, वो बात अलग है, नहीं किए, पर स्टेक्स तो हमारे भी थे। होता है, कभी कभी नहीं कर सकते कुछ भी, लाइक नाइस। बट अगेन पूरा मिड छोड़ के खेल रहे हैं, कुछ नहीं मिलेगा मिड छोड़ के खेलने से। वो चला गया, वो वुमेन चला गया, क्या करोगे तुम? पूरा मिड फैंसी के कंट्रोल में है, क्या कर सकते हो यहाँ पे? कांट वॉच दिस। मैं पोकेमोन के देखने जा रहा हूँ। अरे नहीं भाई, रहो,
Never watching ऐसे Valorant. It's just depressing. नहीं भाई. Dios, it's okay, guys. There's still a lot of hope. ठीक है? See, Golu 4-0 has है taken only. the mid guy. अब now they'll push towards aim in, I think. Breach. No, they're गार्डन not. की अल्ट मार दे ब्रीच मेरी जान. Bro, Rossi will get us back on defense. Exactly. Don't you guys remember G versus VLT? और It's इसकी okay. ऑपरेटर डिफेंस में बहुत शपाटर है. Bro, this team should disband, man. They cannot do this after calling for APAC, man. It's okay. 9th, yeah, exactly. CA को पता है भाई. Nice one. अब ओमेन को सेव करना है. So we have our first round on the board, guys. Why is G using Astra? Wouldn't Brim be better? Brim नहीं. I think Omen would be better. But yeah, it's their choice. Like ऐसे Valorant से डिसअपॉइंट होने से पहले पूरा टूर्नामेंट एंड तक देखो और सेकेंडली दो टीम से अपने सिर्फ सपोर्ट करो. एग्जैक्टली. To be honest, I'll be very frank. I prefer Fancy United का comp on this map, Ascent का. मैप भी वही है. हाँ एग्जैक्टली मैप भी वही है. डबल कंट्रोलर ना बहुत फिट चीज है. डबल कंट्रोलर ब्रीच का ही नया इस मेटा में लाइक इट इज वेरी गुड फॉर डिफेंस भी और अटैक में भी. बिकॉज ये तो 5 मैन एग्जीक्यूट्स करेंगे फैंसी, मैं बता रहा हूँ. ठीक है, ये पूरे एग्जीक्यूट्स करने वाले हैं एसेंट में. मेजर डिसअपॉइंटमेंट कम विद रॉन्ग डिजाइन. कांट रिमेंबर ऐसे वाला कुछ ऐसे सीएस वाज वर्स राइट. ओह It's okay, guys. Hopium. GV losing to Fancy United, seriously, you know. MM चालू है ये तो. No map control, no adaptability to situation. You already know that there will be some changes in GM. हाँ वो सब it's okay. But at least ये टीम को चाहिए ना कि अभी nice. जेट बहुत प्रॉब्लमेटिक कर था ये, इसको मिल गया. I need to order food. क्या odds लग रहे हैं जी टू विन के? क्या खाएं बॉयज, क्या खाएं बताओ. I think still it's मैं तो सोच रहा था फ्राइड चिकन मंगवा लूं. That's a good idea. फ्राइड चिकन कहाँ की? वाह, यहाँ पे कोरियन चिकन मिलती है बड़ी स्पॉन फिट. कैंपर इन चैट. सही है भाई, सही है. This is good. They're slowing the pace down. This is what SK Rossi needed to slow the pace down. Lockdown तो destroy हो जाएगा. Like there's no sense in using lockdowns. Nice one Golu, but traded him immediately. Yes, I can भी आ गया. इनका rotation यार. 5 man executes मत करो यार. G needs ताजा player like Buster. सही बात है भाई. या मेरी नजर में गॉडस्पीड हाँ अभी क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है ब्रीच विल ब्लो आउट द केजे अल्ट. दे शुड हैव यूज्ड द ब्रीच अल्ट फर्स्ट. हाँ exactly. And then use the KJ. So this is what they did na. VLT used to do on Heaven. I think so. This is what VLT also did na. They used two ults in like Killjoy Heaven में. Killjoy breach तोड़ देगा Killjoy का. They knew, right? So they first use an ult from Along and उससे push किया पीछे और फिर they use the Killjoy ult A shot. ये लोग सेम क्यों कर रहे हैं? लॉकडाउन पोजीशन इज वे टू ऑब्वियस इन एसेंट. या नो शॉट इतने सारे स्मोक्स. जी feels there is a burden upon them with nothing issues which is affecting the performance. या ये लोग अब ड्यूल्स लेने में डर रहे हैं. क्या नाम है गॉडसेट? बोल तो रहा हूँ मेंटल गया इनका. लाइक अभी इनको स्लो डाउन करना चाहिए. They don't have the confidence for the first peaks anymore. They're not challenging mid at all. We expect a lot from Fancy United is better. Raju, it's okay. Like obviously they're preparing to the best of their abilities. Even G is preparing the best of their abilities. अब वो टूर्नामेंट में मैच में क्या होगा? That is not up to the analysts, right? And you have to just trust the players. Nice one, Rossi. और ये पीछे साइड के पीछे प्लेयर है. नाइस कप्पा भाई. साइड में प्लेयर है, स्पॉटेड नहीं है.
ये एक बार के लिए स्किल्स उस कॉस्ट में डिवाइड कर रहे हैं, उन किस तरीके से घूम रहे हैं। स्किल्स मार्केट के एरिया तक पहुंच चुके हैं, ही माइट एज वेल जस्ट पिक अ फ्यू प्लेयर्स हियर एंड देयर मार्केट के ऊपर स्किल्स, और वही वहां पर थोड़े से स्पैम शॉट्स लेकर के जा सकते हैं। स्किल्स ने प्लेयर्स को पिक किया जरूर, एंड जाते जाते राउंड निकालने की कोशिश ज्यादा नहीं, और वहीं पर स्किल्स थोड़ा सा फंस चुके हैं, ट्राइंग टू लुक ऑन टू द साइड बिफोर ही क्रॉसेस द रोड, बट वेल ही विल बी टेकन डाउन। अच्छा, in the situation like this, do you think the 6-man might change the team environment? No. मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा, आते लोग अपने सारे इमोशंस इन्वेस्ट कर लेते हैं Bro, टीम्स में, the यहाँ पे fancy तभी wale छोड़ are दो playing रीजी very लाइफ hard. में। भाई क्या चल रहा है इधर? See, fancy are reading global very easily because global are only going for 5-man pushes. उनको मिड कंट्रोल चाहिए भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मिड कंट्रोल चाहिए। नाइफ आउट जंपिंग इनटू द साइड, भाई मिड कंट्रोल चाहिए जी प्लीज। They're again going for a fast execute यार। यार पॉज लेने की जरूरत है अभी। पॉज ले चुके हैं, और नहीं है टैक्टिकल पॉजेस। रिप क्या कर रहे हैं यार? So, बॉयज कोई अच्छी बात करते हैं, खाने के लिए बताओ क्या मंगाऊं बॉयज? आज तक ओमेन इन्फो ही नहीं मिला। मिला था। They expected ओमेन to be there. User in your channel timed out. गया कोई। मिड राउंड एडेप्टेशन नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। फाइनली दे आर गोइंग मिड। टीम है यार। ओह माय गॉड। Aren't they from Vietnam? या वियतनाम का सेकंड टीम है थे। ओह, नॉट इवन फर्स्ट। फर्स्ट इज आई थिंक सो सर्वरस। अभी जो इनका किलर हाँ, रात को यूनाइटेड ना ये वर्सेस रॉसी फर्स्ट देता है। टेक ले ले भाई। अबे टेक पॉज ही ले लें, उसमें मेंटल रीसेट कर लें। डोंट डू एनीथिंग, डोंट टॉक। Is there anything against using a tech pause for mental reset? Yeah, you can't use technical timeouts for anything other than anything technical. विंग्स ऑर्डर करो। सच्चिदानंद बोल रहा है विंग्स ऑर्डर करो। विंग्स? ओके। KFC के मंगा लेते हैं। This is honestly unbearable for me. यार वो तुम लोगों के यहाँ महाराजा बर्गर होता ना? हाँ, बिग मैक महाराजा बर्गर, वेज महाराजा बर्गर। या उसकी पैटी किस चीज की, आलू की होती है? पता नहीं, पर टेस्टी होती है। इसी वियतनाम अच्छा हांगकांग टीम से हार रहे हैं। पीएस कंपेयर नहीं है जी, हारेगा तो वीएटी पे भी। गुड एडवाइस मैन, आई विल गेट सम विंग्स, थैंक यू। लाइक मैंने अपना प्रेडिक्शन सही करने के लिए ये नहीं मांगा था। मैंने बोला था एक ही टीम क्वालिफाई कर देख रहा हूँ मैं प्लेऑफ्स में। आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस व्हाइल सेइंग दैट, एंड होपफुली ग्लोबल विल कम बैक। The only problem is they are not taking mid control. South Asians में गुड टेक। अरे टेक तो ले लिया, आप घुसेंगे कैसे? उनका पूरा मिड का चैनल बंद है, देखो। ओबे भाई ये तो स्किल्स भी फंस गया और वो लॉकडाउन कर चुके हैं। बच गए स्किल्स, उसको नाइफ लेके आ गया किलर्स पर। अभी देखो, अब ये गोलू। नाइस सेम डुएल, नाइस वन गोलू। कम ऑन लाइटनिंग, तू कर सकता है सब कुछ। 1v3 बेस्ट है यार दुनिया का गोलू। They can't hang with any situations ने VLT पे सारा प्रेशर डाल देना। इनकी कितनी पिंग आ रही है? ये ग्लोबल वालों की। I still remember your pick'ems तो जो भी था भाई, pick'ems तो छोड़ो। Toxicity in the chat man. बकवास है, we're nothing compared to Southeast Asia. नहीं, I'll be very honest. We are on par with many of the Southeast Asian teams. Maybe if you leave, let's say top 4, let's say 4 teams apart, बाकी सबके साथ you can win. To be honest, मुझे ये लगता है कि it's about in Southeast Asia all the teams are so evenly matched that eventually whoever is having the best day will be at the winning end. It's not about how good you are on paper, it's just about how well your game goes on that particular day. And abhi Fancy United is having their day right now. And I think VLT पे प्रेशर डाल के कोई फायदा नहीं है guys, because अब जी भी प्रिपेयर कर रही है पूरा, VLT भी प्रिपेयर करेगी ना। ओवर हाइप करो इंडियन टीम्स को भाई। ओवर हाइप किसी ने नहीं किया, मैं बता रहा हूँ जी में वो कैपेबिलिटी है। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। मैं खुश हूँ टीई नहीं गई, वरना जलील होती। अबे ये क्या बातें कर रहे हो तुम लोग बॉयज?
तो अलग ही नशे कर रहे हैं भाई. I'm talking about the top ones. Bro, What's there's no going like wrong there. if we are at par? They are not adjusting now. PRX and Cersei are way better than any other race. Exactly. So like which is what like. Do you think the South Asian teams have become complacent in facing each other so much that they are not adapting to what other regional teams can do as well? जैसे अभी like I don't think they're adapting really well to Fancy's play style. No, the thing is they didn't need to adapt. They just had to play their comfort comp. Like they tried to innovate on Nicebox, right? अब वो innovation उन पे भारी पड़ गया. Second of all, they're playing Ascent, a map they're not that comfortable on ऐसे भी, ठीक है? तो वो भी दिक्कत है. They should have picked Haven. I don't know why they didn't pick Haven. Haven में मुझे So बहुत अच्छा one लगती team's है opted to Global entire Esports. region. Exactly, see. They have a breach. Why put the Playstyle lockdown difference, they there? are more comfortable and वही consistent on their बात है ना. playstyle than our teams. वही बात है. राइट नाउ गोलू को देखो. गोलू माउस को जिस तरीके से हिला रहा है ना रिगरेसली. नाइस वन हेल रेंजर. दैट वाज अ नाइस सेटअप गाइस. दैट इज नाइस गाइस. लेट्स गो. लेट्स गो. Nice Hell Ranger. जीतेंगे भाई. अभी कमबैक हो जाएगा. अभी कमबैक हो जाएगा. Come on boys, 7-5 कर लो, इंशाल्लाह हो जाएगा. You guys can do it, I believe. हो जाएगा भाई. 3 राउंड मिल गए. इनफ है. 9-3 कर्स. Yes. The feeling is but they are way too inconsistent. Yeah, chicken wings stream पे खाना बड़ा मुश्किल है. That's the problem. Let's aim for 7-5. I can eat a burger easily on stream though. भाई वो तो मस्त है. हाँ we like hoping for the best यार. Guys फटाफट से 250 लाइक्स कर दो guys please. If GL loses as well they be eliminated. कर दो boys यहाँ पे. Every day cannot be off them man. We are all supporting GE, but facts are facts. Yeah, देखो, I don't consider these facts. I still consider the South Asian teams at par with Southeast Asians. It's just that Fancy United are having a really good day, and Global Esports are not in their comfort zone, I think, especially in this map as well. इनका Icebox में जो है ना mental जो effect हुआ है because of 3 crucial rounds from Yes I Can, और वो ऐसे rounds थे that shouldn't have been won by. हाँ कर सकते हैं तने. बात कर सकते हैं. ये versatile है. They can adapt to any playstyle FS के against. इसीलिए एक मैप निकाल पाई, I guess. क्या बात है. TE versatile है या नहीं, मैं इसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं बोल सकता. But ये बात, like you guys are discrediting Global Esports a lot. Like, अगर TE versatile होती तो TE ग्लोबल और VLT को भी हरा देती. Let's just that's just straight facts. TE का map pool is very shallow. Okay. I'll be very honest. TE का map pool is very shallow. Their breeze has a lot of issues, but they still continue to play breeze. अभी TE का प्ले मैप पूल से भी ज्यादा उनका जो इंडिविजुअल मिस्टेक्स होती हैं राउंड के दौरान, वो उनके तो लाइक बहुत ज्यादा गैप नजर आता है. और प्लस उनके ब्रीज में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं. Oh, nice one, Phils. And the thing is, see, it's all about it's in 2 days, not every day. Yeah. Yes, Jet बहुत परेशान कर रहा है. हाँ भाई, Killers is playing really well. You have to say that. एकदम वो वाला इम्पैक्ट दे रहा है जो रॉसी देता है डिफेंस पे विद ऑपरेटर. अरे नहीं. Come on, Hell Ranger, I believe, dude. Oh no. Nice ult. They go to the empty boost our team's mental state, bruh. You think traveling to SG? I don't think so. वैसे उनके ब्रीच ने बिल्कुल ब्रीच डिफ किया अभी. Beautiful stun, beautiful ult. Well done. हाँ, क्योंकि राउंड्स बेसी बचे हुए नहीं है तो ही कमिट. बीच में कहाँ से आ गई वैसे जो बात है. there is no like अभी argument हाँ to be made for TE or in their favor. हाँ. बात ये हो रही है साउथ ईस्ट एशिया वर्सेस साउथ एशिया, तो एक मैप उठाना is not a metric for performance. Exactly. अब ऐसे तो तुम बोलोगे तो भाई जी ने डायमंड को हराया, F4 को ऑलमोस्ट हरा दिया, बट अभी जी इन लोग से हार रही है तो फिर
तो ये बिल्कुल ही like I don't this is not मेरे the को स्क्रिप्ट right मिला। metric for performance. ग्लोबल esports अच्छा खेलती है और अभी फैंसी यूनाइटेड बहुत अच्छा खेल लीक द रही है. स्कोर। That's fair. 8-4, लेट्स गो। Oh shot गोलू क्या चमाट मारा है भाई. Nice गोलू शॉटर. See, their lack of mid control is very concerning, guys. Even if they go on to win this match, it's Yeah, honestly. Godspeed, do you think Rossi is being wasted being outside B main and him being the one trying to get the kills over there? Utilized better on mid instead? Yeah, but the thing is, they are all going A, तो mid उसको enable कौन करेगा? Not making excuses. This is bad, but also मैंने काफी because rounds और भी instead all देखा of SA so is becoming complacent because of G's pattern in the last 2 days. Nice one. 8-4, guys. Or you don't reply to them. Classic white. winnable है boys, chill हो जाओ. Winnable. Just played for fun. So you could say the same about FS, ना? They just lost their main player. They just lost Super Buzz. तो फिर see, I am not denying GT is a very good team. What I'm saying is थोड़ा अच्छा voice increase करो. what I'm saying is South Asia में all of these teams are on the same level. You count TE, you count G, you count VLT. All of them were at the same level. ठीक है? You can see how close those matches were. Even TE versus VLT, TE versus G, and G versus VLT. Fuck, wrong script. Last year वाला उठा लिया. कोई बात नहीं सी है. Almost सही स्क्रिप्ट हो गया था. Almost सही स्क्रिप्ट हो गया था. चलो यार होममेड बर्गर आ गया तो थोड़ी देर के लिए मेरा क्या बात है. रिचार्ज हो जाऊंगा. थोड़ा लेफ्ट राइट हो गया. Yeah, I do think 2-3 years भी नहीं. I think within 6 months like आप लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे परफॉर्मेंस वो ऑलरेडी होगी. It's just they're not having a good day. That's all. भाई मैं तो बोल रहा हूँ 2 साल के अंदर अंदर मैंने तो आज से 6 महीने पहले बोला था 2 साल के अंदर अंदर मास्टर्स हम पहुंच सकते हैं. ठीक है? वेरी ऑनेस्टली हमारा रीजन हम मतलब ऐसे रीजन. ठीक है? बट ऑल यू नीड इज डेडिकेशन. उस चीज के लिए तुमको वो लॉन्ग टर्म विजन होना पड़ेगा कि तुम यू आर नॉट कंटेंट विथ वट एवर यू आर अचीविंग. योर गोल इज मास्टर्स. जैसे कि इफ यू आस्क VLT प्लेयर्स, ग्लोबल प्लेयर्स, TE प्लेयर्स, इन सबका गोल इज मास्टर्स. वैसे जो नीचे वाले टीम्स है उनका भी गोल मास्टर्स होना पड़ेगा. क्योंकि इन टीम्स के अलावा जो दूसरी टीम्स का गोल है ना वो है इन टीम्स को हराना. एग्जैक्टली. तब तक हमारा रीजन नहीं डेवलप कर सकता. जब हमारे टीम का हमारे मतलब रीजन के टीम्स का ही मकसद हो कि हमको वेलोसिटी से एक मैच जीतना है, ग्लोबल से एक मैच जीतना है. वी ऑलरेडी नो योर आंसर सी है एंड यू नो माय आंसर एज वेल. व्हाई आई सेड ये 1.5 years अभी और हैं. If such matches happen often, we can easily achieve and beat these teams. Our players face a big challenge to succeed and beat them on the spot. Exactly, Ruben. It's all, like, see, it's okay to be disappointed, but you can't say shit like disband कर दो, ये कर दो, वो कर दो, because it's okay. I am also disappointed. Disbanding is not the solution. इनके सारे players अच्छे ही हैं. तने बोल रहा है मेसी को मतलब इसी में. क्यों नहीं? मैंने क्या किया? What did you retract? CA. में भी नहीं गए तो कुछ नहीं बचेगा. MS के पनौती. भाई बहन मैंने क्या किया है? MS के पनौती. इंडिया में जी का ओवरपिकिंग डज नॉट गेट पनिश्ड. हाँ वो तो है. ओवरपिकिंग वाला तो यू सेड टाइम एंड अगेन. That comes back to the fact that the tier 2 scene needs to develop. जब tier 2 टीम इन चीजों को पनिश करेगा तो फिर प्रॉब्लम बनेगा ना. It's fine. It's fine. See. डेट लिखा था वीएंड का मैच. हाँ मतलब वो ऑलरेडी पता है लोगों को. और सीए हाउ आर द प्रिपरेशंस तुम्हारी एनालिसिस वाली पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी तैयारी है?
पोजीशन पे खेल रहे थे जहाँ पे इंस्टेंटली आपके लिए काफी मुश्किल पेपर दे रहा है सीए तैयारी करना है हाँ मजाक बेटा क्या मतलब अपग्रेड फैंसी यूनाइटेड के पास हो सकता है ऐसा अब मुझे बहुत बहुत भूख लगी है बहुत इंपॉर्टेंट हो गए वेल एक आ चुका है दूसरा निकालने की देरी है बस रीग्रोथ का इस्तेमाल साथ के साथ किया जा रहा है स्किल्स जैसे रोना हाईजी भी उन्हीं के पीछे It's unfair to say कि global esports are not a good team वैसे that's just a fucked up thing to say Yeah, exactly. yeah they will be Like in the eliminated if they 16 lose score, this Dark Chat, Reader, Lamau. Welcome to aim and being mentally strong. Bye, I'll be very honest. I will still stick by my conclusion. Oh, wow, Hellranger. Let's go. ओए होए भाई अरे शपाटर भाई क्लासिक भाई क्या निकाला है भाई हेलरेंजर ने स्टीम परमिशन लेनी पड़ेगी आई थिंक ये भी डाल दे क्लासिक से डाल मस्त यार रेंजर डार्की तुमको मिलेगी तो एमएसके को नहीं मिलेगी तो सोच लो किसको मिलेगी बेटर क्या मतलब मतलब भाई पाकिस्तान से सिर्फ एक सब जगह से एक एक है ना अच्छा एक एक है ओ चल भाई एमएसके को कैंसिल करो सीए हेल्प मी कैंसिल अच्छा वॉच पार्टी की बात कर रही है हाँ अबे लॉल डर की कल आना बेटा सबसे पहले मेरे पास परमिशन होती है एमएसके बोलेगा कि भाई एक सेकंड में कॉल करता हूँ डार्की एक सेकंड पे एक सेकंड में माशाल्लाह से जो है ना कॉल करता हूँ कि यार मेरे दोस्त को भी दे बंगाल अलग कंट्री का नहीं भाई भाई these I mean is सही है हाँ I get your point but teams have performed good against these teams in scrims also that's मस्त राउंड यार हेल रेंजर बहुत आला it shows we're very close yeah we are एक सेकंड में एक और बर्गर लेकर आया भाई यार साइबॉर्ग स्ट्रेस तुम अपने टीम के कुछ लीक्स बताओ अरे पिन मैसेज भी तो है एंडएमएस के मेरे को 15 दिन पहले कुछ सुनने को तो मिला था 15-20 दिन पहले क्या वो अभी तक सच है गुड मॉर्निंग पार्थ भाई आने वाली टीम अच्छी है तो फिर एक्सपेक्टेशन नहीं डाउन मुझे याद आ रहा है बहुत M42 M42 वही जिसमें गॉडचाइल्ड ने 3 राउंड में 13 या 14 किल मारे थे बीच में ब्रीज पे This G was playing better in the eco round than the buy rounds. अंडे वाला burger. Eco. Yes, let's go, guys. This is the start of a comeback. This is the script CA was talking about. Okay. Come on, dude, you can do it. If Global win this map, they win the next one as well. Yeah. It's all about mental conditioning. VLT is a last hope. नहीं भाई रुक जाओ जी भी जीत सकती है. Let's go, guys. Let's support them. ठीक है जितना हो सकता है. से बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है. तो like stop saying that. ठीक है. Last row अभी से कहने लगोगे तो like. Why is Rossi लास्ट होप ऑफ ऐसे तो एमएसके सही बात है ओपन बूट या ट्रू डूड लास्ट होप ऑफ ऐसे तो एमएसके लास्ट होप इज एमएसके क्या बात है तने okay they went inside nice one skills it's all up to skills guys it's all up to skills nice skills अरे नहीं यार nice one head ranger what a pick man what a pick भाई अब मैं बोलूंगा ही नहीं किसी का नाम जिसका नाम बोल रहा हूँ वो मर रहा है भाई अब मैं नाम ही नहीं लूंगा भाई हो गया अबे नाम लो ना यस कैन पीएमवीसी नाम लो ना इनका नाम लो जी यस आई कैन भाई जिसका नाम ले रहा हूँ मर जा रहा है भाई ये क्या है भाई कि 3 सेकंड रिलाई ऑन गॉसी होल्ड फिर हाँ देखो सीए ने भी वही बोला टेक एफसी भाई वो ले ही नहीं रहे भाई उन्हीं के नाम लेना पड़ेगा भाई वो बोल रहे भाई देखो वो नाम से मेरे को मतलब नहीं है मैं उस तरफ देख नहीं सकता भाई नूब है क्या ओपोनेंट वाले का नाम ले लेता शांत क्यों हो गया यार मतलब मेरे को बोल रहे हो भाई यार मिड कंट्रोल का नहीं था मसला ये था कि आई थिंक स्किल शुड हैव स्टेड ऑन जनरेटर वो एंगेज करने गया डोर वालों को या दैट्स व्हाट आई एम आल्सो
वो जनरेटर से बहुत अच्छा खेल सकता बड़ा था क्यों नहीं अगर कर आगे ना जाता। रहा रूबेन सेम लाइक आई आल्सो फील ओपोनेंट वाले मारते हैं भाई तने क्या गजब एनालिसिस किया तूने ये बात पे कमबैक yeah see but the I think the last round an aggro pick made sense this round it didn't right Golu has picked up the op let's see Astaghfirullah बोल अच्छा हाँ उल्टा नाम लो चलो भाई यस यस आई कैन का लेते हैं भाई बीएमवीसी हाईजी last was हाँ exactly see was he not confident enough it seems nice one गोलू नहीं मैं नाम नहीं लूंगा सॉरी सॉरी यस आई कैन और ये लोग हैं बीएमवी है शॉर्ट पे बीएमवी ने तोड़ा भाई अब जा रहे हैं ये लोग मिड जा रहे हैं अच्छा बी पे अच्छा सेटअप है गाइस बी पे अच्छा सेटअप है दोनों इनिशिएटर बी पे गाइस शपाटर गाइस शपाटर होल्ड होने वाला है गाइस शपाटर होल्ड होने वाला है गाइस अरे बैक नहीं साइड वाले वू लेट्स गो लेट्स गो अभी भी दो जन है गाइस ब्यूटीफुल हेल रेंजर जीत गए राउंड भाई जीत गए जीत गए राउंड से गुड थिंग्स अबाउट जीत गए वी वोन भाई बच गए मैं भी डैश इन करता हूँ आपके साथ इट्स ऑल अबाउट द मैसेज क्या बात है कौन भौंक रहा है बदतमीज क्या हो रहा है ये लेट्स गो भाई लेट्स गो I think it's over because if they lose this the next round they don't have a good economy. या रीसेट हो जाएगा इकोनॉमी रीसेट भाई They need to win this, yes sir. They need to win this round. पर इनके पास पैसे नहीं है, so it's good. They have a better chance of winning this round. Fancy OP भाई, fancy OP भाई, fancy बहुत अच्छा कर रहे हैं भाई. अब हम उल्टा जिंक्स कर रहे हैं अब हम. यही आ गया वॉच पार्टी में अब हम एनालिसिस छोड़ के उल्टा जिंक्स कर रहे हैं. भाई फैंसी क्या खेलती है भाई रिवर्स जिंक्स वही कर रहा हूँ. भाई हम वही कर रहे हैं. भाई फैंसी शॉट में क्या घुस रही है भाई क्या ट्री स्मोक है. शॉट में घुस गए हैं भाई क्या घुसे हैं भाई. ओहो जेट ओहो स्काई ब्रीच जेट है यार दुनिया का. स्काई ब्रीच क्या घुसे हैं भाई और एस्ट्रा का तो जवाब नहीं. ओहो ओमेन किलर को बोला और वो मर गया. ओ भाई ओमेन ने क्या ही पीक किया ओमेन ने. ब्यूटीफुल. ओहो शॉट से बहुत ही अच्छा पीक कर रहे हैं भाई ये लोग. भाई काम किया भाई. डिड गोलू चेज टेन तो ओडिन क्यों नहीं चलाते ये लोग. पॉइंट गुड थिंग तो ये करते हैं स्टेडिया. भाई क्या ट्वीट कर दो काम करा भाई. जल्दी से ट्वीट कर दे तो. फैंसी ने टाइम आउट ले लिया भाई. मेरा एड्रेस मत देना गाइस. मेरा एड्रेस मत देना फैंसी वालों को. अभी ढूंढ रहे हैं हु इज दिस GodspeedxD वॉच पार्टी. अचानक से जज्बात बदल दिए. दुकान के पास सी हम ही बनाते हैं. सही बात है भाई. फैंसी बहुत सही खेल रही है भाई. आई थिंक सो फैंसी ने पहला मैच जीता है. बहुत अच्छा जीता है. और आई थिंक सो एकदम सीरियसली बोल रहा हूँ मैं. हंस भी नहीं रहा हूँ. और आई थिंक सो फैंसी इज इजीली गोइंग टू टेक दिस. मतलब 10-7 क्या दे माइट टेक इट 19-7. 26 राउंड खेल लेंगे. 24 होता है तो इतनी गेम है उनकी जी. लाइक स्क्वाड्स पे यू आर बिट फॉर द कंट्री. हाँ भाई लेट्स गो. फैंसी ने टाइम आउट ले लिया. योर कंट्री नीड्स यू. होगा मम्मी को बोलूंगा मम्मा दही शक्कर खिलाओ. मैं कंट्री को बचाने के लिए शिट पोस्ट करने जा रहा हूँ. काम करने जा रहा हूँ. ये इसके का माइक कितना टट्टे क्यों है ब्रो पूछना उसको. अबे यार ये क्या बात हुई ब्रो. इट्स काइंड कोई अच्छा फैंसी माइक का नाम बताओ. MR24 खेलना है क्या भाई. वही तो बोल रहा हूँ. 17-7 जीत जाए 19-7 जीत जाए 26 राउंड खेल ले. क्या बात है भाई. मूडी आ गई भाई. वो चीचा तुझी सटकली का भाई. मेरे को बोला एंटी जिंक्स करने तो मैं एंटी जिंक्स कर रहा हूँ. रिवर्स जिंक्स नहीं बहुत अच्छा खेल लिया फैंसी. भाई बात तो सही है. क्या घुसा है भाई. किलर आई थिंक सो बेस्ट. किलर से अच्छा जेट नहीं देखा मैंने. इसका अगर क्लिप करके डाल दिया तो कल एंड हो जाएगा भाई. मतलब किलर्स क्या ही खेल रहा है. मस्त खेल भाई. नहीं हो रहा जिंक्स भाई. नाइस रेंजर. अरे कापा एक बुलेट बस.
नमक खाने में स्वाद नहीं आ रहा। भाई नमक का मैं क्या नमक छिड़। अबे इन लोगों ने रश कर दिया रिटेक यार। बीमेन का करके फिर साइड वाले को कर लेते हैं यार। नहीं हो रहा भाई, ऐसे ब्रो दिल से विनेबल जिंक्स राउंड करो, अबे ज्यादा जिंक्स अगर कर अगर दिया। छापा मार देते ना उसे तो राउंड था। अबे इन लोगों ने रश कर दिया रिटेक यार। फेक पकड़ा गया। हाँ गाइस, हम लोग सपोर्ट करते हैं, एमएसके को जिंक्स करने दो। कम ऑन गाइस, अभी टाइम अबे है। मैं अब कुछ नहीं कर रहा भाई, मेरे को बहुत दिल में अजीब सा हो रहा है। बहुत अच्छा ओडिन। लेट्स गो रॉसी। ब्यूटीफुल, इजी इजी, अपना राउंड है। 2v2 अपना राउंड है। गोलू रुक जा स्किल्स के लिए, गोलू। गोलू स्किल्स के लिए रुक जा, साथ में जाएंगे साथ में। ग्रेट स्टन। नहीं यार एंटी यार। अबे यार अभी अभी इतने लोग मजाक उड़ाएंगे यार। खत्म नहीं हुआ गाइस। क्या पिक है इसके रॉसी, ब्यूटीफुल। कम बैक होगा भाई यहीं से। एंटी टर्न ऑन एलियन से 5 मोर, यस। चुप बैठेगा, ओके। कर सकता है। If GE lose this game, will they be out? Yes, this is elimination match, bro. ओ उन्होंने किसी ने उसको नहीं देखा। नहीं, किसी ने चेक नहीं किया। ओ भाई नाइस यार। अबे हेल रेंजर को वो दिखा है उसकी स्क्रीन में, वो उसका ध्यान नहीं था बंदे का। हाँ ध्यान नहीं था। अब कभी कभार होता है ना इस मैप में हो जाता है असेंट में थोड़ी कलर्स की वजह से। नाइस यार, नाइस हेल रेंजर, बहुत आला। फोर मोर राउंड रेंजर गाइस, बहुत ट्राई कर रहा है ब्रो। 4 मोर राउंड गाइस। अल्टी आ गई ना हेल रेंजर की अब। हाँ, हेल रेंजर की अल्टी है, कप्पा की अल्टी है, ओपोनेंट में 4 जन की अल्टी है। हेल रेंजर स्टनिंग कमेंट, यस यस। नहीं नहीं, हेल इज ट्राइंग, या डिले है 30 सेकंड्स का है। इट्स ओके गाइस, अभी भी है। नाइस वन रॉसी, ब्यूटीफुल।
अरे रॉसी ने क्या क्या बोल राउंड रहा है खेला ओशन है भाई? बोल रहा है ही वांट्स टू मेक अ भाई स्टेटमेंट बॉयज बिफोर आप ही लोग को लीव्स। याद होगा कि असेंट पे एस मारी थी शायद, तो यही है वो। कम ऑन जरोसी एंटी और कम बैक है यार, प्लीज यार रॉसी प्लीज। मस्की यू शुड जॉइन टीम जी, यू आर द लास्ट ट्रिप फॉर देम। अबे उनकी टीम में रह के जिंक्स करो। बहुत आला। ओशन गॉट द रियल स्क्रिप्ट। हाँ भाई सी ये क्या बोल दिया भाई ओशन ने? क्या बोला? ही वांट्स टू मेक अ स्टेटमेंट बिफोर ही लीव्स। एसके रॉसी बेस्ट। द क्या गंदी बातें कर रहे हैं यार ये ओशन। Guys, I'm just turning off my camera. Okay. वेल प्लेड। Let's go guys, let's go. There's still hope guys. Easy है अपने लिए। Searching. बहुत ज्यादा भार इस डेज का पास ऑन लो एचपी पता चल चुका है कि प्लेयर्स दोनों साइड से आ रहे हैं एंड दिस इज अ वन ऑन वन सिचुएशन। कहीं ना कहीं दिक्कतें बहुत ज्यादा बन सकती हैं। डिफ्यूज करना इंपॉर्टेंट। हेल रेंजर हैज टू डू इट ऑल द कॉस्ट। ही डज इट। ही विल गो फॉर इट। ही विल गो। Let's go. Let's go. एक और round. जस्ट ट्रस्टिंग एवरीथिंग इन हिज गट। डबल डिजिट्स। बहुत क्लोज मैन। स्टिल फाइटिंग। एग्जैक्टली स्टिल फाइटिंग स्टिल इन दिस गेम। किसी ना किसी तरह से टीम के आईजीएल ने टन बहुत अच्छा था एंड मेड श्योर वो लास्ट 1v1 जो था उसको क्लोज आउट करें अपनी टीम के फेवर में। साइड कंट्रोल लेने की जो कोशिश थी फैंसी यूनाइटेड की तरफ से बहुत ही अच्छी। ब्लेड स्टॉर्म लगाया, सीकर्स डिप्लॉय करे, बट एक चीज जो रियलाइज नहीं करी थी वो ये थी कि जिस पोजीशन पे रॉसी बैठे थे ही हैड वेल प्लेड हेल रेंजर बहुत अच्छा खेला। स्विच से लेकर पूरा गार्डन की तरफ लाइंड अप हो गए एंड फैंसी यूनाइटेड हैड टू पे। अगर थोड़ी और बॉडीज बच जाती साइड कंट्रोल लेते तो मे बी सिचुएशन थोड़ी अलग होती। बट लेट्स सी रॉसी डैश मिस होता हुआ जस्ट गेट स्टक। अब अपना ब्लेड स्टॉर्म इन्होंने कमिट किया है। बी लॉबी पे कोशिश थी फैंसी यूनाइटेड की अग्रेसिव फाइट लेने की, बट इस बाय राउंड पे दे हैव टू विन दिस एंड वन वे और द अदर। अगर ये बाय राउंड हारे ओशन मैच ओटी जा रहा है। दे गो वन फॉर द पिक्स एंड कापा यहां पे शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। लेकिन रॉसी ने आप देखे अरे कापा नाइस। दो प्लेयर्स को यहां पर पिक किया। वो रॉसी एक और उनके बिल्कुल सामने थे बट यस आई कैन नाइस होते हुए भी डेफिनेटली यहां पर उन्होंने एक अच्छा किल निकाला है। ओह वन ऑन व्हाट वी वर नॉट इट ऑल रेडी फॉर दिस बट आईजी वाज अबे 1v2 What? The journey of global esports. Fancy United Esports. Oh, बोट हाउस से ओशन डिंग अरे यार उस वजह से एचपी बहुत कम थी, वरना वो ड्यूल और भी कंफर्टेबल हो सकता था। व्हाट वाज दैट राउंड? बट या कूडोस टू बोथ द टीम्स। फैंसी यूनाइटेड GG guys. GG. गाड़ी उन्होंने अपनी बढ़ाई एंटी GG guys. It's मोमेंटम के साथ अब आगे जाएंगे। yeah man. एक और एलिमिनेशन मैच इनको खेलना Not like this, but yeah. Can't do much. At the end of the day, it's like whoever plays better, they win, and Fancy were the better team today. Can't say much, right? Even though we are supporters of, you know, Global, we have to understand and accept the fact that they were better. We come back. Prasad Gade, it was supposed to be 75% G, obviously, because we've played against Fancy a lot, to be honest, and they're not this good. Okay, that Global are making them seem. Even the Risebox comp,
made little to no like value, had no little value on attack. On defense, yeah, I could understand, but on attack, they had little value. And yeah, man, it's obviously heartbreaking for people. We have stage 2, let's aim for that. Yeah. अभी बोलता हूँ join. अबे यार डबल पिक बैड हो गया यार, बैड हो गया 3-4 राउंड्स एमवीपी बने हैं देखिए तो काफी ज्यादा कारगर तरीके से उन्होंने खेला है हालांकि Yeah, man, always support. It's okay. देखिए ये मैप भी नहीं, ये मैच भी नहीं, राइट फ्रॉम आइस बॉक्स, राइट फ्रॉम आइस बॉक्स थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन गैप लगा मुझे, स्पेशली जैसे कि आपने वो कुछ राउंड देखे जब ए साइड से बी साइड पर जा रहे थे प्लेयर्स प्लांट करने के लिए, एंड यस आई कैन में स्नोमैन से पिक किया था, यू माइट जस्ट बी रिमेंबरिंग दैट राउंड जो आइस बॉक्स पर हुआ था, राइट? सो And Ranger really played his heart out on Ascent. And Ranger Kappa, they both played really well. Can't fault them for that. All the players, I think they stepped up today on different occasions. It just wasn't meant to be. Would you be doing a round by round analysis of what went wrong with G? Yeah, we'll do it. We'll do it. It's just that. ये प्लेयर Everybody played well. Yeah, just not good enough. But yeah, I mean, everyone stepped up individually on certain rounds. Today, India wale lost too many viewers. Yeah, dude, that 1v2 was brilliantly played by the other Astra. You have to understand that. As much as we are disappointed, we have to applaud the way they played as well. The awareness to expect both of them to come from there. स्किल्स के ट्वीट या बट जैसे कि हम लोगों ने बात करी, राइट, अभी भी उम्मीद है, एक और टीम है, अगर हम लोग अपने रीजन की बात करें, वीएलटी जरूर रहेगी उस उम्मीद पर खरा उतरने के लिए, उनकी एक जर्नी अब डेफिनेटली शुरू होगी, लेकिन जो एलिमिनेटर्स हैं, जैसे कि हम लोगों ने पिछले गेम के बाद भी बात करी थी, किसी के लिए अच्छा होता है तो किसी के लिए बुरा होता है, बट आई थिंक जो है situations, कुछ specific situations and that didn't go in their favor, that like made them lose the game. No, to be honest, Ascent ka the start was fucked. The start was fucked. Remember, one man's highlight is another man's low light. Yeah, Tan. खैर है तो like honestly अब तो कुछ नहीं हो सकता ना. अबे यार बहुत इम्पोर्टेंट होता है असल में कि एक इवेंट के अंदर जो है ना परफॉर्मेंस दे आगे बंदा, क्योंकि फिर वो जो अगले स्लॉट्स होते हैं वो करंट परफॉर्मेंस पे जज होते हैं. Starting 6 rounds were horrific. Yeah, exactly. Can't really say much. अच्छा तो था राउंड. ट्विटर पे ऐसे ऐसे लोग हैं भाई. क्या हो गया, क्या बोल बोले दिया? बंदा, अबे मतलब एक तो खुद क्वालिफाई नहीं होते टट्टे, ऊपर से फिर ऐसे बातें करते हैं भाई. हक क्या है, ये है भाई, तुम पहुंच जाते वहां पे, तुम खेल लेते भाई जब सपोर्ट नहीं इतने करते. देर से अबे एक भाषण तो दे रहे होते हैं अजीब चैट के अंदर ना तुम भाई, अपनी क्वालिफाई हो टीम ना, बनाओ दोस्तों की, और तुम लोग इतना अच्छा खेल लो कि अपनी जो रीजनल टीम्स है ना वो भी इंप्रूव करें. जितनी टीम्स अच्छी और खेलेंगी ना उतनी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टीम्स हैं वो भी इंप्रूव करेंगी.
भाई इतने सपोर्ट थूरन बन जाते हैं सब चैट के अंदर। सपोर्ट ऐसी होनी चाहिए कि अगर उनका लोएस्ट टाइम चल रहा है तो उनको उस वक्त भी सपोर्ट करना चाहिए, ये नहीं कि हार जब जीत वो दोनों में टॉप पे ही सपोर्ट हुआ। होता है। हाँ Yeah, अजीब that's a good point. अजीब ठट्टे हैं भाई मतलब। Yeah, guys. I mean, Also, the scene doesn't plastic. That's that counts. अनफॉर्चुनेट। यार हेलरेंजर ने बड़ा शपाटा राउंड निकाला था यार ग्लॉक से। तो जैसे ही हैं बस फालतू बकते हैं। हाँ भाई चैट तो मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, लेकिन प्लेयर्स देखते हैं, मुझे पता है ना। अभी कुछ ना कुछ प्लेयर्स देखेंगे, उनको लगेगा दे लेट डाउन कंप्लीट अपनी नेशन के होप्स लेट डाउन किए, अपने रीजन के भी होप्स। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं। मेरा पोपट नाउन स्लॉट मतलब पोपट वाया एक्स्ट्रा इमोशंस आ जाते हैं। सॉरी, इट्स ओके। जिया गोड स्पोर्ट्स इज एन एमेचर Him was given a ticket to APAC Playins due to make a wish request from their only fan Mother Puppet. ये मैंने ट्वीट पढ़ी थी पता नहीं किसकी थी। No problem, अभी opportunities जी तो जी अब बाहर आ जाओ जल्दी। तभी बढ़ेगा जब नए प्लेयर्स आएंगे। बात तो सही है। एग्जैक्टली क्योंकि एलिमिनेशन की कगार पर आप आ जाते हैं जैसे ही आप अपना एक भी मैच ड्रॉप करते हैं। आई थिंक वही एक चीज़ है जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर कल के मैचेस में क्रिएट करेगी। बट चलिए इस बार इसके हाईलाइट के ऊपर नजर डालते हैं। दोनों के दोनों मैप्स पर वेरी क्या क्लोज। किया जाए। पे शुरुआत यहाँ पे अगेन काफी बैक एंड फोर्थ के साथ हुई थी। इनफैक्ट पूरा गेम ही बैक एंड फोर्थ का दिल टूट गया ब्रो, जोड़ने जा रहा हूँ। यूनाइटेड को हमने मोमेंटम बिल्ड करते हुए देखा। फिर ग्लोबल ई स्पोर्ट्स ने सेकंड हाफ में अच्छी अबे यार फैंसी यूनाइटेड, ये कौन है बंदा? I don't know him. सेकंड मैप पे जब गए स्टार्टिंग कंप्लीटली वन साइडेड हुई थी। काफी ज्यादा एंड आप ये बोल सकते हो कि उल्टा भी था एक तरीके से। लास्ट टाइम का स्वैप आइसबॉक्स का 7th रैंक था जीई इस बार का Like I think that's a plus. Only अबे all try बॉस time for stage 2. कम उठाओ, गुस्सा करी जा रहे। G lose because Hellrangers by छोटे लड़कों से ये क्या है? damn. अबे There are बेचारे का literally मैच zero तो fresh बिग players बॉस with है। fresh mentality. We cannot go forward like अबे this. ये बिग मैच लो तो नहीं है, मतलब इस तरह नहीं कह सकते घटिया टीम से था। Academy is ये very बड़े बंदे necessary, चैट guys. ही नहीं I don't पढ़ते, know. बड़े बंदे चैट ही नहीं पढ़ते। हाँ ये बात भी। कोशिश बहुत ही काबिले तारीफ थी इस टीम की। दे गेव इट ना 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 ऑल ना दैट दे ना। हैव एंड मोर। आई मीन अबे एक तरह से यार जाकर तो क्योंकि जिस तरह से इस मैप के ऊपर ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स ने कमबैक करने की कोशिश करी, बहुत लाजवाब प्लेस देखने को मिले। बट वही है, हमने पहले भी बात करी थी ओशन आपने और मैंने कि अगर आपके ओपोनेंट्स के पास एक बहुत बड़ा यार जी को हेट मत दो, हेट नहीं दो गाइस। डैश एन अकेडमी में था ना, आरजी के अकेडमी में था बट अब वो हट गया। और आरओजी अकेडमी तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट आरओजी अकेडमी because that is not actually an academy. It's still not that good without top. इट इज अ मार्केटिंग। G tried, अब क्या कर नहीं हो पाया। So कहाँ पर this is है? fancy prediction. I would still go with Griffin. VCT कहाँ पर है? वी एन एस वन के आर बी आर अपना वाला कहाँ है? ग्रुप बी का डिसाइडिंग मैच होगा ग्रिफिन ई-स्पोर्ट्स वर्सेस फैंसी यूनाइटेड। दो नाम ऑलरेडी जा चुके हैं ग्रुप्स की तरफ, ओनिक और नोनिक। Bruiser क्या पूछ रहे हैं? No, he's good. He's good. To be honest, it's just a bad day. अच्छा जी, ये हो गया, ये हो गया। देखिए हम लोग बोले कि ये है वो है, बट देन
स्ट्रॉन्ग मैप पर भी हारती है और कोई टीम अपने वीक मैप पर भी जीत रही है। नो नेमर्स तो क्वालिफाइड हो गई है, ग्रिफिन स्वैप आउट नहीं कर पा रही है और 13। अब आई डोंट थिंक आज कोई मैच रहता है, राइट? क्रैश आउट कर रहे हैं। जितना ज्यादा आप हर एक दिन डे 1 डे 2 डे आज और कोई मैच नहीं है, कल है। जाते रहते हैं उतना ज्यादा वो अनप्रेडिक्टेबल अबे यार ग्रिफिन को हराना था फिर सिर्फ। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। That's the beauty of it. I mean, भाई बाहर के लोग ग्लोबल स्पोर्ट्स ऐसे बोल रहे हैं, दर्द हो रहा है मुझसे। व्हाट वेंट रॉन्ग विद जी? एसेंट में तो आई वुड से देयर एंटायर अप्रोच वाज रॉन्ग ऑन अटैक. Icebox में they should have realized they could have like hit mid more, especially in the last round. As soon as Viper hit the ult, they should have realized कि it will be like obviously जब एक side ult है Viper का, they'll stack the other side because they had already overcommitted मतलब fancy United पैसों के मामले में. So they didn't have much money, so they'll obviously go for a stack and a gamble play, which is why they use Viper's ult. और mid take लेना चाहिए था, maybe mid to be just mid control. Mid control बहुत जरूरी था दोनों maps में. Something needs to change, either results or team or something, we don't know. Griffin, I guess. Yeah, I'll also back Griffin. ऐसे Valorant going places copium. क्या 1 सेकंड भाई, इतने सारे क्या हो गए भाई? 1 सेकंड भाई, थक गया हूँ यार. क्या हो गया करने के इससे? लिए विन तो कर लें पहले सर. अबे तो विन तो करे थे, क्या मतलब? पिछली बार अच्छा तो खेला था. हाँ यार ऐसे क्या हो एक गया? बंदे ने बड़ा फनी बोला, एक्सप्लॉइट हैज नेवर लॉस्ट इन द VCT. बात तो सही है भाई. भाई इस तरह हम लोग भी नहीं आ रहे. बेस्ट हूं मैं, बेस्ट जेट हूं मैं VCT का. एक्चुअल ग्रुप स्टेजेस का, और उसके बाद भी हमारे जो नॉकआउट स्टेजेस है वो भी आने वाले हैं, जहां पे अटैक कर रहा है यार ये तो पैराकॉस्म. क्योरिंग एयरपोर्ट रीजन. एस्ट्रेज ने जैसे स्पोर्ट्स साइकेट्रिस्ट लिया था. व्हाट डू यू थिंक जी शुड रीबूट? At this moment I think changes might be made up. मतलब I don't think you go on because there's something seriously wrong with how they approached the Ascent. It felt like it was a disjointed effort. Felt like they were it was a band-aid effort. It was disjointed भी नहीं, it's a band-aid effort. कोरिया में बूट कैंप रखो. यो आपको मिल गया मैसेज. यस फॉक्स, कल दोपहर को 2 बजे मिला था. This is just South Asian CS all over again? Nah, no, that's a very. I don't think that's a fair comparison, to be honest. हाँ रीजन की बस की नहीं है VCT. ऐसी कोई बात नहीं है. विंडोज 0 मैप ब्रो, दे डिडंट विन वन मैप, इट्स ओके. 2 साल से कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है. क्या बॉय गो नेक्स्ट. भाई थैंक यू फॉर अभी VLT सब्सक्राइबिंग. बची है भाई, अभी VLT बची हुई है. या एंड और VLT काफी अच्छी है. इंशाल्लाह वो अच्छा खेलेगी तो तुम लोग फिर आ जाओगे. ओ क्या खेलते हैं हम लोग. फौरन आ जाएंगे. अबे क्या बेस्ट है, साउथ एशिया टॉप नंबर 1, सब यही करने लग जाएंगे. 6-man roster. I don't think 6-man roster needed है, to be honest. भाई 250 लाइक कर दो यार. 6-man roster नहीं चाहिए भाई. 16 को रिप्लेस करना चाहिए. That is their purview. वो लोग समझेंगे. I am no one to suggest ये वो लोग समझेंगे. Tears of joy. ये चाहे प्राइवेटली देख लो ट्विटर पे. मैंने नहीं बनाया बट थोड़ी हंसी आएगी. Oh, nice catch. That was a nice catch. Great catch. अच्छा तो है. But I'm planning a strategy making. Don't you think so? Yeah, कर सकते हैं but I think that is an excuse of मतलब हाँ हंसी तो आएगा. VLT अच्छा नहीं खेली तो MSK की गलती है. इसको पकड़वा लेना फिर. अबे भाई एक तो यार ये जिंक्सिंग वाली I know it's funny and all but honestly देखो अब मैं क्या बोलूं. मैं तो जीतते देखना चाहता हूँ ना. मैं क्या बोलूं. नहीं जीतना नहीं है इन लोगों ने.
It's a wicket. यार ये विकेटें क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या बोल रहा हूँ मैं यार? अबे यार ग्लोबल ई स्पोर्ट्स जानी जीतना था यार. GodspeedxD MSK को बोलो VLT बहुत गंदी तरह हारेगी वो बोले. कैन यू प्लीज एनालाइज क्या? नहीं मैं ऐसा नहीं बोल सकता भाई. खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो गया फिर बोलोगे अबे ये बोला था. भाई देखो I can't say what will happen. I will say I want them to win. मतलब बहुत अच्छा खेलते हुए देखना चाहता हूँ इन लोगों को. Yeah, Kuru, I agree with you. But they need some changes now. There is clearly something wrong. There are ideologies or philosophies clashing now, I think. ये अल्ट से तो बाहर था. अल्ट कैसे लग गई इसको? साइड से छुई. अबे ये लोगों को क्या इतनी गर्मी होती है? पंखे एकदम मुंह पे रख के खेलते हैं ये लोग. हाँ ऐसे 9-11 राउंड देखता हूँ. ये रहा. And now they know this player's inside of kitchen. They're steaming forward. That nano swarm's delayed them completely, and this slow orb stops them going back. There's only. And now they know this player's inside of kitchen. They're steaming forward. That nano swarm's delayed them completely, and this slow orb stops them going back. There's only 20 seconds left, and the spike is now down. They know these players are in position, are trying to fight for this control, and they're getting nothing done. गार्ड बहुत अच्छा खेली. गार्ड तो बहुत फिट खेली. Now they know this player's inside of kitchen. They're steaming forward. That nano swarm's delayed them completely, and this slow orb stops them going back. There's only 20 seconds left, and the spike is now down. They know these players are in position, are trying to fight for this control, and they're getting nothing done. They need to like stop relying so much on Rossi to make those plays and give some freedom to now lightning fast. सिर्फ लाइटनिंग फास्ट की बात नहीं है. It's just that they need to make more plays. सिर्फ रॉसी के अराउंड जो प्लेज हैं वो बनाने से नहीं चलेगा. क्योंकि अच्छी टीम्स तो वो लॉकडाउन कर देती हैं. अभी बहुत कम स्पेस मिला रॉसी को अपने करने का काम. बोलो इसमें क्या करना चाहिए? How do I इसको क्या स्पैमर आ गया है यार एक चैट में. 1 सेकंड. If you're part of GE management, what would you have done? Because every team has a saturation point. I would have made changes. Now changes are necessary. What changes? That is up to them. क्या करते हैं इसको? ऐड मॉडरेटर कर दूं? हाँ. Put user in timeout and remove और रिपोर्ट. ये करता है इजी. यार 19th to 20th place was not good technically. अब प्रॉब्लम ये है कि अभी कहाँ पर है? wait, I need to check this on गंजा लेता है क्या? FS लास्ट और सबसे End of the day, I'm rich as. At least top 3 में प्लेस करना होगा VLT को ताकि कंटिन्यू रहे. I'm kidding. But like, क्या कहते हैं 2 slots for South Rod Asia. has like boats and you know what I mean? Like I look. Frankly. नहीं, आई थिंक सो. साउथ एशियन रीजन को फिर भी 2 स्लॉट्स तो मिलेंगे अभी भी. उससे कम नहीं मिलेंगे. Last time I think इन लोगों ने 2 बढ़ाए थे because Global Esports played well in the LCQ ना. हाँ. तो इस वजह से बढ़ा दिए थे फिर. आई थिंक सो 2 तो रहेंगे. I hope. Because No Namers ने बहुत अच्छा खेला है ना. और HKTW को ऑलरेडी 2 स्लॉट्स तो हैं ही भाई. वियतनाम को 3 स्लॉट्स हैं. इन सबको डू यू थिंक जी का गेम शिनोबी लीव करने के बाद थोड़ा डिग्रेड हुआ है? हाँ, बिकॉज कोई नहीं रहा ना फिर उनको वो बैलेंस और डिसिप्लिन में लाने वाला.
Shinobi के अंडर में G were very disciplined and at the same time they could react to situations much faster. 3 एच के टोटल बताओ। ये फैंसी यूनाइटेड का लोगो बहुत देखा देखा लगता है मुझे, पता नहीं क्यों। एक सीएसगो की टीम थी इनका, समथिंग हाँ वो फैंस यूनाइटेड की सीएसगो की टीम भी थी। उसमें वो खेलता था, एमवीपी कार्नल वाले लोग खेलते थे। एमवीपी कार्नल ओशियाना को 2 क्या मिलेंगे नाम ऐसे था कोई, उसका? पता नहीं भाई एक बंदा था, उसका यार, नाम इसको नहीं फिर याद आ बैन रहा। कर दो वेबकैम चैट को। यहाँ Excuse me. पर सीएसगो की टीम थी, उसका सेम नाम था। चलो थोड़ा वीसीटी उसमें चाहते हैं। मैं यार आई थिंक एक ये भी एस्पेक्ट है, ये लोगों को वहीं पे जाना चाहिए था, ओशिनिया 2। ओशिनिया के भी है ना स्लॉट्स, देयर इन हाँ एपैक एज वेल। तो टू बी ऑनेस्ट अगर ये देखो, यू स्टार्ट द राउंड फ्रॉम हियर, ये वाला राउंड का बता देता हूँ बस मैं ब्रेक डाउन, बाकी तो सेपरेटली करेंगे, फिर वो सब नहीं आएंगे। देखो, as soon as this viper ults, right, they know कि उनकी इकोनॉमी अच्छी नहीं है, so you have to understand कि stack तो होगा। Now this is your time to actually break through mid. Either go mid here, either take YouTube's control, or go here. But there are 3 places you can go, especially with Omen now in your team. There is a lot more you can do. So अच्छा, it was very concerning कि they did not do this. Like इधर एक alarm ओशिनिया bot रखें। डजंट हैव 2 स्लॉट्स। बाय द वे, Yeah. क्या नाम है, गॉडस्पीड, सॉरी टू कट यू ऑफ। Hmm. अगर बॉन्कर्स, ओशिनिया हैज 1 slot, right? Hmm. So if in case Bonkers does perform really well, they might end up getting a 2 slot as well. हाँ, ऐसे को एक नहीं करेंगे, ऐसे को 2 रखेंगे because of the viewership. ये भी है। मैं निकल रहा Bad हूँ। RK. कॉम खेलूंगा मैं। क्या बात है। बाय। So the moment they should have alarm botted here and gone mid कि अगर वाइपर यहाँ पे पुश करे तो उनको पता चल जाए और तब वो और कंट्रोल ले लें इस तरफ, है ना। यार बट लुक एट वेयर दे गो पहला बात तो मूव इनटू अ स्टैक, दूसरा बात like they obviously they'll play close range, so you are going through the smoke and you're desperate because only 27 seconds were left, so they played it very slow for a round where the opponent has all the pressure on them instead of vice versa. इधर प्रेशर ओपोनेंट पे होना चाहिए था, दे अब्सॉर्ब्ड ऑल द प्रेशर। लियास वो तो बोलेंगे लोग। ग्रिफिन से 40 पॉइंट गए हैं इनके, 40 पॉइंट गए हैं इधर रैंकिंग्स के। डैम, चाहेंगे ही ना। ओह शिट। I think, do you think they should have gone in with a coach as well for this event? Maybe. Because Shinobi did do a good job, I think. The problem here is MSK. Mahal, if you're not wearing underwear, I am wearing underwear. हाँ जानी बोलो। The problem here is कि Hellranger is someone who likes more control, right? So he will not be giving up entire control to the coach. And अगर वैसा कोच रहना है तो उससे बेटर एनालिस्ट ही है। बस मान लो अगर कोई कोच ज्वाइन करेगा वो कंट्रोल तो मांगेगा ना पूरा टीम के ऊपर। हाँ तो वही है। ये भी है। और ये तो सोचो ग्रुप बी में थे हम। डैम यार। वो ग्रुप 1 तो बहुत ज्यादा और डिफिकल्ट था।
ग्रुप 1 में होते तो एटलीस्ट एक्सक्यूजेस तो होते हमारे पास कि मतलब बाप टीमें थी या समथिंग लाइक दैट, बट like I expect these performances against group A का टीम कि फुलसेंस वगैरह हाँ it's okay man. इसका जो है, अब लेट्स बी ऑनेस्ट, अब They need a वीएलटी coach के कब है 100%. The मैचेस? lack of discipline could be seen in VCC. Unfortunate that they can't work with you. So, क्या कर सकते हैं? They need a full-time coach, man. I don't think South Asian teams can survive or expect to perform in international events without a full-time coach. They cannot have like event-based coaches. इस तरह नहीं चल सकता है. Makes feel like a weird game, not gonna lie. That's कल Enigma versus Snakes भी है. पता नहीं जानी क्या टेक में. Sorry. Forfeit कर दिया था रेकनिक से. लोगो तो अच्छा. ये लाइव चल रहा है? क्या उससे बेस्ट चेन्नई में खेलते पिंग डिव बोल सकते थे. वाह ये अच्छा है. जो बोल रहा है बैंकॉक चले जाते तो मिनिमम सैडनेस तो कोप कर सकते थे. ये लिखा हुआ है. इनके बग हुए ना मैचेस. अगर बैंकॉक को चले जाते तो मिनिमम सैडनेस तो कोप कर सकते थे लोग. VLT टॉप 8 में पहुंच जाए बस. I hope they hit top 4 man. VLT needs to hit top 4 please. At least top 4 dude. बहुत सारी चीजें हैं. I think they're gonna have a like अभी आज तो कोई डिस्कशन नहीं होगी. They need to like chill. और फिर उसके बाद से they might क्या कहते हैं Call of Duty Ember Call of Duty खेल रहा है. देखें जरा. यार पीसी का एक्सक्यूज बोल देंगे ना. सीएस में इतना ऑडियंस नहीं रहता था तो हेट भी कम मिलता था. अब ज्यादा मिलेगा. अब क्या वीएटी के ऊपर एक्सपेक्ट हाँ रख सकते हैं. Warzone मुझे भी Warzone खेलनी है. I'm gonna install it. Wait, did you see the game? Warzone तो Warzone के लिए ये कॉर्ड खेल रहा है. अच्छा मल्टीप्लेयर खेल रहा है. ठीक है ठीक है ठीक है. Alright guys, I would suggest you guys start watching Ember stream or Godspeed if he's continuing to stream. I'm gonna be ending my stream. अभी मेरा खेलने का तो दिल नहीं चाह रहा. I needed to go out. I came back in a rush because I found out कि मैच होने वाला है ग्लोबल का. मैं तो गाड़ी धुलवा रहा था फिर जा रहा था बाहर. ओ यार. Alright guys, take care. You can probably hop on over to Ember stream. चलो बाय एमएसके. जा रहे हो Godspeed? तुम जा रहे हो ना तुमने बोला. हाँ मैं स्ट्रीम बंद कर रहा था. स्ट्रीम को बाय कर रहा था. ओह मैं तो स्ट्रीम कर रहा हूँ. Is there any explanation to what has happened in these 2 days? They played. Can Malaf come?
Right now, no man. Please don't put him through any of these. Please don't ask him all these questions and everything. मतलब को बोला नहीं यार पागल हो क्या? पागल हो क्या? अभी ये सब नहीं बुलाना है. I sincerely request all of you to leave global players alone for a couple of days. है ना? Leave them alone उनका for a मेंटल couple of ओवरफक नहीं days. होगा. हाँ. उससे भी दुख हो रहा होगा. यस, वो बोला जीतने पर आएगा. एग्जैक्टली. उसे भी दुख तो हो ही रहा होगा यार. ऑब्वियस सा बात है. Yes, I think so. With this, we should call it a day now. I'll be back with tomorrow's watch party, and tomorrow after the watch party, we'll discuss everything. We'll go through. We'll do a WOD review. क्या इंडिविजुअल मिस्टेक्स भी? हाँ यार, एवरीवन वाज चल लाइक इजी ग्रुप है तो आराम से विद नो अनएक्सपेक्टेड दिस. या ट्रू. चलो एमएसके मैं भी आता हूँ. ओके ब्रो, हाफिज. कल मिलते बाय हैं. बाय. कल तो करोगे? हाँ, अब ये पता तो चले ना कि अब कौन सी टीम क्वालीफाई हो रही है. नहीं, कल 11 और 2 बजे मैच है ना, वही डिसाइडर्स के. सही है, आ जाऊंगा मैं. कैन यू चलो. लाइक कॉल मी? हाँ, मैं फेसबुक पे कॉल कर. ओके, थैंक यू. चलो मिलते हैं. Disconnected. गेम्स आउट है क्या अभी? हाँ, मतलब थैंक्स फॉर स्ट्रीमिंग, ट्राइंग टू शेयर दैट बिग ब्रेन बिकॉज़ आज तो ब्रेन वेन कुछ शेयर नहीं किया. आई वाज वेरी हाइप्ड अबाउट जी, टू बी ऑनेस्ट. एंड आई एम आल्सो टायर्ड. मैंने 9 बजे से लेके अभी 6 बज गए हैं. सो आई हैव स्ट्रीम फॉर 9 आवर्स नाउ. सो या, thank you for watching guys. I'll end the stream here only. I'll just stop the display capture. I'll start the window capture and I'll end the stream here. Oh, take rest. Thank you, Cruiser. Thank you guys. I'll see you guys tomorrow and we'll do more, like we'll do a proper watch party and then award review. Okay. See you guys. Thank you for watching. I appreciate all the love, all the support, and please don't be toxic to global esports for the next 2 to 3 days. Let them like. I know you guys mean well and you guys are hurt maybe, but they are more hurt because at the end of the day they are the ones losing. So please respect uh, their own mental conditioning, right? Thank you guys if you listen to this. I hope you guys follow up on this, right? And just support them right now. It's okay. We'll criticize them later on, not right now because it must fucking hurt to invest so much into a game and then not win. Legit, we've cried so many times because of all this, because of losing. I've cried while I was the coach when I lost at Arrow. When I lost a couple of games at Reckoning, I fucking cried. It means so much to us.
You guys probably don't understand it from outside, but it means so much to us. And the stakes, if the stakes are higher, the emotions are also bound to be greater. So please just respect them. And yeah, Jew, I know, but that's the way. Please just try and respect it. And thank you guys for watching. I'll be back tomorrow with another watch party. Right? Thank you guys. See you.